Hello and welcome to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021, the 8th edition. 8th edition, 8 साल 8 साल से continue हो रही है journey, and this time around it is going to be three games that are going to be participated right here, which is going to be Valorant, CODM as well as R6, जहाँ पे 3,770 teams participated, लेकिन only 12 teams are moving into the quarterfinals जो आज से शुरू होने वाला है और उसका प्राइस पूल रहेगा 10 लाख रुपए यहाँ पर रहेंगे प्राइस पूल के लिए। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे हम TGC 2021 की अगर बात करें तो yes, it is going to be an online affair through and through. Sadly, we're missing the LAN. Hopefully, if things go well, next year we will definitely see you guys right there in the LAN itself. लेकिन अभी के लिए, of course, we are going to be stuck to this online format. And इसी के साथ अगर हम Taiwan Excellence Gaming Cup की बात करें, so of course, this is all thanks to all the wonderful brands that are participating right here. आप Predator की बात करें, आप, I mean, it's just endless. Asus, Inwin, Transcend, list goes on and on and on. It's all thanks to, of course, all of these brands. जो हर साल they bring in their efforts together for all of us. And with that, I'm going to be your host, Brother. And हमारे साथ में stage पे जुड़ने वाले हैं, of course, the analyst is going to be none other than Pain Fixes. And CA, how are you guys doing today? Well, I'm pretty excited. Of course, LAN event nahi hai. We're in the studios. Yep. Gotta feel a little bit sad, but considering jo matches aaj aane wale hain, that keeps me on my foot. Especially Valorant being one of the latest additions, because last time we also did it was Counter-Strike, and taking the trend along, we've boarded the hype train of Valorant, and we've the best amongst you. Thank you. But yeah, I absolutely agree. Like you said, unfortunately not a LAN, but we have the matches to compensate for that. Yeah. And the players have the motivation to compensate for it too. A lot on the line for these players. Absolutely, that is so very true indeed. जहाँ पे हमने अभी की बात करी कि 10 लाख रुपए of course प्राइस पूल के लिए रहेंगे for the 3 games, लेकिन अभी जहाँ पे हम Valorant के अंदर घुसने वाले हैं वो वाले segment के अंदर, let's talk a little bit about the Valorant itself, right? Let's bring that down to the price pool which is going to be on the line for these teams. And यहाँ पे हमारे पास में price pool सामने आता हुआ 4 लाख रुपए CA for these teams, and again only that lucky one is going to walk away with 2 lakh. No, lucky one or the best or the skilled one. Yes, the most skilled one, I'm pretty sure, Lakshya, because हमने काफी सारे Valorant के events देखे, काफी सारे Valorant के tournaments देखे. We've got the best in the country playing with us. So I think आज के जो matches होने वाला, I'm getting really pumped up for it, because some new teams coming up, some experienced blood, कुछ ऐसे players भी हम लोग को देखने को मिल रहे जो last time के finals में खेले थे Counter-Strike, and they've shifted to Valorant. So it's going to be exciting. क्या agents pick होने वाले हैं? Who's going to get that jet? Who's going to get so many operator picks? So I'm kind of excited about the day. I mean, absolutely, right? So am I, because जैसे आपने बोला, there's been some special agent picks that might come through. Yeah. Shiver is unlocked. We might see him through too. And as you said, there is the might of certain players who we've already seen in previous games coming through. But there's also young blood. And that young blood, they're out and they're hungry for this title. So I want to see how they do. Well, you guys are talking about the teams. Let's of course get introduced to these teams. Let's move on through and team roster की यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे हमारे स्क्रीन पे of course ये 4 teams आने वाली हैं जो of course ये BO3 segment के अंदर घुसने वाले हैं, and this is going to be a tricky affair for all 4 of these teams. But what do you guys think? I mean, the two big dogs, right? EXO or Enigma Gaming. Enigma Gaming is having quite a run lately. You know, yesterday, a third-party event, they defeated the likes of GE. So you can anticipate how improved they have as a roster. And again, they've got RVK over there, God Particles. I think former Force One कह सकते कुछ players उनके वहाँ पे आए हैं. And this is their OG lineup, right? Yes. Counter-Strike की दुनिया से we've seen God Particles over there. But Team EXO will of course be one of the favorites over here. The first matchup, so I'm gonna in a dicey spot to tell who's gonna be the victor. well, let's find out कि यहाँ पे matches जो होने वाले हैं वो कौन सी teams किसके against खेलने वाली हैं. Let's move on to the brackets, जहाँ पे of course we'll find out the first match that will be taking place. And जैसा पहले हम बात कर रहे थे, it is going to be a BO3 finale यहाँ पे bracket का. And for this, CA, what are your anticipations, dude? I mean, like Fixer said, Team EXO, they just have a team of superstars, right? And we're expecting them to come out of the gate running guns blazing. But at the same time, when you look at True Rippers, they've got raw talent in players like Paradox and Relic. So I want to see that raw talent really shine through. And then there's Enigma waiting all the way down. They recently got a new coach as well, former CSGO coach too. So they're like the silent assassin just waiting.
a team to come to them. This is where the thought sort of arises, right? अभी आप coach ला रहे हो, coach has a different outlook, a different perspective, and sometimes it really works out in your favor, and sometimes it just hits you right on your face. So, and it takes time to adapt and adjust, because her team के एक अलग playing style रहती है, and suddenly a coach comes in. We've seen massive failures, but we've also seen success. You talk about teams, international teams like Gambit, having their coach being one of the primary forces to have driven them so far. So it's going to be really exciting, because I was rather surprised, Sia and Blotter, to see Enigma in the lower bracket over here. So that is kind of like a reason for concern over here, but I'm pretty sure they do have the players to pull it off. Most certainly. लेकिन उसी के साथ I do want to also point out this one fact that you did point out, Paying Fixes, is the fact that नया coach यहाँ पे आ रहा है. अब लेकिन वो नए coach के साथ में X factor भी वहाँ पे कहीं ना कहीं can very well bring themselves up across the entire lobby, but that of course will only be discussed as the game progresses on along. Right now अब हम move on करेंगे towards the map veto, जहाँ पे of course ये BO3 तो start होने वाला है, लेकिन कौन से maps पे ये games खेलने को देखेंगे? All right, I mean, Heavens here. So, I think split ka map, we kind of pretty much anticipated it ki Team EXO is going to go with it. And I'm not surprised ki Team Rippers and Defenders choose ke. It's heavily Defender-sided. And Icebox, okay. This is where we get to see Sova out of Sai. So, I'm kind of excited about it. But more than that, it's my first time casting the boys from True Rippers. So, I am kind of in a speculation ki kya picks hone wale. What do you think? I think Haven, of course, a strong pick for them because of the strength of Paradox and Relic. Relic is considered one of the best ciphers in India, and I think if you look at every single map that we have available right now, Haven is probably the best map for that cipher, especially. You can be creative with the setups, and similarly for Paradox. He's a Jet main. I am curious to see, though, if that Jet goes away to be replaced by the Chamber, because usually Paradox picks up the Jet for his op. तो शायद Chamber के साथ कर ले. But lately, taking a look at the trends, taking a look at the teams, we haven't really seen a lot of Chamber picks, right? And considering it's the upper brackets over here, maybe, because again, अगर ये आप हार भी जाते हो, तो एक और chance है you're gonna play against Enigma. But the question still arises because are you really ready for the Enigma that's going to come at you? Because they're wounded right now, and that's where they get fierce. Because we have Antidote, and we know for the IGL that he is here. I think he's a really good one. See, but इसके साथ आप एक it's a very interesting conversation that you bring into the table right now, Fixes. Yes, आपने जो बात करी बिल्कुल सही है that you will have the second opportunity. लेकिन ये जो first game है यहाँ पे both the teams are going to want to dominate, right? None of them are looking forward to that loss. None of them are looking forward to that second opportunity जो उनके लिए wait करी है. They want to be able to precisely move on forth पहले game की शुरुआत से ही. लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे ये भी बता रहे थे, the history of the team that are going to be playing these two games, right? The first three BO3s. यहाँ पे history कहीं ना कहीं does favor EXO, but again it could be a completely different affair that could be showcased. But on the other anticipation, what is going to be your predictions here for the team? I mean, so for me, honestly, whenever it is EXO versus True Rippers, it becomes this like. For a lack of a better word, fish market, really. The players just throw themselves at each other. The passion comes out in the players, and it becomes very close. So I'll go 2-1. I think True Rippers might steal this away. I have this weird underdog feeling today. Okay. All right. So he's made a pretty bold decision, right? And I'm turning old, so yeah, I think I'm gonna stick with EXO at this one because they've got a lot to prove. And considering just maps who I'm pretty sure I'm excited about their split plays. What is going to be really important is for them to get a win in Haven, because if they do that, I think they've got a really good momentum going into the second matchup over there. So that is definitely going to be one thing. But speculations again arise. Ki Haven mein, what are the champions, what are the agents that we're gonna see from their side? So that is going to be interesting. So pretty much Jet is something that we're gonna witness in common. Maybe a Sova or a Sky, or maybe both. Phoenix, Reina is up for grabs. We've seen Excali playing Reina. We've seen him also playing Phoenix. And I think the last time we did that, he picked Phoenix. They really got hit in the face. He was doing his job, but the team was sort of breaking down. He was making those aggressive plays on the defender side, which was again being read by. So I think I'm kind of curious to see how he's matured even as a Phoenix or a Reina player.
Well, again, अब ये this is the point जहाँ पे we move on from the maps to the picks itself, जो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे जैसे आपने बताया कि जेट तो गारंटी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, maybe Sova would also be a part of it, but alongside all of that, an X factor pick, what do you guys think could be brought in from these teams? So I think when you look at EXO, yes, you've got all of that talent with Sai, Excali, you've got that experience, you know. Right. But like the young blood of True Rippers, they've got someone just as young themselves in Ghost. Now, when Ghost first came into EXO, it was all hype. He was expected to carry on his duelist role, but he kind of fell through the gaps and started settling into a more comfortable role. Now that Chamber is off, because the biggest contention for Ghost on Jet always was Sai wanted to opt, but Ghost was on Jet. So now that Chamber is up, I wonder if Sai can pick up the Chamber and Ghost can go back on the Jet, because then Excali can play Reina happily. Okay, so I mean, she has been hyping a lot around Chamber, right? It's one of those agents who could be, you know, he came down in the morning to the studio and was like, guys, dude, I need to have a Chamber game. I need to watch a Chamber game. I was like, what is so good about Chamber, Rasiya, that it's just Chamber? I was like, okay. I mean, he's not been Astra good, like, you know, a new agent coming in and everyone absolutely going for her. Again, Astra being one of the must picks that we're seeing these days in Heaven, I must say. So everyone sort of going for an Astra, considering how we get all those abilities down there. So again, Chamber, I'm a little skeptic about it. Key teams are going to be trying at this point. Had it been teams having nothing to lose, yes, for sure. But yeah, I mean, I would be like surprised if I see a Chamber. You know, इसी के साथ now, as you bring up conversation from the green room, right? CA के साथ मेरे को एक और conversation करनी है. That's going to be based on the Icebox. The Icebox जो final वहाँ पे BO3 का game रहने वाला है. You are not too happy about that pick. Why? So generally in esports, I love the map of Icebox. Don't get me wrong, but the esports version of Icebox, it's so stale because we've seen the same meta. It's the only map that hasn't changed meta for over 7 months now. It's been the same Sage, Killjoy, Icebox, post-plant meta, and nobody's even tried a KO to try and disrupt it. Now, we are seeing the Premier Champions Tournament. People like the SEA teams themselves are bringing out, but hey, we'll see maybe this time. Well, we'll find out. We'll find out कि वहाँ तक ये game जाने वाली है कि नहीं, because again, it's going to be a BO3 and उसी के साथ game is live and it is over to Say and Fixes. All right, thank you so much, Lakshay, and here we go in. So defenders say we're starting off no Chambers up until now, CA. So you're gonna be a little disappointed, but what we do have is a breach. So how do you feel about the breach in Heaven? Quite interesting because Ghost on Astra, Astra because of this. अब देखना पड़ेगा, right? How comfortable he is with managing his teams. Like this is a very far shout from say playing a duelist or even playing a Killjoy versus playing a controller, where your every action your team takes आपके ऊपर dependent है. But वही दूसरी तरफ maybe a Sky. So दोनों team going for the double initiator comps most likely Fixes. Yeah, and you know, taking a look at things, we are getting to see that Cypher maybe from Relic. There you go. It's been confirmed. So, like you said, कि यहाँ पे Cypher का बहुत ही अच्छा role रहता है. You can do a lot of things. You can be really crafty with your setups. But again, Paradox, I believe, वो stick करने वाले. But the biggest question over here is a few changes have been made, especially from Exo's side, right? Taking a gamble over here with Ghost and Excali on the Jet. So, Sai sticking on that Sova. So, initial impressions here, like who do you think this map is going to be favored heavy at? I mean, immediately I have my eyes on Relic because I feel like that interaction वही decide कर लेता है पूरा matchup. अगर आप वो Cypher के setups immediately तोड़ रहे हो, अगर आप वो Cypher को information deny कर रहे हो early, and अगर वो आप Cypher के साथ वो conditioning allow नहीं कर रहे हो, you know, usually because, for example, if the two Rippers are on attack, you'll see regularly on Haven A long, they'll put a cage and they'll just pretend like they've gone. Sometimes they'll pretend like they've not gone. That basic interaction, if EXO is able to deny, I think that's where they might get the lead. Yeah, and initial pistol round has to be really important, right? Just to set the pace of the game, and दोनों teams would want to win it. And considering True Rippers are starting from the attack, so you've got to make sure you get those initial wins. And here we are with the game already starting off. So Excali is going to be defending from the A side. We've got the Breach and Sova on the B link. So it's going to be interesting. यहाँ पे setups भी देखिए Wimp ने लगा लिए हैं. And there they go, marching down, maybe towards the C garage.
Yeah, Trailblazer के साथ information निकालने की कोशिश है. They spot out Wimp and his turret, so they might not be aware of the fact that the Sova is in window. Never mind, एक shock dart reveal कर देता है, and just like that, most players know exactly where they are. And you can see the setup from True Rippers once again trying to use that cipher to gain early information. वो trap wire पता है उनको, nobody's pushing C long, and the early camera tells them that A lobby is empty. So now they rotate. Relic picks up that first blood, and A site is open for the floodgates. Oh, it definitely is. And इसी के साथ, they are pushing in heavy on towards A. Does all come down to Blackhawk. He's gonna try and delay them. The flash coming out over there. Or one tap got, gets a pick, gets a trade right after as Crosshair gets one more. इसी के साथ spike भी plant हो जाएगा. A 3v2 situation. Team Exo on the retake. And now you can see Blackhawk unfortunately काफी shots miss कर गए, even though the opponents were blinded, and very less utility left because of that, but they have to go for it. So the turret to get some info. Wimp using it well, able to get around the corner. Wimp landing a beautiful right click, goes behind, one tap got it. Suddenly it's falling out of True Ripper's hands. Fixes, only one person left. And they have an idea, and there you go. Master somehow staying alive, but towards the end, Wimp does the job. And there you go. I mean, Team EXO, really good retakers here, considering how they entered inside the side. They got the spike plant up. They had the man numbers. I'm still honestly confused how nobody noticed Ghost just running around behind them. Everyone, like Wimp was this perfect bait, like a piñata. बस सबके सामने से भाग गए सब. अरे अरे उनको मारो, and Ghost silently coming in behind them. Beautiful retake by EXO. Beautiful. And this is gonna give them that extra edge, that extra advantage, and which could have been really worse considering how Excali was just dinked on his head, right? And this he would have been shocked because it was a Ghost against a Sheriff, and he lost that duel. And being the Jet, that's not a start that you would like for yourself. And Relic getting some aggressive vision over here. Wimp start कर रहे थे, no C, खराब से push आ चुका है, and he is so good. Two players going down, and one after the other, they're just punching bags, and it's a flawless coming out of EXO. I mean, usually you see oil leaking in the garage. This time it was blood. True Rippers is just Killzone, and it's what my Killjoy's expectation रहती है. The Killjoy versus Cypher discussion comes up, where this sort of Killzone is what Killjoy provides you, whereas Cypher gives you a teensy bit more information. So far, EXO doing brilliantly. A flawless anti-eco does mean they get a bonus round now, and True Rippers have to make sure they don't give away too many weapons, don't concede too much damage. A few changes here. Excali को B side की तरफ ला दिया गया, and he's having a Marshal. So I think he's gonna take a quick peek at the balcony. But at the same time, देखिए, Sova को इस बार, Sai, he's playing on A shot, long के तरफ थे. But what I really like about Relic is how aggressive he has been with the Cypher setups, right? He's gone into those cameras, he's not really shied away. Well, hasn't really went into True Reaper's way, but this could be the moment where they start changing things around, but maybe not. As Ghost has managed to get the opening peak. C Garage की तरफ से push हुआ था, but at the same time, it's a split, and Sai knows he's got to back off. Look at this. Aggressively moving in. True Ripper Sai को hunt down करने की कोशिश में. Catch him out, but Sai काफी time buy कर चुके हैं. इसी के साथ Excali is here. Sai is revealed now, but Blackhawk support also available. All utilities thrown down here. It's all about the first kill, and Paradox clears the space. Oh, he does create, but then again, Paradox continues his onslaught, gets the third one, and should be an easy spike plant for True Rippers. And ये एक पहला round लग सकता है, which might just go in their pockets, right? Again, from Team EXO, they did not commit a lot. It was their bonus round, so they're kind of fine for now. Wimp और Ghost आ चुके हैं. They're gonna try something similar, but Paradox, he's on his verge of getting an ace. He has already managed to get a quad, and does he get it? Spot किया था, has to retreat. Looking for it. Yeah, nothing really denying Paradox. A beautiful one, but again, haters will say it's just a bonus round. It's just a bonus round, and the best part about it is applying so much pressure on Sai, right? उन्होंने pressure apply किया था A side के तरफ से. We see Paradox had already pushed in, and they got the results out of that. Exactly. It tells me that they have a very clear communication system. The IGL is very, precise in his calls, and that's very good to see, because in that buy round, that's what they needed. Sirf one weapon lost, that means they will still be able to continue with full buys, but Excali, he's got that top.
right after you get an ace, with confidence सा झलकता है आपके अंदर, and maybe it was just too much, and Excali was ready with his operator instantly. You have dynamic plays happening in one tap. God, how on earth is he even alive? Yeah, Excali blaming the mouse. You could see just shaking it around like, bro, move kyun nahi hua ye? But that's okay. One tap God playing with fire. Surely he'll have to jump away from the frying pan soon enough. I'll have to see if he can dodge flame itself. Now, be hit karne ki koshish hai, but the setup has changed from EXO. You can see this time with the alarm bot in, but Wimp dives in too early, gives away the kill, and now without that killjoy utility, be open for the taking. But Excali is too good. What? Last player standing. What? Okay. Wait, we need to digest this. Like, kaise see? How? I mean, signs of brilliance, right? I think on this is the only conclusion that we can drive, right? Because these sort of shots. I mean, of course, it was a close angle, and he did hit it. But yeah, I mean, feels good when you connect shots like that. Yeah, right. Especially after you just changed up your mouse, trying to get that grip, and then you connect. Like, yes, I got that grip. Let's go. Mouse में कोई गलती नहीं. It was just few frames missing over there, out of which they could not get much. But changes again. We can clearly see Excali. He's on to that A shot area. I'm pretty much sure Sai की position यहाँ पे reveal हो चुका है. He's gonna deploy that owl drone out and make sure he gets some information. But I believe that's not going to be the case up until, you can take a look at two Rippers. They're playing a little bit defensive, right? They're letting the players of EXO be a little more proactive and then maybe just capitalize. Because you can see all the setups over here. Killjoy has all the swarms around at the B entrance. Very interesting because they've got mid control. They've revealed themselves towards the A site, and now Ghost is in a really good position because he's on that trap where you can just break it, draw all of this attention. As you can see on the map, as soon as that trap wire breaks, True Rippers are scared. Is there a flank? So they go towards C, trying to overload that flank, but now leaving Paradox alone. It's all about the timing here. Ghost needs to get back, and he's able to do so perfectly. I have to say, so far, this pick of Astra for Ghost has worked out 30 well. seconds. Yeah, I think a good change for the lad. But there you have Crosshair. He's trying to enter it. Oh, this is Cosmic Divide being deployed. They won't get a lot of information out from it. But Crosshair does spot him out. But Relic deals with him. Very well set up. All four members of the side of EXO ready for the retake. They have the Killjoy ult. वो लगा के side तो ले लेंगे, but you can see the plant, the way it's set up, it's purely for that long plant. True Rippers are not going to care about giving up the site. Okay, so I mean, Vim's ulti has gone in vain. So they've got an information, and here goes the duel between all these players. So Paradox getting those trades off, and Excali, alright, he just charged it. And I really felt he could have done better with those knives, but desperate attempts. But again, True Rippers being on the better side of things, and यहाँ पे इन्होंने round में जीत हासिल कर ली. 3-2 का scoreline यहाँ पे हो चुका है. Talking about the economy, I believe it's a little loose for Team EXO. I think they might want to loosen things up a bit, maybe upgraded pistols, and that is exactly that they're opting for. That last play by Excali, it's going to cost him double because, of course, round to haar gaye, but losing that Blade Storm, which he could have had for the eco round here, is going to hurt even more because now you're thinking if you had that Blade Storm, you can guarantee yourself an op in that next round, but he's got to be careful. No shields on that Sheriff, and immediately getting caught out. You don't land the first shot, you're most likely dead if you have a Sheriff. Oh, there you have it. I mean, this is a direct entry, right? Nothing out of ordinary. They would continue. कि यहाँ पे इनका, they would just be on those upgraded pistols. इसका फायदा उठाया, direct dash on towards the A side, and have managed to take down Excali and Sai. The brothers have been taken down. Site had been opened up. On the retake, they're just gonna. It's gonna be a long shot unless and until they open up maybe 2 or 3. But seems like EXO, well, Ghost did try to peek, but was instantly dealt with. It's just very hard to retake. Jab opposition Sky alive and why
instantly just covering that angle. It's like a Sage except with a gun and flashes because you cannot entry, and now Blackhawk, he's stuck. He's not checking that angle though. Blackhawk should be able to get one kill, not more than one. And yeah. Yeah. 3-3? It's a 3-3. But, you know, losses over there for Crosses. So he's got to buy again. So it's going to dampen the economy just a little bit. But iske pehle wale round, nothing much, right? It was pretty much straightforward, just hitting on towards A side. They knew that their opponents are going to be on an eco. But I would really take a look, want to see the ultimate status. We've got 2 ultimates ready. We've got the Cosmic Divide. We've got the Rolling Thunder. But is baar changes kiye gaye. A side pe they've got a Wimp coming in. So this is going to be interesting. Now Excali also in the middle and has managed to get a big one. Big fish, it's Paradox. See, that is planned precision. The crosshair placement, he knew exactly where Paradox was going to run from. He picked him off before also with the off from Garage. So just beautifully done getting that pick. Now they can just back up, as you said, with the Breach ultimate or Astro ultimate ke saath aram se retake kar sakte hain. Isliye you can see A left completely on the Killjoy utility. They're making that Killjoy crossfire kill zone around this B site, and True Rippers, the problem is they don't have info. They're leaving the trap fires. They need to try and find these lurks for Relic through the extremes, but instead Relic has to group up with the team. You know, that's the part, right? Exo is also not forcing things out. They know that they've got the trap wire, so they're kind of staying on the site, right? Not leaving it. But entry यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है through the garage. But it's mostly going to be a garage B hit, or at the last moment they're going to switch things around towards the A side, because that is where the Astra is positioned, and Killjoy does have a side idea. So as long as Killjoy is around the side, I think they're going to have a clear opening. And 30 one tap seconds god left. is trying to enter in. He might spot out a few. Oh! Gets 2 though, and completely just opens up the site. Yeah, because now Breach bhi mar chuke hain. Just like that, the Rolling Thunder is gone, and with your Jet and Sova at half HP, do you even want to use an ultimate to retake? And I'm not sure. Like, yahin pe a very, very crucial double kill over there for one tap god, because ye decider round hai kaun lead lega uske liye, and already you can see True Rippers out of the gate. Might have got flawless except Ghost popped off, but it doesn't matter for them. Back-to-back wins. Their economy is booming. True Rippers with the lead. Yeah, and all creds to Master there. At the same time, entry had he not spotted out the 2 players over there, I think it could have been maybe a retake coming in, ultimate abilities ke sahare khel sakte the. They could have done a lot of things, but instantly opening up that A site, they were trying to apply pressure on B and C, but they realized, we can just sneak in through A. And by the time Team EXO had an idea about it, I think it was sort of too late. But now, the 8th round. But again, right, small mistakes. Like, there's no need for that Killjoy to be on site when you're playing on retake fully, and that's the communication difference that at least main dekh raha hu. Where True Rippers, even though that A hit was very obvious, they did it together. And once they did together, it works out for them once again, though. Excali getting a little too ambitious. Yeah, I think this is typical Excali, right? And it's not the first time he's been doing this. But Sai, all right. Sort of trying to even out the numbers. It's a 3-on-3, but B में यहाँ पे spike plant किया जाएगा, and Ghost gets 1 also. And suddenly, are we looking at a thrifty over here, say? I mean, they have recovered weapons. आप देख सकते हो आगे बैठे हुए, but they don't know Paradox is sneaking in through garage. The Seekers are going to distract them, but Paradox gets caught out. Did not wait for the Seekers, and now एक 1v3. He's been spotted out as well. Crosshair, this is next to impossible. A thrifty, it looks like it is, but Crosshair. Oh, that's awesome. Yeah, that definitely is all. I mean, like you said, right, it was a fish market, and it was a fish market, and we had Sai being the absolute slayer, right? Again, those aim duels coming in, and itna zyada chaos tha कि he had to connect it, and we know, he doesn't miss shots like this. And Exo right inside the game when we were just starting to feel that the True Rippers are getting a grasp over things. So now, where are we at? See, like at this point in the junction, now True Rippers, their economy has been dampened a little bit. Just that Hunter's Fury available in response to, again, Hunter's Fury from Sai side, and they also still have that Holy Thunder in play.
Yeah, it's again the small mistakes. Because as soon as you kill Excali, you have to realize it's eco. They're going to rush, and that's exactly what True Rippers are also trying to do. But it's instead just the 1-for-1. So far, favoring True Rippers because again, जैसे आपने बताया, their economy is dampened. So the more trades they can get, the number of duels they can get evenly, that much better for them. But this round, it sort of looks forced. They're aggressively moving down mid, and this is sort of becoming a pattern. Every time they take mid control, then they try to rotate, but this time they're going to change it up. Oh, they certainly are. And again, you know, time and again, they're trying to head in towards the B side, but this is where it gets deadly because the Rolling Thunder comes in and follows up by Win, just getting through out of nowhere, and Blackhawk gets Paradox as well. आखिरी player बस बचे हैं. It's going to be Master, जो कि garage के entrance के तरफ है. वो spot कर लिया, कोई परेशानी नहीं होती हुई. And this is where you sort of have to realize, right? There's a breach ultimate available. Why would you hit B? It's the question that even if you're hitting B, at least be aware कि breach ultimate आने वाला है. So you have a Hunter's Fury. There's a tiny corridor. Just put the Hunter's Fury there. Don't let him stand and ult you from there. Force him out from that because आपको पता है breach का है. He's throwing his fault line. He's throwing his flash points, and you need to use that information. I think right now that's what True Rippers are missing the most. They are very coordinated, definitely mid round with where they want to go, but the early round decision making where they seem to move together, it's hurting them because they need Relic to start exploiting those extremes. Because हर round आप देख सकते हो EXO भी group up कर रही है, they're being disciplined on the defense, but that does mean they're leaving the A long C long uncontested. One more thing that I'm, you know, kind of observing here, correct me if I'm wrong. So this is the part where we're seeing Team EXO trying to shut down Paradox because they're time and again getting a little proactive, getting a little aggressive, and before he even gets to react, Paradox, he's out of the scene, right? He's out of the game. And this is not the first time that that has happened. It's been happening multiple times. So is it a viable strategy for Team EXO where they know that if they can deal with the likes of Paradox over here, so they're sort of good to go? Definitely, right? Because the biggest nerf to Sky recently वही हुआ था कि she's not as much of a pseudo duelist anymore. When you're playing that single duelist, you really rely on that jet to create space to get you entry. And if your jet is getting shut down that early without the expense of much utility, it becomes very easy. But quite a change here this time from EXO, maybe hearing us and contesting only the extremes, A long, C long, and it works out perfectly because that's where True Rippers go. Oh, that is where they intended to, but Tap God. It was not a tap though, but still managed to take down Ghost. Wimp, however, Crosshair को shut down कर चुके हैं. Blackhawk still on the side, and as long as you've got a breach and KJ, it's very difficult to penetrate. And Paradox still taking his chances. This time he's taken his revenge on Excali, a 3v3 CA. And he's got a gun as well, has his Blade Storm too. Paradox, this is hilarious fixes क्योंकि हमने पहले True Rippers को lead लेते हुए देखा था 4-3. A Thrifty denied that, made it 4-4. Now we see EXO taking the lead, and it looks like a Thrifty is going to deny that to make it 5-5. So, I mean, you'd been true all along, right? It is exactly where we did anticipate. You know, these teams are going to take those aim duels, and Paradox, I believe, has given up his position to Blackhawk. But both the players not really connecting at the same time. Master की तरफ से वहाँ पे pressure ज़रूर देखने को मिलेगा. And there you have Blackhawk taking his chances at the defuse. Oh, they're just toying around with him up until the point Paradox gets the third, and it's a Thrifty. I mean, at this point, for both of the teams, they're really looking for some consistency. You know, they're looking for some stability. एक मौका really ये game को उनके हाथ में छीनने के लिए, and वहीं पे I'm looking at the star players. Paradox, of course, huge round for him, but he's been unable, like you said, because EXO has been so proactive, he's been unable to find a groove, a mojo really, and he's not able to get into a rhythm. So I want to see if somehow True Rippers can punish that, because I am noticing इस बार वो 5-man group नहीं है, it's a 1-4 split. Relic finally alone. Yeah, and you know, this is where Relic starts getting deadly when they go to become the defenders. But Excali again, you know, seeking information and getting more than what he came for. Gets a pick, and that's going to be one tap. So Relic, he's trying to, you know, he's got his spy cam activated around that C area just for Excali. If he tends to get over aggressive, but look at Paradox. He's dashed it. They're following it up.
with a guiding light, but Blackhawk has managed to take deal with Relic over here. But still, Sai going for an ultimate and Paradox goes falling down. I'm actually curious how Relic died there because planted. I don't think he died from just a wall bang, but it won't matter. He's able to buy enough time, and True they get the site for free. All that time that Relic bought, even though he died, it meant that they get site, they get post plants, and now even though it's a 2v3, True Rippers have a lot of information. उन्हें पता है कि दो players flank करने वाले, उन्हें पता है दो player features आ रहे, फिर भी Master gets caught out, and suddenly now Crosshair once again stuck in a 1vx situation. He's gonna drop it, and I was saying उन्हें पता है कि flank पे आ रहे हैं, but I guess not. That was weird. You should not die to Excalibur. You know, a lot of weird things are happening, and I completely agree with you. उन्होंने Outrun के साथ spot किया था, and this is where Excali started getting again over aggressive. Paradox being dealt with, उसके बावजूद भी they managed to get the spike plant, and I was kind of surprised how on earth did Master die over there, because उनके पास already Outrun से information था. Maybe he was just too much out in the open. Excali घुसे and he had a free vision, he had a free player to take, and that is exactly what he did. So the final round of the first half is where we are at, ladies and gentlemen, and 4 ultimate abilities True Rippers की तरफ से हम लोग को शायद इस round में use होते हुए नजर आएंगे. I'm pretty sure they're going to go for that Seekers and then head in with an Cosmic Divide, but I think they might try to hit the B side, because that's what usually teams have been doing, or rather Team True Rippers, I think on 2 or 3 occasions, and they were anticipating Excalibur push, but he did not this time. Yeah, and that's why, like, at least IGL pre-round wise, it feels like Oh, EXO just a step ahead. Sai setting himself up for success and doubling it up, looking for his third. His own recon bolt, his own shots. I mean, that's what you want from your Sova player, right? And they're not stopping at this. Of course, Relic will find some redemption, but Excali, well, he's been spotted out. Has it hit right on his body? Yeah, I think so. Because that is what I felt. And either way. Oh! Okay, I'm done. I guess they should switch names, because one tap got just got one tap. And he's gonna be like, God damn. Wait, hold on. The Killjoy ultimate gonna deny this A-side entry, plant करने की कोशिश है. Master trying to push through and get as much value before he gets detained, but it's just the one kill. Relic will get detained. It's a lead for Team EXO in the first half. Yes, indeed. But, it's not a huge one at that. It's 7-5, I'm pretty sure. True Ripper, considering they've got the Cypher in place. Yeah, this is where they start getting deadly. This is where they start getting exciting. But, a lot of hype has built around this kid, right? Relic being one of the best Cyphers. This is where his true abilities are going to be put at test, because how good can he be over here, and especially when you're playing on your defensive side, right? A lot of crafty options, like you said, he can hold solo C, he can even have an eye at garage and hold C at the same time, do things around B. But where do you think is gonna go? I think the biggest difference that we're going to notice between Wimp, the way he set up with the Killjoy, and जैसे Relic करने वाले हैं, यही रहेगा कि Relic is going to be a lot more team oriented. Like, he might even turn himself into a duelist and take a buddy along and try to push, and that's where the point becomes, how is the entire team going to rotate around? Because if you look at EXO, they're quite happy to be on attack. They have the breach. They're so proactive on defense itself. Now it feels like they get to truly let their wings unfurl. Yeah, I think this could also be the case. You could be right over here. But quite an interesting start, True Rippers on the defense. They haven't been too aggressive. Now, देखिए, Relic ने यहाँ पे अपना setups तो कर लिया on towards that A side. He's got his spy cam on towards A shot. But Team EXO are yet to make a move. So it's going to be interesting. यहाँ पे turret भी deploy कर रखा है, just in case anyone from True Rippers makes that move on. And I think towards the lawn, they're going to get caught. But now they're slowly grouping up onto that A side. And this is where Relic's positioning, this is where Relic's plays become really important. Yeah, because now you can see they've left one player all the way behind, expecting a flank, but True Rippers, I don't think they're going to flank. Agar karega bhi koi, to one tap god maybe on a late flank. So right now, EXO not anticipating this heavy presence that True Rippers have on site. And you can see already ready for a flash peek. But Excali just walks it straight. Come on, Excali. I mean,
he could have done better than this, but Relic, he is on a whole different level at this point. As Master gets the better out of Blackhawk, and Paradox follows it up with Side Dreams. As Wimp, I believe, is the only player surviving. Gets the better out of Paradox with just 10 seconds remaining. Can he clutch it out in a 1v1? Wimp has been doing it, but does not have the best of HPs. And Master, just by the whiskers, he pulls it off. And, well, I mean, this was again a bloodbath right at the A side, and not really technical, but, you know, it is what it is. Yeah, and even in the last 1v2 situation, right? Like I feel for Master. I've been in that situation. The time is running out. Your health is low. You're running around the box. Like, please don't die, teammate. And teammate side mein ghus nahi, but you're dead. Instant, you're like, oh no, what do I do? But of course, he's not me. He's a composed pro player, so he's able to clutch it out. You know, we've got to discuss about it. Was Sai caught with his pants? Was Excali caught with his pants down? Because usually you do not have your Cypher Strappers deployed over there. But good plays coming out, but they're gonna charge in, dash in on towards the C garage, heading towards the C. But Paradox and One Tap God are there just to stop this push, and the dual kills comes in, and there you go. Just as we can see, the round ends. The flash dodge Paradox, the reactions, as soon as he sees that flashpoint coming through, he doesn't fully dodge it, but wo jo आधा second का भी respite उन्हें मिलता है, he's able to get the peak because of that, and I think that's what changed the round. You see it right there, because without that, EXO get a chance to maybe plant the spike, pick up the weapons of One Tap God. Entirely, the round could be different. Yeah, I think they're slowly starting to build it up. But, you know, ये round बहुत ज़्यादा crucial होने वाला है, because this is where EXO, they're on their buys. They've got those heavy armors. And अगर ये round किसी तरीके से उनसे छीन लेते हैं, we've got an KHA ulti pretty early on. It's exciting, you know, the entire prospect of things. And it all has to do with the second pistol round that we had. Right, and he did survive till the end. He did manage to get quite a couple of frags. But now, this is where Team EXO is intending maybe to head around C, because Spike abhi dekhiye, it's still on ground, right? It still isn't decided to go towards a certain area. But is baar dekhiye, Master is trying to get those little bit of informations. Yeah, इस बार Team EXO काफी safe खेल रहे हैं. Of course, खेलना पड़ेगा. This is their buy. And they understand that they cannot afford to have much damage done. At the same time, though, even though True Rippers who anti-eco jeete the, they lost about 2-3 weapons. So they themselves are on a bit of a buy right now. They cannot afford much damage themselves. So both teams you can see being very, very cautious. Of course, EXO ke haath mein, jaisa aapne bataya, that Killjoy lockdown. They've been farming those orbs very, very well, and I think they're headed to A with that lockdown. Oh, they certainly are. But, you know, they've again got to deal with that trap wire, and they pretty much sure know that Relic is playing around the A side. For now, at least. Crosshair also being present. But Paradox being quite open, has that Master to play with, try to, you know, inflict some damage over there. And no result. But again, Paradox this time succeeding. However, Excali reveals a lot out of his body. Knows exactly where Paradox is. He needs to get this pick, but Blackhawk does the honor as the spike gets planted at the nick of time. It's a 4v4 retake coming in from True Reapers, which has started off really well. Oh, Wimp got turret chiming in. Wimp able to get another suddenly. The advantage True Rippers has is disappeared fixes, because you can see 2 players left and they need to retake against a Killjoy and a Breach with all of that Breach's utility. But hold on, stuck right now. Wimp will get the first kill. Blackhawk trying to sneak up, and Crosshair, he gets the trade, but his position revealed. But Blackhawk with the whiff. Oh no! And it's a quad and a defuse. That's gonna hurt. That is definitely gonna hurt. You know, they've won their bonus round as well. And the creds, you know, again, we're talking about Team EXO, those executions, those commitments made inside the side. You know, Excali pushing in. It was so late that they managed to deal with the Paradox until and unless tab tak already rotation aa chuka tha. And you know, Spike plant zarur kiya tha, but still, you know, they put out a fight. Is not enough, and this time True Reapers is certainly having that pure momentum advantage going in for the first time. 8-7 ka scoreline, they've taken the lead inside the game. Economical deficit going on for Team EXO, and they need to fix a lot of things, and they need to do it quick. Yeah, EXO in a very dicey situation. जैसे आपने बताया भी था, that strength of the Cypher really coming into play. They've conditioned them into thinking, बस जाओ ही मत अब A, and that Cypher भी निकल गया उधर A से. Now he's playing for that B and garage control. And
Again, it feels like even on the defensive side, where EXO was being proactive was when True Rippers was feeling uncomfortable. Now that True Rippers are on their own defense, they're like, we don't care if you're proactive, we're just going to wait. But you know, an opening pick for Whip over there on one tap got C-side के तरफ opening मिल चुका है. He was just on that platform, you know, trying to get a little bit over eager and was punished. So now they definitely do have a chance. On defender side, when you sort of lose one player for the attacker, it sort of becomes really easy कि आपके ऊपर push कर जाए. But we're still yet to see that master execute come out of Team EXO, right? Go with the breach fault line. You still have a lot of things to play around. Jet dashing in onto Wirtz's side, but hasn't really been done. But Master getting a pick on towards Blackhawk. These off picks are going to hurt their rotations, but I think their intention heading in towards the seaside. Excali has gone charging in, but Relic is going to buy all the time in the world, but hold on. Excali gets the better out of him. Gets dropped. Paradox with a crucial kill, and now EXO के players अटके हुए, time is running out and Crosshair pushing in. Excali on his lonesome, able to get one kill, dashes away, trying to get a gun or the spike for himself, and the spike he was get, but he's going to get stuck by these launch, and Master doing his best Paradox impression, trying to jump in from the air. Yeah, and could have been, you know, disaster agar, you know, Excali does respond fast head. But then again, you know, crossfire form ho chuka tha, the pressure was already on, you know, there. So Excali did not have a lot of option. But again, you know, this is the point where you've got to see the, you know, aim brilliance coming out of Excali. He's always got that sharpness in him, right? But again, what has really been chaotic is how they've been executing, is how they've been positioning. That has been looking a little off. But इस बार फिर से देखिए standard setups coming in. But Relic, he's gonna play from the B side. He's got his trap wires, but Paradox doing the same thing that you know, Excali did against him. He's gone pretty deep, searching for some information. The question is, when is Sai gonna come out of his cover? Is bar EXO काफी defensive. They have the rolling thunder, and once again the Wimp का lockdown to try and go for it, but electing to wait, and it's not going to benefit them much because, of course, हमें पता है कि True Rippers, they're not very aggressive. They are themselves. They're only aggressive when they know you've committed to a site. And till then, they're just going to wait along. So it has to be EXO to make the first move. And they're trying to do that by taking mid control. But I think this is a fake. Just trying to pull some presence towards mid and then rotate towards ARC. Well, it's going to be interesting. So considering how they've been making those switches, you know, they're not that explosive this time. They're sort of feeling a little bit undermined, right? And now, one tap. All right, he understands that there's someone going to peek around, and he was a lot too in the open, right? Did not have a lot of cover to play around, and Blackhawk, he was right hand punishing him there. Oh, Paradox playing with fire or with grenades, literally, but Excali with the op, I did not notice at the start of the round, an attacking operator working out. EXO, wo jo chaos aapne bataya tha, they eliminate it out of their playbook entirely. They take it slow, and it looks like it might work out flawlessly for them. Never mind. And just about it. But still, a very good round for Team EXO coming out there. And Excali gets the final nail in the coffin, and finally some breathing respites for Team EXO. At these situations, you can never undervalue Team EXO, right? As True Rippers, you got to know that you've got to play it completely sharp. Ek chota sa opening bhi agar milta hai, they're going to capitalize on that. And it all came with you know, the Astra falling down over there. Ab dekhoge, he was right around the center. He could have been on the corners, you know, just to escape at the right moment, because the push did come in, and that is where they got that opening from, and they did not look back after that. Yeah, absolutely right. I think Excali ka operator especially is going to be crucial to them being much slower, of course, now. But Paradox trying to get aggressive with his Blade Storm. Master picks one out, but it's actually Excali that gets Paradox. Now Master with the third is still able to get the pickup. Yeah, but you know, considering abhi jis tarike se situations chal rahe hain, we still have Team EXO trying to sort of head towards the A side. There you go. The talisman has been caught off the wolf, but now two players on A,
And there you have a little bit of information collection. That's just about it. No proactive plays, no pushing. No one's done a lot, and has to do with a lot of the fact that Paradox has been taken out. But Wimp, he's gonna be the one trying to get an entry frag. And there you go. Crosshair gets the better out of Spike him. down A. This is huge of spike drop. Puts back Crosshair with the flash trying to go for the quick peek, but Ghost picks him out. अब उन्हें spike control मिल चुका है, but look at this, all the info in the hand of True Rippers. The flank coming in for 30 one tap god seconds left. बताता है कि EXO is still committed to this A site. The Recon will tell them that two players coming in from short, but Excali with the op just walking in as an entry fragger. Oh my god. Oh, it's disgusting. Blocking sight. It's nasty. And Akele एक ही player बचे हैं True Rippers के. And that's the moment we were starting to feel that, yeah, he's got it. He's got it in the bag. It's not going to be Last difficult. player He's still standing. trying. Has managed to get 2 over there. Now in an interesting 1v1. Goes for the defuse. After half maybe. But no, it's Cali just being the more intelligent one. Denying him that defuse. And Team EXO managed to get one again. But was an expensive one for them. Yeah. As again, True Rippers, they're starting to, you know, kind of gas out maybe right from the very first map. Yeah, and you can like I think, like you said, right, the gas out factor, it really does come through with experience. How much a team's stamina or mentality can remain strong, how motivational the leader can be, and of course, in a team like EXO, it's not just one. You've got players like Wimp, you've got Excali, you've got Sai, all lending their expertise, and once again, you can see desperation coming in from True Rippers, unnecessary pushes, and EXO taking full advantage. Yeah, you know, at this One point they're enemy just punching remaining. bags, right? For EXO, they just want this round to go away. It's called bolte hai na, death round, right? Just come back in stronger next one, and it's 9-8. So now, as the situation stands, it's 10-9, flawless coming in for Team EXO. Next round is going to be important. That sort of dictates where we are heading at. Agar यहाँ पे True Rippers manage to pull this one off, then I think the match is still there. But अगर हार जाते हैं, then they've got that economical deficit sort of setting in. उसके बाद सिर्फ एक और मौका मिलेगा. But this is where Paradox and his operator, it's going to be important कि अपने operator के साथ क्या कमाल दिखाते हैं, right? He's been doing well, 18-14. I think that's a decent score. But I'm pretty sure the man of his caliber can do even better. Yeah, definitely. Right? And I think वहीं पे अब Paradox really needs to step up. He, I'm sure, wants the op for himself. And to get that op, he needs to find some consistency. He's got it for this round, but that's the point. To maintain it, to keep that economy in a stable spot, you need to find the consistency. But already, that first shot missed, the dash is gone. Whereas on the other side, Excali comfortably positioned over A long, allowing his team to be much more open on the map. The biggest difference between EXO and True Rippers, they're willing to let their players go, get some information, not necessarily committing to any part of it. And you know, at this point, well, Vim's position is of course compromised. But देखिए, अभी भी, you know, ideally पहले क्या करते थे? B side पे कुछ ना कुछ traps रखते थे, right? If not that, maybe a nebula, or the stars being there, anything at all, or maybe the trap wire. But this time they've hard shifted their attention towards A. You know, Cypher के trap wires, you've got those astral stars. Even the spy cam, for God's sake, is on the long area. But that is exactly where Team EXO have decided not to hit at, and there you go, a cosmic divide coming in, but gravity pull not doing a lot, not catching anyone, but Wimp, he's been spotted, and now they're not gonna have a lot of trouble in planting the spike. But it's the retake that I'm worried about, because True Rippers, they also have a cosmic divide of their own. ये फिर से जो ओ लॉन्ग प्लांट है कितना उन्हें भाव देगा, because usually we don't see this working out. But look at this, the garage push in, trying to retake, one player detained. Crosshair, you should not be in that position ever, and Paradox also getting caught out. The retake, hope is over before it even starts. Yeah, and you know, still, if they can get the better out of Excali in this one, then maybe anything is possible. But now, you know, they're sort of No playing charges on left. that back foot. They have an information about Excali, but I'm pretty sure he's going to try and change his position. But I think it's just a little too late. And there you have it. Team EXO again walking off with a round. And True Rippers, they're struggling financially over here. And in terms of how they could have been caught
in that cage's ultimate, big questions are supposed to be raised. Definitely, right? Because especially since your entire team is making the call to retake, there's no reason for you to try and take an extra peek up. Shayad hold kar sakte ho angle from a safe spot, but you're never to put yourself at risk. And you can see the call made from Two Rippers to save, of course, that operator, a smart call in the situation, but the situation itself something they should never be in. So we'll see how they're able to rectify this, because this time aggression towards C-Long fixes. You can see Crosshair moving forward with the help of Paradox's cover on the sniper. Yeah, I think now they just it's a gamble, right? They succeed, but Excali exactly knows what's cooking. I believe unhone pair spot kiya, spots the pixel out, will not miss as Paradox goes falling down. But Ghost, he's in pursuit. He wants more. He feels that there's someone checking those hard angles, and Covering it. yeah, oh, almost. So the trades are definitely there, but look at Wimp not having the best of HPs and has the spike. Yeah, and you can see though, Blackhawk left to just delay everyone else. He is drawing attention from two players, and इसी के कारण अभी सारे EXO के players एक ही तरफ बढ़ते हुए, but this time Relic has his entire setup here. You can see the multi-trap wire to stop the Jet from being able to updraft dash in and normally dash in, but the Cypher gets caught out because of a beautiful wall bang from Sai. He knew exactly where he would be. Oh god, 30 seconds left. he just got outplayed over there, and so much for the trap wires in place as the spike has been planted, but they've got a retake, they've got a contest for this one. It's a 4v3 situation. Well, maybe the odds might just be in their favor. They still have the Sky Ultimate just to play around with. The Seekers haven't really been committed, or have they? Yes, they have been, as Blackhawk does not care. He gets one more, followed up by Wimp, and it all comes down to one tap god, who manages to get the better out of Wimp, but Excali just running right at his face with the shotty and secures the final kill as Team EXO. Well, you can see Sai feels it, He's so happy about that nasty headshot, because had that not been connected, CA, maybe, EXO could have been a little bit of a situation there. Yeah, and you get the feeling, Relic, आप कितने भी setups लगा लो, आप कितने भी traps लगा लो, Sai is the true hunter. He knows where everyone is already, And that's a big psychological game. The fact that you have everything ready, they're there, they're going to come in, you're going to get this reward, and then just boom. Before it even happens, Sai's like, no, I read you. And now you wonder, can Two Rippers get out of this hole? Because this is their map choice fixes. Yes, and I was just about getting there, right? We had this discussion. If they win this, Split is going to be favored towards them, but Excali again. At this point, they've certainly given up, right? Yeah. Crosshair making such desperate moves, and that too not followed up by a guiding light or whatsoever. So, kind of a peak like that, it had to be punished, and well, EXO did a fairly decent job at that. Again, talking about the ultimate abilities, you just have Relic with his neural theft. But what is he going to do? He's been silent this entire match, and I must say, CA, EXO has done a fairly good job at keeping the Cypher aloof, right? Yeah. Now, taking a look at things, one tap. He's trying to get a little aggressive, just a little hanky-panky around that C garage. But look at Ghost. He's slowly but surely pressing in onto the seaside. Now, if he can get the opening, if he can get the clearance, then it's game over for Team True Rippers. We'll have to see, because, like you said, it feels like the entire game, True Rippers has not been able to do what they want, and right here too, Excali leading the charge. Oh, that was scary. I thought Ghost might get hit. That's all right. And someone needs to remind True Rippers that they can't save this round. Oh. Things falling down one after the other. The spike just planted out, and it's all down to Relic and well, Master, but he's no more in contention as Ghost gets the final nail in the coffin, ending things with a flawless. Yeah, a beautiful matchup for the side of Team EXO, and good to have you back. Okay. Well. What an incredible start to the day indeed, being showcased from the side of Team EXO. वहाँ पे of course हमने इतने बेहतरीन performances देखे, इतने बेहतरीन clutches देखे. Yeah. But this is just the start to the BO3. Of course यहाँ पे अभी भी opportunity है
for TR to make a comeback, but we shall have to see अगर वो map उनकी तरफ जाएगा कि नहीं. But on the other front, what are your first impressions based on this game? काफी close रहा, काफी ज़्यादा close match रहा. Yeah, you know, starting things off after the half ended, I really felt that this is the point where Team True Rippers are supposed to shine, because they got that cipher, and we've been hearing a lot about Relic, and they did an initial good job in the second pistol rounds. Also, everything was just fine until a point where they started making those silly little mistakes, and EXO started punishing them. I think it all started with one tap being caught off guard in that C Garage situation where he was right out in the open, and they had a lead for the first time in the game, and they just threw it away. Exactly, right. Like you said, it felt like True Rippers were in control of the matchup till they just lost the matchup. And that's the disappointing part, because it shows a clear potential that they could have pushed it all the way through, but that's where the experience factor really comes in. I think what I kept noticing throughout the matchup was that EXO didn't let True Rippers breathe. It was like, play our way or go away. Exactly. It was feeling so choky, right? Both these teams, I'm pretty sure, I think you would also agree with me on that. They were not trying to execute strategies. They were just going after each other. And Excali, it's pretty much evident, from the statistics over here. 24 had to be the one shining up. So the two Jets are coming out there. And again, we've got to consider the fact that Team EXO have been trying out new strats. They've been trying out different compositions. And for the first game, and that too not in their choice of map. They've managed to win it out. Well, things get interesting. Things get real interesting, because जहाँ पे दिन शुरुआत हुआ था तब हम बात कर रहे थे कि well, it could go one way. Now it is definitely looking like it could go either way. जहाँ पे दोनों टीमों ने काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस तो दिखाया है, but वहीं पे अगर TR की बात करें तो yes, there is that small little thing that I want to talk about, which is those aggressive pushes, unnecessary pushes that ended up, resulting in them just faltering down, even though उनके पास में proper opportunities थी to capitalize on the game. But again, economy goes one way when you start losing rounds, and that is something that, of course, nobody can deny from on the front of the game altogether itself. But again, BO3 series है, and अभी तो सिर्फ first game हुई है. Of course, there are 2 more games remaining, and वहाँ पे हमारा map change भी होएगा, so maybe it could be a different altercation that we might see from the next game. What are your thoughts? I mean, I'm starting to ponder, because abhi dekhiye, they're not shying away from trying new strategies, right? Even in the upper bracket, because they know agar haarte bhi hain, they still have the lower brackets to play. So do we anticipate a KO maybe in Split? Oh, it's definitely possible. Ghost himself has played KO on Split for EXO before, but I think what I'm really expecting now is that, again, focus around Excali. All right. Well, we'll see. We shall definitely see. But before we jump in towards that, it is time to talk about, well, of course, TEGC 2021. And यहाँ पे जब आप TEGC 2021 की बात करते हैं, so then there are these brands, these incredible brands that always do come around every single year. And यहीं पे हम शुरुआत करेंगे for the conversation of Predator. Now, Predator लेके आया है i7 10th generation laptop with a perfect non-glare 144Hz screen that is just phenomenal, and जिस तरीके का आपको वहाँ पे गेम प्ले चाहिए exactly वो आपको मिलेगा, because this is best of both worlds. जहाँ पे आप of course ऑफिस में भी काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करिए, this thing is definitely going to be rocking your charts. Along with that, जब आप वहाँ पे गेमिंग की बात करें, so of course you cannot capitalize better than having the best keyboard that you can possibly have. And वहीं पे आती है XPG का ये perfect new addition to the lineup, जहाँ पे हम summon keyboard की बात करते हैं. ये summon keyboard है, this has 100% anti-ghosting keys along with RX Cherry keyboard button, sorry. And again, I mean, there are so many details. That's the best part about these things. There are so many intricate details. जहाँ पे आप एक से दूसरे brand की तरफ बढ़िए, you get the best of the best all across, and that is what TEGC is all about. And उसके साथ ही साथ जहाँ पे move on करते हैं, तो let's move on to ROG का this beautiful Flow X30. Now this is a game changer. यहाँ पे आपको of course best of the both worlds तो जरूर मिल रहा है in terms of the firepower. उसी के साथ में the charging, right? वो हर एक की यही प्रॉब्लम रहती है कि यार लैपटॉप तो मिल गया, लेकिन वो चार्जिंग कैसे होगी? ये लैपटॉप एक ऐसी चीज है जो 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज, easy, done, dusted, no problem at all. उसी के साथ साथ you can just convert this entire thing altogether into a pad. I mean, just so many incredible, beautiful details that are so intricate for you to choose from. And again, these brands are just competing against each other, but to bring you the best in terms of the gaming hardware. With that, we're going to go on a short little break, because यहाँ पे हमारी journey continue रहेगी with the BO3. But before we jump into that, we'll be right back.
player standing. Hello and welcome to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 का 8th edition है यहाँ पे हम TGC का जहाँ पे of course Valorant का game चल रहा है BO3 series is what is going to continue on. एक game खत्म हो चुका है, that was in favor of EXO, but अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि comeback story possible है या नहीं. I'm going to be your host Baur of course, and उसके साथ हमारे पास यहाँ पे on the desk is going to be Pain Fixes and Say joining us. And again the game was phenomenal, yes, लेकिन अब of course जैसे हम बात करते हैं स्प्लिट पे जाने वाला है गेम, सो उसके हिसाब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी फ्रॉम द गेम प्ले दैट वाज शोकेस्ड फ्रॉम दीस टीम्स? I'm pretty sure. I think at this point we're gonna anticipate an Excali raise for sure. What could be a surprise for us is if they go for a KO, like we discussed. True, it is a possibility. लेकिन वहीं पे अगर वो कमबैक स्टोरी की बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में भी तो there is a possibility because again the first 7 rounds in the first game they were just so evenly squared जब तक TR did not just making those random pushes. Exactly right, and I feel like it's all about True Rippers keeping their mental, keeping their identity. The reason I even predicted 2-1 for True Rippers is because I expected them to play their way. ऐसे खेलेंगे, if they try to play EXO's way, then EXO will always come out on top because they are experienced, because they understand how to react against teams like this, and they know, ठीक है, if you're pushing into us, we'll wait. We understand the idea of a win is more important than, like, say, the ego factor of winning that duel. Absolutely. You know, adding on again, it's all about confidence from what we've seen in this game, right? You're starting to feel yourself. We did see, Excali, he's been making those moves and he knows that he's been connecting it. And on the contrary, hasn't really been the same with Paradox, right? He's also been trying to be a little bit aggressive over there. He's trying to get a little proactive, collect those information, but every single time he does that or even tries doing that, Excali is so well prepared. So now coming down to a game like, CA also said in the pre-segments of the first game that this is going to be more about those aim duels, right? Now Team True Rippers, I believe they personally have to find a way out of this Team EXO. They're going to be aggressive again, and I think they're starting on from the attacker side. So right off the bat, we're going to see that surge of aggression from the first round itself. So they've got to do a decent job at dealing with them. If they can manage to do that, I think a slight comeback is possible, but otherwise should be fairly EXO's second one as well. Ooh, okay. Yeah, I'm curious to also see what Sai ends up playing and what kind of comp EXO really runs, because an Astra Viper Sky not out of the question, definitely, but given the fact that, Blackhawk has looked so good on Breach, Excali has looked so good when the focus is around him, do you try to maintain that same identity? Possibly again, because again, अगर आप वो history की बात करें इन players के बारे में, so of course you do know for a fact that Excali will always be amongst one of the top players in that of course kill feed basically, right? On the other front, आप Blackhawk की बात करें, so yeah, there were those particular moments जहाँ पे that dude completely outshone his competition and stood up for the entirety of the team, right? And along with that, of course, Sai is always there to give that X factor in terms of the entire regard. So the entire front of EXO certainly favoring them. लेकिन वहीं पे I have to go back to that conversation where TR is just one of those teams that can showcase that X factor for their sides. With that, we'll move right into the game and find out if that will be the case or not. Oh, let's go! Let's go. So we've got a KO, not with Ghost, but with Sai. But this sort of puts up, where is Ghost going to play around? Are we anticipating a Jet? Because, yeah, Jet sort of becomes really important in a map like Split, You're starting off as attackers, but for defenders, they've got the ball in their court, and is that a Yoru? No, should not be. Should not be. No, definitely not. I think Blackhawk will go, he's arguably one of the best, definitely one of the first Astras to ever become really good on that agent in India. So back to his comfort. Wimp on the Killjoy. Now I want to see, is Ghost going to play Jet? Are they just going to go for the standard comp? Or if Ghost can pick up a Sage here, yes, this is the perfect composition, because अब आपको मिलता है एक मौका where the KO can substitute for a Breach in terms of executes with his flashes, but at the same time you can play slow on defense. You can play for information the way you would play with
with a Sova. If this Yoru gets locked in, I will officially declare this game the best. I mean, considering the chances look slim, and there you have it. But KO picks from both the sides, and we've got Paradox rather playing it. So different sort of a composition coming out. No Sage for Team True Rippers. So it sort of has to put us in this point, at this particular junction, the primary debate, who's going to be the better KO. Out of these two players, these two players have been playing different roles, and now they're gonna have a different style of KO being implemented. So where do you think, are we talking about, about size KO against Paradox's KO? So as you mentioned, very important point that you said that it's going to be very different styles of KO. From Sai, we're going to notice much more of a initiator KO, basically. The way he was meant to be played with the information gathering, with the long-range flashes set up the way he would in his previous games history. So all of those coming in. But for the side of Paradox, especially matching up with that breach, it's all about him being the second duelist. The crosshair, it's like basically putting a Phoenix in this map was split, but that Phoenix can get you information. He can't heal himself. In terms of drafts, I kind of like Team EXO over here in this case. So this is going to be on the ones on attack. Paradox on towards the A side, just around the heaven area. Throws out the knife, but does not get anyone. So taking a look at where Team EXO is headed at, look at Sai. I think the perfect initiation is what they're going to be anticipating, but Crosshair is waiting right for them, and Paradox has made a fast rotation towards the B side, but one tap God does get that opening frag, will also catch offside Dreams, and one after the other, Team EXO, the pieces are falling. Yeah, just beautiful usage of utility combo, but hold on, Ghost and Excali trying to be the duelist combo, move in, create space. They've got a 1-for-1 so far. Crosshair उधर से निकल चुके हैं, इसी के साथ Ghost left on his lonesome, and this is the strength of KO. He's able to provide you support while still being that powerful, almost duelist agent on the hands of someone like Paradox. Now they know that this Astro over there is going to hunt her down, and not a surprise fixes. True Ripper is off to a good start, but it's about the consistency that we have to see. Exactly. Somewhere where they kind of lacked in the first game after having built it up that momentum for themselves. But a good start is consolation for them. And they've got to get as many rounds. They've got to juice out as much as they can from EXO because they're starting off as defenders. Now, mind you, this map is heavily defender-sided, right? Considering how they've been hitting. And the moment Team EXO shift and when the tables are turned, this is where I see the Sage really coming out. And, around the mid, they've got a lot of control, especially around that mail room. But taking a look at how they position, look at Master. We did see him playing on Sova. He was pretty decent. Now he's playing around that A side. He's got that turret on towards the A heaven area, the platform. But the attack is certainly coming in from mid, and Team EXO, they do not seem like stopping at all. But one tap out, he ensures he gets the open and gets the second one as well, followed up by Relic. One enemy remaining. I'm assuming they did not have their utility there, EXO, इसीलिए वो stairs का angle grenade के साथ cover नहीं कर रहे हैं, नहीं तो it's quite weird because usually when you're going in for an aggressive push like that, it's someone usually has the call, the Killjoy or the KO to put in a grenade over there, just deny that angle completely. But hey, it was the eco round for the side of Trippers, once again continuing that great pistol to get a flawless anti-eco, which will mean that now they can go for a full bonus in the third round. Especially on the defense, this is very valuable because this now brings up the very real possibility that Crosshair gets an op in the next round. Yeah, and opting for that, sticking to the light armor sort of indicates at that, right? Now, considering Paradox, he realized, now the opponent is going to be on those rifles. Oh, gets bought out. Ghost in the process, and the spike had also been over there. But वो information उनको अभी तक नहीं मिला है. Look at Crosshair, a little bit out of his own home territory, and he had to be punished for making such moves, right? Look a little bit unconfident, got a flash going out, catches 3 off, but it's a spray and a pray parade out of which he could just get one before getting traded. Yeah, unfortunately, really nice right-click flash there from Paradox, but
Not so great on the spray. This is the downfall of these really good Vandal one-tap players. You know, they're not like us who can just outgun everyone with the Spectre. You give me a Spectre, I'll get a 3k every day over there, man. But with a Van Titan, my problem. But, you know, this is looking enemy good remaining. for Team EXO. They still have the man advantage, but you never know. It could completely go player against standing. them. And Master equalizes the number in a 1v1 with Excali, who's got all the time on Earth to sort of start rotating around the B side. He's 30 got this seconds spike, left. but what Master does have is information about how Excali could rotate, because he knew Excali was in CT. So if the raise was to rotate through Vents, then Master would have noticed it. So now he's got the information. He's gone for the full CT rotate, so he can go Spike for the full planted. flank. And here we'll have to see how Excali really anticipates this. You can see the plant for Garage, but that's where Master is heading. It's going to be decided before it even gets to the spike. Oh, but What? a slap Yeah. right at his face. You know, this is where we were sort of anticipating a Master to get caught off guard, but that was the other way around. And True Rippers Esports, well, they're doing it. A 3-0, and this was a bye coming out of Team EXO, mind you. And this is going to be hurting them a lot now. Even Master, on in terms of economical levels, he's going to build it up, has got a free panel to play around with. Now, you were talking about the operator coming online, and this is the moment we could possibly see. But this is where, again, you know, the synergy that we're talking about, the comms that we're talking about, that is clearly missing from the players of Team EXO. And has certainly also been the same case over with True Rippers as well. But, you know, again, AM battle happening, nothing really out of ordinary here. Yeah, exactly, right? And for the side of True Rippers, even if they don't have those perfect comms, it's okay. But hold on. Why, oh why, Crosshair? So aggressive. Gets caught out with a beautiful headshot, but this time Paradox is not going to miss. See, I'm telling you, man. Spectre say these players now hope they need those really good guns, which... Yeah. And he does it perfectly. The right click again. The strength of the KO and the difference. You can see Paradox very much One aggressive, enemy. like a duelist. And he's getting the job done. A 4K coming out of him, a quad. And True Rippers suddenly feel, you know, new energy surging through their veins, because this is where, you know, they go off in heaven in their own map of choice. They have got players, they've got, you know, one of the best ciphers in India, and he was not able to step up. But, you know, when it was much needed, it's Paradox who's having a really good control over towards that mid side. But, you know, timeless aggression at some point will get punished. And there you have it, you know, Crosshair with that operator. We get to see it really shining, as he's already deployed on that A side, pushing in really deep. But, you know, we've got Blackhawk waiting for him over there. So it's going to be an interesting situation. But one tap God, he's still holding the mid area, especially to the B side. The mail room is going to get contested. From Paradox coming through, the 0 point actually does not get information. अब उन्हें ये नहीं पता है कि दो player vent की तरफ पहुंच चुके हैं, जहाँ पे बाकी दो, the KO and the Killjoy, grouping up to join up with Blackhawk and make this a pincered A execute the first peak. Though Crosshair gets that first off shot on point, and now the alarm bells will start ringing like, hey, I found one player already. The Killjoy lockdown is going down. Be careful, Killjoy. Oh, Wimp gets the better out of him. But Team EXO, they have committed their ultimate, right? And not a lot of information gathered as one tap rotates at the right time. But look at B side. It's been opened 30 up. seconds left. It's going to be an easy plant. And True Rippers, they've been Spike played planted. with. The moment they've realized, but Relic, if he can hold himself up by enough time for his teams to rotate, which they are doing from the back alley, the charge being led by Paradox, he's scouring through the site and just One making enemy sure remaining. every single you know, spot gets checked. And Relic does find the better out of Ghost over there. Just the last player, Wimp, and he falls down as well. So a good intention coming out of Team X was just trying to outplay them. But again, the numbers were there. The players knew which angles to check. And the game suddenly is looking in True Ripper's side from the very start.
Yeah, you can see EXO trying to force the issue once again. The idea was right in that round. The way they faked and went back to the B side, you can see even while the lockdown is going down, the duo of Excali and Ghost, they were still in vents. They go to B. The issue became, though, when they split up in the site. When you're a two-man unit in the site, you have to give respect to your opponents. कि हमेशा आपके opponents एक player को पीछे छोड़ेंगे. They will try and keep one player behind for that information, and without that respect, they get caught off. Now once again, that early 0 point. Oh boy! All right. Oh. What? A plot twist. See, a plot twist is, Reverse what card. we're in for, right? From both these teams. No one wants to back off. And again, it's just head-to-head. These two players, they're just competing against each other to see who's got the better aim. The rounds, they just don't care at this point. And again, you've got Team EXO trying to head towards the B side. One tap. He's got a lot of information to play around with. Can use his flashes, but he's going to take his time. Now, considering the fact that they've been spotted out, this is something that EXO must be feeling, right? Team True Rippers, they're going to be prepared, so they're going to start making a move on towards the A side. But Paradox, he's going a little aggressive over here and has managed to find one. Can he get the second? Yes, he does! And tries to go for the third, but denied. The reactions on Paradox, the way he's able to flick so quick. 30 seconds left. It's just nuts. But right now, 1v2 for Blackhawk fixes, and he's going to run into the hands of one tap. Got a Killjoy covering an entire side, and then a Breach who is so sneaky to cover the other. It's 6-0 for True Rippers, and boy oh boy, for EXO, I have to say, like, this is their map. They need to understand that with their composition, they cannot force the issue ever. They need to try and find opportunities where they can use size KO to maybe shut down Crosshair. Throw that 0 point, deny his dash, and then jump in. Like right here, he doesn't have his dash. But instead, you have a player with a boombot and a player just standing behind him. You can rush that jet as soon as you see it. And they did not do that, right? And, they're just kind of paying off for the mistakes. And it's a 6-0. Now, let's take a look at this from the bigger picture, right? A map for Team EXO. It was supposed to be theirs. And we're looking at them struggle, but a really fast execute coming out of Excali. But Paradox in there getting the first pick, but the trades are definitely on. Master, he's suppressed at this point, and now EXO are making a charge, but Master, he is definitely pulling the cards. And alright, he's got to get the third one as well, as one tap God makes the rotation at the right point. But Excali, he's also going to respond with a 3K of his own now. We're in an interesting 1v1 duel. It's Excali against Relic. The spike yet to be planted. He's been spotted. But no, does not deter Excali as he gets the quad. And finally, EXO open up on the board. Yeah, and that's huge because even this round, ऐसे लग रहा था it would go completely in the hands of True Rippers after some great play by Master. Keeps his location hidden for so long, despite knowing the players that are coming in, able to get so much value. And even then, in the last moment, Relic had the gravity. Well, that was just Excali being Excali, hitting shots that he is not supposed to hit and getting that clutch. But those are the kind of things, Fixes, that can just completely switch the momentum. It can wake up your team, like, bhai, ek nikal liya, abhi baki nikal to do. And at this point, one thing for sure. Now, they've started off finally opening Milan. That all came down to the aggression being shown out of Excali's face, and he is going to repeat that. And they have committed for those ultimate abilities. They've got to make sure that they get that, spike planted off. And now, Team True Rippers, how do they play along with this? They've got 3 ultimates to work around with, and will be a really interesting retake. It's a very interesting decision too, because you can see EXO committed a lot. They committed the KO ultimates, they used all of Excali's ability to get in, and now on the retake, they don't have much to stop. The wall's been taken down, and already one player down. The trade from Saido. And up, you can see they're going to try to get Heaven control and keep the post plant from there. But moving in from the stairs, it's all about this stairs and Heaven fight. If True Rippers get this, they win, but they don't. And it's Excali once again the star. And he is being the star over here as it all comes down to Crosshair, who finds Excali, or rather Ghost. This bands down, but of course, Excali, he's going to make sure he gets the final pick. And
Well, Team EXO, they are climbing back. They're struggling for sure. They're muddied up. But, you know, this is where they start looking really deadly. And now if they can manage to get a third one also out of True Rippers, I think they're kind of going to get the momentum back rolling in their favor. Now, considering how things have been so far, it has always been Paradox being really proactive, had been really delivering for his team. Now, Excali, he does not care about it anymore. He's just hard dashing on towards one side. And this time, you know, he's located around that B area. And Sai just finds one out of nowhere and gets the better out of, Crosshair over there. And the Jet going down early, it's a cause of concern. Yeah, massively too, because ये याद रखना ज़रूरी है कि if EXO are able to continue this momentum, even if they finish this half 8-4, they are very comfortable going into the defense with a Sage, KJ and a KO, especially because they have a raise unlike True Rippers. So right now, True Rippers, they need to push the pedal to the metal. They need to find this momentum in a much better spot for them advantage-wise, because otherwise, look at EXO being so sneaky. With the spike now, they've taken A Heaven control, and the only information the KO gets is the Astra. He doesn't even know that size there. Oh, this is going to be devastating. If Excali Oh boy. can find out Paradox. I mean, at this point, he could have probably knifed him, but does not, or rather, but the spike has fallen down, and its course being taken. But Excali manages to retrieve it, and it's a clean sight for Team EXO. Capitalize, the spike is definitely going to get planted, and True Rippers, they do not have a lot of abilities to play around, at least for the retake. The question is, are they going to contest as Sai? Well, for a Seal Master, he's going to peek in any single moment, and it's getting really exciting over here. Relic's on the flank, but Sai knows. Hold on. I might have cursed Sai knowing right there, because Sai changes his view. Relic can still move in. Sai's actually been taken down. This should be cue for Relic to start running because they need his help. You can see already the trade going down, and Relic, I'm not sure what he is doing. Still waiting on the flank. I guess the call's been made to save the weapon, but once again, True Rippers, जैसे हमने देखा था आखिरी मैच पे, off to a brilliant start, but the moment they get put a stop to, they start fumbling. They start like doubting themselves. Maybe. Yeah, and this retake, I really felt, you know, had Relic opted for a quicker one, a quicker rotation, and the follow-up from their teammates, they could have actually tried to sandwich, because if Relic could have come in, shown himself over there, then the crossfire that was being set up, that could have been, destroyed, because no one was taking care of that. But, you know, those timings were definitely off the charts, and this sort of lack in information, that is definitely going to hurt you. Now, this is a big concern for Team True Rippers. Now, they've went to a really good start, and now they're starting to crumble down again like a cookie. And Excali, he's just going to, do that time and again. Up until the point, they're completely shattered. So the boom bot being deployed, and they know that Excali has pushed in really deep. But what they do not know is about Wimp's positioning. Because now look at this. This time, once again, EXO going back to the initial strategy they adopted, being aggressive with that KO to get garage control. They've put the alarm bot down, and now they're going to control the extremes with their Astra and Killjoy. The turret just to get info, and of course the Astra lurking. Once again, trying to get mid control, but this time, you can see, True Rippers, they've not left mid. Instead, Paradox waiting for an opportunity to right-click flash, and ooh, he misses the shot. But the damage has been dealt. Ghost supposedly needs to heal raise up, and he does exactly the same as Crosshair. He's used out his dash, but Wimp, he's going to punish him. And at the same time, again, mid has sort of opened up. And this is looking so much troublesome for True Rippers, as Excali, he decides to take the swamp route all to the A side. 30 seconds left. Yeah, it's not looking too great right now for True Rippers, and they need to find a way that they're able to stabilize their defense and not go for these aggressive peaks, or if they're going for the aggressive peaks, go for them together, because right now the biggest advantage EXO have is they're continuously not getting punished for the fact that they're walking at the start of the round. They're not proactively using utility, they're not committing anything, instead they're gambling and walking, and they don't get punished. Master does get one kill, but I think that's all it's going to be. Might try to save his weapon, but Excali's spotting out. That's it.
Oh, he does not miss shots like this. And again, so much for Paradox just pushing out around the mid, causing so much chaos. But I think he's been dealt with. Now the one X factor that Team True Rippers had previously entering into the first initial rounds has been taken away from them. Now, they are having their backs against the wall because Team EXO, they have built up that really strong momentum. Heading in again, they've got all their buys up. They look at their economy built up against the likes of True Rippers. Now, ideally, this is again one of those rounds where Team EXO gets one more in their pockets, and it's 6-5. So if they get a 6-6, then this is a victory for Team EXO in terms of how their rounds have gone in, as Crosshair is going to make that ballsy play, and followed up by a flash. Does manage to find one, but could not get the second, as Excali gets 2 down. And there you have it. Team EXO do have that man advantage, which they're looking to capitalize on. Yeah, look at this now. The way Paradox is set up. Oh, this is nice. On the flank can be huge. He's already got 2 kills, but Excali trying to move the situation forward. The spike is stuck on Whip, though he needs to get rid of the trouble Paradox faces, but does he know? Oh yeah, Paradox down now, and just 1v3 in Relic once again left all alone. EXO with the world to take, and perhaps a 5-round win streak, 6-0 down to now maybe 6-5. Yeah, I mean, this was absolutely a good effort by Paradox, again trying to be a little more aggressive. He knew that they are hitting B, and he managed to get one off. But then again, Relic, he did not have a lot of choice. He did not have a lot to play around with, and he had to go pushing in. It was a 1v3 situation. He was denied his weapons, and now you can see Ghost. Now he's starting to feel confident. Yeah. Over the last tournament we did see, he was a new kid on the block, and a lot of hype had been built up around him, and he could not live up to it, right? But a little bit of maturity coming in, and he looks a little bit now more well settled inside the roster. And Team EXO, they've been having some really rough phases lately, but they've been coping up with it. But there is still some a huge window of improvement from what we've seen in terms of how synergistically they can play and execute their strats. But getting back, the final round before we head into the first half and get started with the second, as Crosshair, well, he was just above it, and I think he has been spotted by the turret. So some good positioning, some good usage information coming out from Wim. Thank you, production, for the camera angle. Very, very nice here in Crosshair. He's going to find an angle of his own, gets a really, really good peek, and immediately the thing we were talking about, it's the last round, but at least in the last round, True Rippers backing up, not being unnecessarily aggressive, waiting, and they get the value for that. If only they thought of this a couple rounds before. Yes, that was certainly missing. This is where you would expect your jet to be absolutely everywhere. You were 6-0 up just to throw it away, 6-5. When we were starting to speculate, maybe True Rippers have gotten back to the senses. They mess things up again, and it's just those small little mistakes that they commit and they could never recover from. 30 seconds But left. movements being made over here, and the alarm bot has been triggered, so it's going to be interesting in terms of where exactly Team EXO intends upon hitting, because the spike, look at it, it's sort of heading towards the B area, but so much to be contested, and Master has got to get something out of this situation. Oh, the boom bot Crosshair, that's not a shot you want to miss. He's going to get caught out. Actually, no, that's that. With the shotty able to get the kill through, but Blackhawk and Wim, they get the trades. The time is running out though, and True Rippers will get a win. That was a chaos of a round, and that's not exactly going to give them hope. They'll be happy for the win, but that's the kind of round after which you're in the comms, you're like, wait, who went where? What happened? Who? What? Exactly. This is the moment. This is the part where you're trying to sort of analyze as to what is really happening, but all you can see is just players going after each other. Yeah. And True Rippers managing to steal one out, and it's 7-5 as we head in for the second half. And at this junction, I still must say that it's a good half for Team EXO, considering the start and the way they've recovered. Now they're going to be playing in the comfort zone. For True Rippers, it is absolutely essential that they get their second pistol round, because if they do not, then we are talking about the scores being leveled up and the lead that they've been enjoying for quite some time being stolen away from them.
gonna have to see how True Rippers plan to go about their attack, because once again the power of that Sage KJ is huge, but Excali going for a very aggressive peek, gets caught out by a triple peek himself, and the site opened up for the side of True Rippers right there. Wimp caught out, and I have to note the fact that EXO used their wall in mid quite weird, especially in pistol rounds. You usually see walls being saved for retakes. Yeah, and you know, they're sort of getting hunkered down for that now. Paradox in a good situation, spots outside, but Sai being the better one on the Ghost as Crosshair. He's just playing around the spike over there, and they're yet to take any, you know, really bad peaks. So, you know, True Rippers, they're playing as if their life depends upon it, as One Tap God manages to find the better out of Ghost over here, but not at the best of HPs. One enemy Just want to remaining. try to bait himself out, but there you go, peeking all in tandem, and there you have. So a very important, crucial round for True Rippers, but they've got to do more than this. They've got to keep on pushing. They're going to start testing, you know, Team EXO's limits. So, of course, a good start for True Rippers, and winning the second pistol, it was absolutely crucial. But, you know, we know Team EXO, this is their game, this is their territory. They are here to rule. Now, if they win this map, they're directly going to book their slots for the grand finals over here. We're contesting for 4 lakhs rupees in prize pool as EXO. Sai, he wanted to get some early information off, deploys the knife over there as Paradox. I think he will get an idea as to Ghost, but finds even Excali in the process. They need a reposition because their entire shorty setup now revealed. Excali caught out and Ghost not able to trade. Wimp as well. Like the fact that they have 3 players mid and their players are getting caught out individually does not bode well. One enemy remaining. Flawless. It was a meat grinder. I mean, it was just too easy for Paradox. He was so well prepared, especially. I feel he's been doing a really good job at the KO, right? But this is exactly the same thing it did in the first half also, right? Early on, it was all about Paradox, making those plays, making those pushes out through mid. And this is the same story. But what we would not want is it to be repeating itself. Because at some point, you know, they're going to be conditioned, the players of EXO, and they're going to have the ideal tools to deal with it. And this is exactly the round that we're talking about. Now, True Rippers, to build up the momentum, they've got to take this bonus round. And if they can do, they're going to be hurting Team EXO's economy. And this is where we can start speculating a comeback for the game to go for the third one. Yeah, we have to wonder because there's a bit of drama attached here too, right? Where we went from a 6-0 lead to a 7-5 ending, and you have to wonder, True Rippers, if they're going to keep the momentum going this time. Honestly though, if they get a 6-round win, they'll just win. But right now, the buy round for EXO and Blackhawk, despite the stun holding strong EXO, they make it their own meat grinder this time, Pixels. Yes, they were so well prepared, you know, very coordinated, having the perfect cross, which sort of leaves Relic just to be the last player alive. And boy, oh boy, could not expect much from him. He's been under the weather, really not waking up at the right side of the bed today. And well, I mean, I do not know. Is he looking comfortable with that Astra CA? You know, we've got to talk about this because we've been looking at this lad playing a lot of Sentinels. But you know, when you're given a controller, you've got a job at hand. And has he been delivering? I mean, so far, not really, and you have to start wondering if, like, yes, Relic, I'm sure, is a great Astra player. Like, given the way he plays Cypher too, it suits him, yes. But what I've really lacked from Relic today on both the Cypher and Astra games is the gamble opportunities. Like, many opportunities to lurk that he's not taken, and once again, you can see the decisiveness is what we wanted to see from True Rippers. They do deliver, Sai getting caught out, but the entrance denied to the site. Now, Excali in a bit of trouble, trying to fake the ropes, but Crosshair's like, nah, I'm not going to fall for that. Yeah, and this is a good trap there, you know, being set up. But I think True Rippers were really quick to react as Ghost does get the better out of Paradox. And there's a slight possibility they can get the res up on, and I think that is exactly what they were trying to do. That was a fake revival going into a connection, and True Rippers, they're making it possible with just Blackhawk being alive. We've seen him now playing a lot around the lurks, but this time
Two Rippers were absolutely well prepared. So, the ice wall being deployed over here, sort of, eggs over of the perception that they would be wanting to go around the vents. But that is exactly what, True Rippers knew that EXO was trying to play. So finally, some mind games coming into play. But looks good for True Rippers. Just the question is, when is EXO going to bounce back in? Exactly. All it takes is one round, and in the first half, it was an Excali moment of brilliance. But we have to wonder, right, if that moment of brilliance is not found, say, in this round or the next, is it too late, even if you find that? Because of the lead True Rippers have been able to gain so far, and we'll see how they respond, because right now, very aggressive from the side of EXO. They anticipate Relic being there, but they haven't entirely checked the angles. Instead, going to go for the rotation through sewers. The call has to be made from Relic. Guys, there's someone coming in from sewers, and you can see already Crosshair holding that angle. This could be a disaster for EXO. Oh, this certainly could be. Crosshair just waiting with his Crosshair set. Does not make any mistakes. Gets the better out of Excali, but is unaware about the follow-up. And this is what I was talking about. As Sai dealing with him. And gets one more. This is where EXO... they're starting to get deadly. And this is what we were talking about, the small slip-ups being punished heavily. And True Rippers, it's a 2v4 situation. EXO has all the information in the world, but do they have the right weaponry on them? Just playing around with the Ghost, and the Target giving away his position as one tap bot goes charging in. The site up for grabs, and this is a spike plant potentially we're talking about with the Nano Swarm also being deployed. And True Rippers, they want to make this round happen. They want to get it, because if it slips away, this is bad news. Last player standing. Yeah, absolutely. Sai with his third, and now looking for his fourth. It's actually just going to be Ghost that finishes it off. A thrifty coming in for EXO. We were just wondering when they bounce back, and they do it this round. And yes, great gunplay, sure, but such small key errors from the side of True Rippers, basic decisions, right? It's purely reactive from them, you can notice, because Relic, yes, he gives the information that, hey, there's players coming through sewers. Crosshair gets the kill, but the fact that Relic is not flanking through sewers at the same time, that's question mark number one. If Relic is not flanking, the only reason I can imagine is if they're committing to, say, B site and Relic wants to set up utility and group up. But they're not doing that either. They're still peeking sewers. That lack of communication with what they want to do is not what we expect from True Rippers. 100% agree with you, because that was the point where he should have, situated a backstab, and it could have been a sandwich situation. Could have been game over for Team EXO, but suddenly again, True Rippers giving away that one crucial round, because now, the economy seems to have been stabilized for Team EXO, as True Rippers seem to have been hitting on towards the B side. Again, you've got Ghost waiting for you, but it's going to be Win who's on that leak. Oh, the alarm bot being deployed, the Nano Swarm. It's an absolute binding situation, but back and forth trades, so no harm. It's a 4v4 still. Notice the way Paradox's position is going to be key here. If Paradox gets taken down, the retake's so easy for Team EXO, but if he doesn't, he's going to be that pawn in their side, refusing to let them move away. Now the knife reveals his location. Should not have gone for that, and with that, EXO just in a very, very comfortable spot. Spike down also dropped. Relic in a 1v2. This can be his moment of comeback if he does pull it off. Yeah, this could be his moment of glory, but glory is something that takes a lot of time and patience, which clearly True Rippers have been lacking over here. And again, after a really good start, seems like the boys have been gassing out. And EXO, they're the masters at this. They're the masters at capitalizing on loose situations, and they're doing that. These sort of entries are, unforgivable, right? These sort of situations where True Rippers, they've been cruising around and giving Team EXO. I mean, this round, they still had their buys, but the round before this should not have been theirs. And True Rippers, they do understand that, and now they can hard push maybe around the vents area, but look at Excali. He's having control over it, and so is Sai also present. Weird position for True Rippers right now. They're just walking in. One tap god delivering his name,
getting that one kill, but goes for the immediate trade. Now again, True Ripper's just walking in and not being denied. This is extremely weird from EXO. And once again, that aim duel chaos that we see at the end of the first map, we get to see here. Yeah, it's sort of a replication of what really was happening in Heaven, but just in Split is where we're seeing that pop off as Excali gets the better out of Paradox. Now they've got to play on the retake. Relic has been looking really sharp in this round, but it is all to this one man, Excali. He's proven himself in the past in even the Heaven, and when they had to make a comeback, he did that. But is he going to commit for this? Master not really having the best of HPs, but Excali, he can certainly pull off a surprise. And now, considering he's just going to position himself from the back alleys, looks like he doesn't have an intention in contesting this one and letting this round slip by. I believe it's the economical concern, and the call out is to go for a save. And it's a Thrifty coming in, and Relic, I believe, has to be the MVP heading off inside this round. And, well, sigh of relief for Team True Rippers over here. Yeah, absolutely. I think this round especially important. It was an eco round. Now they can just repeat the same thing except with their ultimates and better weapons. And they get themselves into that match point area, trying to get into that third map. So right now, everything on the line for Team EXO. Excali was able to save one weapon. I think using that money, they are able to get buys for every single player. But very, very aggressive right now. Already off the board, the showstopper being used. Not going to get much damage off of it, but is able to get mid control. They cut them off. Oh, this is so bad. They've committed so much and they've got basically nothing out of it. Just some information as Team True Rippers, they are heading towards the B side. They've got the Nano Swarm out of Wim, which can potentially delay them. But no, look at the change of pace over here as Relic, he's leading the charge. They're sort of striking at A. And Team EXO, they're completely unaware. Now, Sai, he's going to make that rotation in. He's sort of starting to speculate. Have they already taken over the ramp? And, well, to his surprise, well, Team Rippers, they've been a little slow. The Cosmic Divide being committed over here. We haven't seen that quite often in this game, but Sai and Blackhawk, they are making the plays, and Blackhawk gets one more. True Rippers, this is falling apart, and Master still keeping them in contention. It's a 2v3. Blackhawk just plays this round perfectly, gonna get a 4K for himself. His Cosmic Divide to cut himself off, the way he's positioned that, normally you would think that, hey, there are two players at least behind, so there's a bit of fear when you're trying to push an Astra, and the reason it's so good is because it removes all of the attention from the player at screens. So as soon as they start moving in, the player in screens grabs all of the attention, and then Blackhawk is like, hey guys, I'm still here, remember? I put up the Cosmic Divide. It's sort of a resemblance towards Masters Berlin. We did see a similar play. I'm just kind of forgetting with all those grey cells getting old. Redgar? Was it Redgar though? I mean, a pretty similar setup, had this Cosmic Divide and made those plays around. And this is exactly what Team EXO needed. Now they are playing on the knife's edge, right? But True Rippers, they're just going to dash in, falling off to Ghost, who managed to get one, and that's a TK. They cannot certainly afford that. CA. It's all falling apart for True Rippers as the last player. He's alive. One tap god. He's going to hit a lot more than those one taps. And What? Oh, I'm done. Oh boy, Excali. Okay, we just saw that, and it was. Let's pretend we never did. That's what Excali is going to be hoping for. He's going to be hoping, please observe का camera मेरे पे नहीं होना चाहिए था, stream पे वो नहीं जाना चाहिए था. Mouse problems, hey. Mouse problems. I'm sure. He's had that in Heaven. He had to test that out, and I think he was doing the same. And at this point, with a Vandal just jumping around, this man has the cojones to try and do something like that. But this time, pushing on towards a typical classic Excali, and gets the result as Team EXO, they are finally staging a comeback. Yeah, and True Rippers just
not having the discipline to use their utility. Once again, giving free peeks when it's just not necessary. You have your knife from the KO to get information. You have flashes from the KO. Well, you know, forget all that. You have a breach in your composition to set yourself up. But this is the desperation that we saw them falling down in Haven 2. But hold on, one tap got finding some hope back, but still 4v3 and Blackhawk uncontested. Yeah, you know, the trades are still coming though, but you know, EXO does have that extra man advantage. Now, they have gone in for the Astral Divider, but look at Wimp on the backstab. And it's just going to come down to the last player, Relic. He's got the spike, but you know, against Sai and Blackhawk, it's going to be a rather daunting task, but he's going to make those big brain plays. Goes across mid towards Vent, but we do have 30 the seconds players left. being situated. It's going to be Blackhawk who's going to wait for him at B, but to his surprise, the spike gets planted at A. And now this is it. You know, if Relic can get that initial pick over on towards Sai, then that could be helpful, but no, as Sai just reading the situation out pretty well, and they've just thrown it away. Exactly, just playing it smartly over there. Sai knows that if he just comes all the way back, it only has to cover the sewers angle because his teammate has already covered the extreme other end of the map, and therefore the only way Relic could come is through mid. So just you know, using all the information. I'm sure he plays a lot of a specific Mafia type of game. Yeah. But right now, 11-11 on the score line, and here we see True Ripper's economy broken fixes after such a big lead in both the halves. You know, see, it surprised me. Were we expecting this? Yeah. It's just the last match reeling. It's a reel, Yeah, exactly. right in front of our eyes, and it's just in a different map course. And True Rippers, so close yet so far. And at this point, 11 each for both these teams. This has to be a really crucial round, especially for True Rippers, as you know, they're fighting for that upper bracket final trophy here as they go dashing in onto its B side, making sure they've got everything a check. But no, Wimp is there taking down Paradox. Relic is there for the comeback as Sai and Wimp, they're just clearing everyone out as Excali follows from the backline. So does Blackhawk, and Excali seals the final nail in the coffin. It's 11-12. Team EXO, they have done it, it seems, because even economically, True Rippers, they're demolished. Yeah, and I have to say, like, to answer your question, while I won't say I'm expecting this from True Rippers because, like, that would make me feel bad for them, but I will say I'm not surprised, right? After that first map and all of the expectations that even after 6-0, when you're not sure that they're going to win, that's when you know that there's a basic root problem where the players are just not able to maintain that same mental throughout the game. And I think that's been the biggest difference here, where we found a consistency from EXO. Even if they make mistakes, they make it together. See, one thing for sure, the players are sort of leveled up in terms of how they're taking their shots, right? Yeah. We're seeing frags from either of the sides. It all has got to come down to the mental prowess, like you said, where I really feel that Team EXO were, you know, a lot of steps ahead, because True Rippers, they've got the momentum, they're doing everything right, and one slip up, that's where they entirely go falling down. But this is where Team EXO, you know, they're on their match point, and True Rippers, they're intending to enter onto the B side, and, you know, makes a lot of sense. But Wimp, he's just waiting, he's given the call-outs. Look at the rotations coming in from the back alley as Excali, he is making his way, but Ghost is just being patient than ever as... Alright, Paradox, it's not being spotted yet. Now it does. Yeah, Ghost is playing that perfectly. The funniest thing about this entire match is that we've not seen a single revive through all of it. Normally, I would think that the team that hasn't revived would lose, but no. True Rippers be like, you do not need to revive yourselves. Just that is enough. But hold on, Crosshair able to create a lot of space. One tap God getting it back, but Excali able to use that small corner from their Cosmic Divide to himself and just doing it perfectly now. He's going to get caught out by the Killjoy utility, but countering that with Sai's utility, it's a 2v1 and quite comfortable for them. Should be, ideally,
because Sai still has a flash to play around with. The question is, how does he get about it? And he's going to definitely check. He does spot out the barrel, is going to make no mistakes in getting the final kill. And that being said, it's a GG, well played for Team EXO as they've managed to make their way inside the final. So finally, after having such a tough time, for Team EXO personally as a team, right? They were not getting that much of success, and Sai seems to have shown off. And the secret to Excali's success, it's the Hajmola, and precisely the Amchur flavor. Yeah. It's called choking. It's basically the choking point. That is what was being showcased from Excali's side, right? So, yeah. And that is something that TR sadly were not able to capitalize upon. And again, I mean, it was game was looking really dominated from their side. And ऐसा लग रहा था कि for a moment it could be a comeback story जो हम पहले बात कर रहे थे pre-game में. But in the final few moments, I mean, you pointed it out perfectly, Sai. It was just the team not being able to create or rather maintain that mental prowess that was just not able to capitalize. And yeah, GG indeed. On the other front, it is going to be Team EXO, जो of course आगे बढ़ती हुई towards the grand final, जो of course हमें देखने को मिलेंगे. लेकिन अभी के लिए, of course, we do have one more lower bracket match जो होने वाला है. पर उससे पहले हम उसके बारे में बात करें. Let's recap this entire game. What are you going to say about the first? I mean, the first round itself, the way it was played from TR, it was just bang on perfection. We could just skip the analyst segment. We could just play the previous analyst segment of the Heaven. That was pretty much the same case, right? Yep. And it was just in a different map, like we've already discussed. Right. It all came down to the mental strength of Team True Rippers. This is where the lack of experience was clearly visible, and Team EXO, they made it. Then they made it felt. Of course, True Rippers choked. Yeah, and the BM King is back, guys. Of course, Excali. Haven't seen him BMing in a while, I will say, but this innovative form of BM, it's something I appreciate. It creates the banter, but rightfully, man, MVP back to back. Yeah, and I think with the same set of kills that he even had in the Heaven game, a replication, I said that, Lakshay. So again, Team EXO, they're looking really confident. But again, we've got to keep this in mind. This is not going to be the same story when they go up, whom they rather go up against the finals with. Ideally, it's going to be favored towards Enigma. Now, Team EXO seem to have gotten away with what they were trying. I do not know, because it was just coming down to the aim duels. But in the grand finals, it's definitely going to get heated up. Most certainly, no two ways about it. And again, cast के time पे आप दोनों ने बताया भी है that again 4 lakh is on the line. 4 लाख रुपए on the line है. Of course, अभी के लिए we will find out कि कौन सी वो second team होगी जो grand finals के अंदर जाती हुई. लेकिन अभी के लिए हमें ये पता चल गया Team EXO definitely is going to be contesting for that spot. And on the other front, well, first game of the day does come to an end. लेकिन अभी जैसा हमने बताया एक और BO3 बचा हुआ है लो ब्रैकेट का, एंड वहां से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे निकलने वाली है. एंड दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी शोकेस्ड फ्रॉम द ब्रैकेट इटसेल्फ, जहां पे हमें देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स एनिग्मा गेमिंग जो होने वाली है हमारे लो ब्रैकेट के अंदर. उनके अगेंस्ट वी विल सी द टीम ऑफ ट्रू रिपर ई-स्पोर्ट्स, एंड फ्रॉम दैट गेम वी शैल फाइनली फाइंड आउट which team will it be जो हम कल देखेंगे against Team EXO for that 2 lakh rupee contestation. I mean, at this point, we're sort of in that kind of a junction, where we sort of feel what the result is, but we just do not want to be too pressing, right? Because Enigma, of course, being one of the stronger teams over here, they're on a next different level high after beating Global Esports yesterday in a different tournament altogether. So the confidence definitely does, speak. Right, and there've been certain changes, right? Having the right pieces that they found in terms of getting Antidote inside the roster with RVK, who was really having a very good spell at Force One, and then eventually leaving that and joining this org. He's been making a lot of waves here. Yeah, absolutely. And now with YB coming in as the coach as well, it's like the org is at its peak, ready to blossom. But we'll have to see, because going against True Rippers, it's not just the fact that they need to win. It's how they win, because this is a True Rippers roster that I don't think can be more wounded. They were in commanding positions and they lost. So just as how high Enigma's confidence is, that's how low True Rippers is going to be.
Yeah, and you know, this sort of forces us again. You know what we're going to be anticipating. We're going to anticipate True Rippers off to a good start, but just to throw it all away. So that has been the primary cause of concern for them, right? They're looking so much in sync. Their shots have been hitting, but in terms of their tacticality, right? Their execution, that certainly has been looking weak. Their drafts, they certainly sort of have been confused as to how they can play things around. But I believe this is exactly what Enigma look to be dominating, and should be an easier one for them. Well, we'll find out. We'll definitely find out जब वो घड़ी आएगी, and we will move on into that BO3, the lower bracket. लेकिन अभी के लिए we have an interview lined up with Sai Dreams from the team EXO, जो of course grand finals के अंदर बढ़ चुकी है, and उसके लिए of course a big congratulations to you and your team, Sai. And अब आपकी क्या expectation रहेगी for the grand finals? What team do you think you will be going up against? I'm not sure if he can hear I us. think he's stunned. You know, he's just elated with his victory, but I think we're just sort of a technical glitch, and we'll be there in a while. But again, gives us enough time. You know, he's being maturing as a player. He's got his spectacles on. Looks really serious. Well, he is. He's definitely a serious dude when it comes to being in game. I mean, इनसे ज़्यादा, yes, इनसे ज़्यादा, true inspiration नहीं हो सकती, because the way he started his journey off and to where he's reached now, it has been phenomenal. A roller coaster ride, of course, for Sai, but for us, it has just been an exhilarating ride, is what I would say. Yeah, I mean, seeing Simmer, knowing him personally, you know, he's come off to our parties. We've been having a really gala time with him, and we've known him as a person inside and both outside the game, and he's a jolly person. But when it comes to his competitiveness, oh boy, you see a completely different Simmer Sethi over there, and who's there to win. But they've been having some weak spells lately, especially in the official tournaments out there. They've got a lot to fix, and I think this is a good way. You know, win the TEGC, have your morals up a bit, and a good start, I must say. Absolutely. It's also about like them finding the right combination for their roster, and I think Sai, like you said, he's always one who takes the loss personally. You know, he takes it to his heart because of how competitive he is, and that's what motivates him to continuously get better. We've seen how much he's changed coming onto the Sova role and playing it really well on Haven without those perfect opportunity that he's able to take out key players. I feel like the map could have been completely different. Yeah, and you know, this is where they were not shying away from trying out different compositions. They had, Course trying out a different role altogether. They've been playing around with Excali, giving him the room and space that they've been providing him for quite some time. Now, this is where we again saw Sai also taking a little bit of a commanding role. He's been there on those flanks. He's been trying to make those proactive plays, and he's delivered. And even when we did see him get on as operator, he's got a few kills over there as well. But you know, this sort of drives me. I wanted to see more out of Blackhawk, considering had there been an icebox there, we definitely could have seen him. I believe he loves to play a KJ in that matchup, and he kind of sort of gets a little aggressive, a little up close and personal, where you've got those roles swapped up. But apart from that, I'm just looking forward to talking to him. Definitely, we'll definitely get that opportunity from the side of Team EXO. लेकिन अभी के लिए फिर से हम एक बार फिर से इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे of course Sai Dreams is waiting on the other end, and congratulations to you, mate. काफी बेहतरीन gameplay आपका दिखा, and of course congratulations for the team as well. But अब मेरे से आपके लिए सिर्फ एक सवाल है, what team do you think कल आप किनके against जाने वाले? है क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जो टिया जिस तरीके से आज खेली है, स्पेशली हेवन तो हमें एक्सपेक्टेड था कि बहुत क्लोज जाने वाला डेफिनेटली, एंड स्पेशली इन स्प्लिट आई वांट टू टॉक अबाउट स्प्लिट की बीइंग एन आईजीएल मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा ड्राफ्ट वो लोग लेने वाले हैं, एंड हम लोग काइंड ऑफ गार्ड कॉट हुए, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टीम कि आफ्टर बीइंग 5-0 डाउन इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल फॉर्टिट्यूड था हमारा कि हमें पता था कि हमें कमबैक कैसे करना है एंड हमें क्या करना है गेम के अंदर एडजस्ट करने के लिए. सो हम बात कर रहे थे, एंड जो मैंने सोचा था गेम के अंदर 5-0 तक that was not working out, but गोपी ने एक अपना इनिशिएटिव लेके he gave me a call and I was like okay let's try it, and it started working out. तो मैंने उसके अंदर पे थोड़ी चीजें चेंज कराई, and I'm very happy कि हमारे फेवर में वर्कआउट हुआ, but वेरी वेल प्लेड टू टीआर. तो एंड एनिग्मा ऑलरेडी एक बहुत अच्छी टीम है, तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है कि मैं एक टीम चूज करूं इसमें. मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, जो टीम कम मिस्टेक्स करेगी वो जीतेगी.
Absolutely, and अगर mistakes की बात करें, so of course you guys definitely proved that you guys are the ones who learn from the mistakes, even though वो 5 rounds आपके against जाते हुए, just being in that mental fortitude was so very important. On the other front, Sai, Fixes, आपका क्या सवाल रहेगा? You know, I think it's going to be pretty straightforward. Simar, आपके तरफ से आज हमने देखा you've tried different roles around host. So, are we going to see more of that in the upcoming events and even in the official ones that are yet to come? Yes, definitely. Basically, हमेशा से मैं ड्यूलिस्ट खेलता हुआ आया था, बट मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि टीम के अंदर जो नीडेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हर प्लेयर को अडेप्ट करना आना ही चाहिए इफ़ यू आर प्लेइंग एट दिस लेवल. तो मैंने भी बस अडेप्ट किया, एंड टीम को जो ज़रूरत थी वो रोल्स मैं भी खेल रहा हूँ. एंड अब फ्यूचर में जो भी एजेंट्स आ रहे हैं, मैं एक थोड़ा लीक भी देता हूँ कि यस, यू विल सी मी ऑन चेम्बर एज वेल. Oh, he said it. Exactly. That was going to be my question. I mean, we've already seen your Sova ka Jalwa, Haven pe dekh liya. Ab KO bhi de diya. Ab Chamber to de hi do. Let me know when that is coming next. Especially with the op, you know. I can see you're still keeping those op skills around, and Chamber is the perfect agent for that. So when are we seeing that? Definitely. So maybe in the finals then. जैसे ही अलाउ हो जाएगा by right in the official tournaments, you'll most probably see me on that. Yep, I was just about to point that out. But indeed, of course, this is just the start. And again, there are so many more tournaments जहाँ पे हम of course Side Dreams को देखेंगे, and that is where we can anticipate इनकी तरफ से वो जलवा. Of course, before we close out, it's been almost a year since we've seen Sai in person. So, he's not made it to Trap House lately, and we're going to ask him, when are you coming up, mate? Soon Fixes, bro. Mostly in January first week. I'm gonna be there. Let's go. Perfect. Let's go. Perfect. We look forward to that side. But again, उसके अलावा, best of luck to the upcoming game जो आपको कल होने वाला Grand Finals, and to your team EXO as well. Thank you so much for tuning in. Thank you, guys. Thank you for having me. Thank you. Well, that was an interesting conversation with जहाँ पे of course party invite भी भेज दिया गया है Pain Fixes की तरफ से यहाँ पे, and that is of course something to look forward to. But उसके अलावा there's something more to look forward to, which is going to be our upcoming game जो lower bracket का BO3 रहेगा, and वहाँ पे आप of course बात कर ही रहे हैं for the Enigma side that team is going to be a sensational one, but we shall see if that will be the case or not. On the other front, as we move on forth, before we talk about that lower segment game, we do have to bring up this special news, which is going to be for you guys who are going to be tuning into the chat, because chat पे अभी आपको दिखेगा एक Amazon store का link, which is going to take you down to the page of Amazon, wherein we have the Zoe Perfect, monitors, gaming monitors set up for you guys, and वहाँ पे आपको best of the best gameplay, of course, you can anticipate from those products, because they will bring up the perfect 240 Hz with dynamic sync, as well as of course 0.5 millisecond का response time. So these are the two models that are available for you. Click करिए वो वाला link, and of course go on through and get that for yourself right away. उसी के साथ साथ यहीं पे हमारी journey खत्म नहीं होती है, because when it comes to TEGC, the products they just keep on coming in, and it's for us gamers, जहाँ पे TEGC की इतनी सारी जो brands है वो combine their efforts together, and उसी के साथ जब आपका gaming product वहाँ पे setup है, तो उसी के साथ आपकी Wi-Fi बहुत ज़रूरी हो जाती है, and this is where we move on to D-Link का R15. Now this is a sensational thing, because अभी तक हमने routers देखे हैं, yes you click it in and it's sorted, but ये एक special चीज़ है, because this has voice activated Alexa as well in it, and this is what will make things that much more interesting. आप router से बात कर रहे हैं. I mean, who would have thought? This is the world that we're living in 2021, and that's not all. Products again, TGC के keep on moving on forth. उसी के साथ साथ we move on to Gigabyte का another gaming monitor, which is going to give you the perfect response time for your awesome gaming experience. But अभी के लिए हम जाएंगे एक छोटे से break पे, after which of course is going to be the lower bracket coming right up. Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained.
Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal, too.
Zycel, and we're your networking ally. Immerse your audience with clearer, richer, and warmer recorded sound. The AM310 is a plug-and-play USB microphone that lets you record high-quality sound for podcasting, streaming, gaming, and more. It's perfect for music performers and live streamers who long for studio-quality sound. Sounds are picked up directly in front of the microphone, delivering detail, full body, and clarity. Welcome to Mike's World Podcast. Today we'll be talking about summer travel. The AM310 has a driver-free plug-and-play design. Simply plug it into a USB port on your Mac or PC, and you're ready to record. You got a charm that's unlike any other. Better yet, the AM310 comes equipped with a mini headphone jack that allows you to either listen to what you're recording in real time or what's playing on your computer, all at the toggle of a switch. It's also great to bundle with AverMedia's video capture devices for streaming, making you a professional content creator. I'm going to show you this natural makeup look. Stream yourself into the spotlight.
Hello and welcome to TEGC, Taiwan Excellence Gaming Cup 2021, 8th edition. 8th edition is where we're at. एक game खत्म हो चुकी है, of course, BO3 upper bracket Valorant का, and now we move on to the lower bracket BO3 once again, जहाँ पे of course हमें देखने को मिलेगी Enigma going against TR. पर उससे पहले, of course, I'm going to be a host Laura, मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं once again Fixes and say, how are you guys feeling right now? Pain Fixes? Yeah. आप green room में बात कर रहे थे that you've been thinking about getting a laptop, yeah? Yeah, I actually was, and I'm confused again because when you have the boys from Taiwan Excellence every single time coming up, right, they come with a wide range of products. Oh, right? yes. I'm confused. Should I go for the ROG one or should I go for the SS one? I mean, this one looks lot sleek, but that one delivers on the performance. This is the beef. This is the beef, Yes. definitely. Because I mean, मैं तो use कर ही रहा हूँ. Now you need to I recommend one I have to to me. definitely recommend this one. I don't know say क्या बोलेंगे because यहाँ पे मेरे पास 240 Hz की screen है. The best thing that I can have along with 30 series RTX. So gaming के लिए तो it's the best thing. More right? than that, The I best can use thing. it for my broadcast. You know, green screen Yes. right away. So this is a dream for any casters or you know you need for the production work in our field of work. I think I'm getting a little bit inclined, but again, you know, the looks on this one sort of trying to just pull me back. And again, I'm at the junction, but I'm confused. Well. But nevertheless, as we move on through, ये हमारी discussion चलती रहेगी. Of course, it is the Taiwan Excellence Gaming Cup, जहाँ पे इतने सारे अलग-अलग products, of course, अलग-अलग brands, all combine themselves together for this every single year. उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं, of course, हमारे brackets की तरफ, जहाँ पे अभी हमने बात करी थी. Upper bracket game is done. But now it is time for the lower bracket game to commence, जहाँ पे जैसा हम बता रहे थे, True Ripper Esports will be going up against Enigma Gaming, and first game से we have gotten the team that is going to be moving on fourth, जो होने वाली है Team EXO, जो कल खेलेंगे BO5 finale. But आज अभी का जो lower bracket है, what are you guys anticipating? True Ripper ने of course काफी interesting gameplay दिखाया था Team EXO के against, लेकिन आप लोग Enigma की भी बात करते in the previous segment. So what should we expect from both these teams against each other? I think we're just expecting a very different style as compared to the पहले game में जो बात किया था was the idea that EXO and True Rippers both aim dependent teams, both momentum dependent teams. Enigma is the opposite. Enigma, like their strongest point throughout their history, even their former roster, has been consistency and stability. So we'll see how that matches up. Well, definitely. उसी के साथ of course let's move on and have a look at the map veto, and map veto of course हम यहाँ पे discuss करेगा कि BO3 के अंदर कौन से वो 3 maps choose करेंगे from these teams. Okay, so I think Ascent is the only surprising one out of here. Of course, Enigma had to pick that one, right? So again, Heaven and Icebox being pretty much standard, दोनों ही games में हम लोग को देखने को मिल रहा है. So we do exactly know what we're going to be expecting out of True Rippers in Heaven, but you know, people have been just too naive, expecting True Reapers to really come back and perform. Right. I mean, unless and until they sort of get mentally collected and calm, it's going to be a very difficult task considering you've got a team like Enigma who's having such a wonderful spell altogether. Absolutely. I mean, Antidote हो गया उनके साथ में पूरी team actually, पूरी team Enigma की is just one of those that is called a synergic performing team. But on the other front again, TR has been warmed up, playing against EXO. I mean, they have been warmed up, but still, aim game पे हम questions ला ही नहीं रहे, right? We know that these lads know how to shoot. Right. The question, however, has been primary the executes, the strategies that they're relying on, which has been missing. I mean, at this point, you got to take a shot, like go 5 duelists, like. I mean, why not? Honestly, why not? It really does throw a spanner into the works of Enigma's game plan, but as you said, right, we didn't really see any strategies. We didn't see particular conditioning. All of this is going to happen for Enigma, and they're going to do it without missing a beat, right? So that's where the question becomes: how exactly do True Rippers adapt to this in their current mental state, and is their current mental state even reset? They had a bit of a break. True. But of course, I mean, that provided, it should definitely be cause for concern for True Ripper indeed, because again, उनको second opportunity मिल रही है एक तरह से, right? And the second opportunity के अंदर उनके पास BO3 है, so they better be able to capitalize upon that. But again and again, you guys keep on bringing up Enigma and the way that team is going to be dominating. So कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि you guys are one-sided conversation is what we're anticipating in the games. I mean, ideally, we would not like to be biased over here, but as no, an not analyst, about you, just asking about the game itself, not for you, but I'm saying जिस तरीके से आप
कर रहे हैं for Enigma, it seemed like a one-sided conversation for the game itself, not necessarily the team. Yeah, I mean, of course, you've got to talk about Enigma being the heavy hitters, right? Right. The roster that you can take a look. I think they've been having some drastic improvements over the last official tournament that we did see them. They've performed very well considering how the odds were stacked against them, going after taking down big guns, like Team EXO, who apparently are waiting for them in the grand finals. I'm pretty sure yahan pe Enigma is supposed to be having a really quick game. Now, questions were definitely there also for EXO because True Rippers, they were relying on those aim duels and aim strats, but EXO, they sort of were not really in sync with their kind of executions that they wanted to do. But agar aise hi khelte rahe, I think Enigma, if they make it to the finals, then this might be an easy one for Enigma. So Enigma, for what we've seen in them in the past, they've been having their highs. We haven't yet seen them on their lows. Right. But this is where, so new changes, new coaches, everything coming into play, I think has been favoring Enigma for the better good. Well, again, I mean, agar hum wo starting day ke agar baat kare, so 3,770 teams participated. That's a lot. That's a big number. And उनके अंदर से हमें यहाँ पे गिनी चुनी teams देखने को मिल रही हैं. And उसके अंदर again the competition, of course, every single game is definitely getting fierce. And of course these teams are here to prove their worth. And उसके साथ में अगर prize pool की भी बात करें, so of course let's take that back to 4 lakh. 4 लाख रुपए हैं यहाँ पे of course, and for the first team जो कल हमें विजेता पता चल जाएगी, they will walk away with 2 lakh rupees. लेकिन अभी के लिए third and fourth को तो guaranteed 50,000 तो मिल ही रहा है, but again that's not what these teams are here for. After having gone through that higher number, all the way down to now select teams, they are here to just prove their worth, and उसके लिए of course इनको capitalize जरूर करना पड़ेगा, and TR is not going to be falling short for that. But easier said than done. उसी के साथ साथ let's move on and have a conversation regarding the maps. जो यहाँ पे maps select किए गए हैं. So starting off, I believe it was Heaven. Yeah. Right? So उसके अंदर क्या expectation रहेगी? Yes, from I think I'm pretty sure Enigma, considering they've got a coach, they've got some extra people to help them out, तो उन्होंने देखा होगा the first matchup of EXO and True Rippers. Then, right. Out of that, we did see how the mistakes were being made by True Rippers. It's all about them starting off well, but at one point, एक छोटी सी गलती, and that's when the nail gets stuck deep in. And that is where we did see EXO staging a comeback, and they've done that again and again. So I think ideally would always be the research story has to be around never let True Rippers have the grip over the game, right? Always keep them confused, try to keep them haywired, so that they wouldn't be able to do much. So I think that would be the ideal strategy if C has to follow it up. I mean, yes, that would be the ideal strat, but I have a little bit of bias here. Okay. Once again, back to Chamber, because Antidote is the opper. Historically, from his previous games, even in his history in Valorant, he has been the opper for every team he's been in. Except this team, which is where he switched fields in his career, started becoming a more senior figure in IGL. That's where he comes in Enigma. And no doubt, Raw Fuel is insane. I'm not going to take him off the Jet or the Orb, but you can have two. You can have Jet and Chamber on the same team. True. And this is where I have a little bit of a different opinion, so as to speak, because from what we heard from Sai in his interview, he did clearly mention, right, all the teams are just holding on to its not picking Chamber unless and until he's just officially announced for the tournaments. So I think teams, considering the mindset that they have, कि जब तक announce नहीं होता, let's stick to our current strategy. When we have the Chamber meta maybe coming in, I'm kind of excited to see how are the teams gonna play around that agent, because when KO had released, it was much late until while we were doing VCC, there were KO was finally introduced. I think for a couple of games. That's just about it. It was not a primary pickup. It was the go-to choice of the Pakistani teams, so as to speak. So it did take a while for KO to really come in, because like we've already discussed here, because Astra, there hasn't been any agent, the new agent that has been as successful as maybe an Astra or maybe an Sky, when its potentials had been out there. But Chamber, I think we're still in that exploring phase. So I'm sort of thinking, because now EXO is, Enigma is looking at the bigger picture. They're looking at EXO, so they need to get there fast. I do want to kind of bring that conversation around to TEGC as well a little bit. So हम यहाँ पे EXO and Chamber की बात कर रहे हैं, right? Now both of them, of course, when Chamber is introduced officially, that'll be a different way that the game is going to be taken over by the teams and the players themselves. Now that again can very well be compared to, well, जो हम यहाँ पे laptops की बात कर रहे थे, right? They all have their own specifications and their abilities, लेकिन in the end, they're all best of the best, right? They're all best of the best. चाहे आप EXO के साथ हो, चाहे आप MSI के साथ में हो,
चाहे आप चेंबर के साथ में हो, चाहे आप असूस के साथ में, it's all the same pretty much. In the end, it's about आपके लिए वो special feel कैसे करवाता है. How comfortable are you going to be with that in the end, right? And that of course is going to be the defining moment जहाँ पे हम बात करेंगे जब चेंबर select होएगा. But अभी के लिए तो of course it is going to be a conversation in the air. You know, see, of course, you know, apart from Chamber, that's something that we are all looking forward to. True. But, you know, I really would want to know, have his expertise. Like, in what sort of a way are we expecting Chamber to be played? It has to be like pseudo duelist, like because of the just strength of that agent, right? But usually you're expecting कि वो lurk करे, like he tries to use his teleport to create presence, like an active lurker at some part of the map. Tell his team, hey, you know what? There's 2 people fighting me here, and then just teleport out there, like peace, and just get on with the game. So I think that's where we get to see him a lot. But for this particular game, I'm excited to see what comp even Enigma brings. Well, with that, let's directly jump into the game itself because the game is live. BO3 lower bracket का यहाँ पे between these 2 teams. All right. So, interesting. We've got RVK on his KJ Raw Fuel going for the jet. Is that an antidote? Sky, yeah. I mean, he looks to be on Astra. Yeah, see, the perfect agent really to be the IGL. You literally control everything over the map and it works well. And since he's been on a full role change and you can see him trying different agents. We've seen him playing Killjoy once in a while, but in this roster, the way it's set up, I think the controller role is the best option for him, especially because we know how RVK a very accomplished Sentinel, Rexy a very accomplished Initiator, and then Hika just becomes that fill role. He's playing the Sky as an Initiator, but more of a pseudo-duelist. You can see him maybe in combinations with RVK or Antidote making plays. You know, coming down to Hika, this lad from Sri Lanka, he had impressed us in the official tournaments that we did cast, and we've seen that little bit of modification from his side, right? He's got a lot of agents in his arsenal. We've seen him spotting a Sage, we have seen him spotting a Raze, now with the Sky, so he definitely offers you know, that on the table, but you know, in response, I think True Rippers not really experimenting with their lineups over there, but ideally, see, how are we expecting the first round to pan out? I mean, expectations-wise, I have to give it to True Rippers. I don't think they've lost a single pistol till now. Yeah. But when it comes to Enigma, I think it's all about Raw Fuel, and I want to see what kind of form we get to see Raw Fuel in. Of course, his camera is off, but I can catch a small peek at him through the camera of RVK, and this player, he sort of put himself in our mouths. He put himself in the conversation forcefully. The impressive part for me, though, was not that. The impressive part was that he kept himself there. He did not fall off, and since then he's proven that, hello, you have to take me seriously. I've done this for months now consistently. Yeah, and I think he's going to do exactly the same over here as well, right? We know he starts getting really deadly Raw Fuel when he gets on that operator, and it's so difficult to stop. So, you know, yeah, I was sort of pondering as to, you know, we were not yet confirmed on what agents were True Rippers going on, and a voice inside my head says that we're going for a repix, right? So, again, I mean, nothing changing from Enigma's perspective, but for True Rippers, do you think against this potential lineup, is there any change that we can expect from their side? Quite unlikely, but I will say if they are to switch, Crosshair can pick up the Breach because after the changes a couple of months back, the Breach interaction with most objects in the game, like the Killjoy turret or the Killjoy lockdown, is really, really strong. But yeah, as we saw in the first map, in the first set today, it is going to be the Sky for Crosshair. So almost mirror composition, simply that Cypher versus Killjoy difference. And it's quite interesting because RVK himself as a player, his first main agent was Cypher. So you have to start wondering, given the fact that we didn't see many lurks from Relic come out, if you're not going to be lurking as a Cypher, why are you playing it? Yeah, and not just that. अगर हमने देखा होगा when they were playing against EXO, especially True Rippers on the defensive side, initially when they started hitting A, they realized कि Cypher यहाँ पे है. उसके बाद EXO were really bang on their predictions
to figure out exactly kahan pe Relic rehne wala. Yeah. So they did a decent job at avoiding him, and every time it just came down to Relic just being the final player alive. We could not see him on those kill boards and not Yeah. getting to fight. Sort of in terms of your FPS games morale, kind of you get those sticky hands where you do not connect your shots. So you start doubting yourself, and we could not see the full potential out of Relic. But maybe things can change this game, where we've got Team Enigma gaming starting off from the attacking side, and True Rippers starting off with the defense. So it's going to be interesting that this time they've got different sort of setups, right? This time the Cypher is playing from the C garage. We've got Master, I believe. Yes, Master is on the A side. He's going to use that recon vault off. But now for Relic, he's dropped his spike. Oh, that's a nice camera. He's going to get a lot of information. They know that any single moment a push might be coming in from the C garage. And yes, it does connect as Raw Fuel just follows it up, taking two over there. But Paradox is there trying to hold things up. Antidote pushing in from the C main. Does manage to find 2 picks over there, and here we go. Heather and Tether, it's just Master against 3 players of Enigma. And immediately you can see the difference in playstyle that True Rippers have to adapt to between Enigma and EXO, right? Like Enigma, so much more precise in their approach. They take garage control, then Antidote peaks. And so he makes sure that he gets a free peak. And that basic difference is where True Rippers, they have to be a lot more decisive. They needed to either push long or take garage right now. Master left on his lonesome. True Rippers may be about to lose their first pistol for the day. Yeah, and this was so coordinated coming out of Team Enigma. They knew exactly what they were doing. This is something I must say that was a little bit amiss from Team EXO, right? This kind of a synergy, they look so much in sync. One thing following the other, one thing leading to the other. Now look at this. Paradox, he was having such a good time, but at the same time, you had Antidote also, pushing in from C-Long, providing that cover fire. So now Enigma has got a really strong start, and this sort of is rattled True Ripper, considering the first game that went off against EXO. They've got their morals down for sure. Yeah, absolutely. And we'll have to see if they are even able to bounce back this next eco round. Paradox casually strolling through, not even a gun in his hand, just gets mowed down by RVK. And RVK is like, thank you very much. I did not get a kill in that last round, so I'll take One it. enemy remaining. Yeah, and Rexy's just there to follow it up. Right, and it all comes down. The one last play. We've got one tap God. He's gonna try putting off something, but no answer. So it's a flawless coming in, and Enigma Gaming, they're having such a good time. A good start is what they expect, and heading into their bonus. Now this is where our True Ripper really need to snatch one off, because again, if they kind of lose the bonus, which Enigma is having, then Enigma is going to have such a good time. But there's really good crafty setups coming out from Relic, but has he been getting enough value out of them? That's the big question. Because even now you can see that B wire setup, but it's where Paradox and Crosshair are pushing from. So it's something that they want to be proactive, I guess, taking that leaf from EXO's playbook, but it doesn't necessarily give them as much value, because now you can see Enigma are just playing their game. They're like, we're going to go together, we're going to take it step by step. They pick up a kill, now they get A side for free, and they make sure to mark their exits as well. And that's where Enigma covering every single angle, it becomes hard for True Rippers to force the chaos in which they thrive. Oh, but Crosshair, that's a good pick, and this might be a start for something good. Spike planted. Going in for True Rippers, but no. I mean, Enigma, they're just so much in control. They've planted the spike. RBK is coming out. Crosshair completely messing up his spray, and I'm pretty sure RBK is going to punish him for that. And there you have the final player, one tap gone, and it is all in shambles. And Enigma Gaming having a really comfortable start. Yeah, and again, the difference between both of these compositions is that Killjoy versus Cypher. So you have to start wondering if the side of Enigma Gaming is this dominant on attack that Killjoy really comes into power on the defensive half. It's just going to carry over, especially considering the game True Rippers had to go through to even get here. Their confidence at definitely a low, and we'll have to see.
Nice, nice. I believe that's the Z Yeah. graphic. Yeah, it's pretty The cool. Z spray, and yeah, you know, Swarm grenade. if you've got the Mula, might as well get it. But Covering no, it. I think it's gone. We just want to wait out for the stores. But you know, see, coming back to the conversation, ideally it would have been a hit towards the B from Enigma, considering just playing on the SMGs. They didn't shy away from going A, and this time Crosshair does manage to take 2 out of Enigma, and the numbers suddenly have been equalized. And again, considering what True Rippers have invested into the round, they're getting good value. But Paradox trying to show some kind of shenanigans, but it's going to be Relic gets one more. And Hika, a little bit of a slip away, and Tap God will punish him for that. Rexy stuck in a 1v2, made a lot of noise coming out of sewers, so they might think he's rotating. But actually, Rexy is now going to come through long, and both of these players trying to stay together, get each other a gun. But so far, only one of them has it. They need to be careful. They don't get picked off, and that's exactly what they're doing. Very smart from Two Rippers here, staying together, making sure as long as we trade each other, we win this round. Oh, yeah. And this is so crucial. here. Oh, But timing. you know, the timing just 30 seconds falling left. apart. And I think he's going to get a plant though. But the question still remains. Does not have the best of HPs. 49 is what he is at. But is he going to extend? Is he going to try and go for a B, if not C? Does not have the time. Rexy needs to make a call right now. Sees that 10 seconds left. attacker's defender side spawn is empty, checks heaven, and with that he's gonna get the plant through. The plant not for a specific location entirely. I wonder if he has a lineup for that, because it's not exactly an open plant. He could have gone for a more open plant for the CT Hope, but this makes me think that he might just look to come in late from heaven and try to influence it there. But so far, no information. True Rippers get the side back for free, and Rexy just has one shock dart. He can't rely purely on lineups. Yeah, and it's not, you know, even if it connects, it's not going to be a kill confirmed, right? But again, you know, he's got to have some sort of a plan going in, and he makes the wrong-sided peak, and it's a thrifty, much-needed one coming for True Rippers. And this is where you've got to give it to Crosshairs, right? The cojones on this line. You know, you've been beaten up, you're battered, you're bruised, but still not giving up. Yeah. And getting those 2Ks right off the start, you know, sort of boosting your teammates' morale. And one thing followed up the other, and suddenly True Rippers have managed to, you know, take one round away from Enigma. Should have ideally been theirs. Yeah, exactly. And the fact becomes that once that chaos starts, like the way we started getting purely into aim deals towards the long, that's where True Rippers really thrive. It's not like the players of Enigma don't have gun power, it's just that that is True Rippers' strength. So you want to try to avoid giving them that the way EXO did multiple times. So we'll have to see how Enigma does adapt, because unlike the first few rounds, you can see the conditioning really coming into play, where instead of grouping up towards one extreme, they're leaving one person there. So the threat is still there. When you see that one person, maybe there's a group behind. But you know, one tap God, he's been in these situations, he's been caught off. But he's got to make a play over here as Antidote. Oh no. He's coming in really close. Oh, gives away the position, and Antidote, he is going to punish him for that, as Seaside has been opened wide up. Now look at the spike. It's going to take quite some time before it gets over there. Just in time maybe for the retakes to happen. To Rippers, they going to start trying to close in. But Spike yet to get planted. Concealment. Actually finally able to get it down. The Trailblazer from True Rippers gives them some basic initial information, but already the Cosmic Divide set up for Enigma Gaming. They are not leaving any stone unturned. A random shock that gets the kill too. It's just everything that could go right is going right. And yeah, True Rippers, they're in shambles, but Crosshair seems to want to change things, but no, Enigma Gaming not letting them have any sort of momentum at all, and they're all in smiles. They're enjoying at this point, you know, as True Rippers, you know, see it, talk me through it. Now this is something, all he wanted was to get some information, but was he a little too late? Or maybe could have just holstered a weapon. Yeah. That's the decisiveness that we want to see from True Rippers, right? The idea that there's no right decision entirely there. It's about when you make that decision and how you communicate it with your team. Because even if you're making the wrong decision, at least if you try to make it together, you stand a chance. But
hold on. I think what they need to do is ban Phantoms and Vandals for themselves and just play on Sheriffs because they do better every single time. You know, that was a sort of a freebie for Crosshair. He's definitely, you know, hitting the markers, at least in terms of his pure mechanical aim, as Paradox was not that lucky. As Antidote manages to take him down, and they've got some control over onto towards the B side. The Seeker's being committed as Antidote. He's going to take it against Abgot. This time responds in fashion, but Rexy present there for trades. As RVK, he's going to be pushing in through the C garage. Is someone paying attention as he's got control over the C side, but barely misses out on his shots against one tap. Got not for the second time though. And just like that, once again, the entire map open for the side of Enigma Gaming, because every single move that Enigma make is being reacted to by True Rippers. The problem with that approach is that you're always going to be a step behind, and Enigma are always going to be able to dictate the tempo of the game. And because of that, True Rippers never actually get to play till they try to retake. And when they try to retake, the plant is just in an open area and the post plant too strong. Yeah, and now, you know, considering how the situations are, of course, I mean, they're going to collect those information, and True Rippers have got a lot to work around with, but Rexy is changing the tides as he gets one more, a 3K to secure this round as Enigma Gaming. They're looking a little bit, you know, on that lighter side, but towards the end, they sort of get things going in their favor, right? You know, a lot of off picks, RVK getting these sort of openings, and you know, again, this is horrific for True Rippers esports right now. This is definitely not going to help them, especially now, because you can see Enigma, they've settled into a groove. Every few rounds, they seem to be just going back to their defaults, looking for information and then playing on the basis of that. And True Rippers just not able to find any sort of momentum right now. But I do notice Relic starting to get aggressive. This is something we wanted for a while, but oh boy. It's like luck just not helping them at all. RVK was ready for that exact push. And so is RVK again. Just taking down Paradox, 2 players off, and they've got to deal with one tap, which they've done easily. The C and the B side completely just opened up, leaves no choice for Crosshair or Master to try and pull anything. Look at that. You know, they're waiting for that lurk. They've read it perfectly. You know, there's been no movement around the A side, and the only choice that True Rippers at this point have is for a save. Yeah, but how many rounds can you start saving in a row? You can see, in fact, like almost every player has their ultimate too. They are able to deny RVK's weapon, but again, here Enigma will not care. Their economy, I think, is almost at its max already. So their money factor isn't going to be as big an issue for them. And we have to remember, on the defense for True Rippers, Paradox still not able to get an operator. Rounds like these are certainly not going to help his chances of getting one ever. Yeah, and yeah, like you said, right? You need to get the operator online, but well, Master, he's getting some exit frags, a consolation at the very least. You know, just you know, depriving the players of Enigma from their weapons, but still, it's not gonna do anything for them. As it's 6-1, it's not gonna you know, hurt the economy a lot. They still have a lot of creds being built up. And it's just better, right? At a point, they were about to reach the maximum limit. So it's fine. Now for True Rippers, like you said, completely agree with you. But, all right, we've got an Ares in place. We've seen that from the boys from, I think, 100 Thieves a lot. Especially just those spams around the sewers. We've seen those sort of shenanigans. But now, raw fuel. Oh, look at Paradox. He's headed deep on towards the C side, and did he manage to dodge that Trailblazer there? It's really smart from Enigma throughout, though. They noticed that we are getting a ton of pressure and utility being used by the opposite team towards C-Long. You know what? Let's just take the opposite side of the map, and because of that, they get A-side free. But Relic, with that Ares, still being very sneaky. The last time he was this sneaky, he got wall banged. So let's see if he can get something better this time. You do not have a Sai in the other team, but you do have an Antidote to play around with, and has been spammed through the walls again. So, you know, that unlucky run sort of continues for them, but Paradox is still trying to keep his team in contention. He's managed to get one, but in this, 2
2v3 situation. Paradox getting one more, and this time one tap got in. Paradox in tandem. They respond. Now the final player surviving over here. It's going to be so difficult for Hika, but he is going to hard stick it. And well, they've done it. And Enigma, a slight hiccup, and they lose the round. Yeah, Hika hoping that Paradox goes to the peak, but pros don't fake Hika. And as you can see, Paradox certainly a pro. A nice round. He's been certified. Yeah, certified pro. But yeah, a nice round for them. They will be able to get the operator finally online on Paradox, but it still hasn't necessarily helped their economy. Now, Relic should get a weapon from Master. Yes, there we go. But yeah, as you can see, the Enigma boys, they're just flowing in money. Even after these full buys, they have more than enough for a couple more rounds of buys. So here, we're going to have to see how they use the ultimate. So on both sides, you can see the Killjoy ultimate ready. Killjoy ultimate for Enigma, but on both sides, that's Sova ultimate. So I want to see how they trade that Hunter's Fury, if they sort of force True Ripper to never use it by using that lockdown themselves. You know, it's mind games coming into play over here. You know, you just sort of gonna anticipate this round to be really crucial because both the teams are on their bye. They've got their ultimates. Oh, this is some early information coming in from Relic. He knows that there's at least someone, at least the Sky. It's gonna be Hika, and he decides not to press against it. But you know, look at Crosshair. He's done the part. He is headed on towards the Kagi area as Rexy just gets a lot of information, and he gets picked off by Master. And you know, this is the point where TR, they're trying to stage a comeback, but the question is, can they steal this? A huge pick for Rafuel, and look at Antidote. He's on a huge flank, but his flank is revealed by the Sky Seekers. He needs to get that kill. Does exactly that. Before the Seeker reached him, able to pick out Master and then immediately get it through. Brilliant awareness for him, but now you can see a little slow on placing the stars. That's the lack of experience / practice on that particular agent coming through. Game awareness still top notch. Yeah, I mean, the presence, he knew that he had to react quickly, and so he did. But again, you know, you've got a lot of time to play around with, and you can see the spike being rotated towards the seaside. But that is exactly what into the crosshairs of Crosshair himself as Hika falls. And suddenly, Enigma Gaming, they're vulnerable, exposed, naked. As Rafuel from the backlines, he's managed to do that. But he's got to do more than just this one play, as he's going to get caught with his pants down, as one tap will finally finish him off, as True Rippers by the Whiskers, they're somehow still breathing. Yeah, back-to-back rounds now picked up. I don't think he will be able to save the operator over there, but it will mean at least they're able to get a win. However, having said that, Master used his Hunter's Fury this round. I expect Enigma Gaming to just come out aggressively the next round, maybe go for B or go for Ace Sewers with their Killjoy lockdown and just try to get this side down, because you can see once again, economy-wise, because both teams lost almost the same number of weapons, only one extra weapon in the hands of True Rippers. That money situation for Enigma way better than that for True Rippers. You know, it still is, right? After losing a couple of rounds, you know, it's going to hurt them after if they lose this one, though. So, for now, I mean, the Trailblazer coming out, not a lot of information being shared. But, you know, True Rippers, they've been catching up pretty well. So, the gravity will be used over there. Crosshair finding the one out of Rafuel, followed up by Relic with a 2k of his own. And the Siege Fortress has been held strong. Snap God is going to get the final 2 frags, and there you go. Flawless. A rightful response for True Rippers Esports, and Enigma Gaming suddenly seem to have been sweating for the first time. It's weird too that they're not electing to use their ultimates. The Killjoy Lockdown and Cosmic Divide especially are such a brutal combo. It's almost impossible to defend against because it locks down every possible thing. The Lockdown locks the site itself, and the Cosmic Divide ensures that the few exit angles that they might catch you from are not available anymore. But instead, Enigma just trying to walk in and again getting punished, because True Rippers have realized this. True Rippers have realized that this is not a team like EXO that is going to force the issue again and again. We don't need to try and respond immediately. We just need to wait, and this team will walk into our hands every single time because they are very clear with where they want to go. If you see a Trailblazer, that's most likely where Enigma is. Yeah, and you know, even adding up to what you just said, I really feel that
Enigma Gaming, they're kind of wanting to press on towards one thing. They're kind of lacking that creativity because up at after a certain point, you're gonna expect them to be spreading over the map just a little bit. So now, True Rippers, they've done a fantastic job at depleting Enigma's economy, and this is where we was starting to speculate. This is where Antidote has to be a little bit worried about how things are going to work out, and he's been making those changes in terms of his loadouts, right? Now this is the perfect round where I think they're going to be going for the ultimate abilities that you've been talking about. As Master, he's going to deploy a recon dart. Has he got enough information to work around with? Still maintained that anonymity and raw fuel. He's been caught, and so has Master. Exchanging a little bit of information with each other. They should know that the Sova is also here, which gives enough information because rarely do Enigma leave raw fuel on the lurk. He's usually the leading charge. If you picked him out and you know that the Sova is there supporting him, it does mean that usually they're just going to push through this site. And now, with that long and Suez control, a perfect moment to set up the lockdown and move in. And here the question becomes, how clear can True Rippers be with their IGL in their call? The simple call should be to retake, but if they choose to hold, they need to set up good crossfires. You know, that was so much information for True Rippers to just track around with it. And here comes the Seekers, so do the boys from Enigma, as a lot of Nebulas have been deployed. Raw Fuel and RPK getting those opening frags, clearing up the side. Now this is going to be the spike planted, but hold on. Paradox says not so easily, but still not going to stop the plant as they're going to contest the retake. So they're going to use out the ultimate that they have, the Astral Divide coming out from Enigma as the crossfires have been set up. Antidote making sure he gets the one, but Relic in tap god with responses immediately as Relic stepping up, getting that tweak in, also will get the diffuse. Again, wrong calls being made by the team. To trade is the right call for the entire round till you're playing on the post plant in an advantageous situation. You don't need to trade. The crossfire dies, sure. Play for the post plant. It's an open plant. But Rexy there, just reacting a second later. If he wanted to trade, maybe shouldn't have been so far behind and played the crossfires with his teammates in the first place. But since he was in a safe position, the call should have been for the post plant. But yeah, these small decisions getting the better of Enigma and getting True Rippers these rounds, even though at the start of the rounds it looks like Enigma is in perfect control. Yeah, and Enigma, the boys are being given a run for their money. Yeah. Over here by True Rippers Esports, something that we did not expect. We really thought that it's going to be a quickie for Enigma. But no, True Rippers, they're surprising us and everybody. As Master, this time he's going to have his out drone go the other way around Suez as Paradox. He's stage stats. See, he's going to be guarding it all alone because he's going to be not so concerned. Because look at C Garage, it's being well guarded. You've got the spy cam, you've got the trap wires, everything that you need. Now, the vulnerable spot, however, I really found out was B, but no, the team Enigma decided to head on towards the A side where we've got Antidote sort of leading the charge. Oh, so sneaky right here. When that god is on the edge of the site, but Antidote able to pick him off. And I have to say, like, this small interaction, every single round where Anti is able to get punished early and that Astra is gone is where True Rippers look like they can pull through back on the retake. But when Anti manages to stay alive and the Astra is available on the post plant, it seems nigh impossible just the way it is now. The lockdown just for safe measure. Paradox with an insane peak, but I feel like that's just consolation. 2v3 now, both the players completely split apart and Paradox's position known. Yeah, of course, but you know, again, they've got to go in for the retake. They've got to start contesting it. It's the last round of the first half, and they've got to give it their all. And Relic and Milton going to work in tandem as well as Antidote gets the third on board. And Relic, he is definitely looking really sharp, but not enough as the blunt force of Enigma Gaming just too much for True Rippers to handle in that final round of the first half. Sort of a swap coming in for 7-5. And well, it's a surprise for a lot of viewers out there as True Rippers Esports. Finally, this is the kind of a performance that you would expect from a player like Relic, especially you know, when they were sort of playing on the defensive side, you know, being a little bit proactive, being in terms of the frags that he can take. I think he's been really good, and so has been Crosshair. We've got to talk about this lad as well.
Yeah, I have to give props to Crosser because I think we were really missing that solid performance from him in the second map they played where he picked up the jet, and it's almost like both of these players are searching for redemption in this series, and so far they have delivered. We'll see if they're able to carry on this performance in their own attacking half. That proactivity, especially from Relic key, but hold on, just an aggressive rush into sight here. The players flashed, and yeah, I will give that with an okay because they were flashed, but once again, True Rippers showing their strength in these pistols. Yeah, at this point, we know how strong they can get, but RVK, he's been really nasty with all those Sheriff shots, but this time with the Ghost also delivering, but Paradox does not let him, go absolute bonkers as Crosshair losing a rather interesting duel against a Classic. Having a Ghost as Raw Fuel gets them back on board again. Team True Rippers, after a really good start into the second half, they're looking a little bit shaky, but still have the plant on as Enigma is staging a defuse into a 1v1. And Rawfield does not have the best of HPs as Master puts the final nail in the coffin. And True Rippers, they are doing it. Yeah, playing it brilliantly. They're able to get that first round. I honestly started getting a little scared for True Rippers there. Raw Fuel, C-Long, Haven, it gives me some interesting memories to think back of where he is able to 1v5 the round himself. Yeah. So I was like, hey, is this happening? But no, doesn't have the Blade Storm, so maybe when he gets the Blade Storm next time, that might happen. That certainly might. And it was signs of brilliance also are from the boys from True Rippers initially, just deploying that, the shock dart over there just to make sure that they do not have those KJ traps over there for Enigma. So those little reads are definitely going to help them out as Paradox, he just rushes in, spots out the players, Sova, Rexy, a little vulnerable. He's right out of the open, but he's definitely not going to expect Raw Fuel, who in turn punishes him as one tap god and Master. Quick trades as we've got Hitchcock just the last solo player surviving, and Crosshair also makes sure that he's dealt with. And now we're talking about scores being equalized. Yeah. Very, very close matchup here. What started off as looking like Enigma might dominate it all the way through. I believe the scoreline was 5-1. Looks like True Rippers have come back, and you can see perhaps some worry on Enigma's faces right here. But right now, it is going to be that bonus round for True Rippers, not choosing to spend money. Of course, Paradox just relying on his Sheriff, whereas a full buy for the side of Enigma. And this is the decider. In the first bonus, in the first half, it was Enigma able to take a 3-0 lead. And if True Rippers do the same thing, then it might be over. But what was that cross there? What was he thinking? Oh, it's such a shaky start for True Rippers, losing out on your Sky right from the very start. You do need those initiations, you do need those guiding lights. It's all dark and murky out there, but Antidote, an interesting situation with Paradox. He's trying to get some vision. Oh, spots his head out and does not miss. Now 5v3. It's very surprising actually to see Antidote using a non-skin basic Vandal. Very rarely do we see pro players doing that. I mean, your friends have it. Is this a situation where your friend is like, "Bhai, you asked me for skins too many times. No good. I don't want to give skins." Something like what Boaster likes. He likes those vanilla skins, and it is whatever they feel comfortable with. And there you go, Antidote getting a 3 on board, and True Rippers again the same storylines here. Yeah. This time it's just that they had a rough start. They pulled off a good comeback, just to throw it out all from the window, and quite literally. We'll see though, in the next round it will be the buy for True Rippers. This is the true test. As you said, the fear is definitely there for us that they are falling back into old habits, but let's see if they do end up winning this round. It would spell that they are still able to keep it close and even with Enigma Gaming, and trying to do that with a very aggressive setup here. The cage from the side of Relic to enable their Jet Paradox to get through, and immediately they've taken a long A shot. They forced the response from the side of Enigma Gaming to stack up 3 players on this side. This is the perfect opportunity to rotate and leave Relic here, and I love that they're doing exactly that. Yeah, they certainly are, but look at Masters. I think Master is going to try and push in through C Garage.
But, to his really unfortunate situation, you've got that alarm bot. So, they've got to walk in. They are treading in uncharted territory over here. They need more information than that. And, even we can see on the minimap that, the Trailblazer had been deployed. Now, they're sort of trying to push in, this time have the chances around C, trying to get some sort of an opening. But look at the spike. It's still headed towards the A side. It's really important here what they're doing, because in this situation where you have a sentinel lurking for you, what you need to do is create chaos on the other side, but they don't know the discipline the Enigma provides. Of course, with a little bit of gamble. We'll get to that gamble in a second, but this discipline right now ensured that Raw Fuel Rexy is still on side. They're able to shut down the lurk of most players, not Relic just yet, but still 2v3 and Relic at half HP. Yeah, and they do not have a lot of time to work around with. Just 10 seconds on board, and they need to plant the spike. They've done the job, but now they've got a bigger task in defending that. Now Team Enigma pushing in from the link. Relic does spot one out, but it's going to be one-tap God, just evening out the numbers over here as Antidote goes out for a swing and does connect. Now, one-tap God's position has been compromised. It's going to be so crucial for him to act, but Hikka says not this round, buddy, as Antidote will get the defuse and Enigma Gaming start increasing the lead. It's really weird the way both of these teams have gone about their attack, because talking about the gamble I mentioned, right? The reason Enigma is able to maintain two-man strong on both A and C is because B is completely empty. There is no Killjoy utility, there is no player, nothing in this B side, and it's weird because True Rippers are not going there and Enigma did not go there either. Throughout Enigma's attack, B was untouched. Yeah, and that sort of started, me to wonder why. Because this is one of those areas where you've got those SMGs, you can just hard dash, hard try, and do that. You've got even a Cypher to work things around with. You could use those, cages, but, the IGL has some different thoughts, because Relic, he's on some hot form, especially after the collapse in the first game. Has managed to pick off Rexy yet again. And Antidote, considering the fact that he's been spotted off, it's going to be interesting as to how they work this out. The little opening that they've got through the C garage. But Raw Fuel having Inspector. Relic is the only one with a gun, I believe, and it is Bald Cypher because he's used his neural theft. So Bald Cypher coming online. Never mind, just an easier target with that. Just take it away. And all right, so two Rippers have managed to turn the tides in their favor. It's a 3-1 situation, and Enigma, just when you're starting to think that, yeah, they're looking good, you see those resemblances of those mistakes being committed that Exo used to do, and True Rippers has been really prolific in capitalizing on it. And Master getting quite some information out there. Hikka has definitely been compromised. All he's going to do is maybe search for that one head, and then he could go for the next. But the crossfire, it's just too good. Yeah, it's picture perfect. Like, this has to be a mistake from True Rippers to win this round. The flash is there, but as you can see, it's a 1-for-1 because of that crossfire. Hikka cannot physically check both angles at once, and with that, the round picked up. And like you said, I have to give props to Relic. This is the Cypher we were missing in the first set. The aggressiveness, the proactivity, the confidence, really to be like, you know what? I know what I'm doing. I understand how they're playing and I can exploit certain tendencies. Able to do that brilliantly and continue doing that. However, it is still Enigma in the lead. This round going to be key because it is going to be an eco from the side of Enigma Gaming. A chance for True Rippers to equalize it, but they got to make sure they don't take too much damage. They need to build their eco. Yeah, of course. Now that we've got a technical timeout, I believe Hikka has been out of play. Some internet issues in this troubled world that we are in, CS. So now, this gives us enough room and time to talk about, what could be going wrong for Enigma, because they started off with some really good plays, but suddenly they are looking vulnerable, right? This is where True Rippers, now the question remains, they're taking a lot of face-to-face duels with the boys from True Rippers. Yeah. Now, can they avoid that? I mean, definitely yes, right? Even the basic duel you think about last round that started off, Rexy peeking towards A long.
I know for a fact that there is another lineup that you can do from inside that will give you the same information. There is no need to do that unless you want to contest A-Long, which is not a smart decision against a team like True Rippers because that's what they want. They want you to peek, they want you to fight. Yes, sometimes they lose, but most of the times, even if they lose, they have someone in the backup ready to trade. And that trade is more than enough for them because it removes Rexy from the site where he's trying to hold solo, and it removes the information factor from the other team. You know, again, at this point, we're going to start having this debate, right? Both the Jets have been sort of a little off. And why do you think is the case over here? I really think that it's mainly because of the fact that we are lacking that operator from Rafuel once again because of the back and forth rounds, especially on Haven. Both of these Jets are prolific snipers. They rely on their ability to find that first peak, find that first kill. But because it's so back and forth, neither team able to build up the eco to get that op on. And you know, one thing again for True Rippers that I've been liking is we do not know exactly what to expect from them, right? Yeah. They've always been surprising, especially like you said with Relic, you know, leading the charge. He's been getting those entries and he's starting to feel confident. And this is exactly what True Rippers needed. And not just Relic, it's again one tap god also feeling comfortable about himself, followed by Crosshair. So, you know, the players are definitely stepping up in terms of the frags that they're getting. Rafuel, he's still on the board, he's still leading the charts. But again, the Rafuel of Enigma that we sort of have seen has been sort of missing, but maybe this is the round where he proves us wrong. Jet does say, watch this when she pulls out her knife. So we'll watch you certainly, Rafuel. Never mind. We should not have. We should not have watched Yeah, you know, at this point, watch this and watch me die. Watch me go away. As Hiccup somehow trying to get some respite, but I think they've got more than that they can chew. And Relic suddenly, you know, again trying to get the tides in their favor, has managed to do so successfully. And I think they're going to have a successful plant, you know, no hiccups over there, unless and until you've got Antidote trying to pull off a surprising play. It's a team ace, each player getting a piece for themselves. So now this is where, again, things have been leveled up. Now, they are being pushed now. They've got to hit the pedal to the metal now for, you know, starting to gain that lead, to gain that advantage. But boy, oh boy, Enigma surely have been, you know, messing a lot of things up. Yeah, certain key mistakes being made by Enigma Gaming. It was their eco, so we'll give them the benefit of the doubt and hope that now Rafuel's got that operator online, they can change the tide, because now at even Stevens 9-9, it's all about momentum for both of these teams. Momentum, of course, with the economy factor playing in. The team that is able to be slightly more consistent in their wins. You know, win with 4 players alive rather than 1 player alive. That small thing might add up to a win in this map in the end. But hold on, Crosshair, and finally True Rippers getting into the B side. We see some action here. Oh, we certainly do, as Antidote. Well, he's going to be really careful, really wary. And, you know, he's just waiting for the right time. He's waiting for his teammates to start closing in. And the Paradox, he's been denied the entry. The Seeker coming out. Antidote gets dazed as Crosshair is going to follow it up. Gets a 2k of his own, and Rafuel getting one with his operator as Crosshair gets the 3rd one. Now, Team True Rippers, this is where they're starting to shine, as they finally managed to get the spike planted. But is Rafuel going to contest for it? That's the big question. They've left the side open. And Rexy just playing around the A-link. Rafuel gets one. Just evening out the numbers though. Now it's going to be so crucial for Rexy to get one on board. And oh, hide and seek being played as one tap god. Still not revealing his position entirely. And they've not checked it either. Now he's going to go for the defuse. Oh, Rafuel does get taken down, but he's going to hard stick it. No, just removes himself as Rexy gets for a half defuse, gets the head on, and Enigma, such a sigh of relief as they've managed to clutch it out. A huge clutch coming in from Rexy. We talked about that momentum factor. It's really going to play in, because you can see the way this round starts. Crosshair setting them up for success, but really it does come down to the fact that B site much easier to retake in general, and because of that, what True Rippers needed was a moment to try and get out of sight. So very well done by Enigma to take the fights as the take of the B site happened, ensuring that whoever was left behind was stuck in the site itself, and the retake become that much easier for the side of Enigma. Now 10-9.
Once again, the eco is in question because, yes, I do believe True Rippers have the buys this round, but if they lose this at 11-9, they won't have an eco. It grants like a free match point to Enigma Gaming. Yeah, and you know, they've got to make it count this time because this is it. They've been pushing themselves so far. They've made it up until here. But, you know, at some times you've got to break past your limits. And Antidote, oh, he's just been played with as Paradox connects that opener. Not expecting someone to peek as the Trailblazer comes out, and very well done by True Rippers to play that mind game. Once again, trying for that B plant, they get it through, but this time Enigma have the lockdown ready to try and retake. They're going to do exactly that, and the fight becomes in mid, in garden, to try and deny the exit to all these players, and RVK delivering with a double. And Crosshair, he's just been playing out of his mind. And Hiccup in quick response with his Guardian. Can he get something out of here? Yes, he does. As True Ripper Esports, despite the fact that they didn't plant it, they're still defending. It's again back towards Rexy. Can he pull off a play? And yes, he does. Just when Enigma needed him to shine. And all he comes in glory as Team Enigma. Finally being in control of the game. But they are being pushed over here, CA. This is not as easy as they thought. And True Rippers, so far, but not just getting the job done. It has to hurt. Yeah, Rexy with back-to-back clutches. He's going to be feeling another level of confidence, but you can see how much these close rounds are hurting both the teams. The eco situation for True Rippers, they have forced to carry 2 Spectres and 1 Light Shield, whereas for Enigma, it's similarly a couple of Light Shields. So both of the teams right now in a precarious spot, and with Enigma using that lockdown, True Rippers do have that ultra advantage, but they need this round at any cost. Oh, they definitely do. They certainly have to get it. And again, the Trailblazer being followed up by a player entering in. Antidote, does he have information of the same though? The Nebula just guarding him, but not for long, as he's going to get the better out of Paradox. And Team True Rippers are in trouble, and here comes the savior, Relic. Getting those trade-offs, but I believe Hikka's position has been compromised and they're going to flush him out. But RVK is not pushed in through the smoke, and there he goes. Seeker, of course, being destroyed by him. As True Rippers, they're going to be dashing onto its side, but RVK getting the better out of Crosshair, as it looks to be chaotic, as Relic becomes the hero yet again. Can he get a few more? No, says RVK, as he is on fire, getting that quad. RVK literally became a bulldog with his bulldog, mows them down like, whoa, okay, calm down. The entire interaction by RVK is just picture perfect. You can see this player understands his setups to perfection, right? The first Nano Swarm to deny the garage entrance, plays around that to buy time for the flash that came through from True Rippers. The second Nano Swarm to deny them being able to push through that platform area to the position he's in, also gets him the kill on the planter, because the planter doesn't realize that the edge of the Nano Swarm is covering that spot. RVK just showing you exactly why this Killjoy is more regularly used than the Cypher nowadays on this map. Oh, he's an absolute beast just when his team needed up. And he's waked up right from his slumber. We've seen even better days from him. And just in time to save his team. But here comes the Astral Divide. But Rafiu, look at him making those proactive plays. He's going to deny them with the Sky Smoke. And he's going to get not just one, but 2 master in for the trade. But it is a little too late for True Rippers as Relic. The hero survives not for long, as Hikka seals the deal. Huge matchup from Enigma towards the end. That experience factor really paying off. They're able to, despite a close match, keep it consistent, get the win. Oh, absolutely. What a game. What a phenomenal game this has turned out to be in the BO3 series right here between these two. But again, I mean, when the day started off, we were talking about how it is going to be a one-side conversation maybe, but the way TR has actually played, it has to be complimented. Oh, it certainly has to. I mean, every department that was going wrong, that has been sort of rectified, especially Crosshair, One Tap God, and Relic, you know, just waking up. Right. But there's still a few, places where they can, fit, just tighten up the screws a little bit. I would expect to see Paradox stepping up because, again, on the Jet, we haven't seen a lot of influence from his side.
Definitely. I mean, from Paradox's side, that is one conversation too we had. It is so many times that we've seen him just fumble down, so to say, during his gameplay, and that has somehow affected the entirety of the team as well in the lower end of the half. But again, this is a BO3, so of course, only the first game is done, and the first one certainly going in favor of Enigma Gaming right here. Yeah, and I have to give props to Antidote. Throughout the attack, the only, the key figure I remember every single time, it was not Raw Fuel being the entry, it was Anti walking with a gun in his hand as the Astra. I will say I was quite surprising he's not getting punished, but the thing I want to give him props for is the fact that he's playing Astra in the first place even. This is a duelist. This is a guy who recently switched roles. It's only been a few months, but he's already looking super good and comfortable. You know, on that, I think he's just feeling confident. Yeah. I think it has all to be about that, because now when you know that you are going against a team like True Rippers, who have been mechanically challenging a team like Team EXO, and they still, brought the game to the wires. But at this point, you've got a question to Rippers. Why hasn't Ante been punished? Right. And a lot of slip-ups. There was a place where they were actually staging a comeback. Yet again, just throwing it all away. Well. Again, there are 2 more opportunities remaining for these teams. But before we jump into that, it is time to move on along with TEGC 2021's awesome brands. Right here, we're going to be talking about InWin 309 chassis, an incredible feat that has been showcased with a perfect, it's a lifestyle sort of a gameplay which is being showcased from this chassis. I mean, you put this thing in the room and it is just definitely going to light the entire room with its perfect look. I mean, it's right there. Along with that, as we move on across, is going to be the laptop that we were talking about. I mean, I personally was talking about. That is going to be the MSI GE66. Now, this is a true master feat because it has a 10th gen Intel i7 along with, as I had discussed earlier, 240 Hz screen alongside all of that. I mean, a battery that definitely comes with a punch, right? 99-hour battery package, which is going to be available with all of this. Alongside that, of course, we do have the RTX that is definitely going to get your game moving on along, but that's not it. As we move on through from there to the team group, Delta RGB, look at that, DDR4 RAMs right there. That again is a power horse that is so very critical in any gaming equipment, and so along with that, you do need to have that for a smooth finesse gameplay, right? That is all delivered to you from this DDR4 RAM. Alongside all of that, like I was discussing earlier, BO3, 1 game is done, 2 more games still remain. But before we jump into that, we're going to go on a short little break. Be right back.
welcome back to TEGC 8th edition 2021 right here. I'm going to be your host, of course, Blora, as we continue the BO3 series right here in the Valorant segment where one game is done, abhi do aur bache hain, and of course, uske liye, once again, we do have these lovely two people who are going to be taking us through these games, but what are you guys going to be anticipating? Like, first game, TR was almost there on the clutches, trying their level best, lekin Enigma, of course, getting the better half. Now, in the second game, the pressure is definitely going to be there. And do you think TR is going to be able to capitalize on that? I'm gonna let him take it. It's very hard to say It yes because this is the map of Enigma, Right. and I know for a fact this is the map that Anti feels most comfortable IGLing on. Ascent has always been one of his favorite maps, so not just that, right? It's going to be no changes in composition from Enigma. I'm expecting no changes in game plan. So the only thing that can change in this map from the last is True Rippers, and Right. unfortunately they haven't in 3 maps. So that's why it's hard to say yes. You know, again, adding on, right? You've got to talk about the confidence because the mental state that the players are in. I'm pretty sure Enigma, they did sweat, but they did still come through, right? The players, when required, even in terms of their individual prowess, they did perform. They did deliver exactly what Enigma needed. Now, considering, like we said, now we're going to be playing in their playgrounds over here. This is where True Rippers, they're going to be tested. And again, the same storyline. We're talking about it. One team is getting the momentum, the other is making a comeback. But again, True Rippers, when it matters to hold themselves, kind of messing things up. Well, let's find out. Of course, the game is going to be live right here on Ascent, and we do have the picks being selected as of now. Okay, so, I mean, what are we expecting, CA? Anything out of ordinary? The Phoenix for one tap god, yes. I was not expecting the raise at all. The Phoenix makes a lot more sense, and Master likely to pick up the KJ. Please, no. Oh, no. I have to say immediately, like, this does not bode well, because it just, the only way to play this composition is W. And we've seen what happens when you W into Enigma. And you know, they've still not, picked up a single agent. I'm starting to ponder if they've got something else to put on the table at this point, because they're starting to feel comfortable, especially towards CN, when they got back to their senses. But again, this sort of a draft coming out, Crosshair, of course, you've got to have to expect that Sova gets so good, especially in Ascent. And this is where we're going to see a lot of those maybe Odins or Ares on the side, on towards B, though. But again, you've got to start pondering. We were starting to expect Phoenix. Now, this is something teams like Velocity were using a lot, especially Amaterasu. Just up until the official tournament that we had, he switched around the sky and made a huge difference. So, could not really see what Enigma went in for. So, we are in for a surprise. Definitely. And I think we might, hopefully we get a repick over there. I'm assuming Enigma's client had some sort of issue. But that's okay. Like, the composition from True Rippers I'm expecting is not going to change. So we can talk about that. And as you said, the fact is that usually on Ascent, we either get to see Phoenix or we get to see Sky. We rarely get to see the Jet Race combo. It's a very old meta. It's something that, teams like Binks' team play a lot, and it rarely works because it's very obvious with what you're going to do, and it doesn't give you many options. Now, you can see for Enigma, it's going to just be what they had in Haven. Hiccup to pick up that Sky. I would be excited if he picks up the Phoenix, but very, very unlikely. Yeah, I don't think so. He's going to go for it because, I mean, with Sky and, of course, Sova, having those double initiations out there, it gives you that extra punch, especially when you're going to be starting off attacking, right? They want to go all out. And this is where, from True Ripper's perspective, you've got to start wondering as to what the other team is going for. And just a few changes. They're going in for the double duelist. In response to the double initiator. We're still yet to see Rexy picking up the Sova. And yeah, you've got to have a Sova in your lineup, especially when you're playing around Ascent. And so is an Astra has become a really important piece in every Ascent. I think we've seen a lot of teams going for Astra. They haven't been going in for Ascent. For Omen, right? For Omen, we haven't seen a lot of popularity for that agent. It has certainly dropped off.
Yeah, I believe champions pick rate even is 1% for the Omen, 99% for the Astra. So when we say 99.9% times it's Astra, we're not joking. And it's actually that. But as you said, Omen has just fallen off the radar. We've talked about this earlier as well, right? Astra, one of the few new agents that just took the entire meta by storm and just told, like, hey, I am the best controller to be picked. And that's never changed despite many nerfs to her happening. And you can see why. She has a plethora of options available to her, and that's what you want as an esports team. You want more and more options because you can be creative with your setup. But talking about being creative, Fixes, Yeah, RVK. Jet Race combo, how they are going to get in. True Rippers are going to have to get creative. More than that, RVK has been making a lot of noise these days with his reels now. He's certainly, just moving his body a little bit. And I think they're in good control. The boys are feeling really confident. But yeah, I'm also looking forward to it. Jet and Raze. And they're starting off as defenders. So we're going to expect some sort of proactiveness, some sort of aggression right off the bat. And this is exactly what we're going to expect. They've destroyed the turret. And RVK has been compromised, and Relic, he gets himself on board. Like picking up that first kill, and True Rippers, you can see, so aggressive, taking aim in control. They want more, expecting Enigma to be spread out in defaults, and that read is right, but Raw Fuel might have an opportunity to try and catch someone out right here, but instead, Rexy getting caught, and still, like, Enigma think all this pressure on B will go A, but the only reason there's so much pressure on B is because of that Killjoy able to secure the A site entirely. And look at this. I mean, this is a respite for RVK, but Raw Fuel also trading it off. Man-to-man with Paradox just to get traded again by one tap god. Now it's a 3v2 situation. Team Enigma Gaming have successfully managed to get a plant, but look at those health bars on these players. Now, of course, they're trying to find a crossfire. They've got Hiccup just positioned in hell, but I think his position has been compromised. And from the backlines, it's going to be RVK who's going to try and save the day with a pick of his own, as Relic does manage to take down Hiccup in the process. And this is going to be Crosshair. Oh, RVK, the Nano Swarm's coming into play. And can he clutch it out? Yes, he does. And in fashion, getting a quad. And time for some moves, some energy drinks, and Enigma Gaming. I do not know how could they just pull it off. This is absurd. I'm still confused as to why Relic stuck the defuse. There was a Killjoy nade. He was sitting in the Killjoy nade. Maybe the call given by someone, hey, you can pull it off half. Guys, you have to remember, this is not the Viper snake bite. That got nerfed. The Killjoy nade did not get nerfed. It will kill you if you try to stick the defuse through it. In a 2v1 situation, the smarter call would have just been force him together. You have the time, take him off, and then just go for the defuse, or at least wait out the nanostorm. But Enigma once again off to a brilliant start, and RVK especially off to a huge start in this map. Yeah, he's definitely going to get that lockdown pretty soon. And Raw Fuel, he has been dominating the mid area, even spotting out Relic over there. But no damage done, as Rexy does capitalize on Master. It was a little bit overwhelmed, tried to push through the catwalk, and it feels like a walk in the park. And now, talking about Team True Rippers. So one thing we've observed during the pistol round, they were getting way too aggressive, right? They pushed directly onto its B, so giving them a lot of information, catching a lot of players off guard, but still not being able to do after getting such an information advantage. Eyebrows are definitely going to be raised. Yeah, absolutely. It's because it's almost like they played the way they wanted to, but they were still not able to secure an advantageous round, a 2v3 round where the push gave them the value. They got 2 free picks, but not being able to secure the retake, that's going to bring question marks into their own heads. It's going to create self-doubt, and that's exactly the sort of thing that inhibits this team, and we'll see how they're able to avoid it. So now though, on the buy, Enigma, all of them changing up their strategy. The last 2 rounds was about main control. This time fully focused to mid, utilizing the short range battle the Spectre gives you the power. And Raw Fuel, he's just been so good. Oh boy. But Paradox makes sure he has to make those ballsy plays. And one tap god managing to get the better out of RVK just to get traded off, as Hiccup, he's gonna fall in that duel against Paradox, and True Rippers finally getting a round on board. That was much needed for them. Now,
we've seen they're infamous for getting those pistol rounds. Now this one sort of slipped away from them, which could have been completely theirs. And Enigma Gaming had been capitalizing on this momentum heading into this bonus round, and this is where True Rippers had to get something, but they had to pay a heavy price. Just two players surviving, it has to hurt you economically, and there you go. You do see those light armors coming out from these lads. And a Guardian for Relic to boot. So throughout, despite the round win, it's actually Enigma because it was their bonus coming out on top economically. And as you mentioned, Fixes, at this point, for the side of True Rippers, this round now becomes a matter of damaging Enigma as much as Enigma damaged them. So a lot of aggressiveness you can see from the duelists towards A main. They've got that control, but Enigma responding with aggression of their own, taking mid control. But here is where that turret in Pizza is clutch. It tells them they haven't crossed that yet. Oh, now they know. Now they know, but they're not fully committed. Ooh. But those shots coming through the walls, doing some hefty amount of damage to its raw fuel. Oh my god. Barely surviving. He's got to search for Sky. He needs that heal desperately as Antidote. Oh, his position being completely compromised, but has it really been punished? Oh no. Oh, just being saved. But yeah, this is something we were expecting, right? From RVK's side, he had to use that early lockdown. Small part of Heaven not close. I wonder if he has the lineups for the same, or if they're smart enough to just spray it out. Able to get Paradox. They still don't know if there's a player under Heaven. That part was not covered by the lockdown. They gotta make sure they check it. And Tap got to make sure he doesn't peek too early. A one kill for that position is not worth it. They get the trade, and Enigma with that, they get the set. But with just 10 seconds remaining, can they plant? I believe they can do so. Oh, no! It may be denied. And no, all he has to say is survive. But no, Crosshair. He was just in the wrong position. And Team Enigma, by the whiskers, they somehow see the end of this round. And it could have been a completely different story. And yeah, like you said, I completely agree with you. Raze being on that position and just coming out of there with 1k. I mean, he should have gotten for a few more. He should have pushed himself. I think maybe a little trigger control could have helped him there. Unfortunately, the round does go through for Enigma. A strong start like we saw in the first map as well. But we're not to count out True Rippers, of course, because even in the last map, after a 5-1, 6-1 start, they were able to come back. But now Relic getting a little adventurous. It is the eco round. And the adventure will result in mishap. RVK just farming kills it. Oh, look at them! Oh, Rockville still coming out top, but Master pulls off some really redonkulous shots, and there's some unbelievable things happening. And True Rippers, they've always established themselves that they're not really too far apart in terms of their pure raw mechanical aim, right? Yeah. It's always the executes that have been the hindrances for them in trying to seal the victory. Seems like they get gas just out really fast. But again, the clutch maester, RVK, he opens himself up, and Tap God will have to secure this Thrifty. As True Rippers, I mean, they're on the defender side, and they should be the ones leading, taking command over things. But Enigma Gaming, they have restrained them from doing anything of that sort. But this is such a good respite for them. Right there, like a small communication issue for Enigma. I'm not sure whose mistake it is, but either RVK needs to give the call that, hey guys, I just killed the Astra at B main. B main is open and they don't have a controller anymore. We can just force either mid or B. They're not going to have smokes, they're not going to have gravity wells. Or the communication needs to be to the team that, hey, RVK, we are forcing here, so get a little more aggressive on the flank, join us faster. And that's where a small gap does give True Rippers the round, and the economy fixes the operator online on Paradox. He's already found that first blood. This possibly could be a start where True Rippers again start getting the tides in their favor. Paradox slightly dazed, but look at one Tap God. He's changed his position, taken cover under the sheds. Now goes on the highway as Master gets rid out of Anti. Now this is some really good Valorant coming out from the boys, from True Rippers.
as they've got two men deployed onto the mid area. But in terms of how Enigma are doing, they're just way too out in the open and they ought to be punished, and that is exactly what's happening. Enigma getting picked off one by one. Not ideal at all, especially when the other team has the offense. It's going to be a flawless round for True Rippers. But hey, that was the eco for Enigma. And once again, Fixes, this is a very familiar situation for us. Even Stevens on the board and the bye coming up for one of the teams as they try to prevent the other from taking the lead. True Rippers in control so far, but mostly because it's so chaotic. Like Enigma almost playing into the chaos a little bit. Yeah, and you know, again, this is where I'm not looking at Enigma pushing themselves to the limit over here. We have seen better days than what Enigma have been pulling off this game. They're looking a little bit loose in terms of what they're trying to, because look at how the players are positioning themselves. They're going in for those swings. They're right out in the open where you're supposed to maintain that cover, and you can never really undermine the players of True Rippers, because give them that chance and they're going to punish you, just like they're starting to do now. Now, this is where they know finally that the operator is online. I really want to see how are they going to respond to it. Now, the previous round, like you said, was not too much commented, but now they've gone deep. They've gotten those rifles up. But Paradox, his positioning, his opening has to be the one that either makes it or breaks it for True Rippers. Yeah, absolutely. That operator going to be such a significant aspect of these upcoming few rounds, because especially with all of the ultimates available for True Rippers, it's going to just become a question of one of their perhaps biggest weaknesses, which is the execution. So if they're able to, suppose, pick out an Astra or a Killjoy early, deny not just the utility they bring to the table generally, but also the ultimates itself, then they lose that much power. But yeah, as we'll have to see how they're able to use every single thing available to them, every single ultimate to their advantage, not just waste them in a single round. You know, this is the round where they're going to go for their ultis, right? Because they've got 5 stack up. They know that Enigma Gaming, they're sort of a little bit wounded, and if they can dampen the economy in this particular round, it's going to give them that advantage for the next round to come in and play. But taking a look at what Enigma have to offer, they do have the Seekers online. They also have the Hunter's Fury. But how are they going to play it around the 5 ultimates that we're talking about True Rippers having? Now, again, we're seeing that change in pace, right? Sometimes True Rippers, they're getting proactive. Sometimes they're letting Enigma make the first move. But either ways, the players are looking so much in sync than they were against Team EXO. Yeah, just looking a lot more comfortable on Ascent as compared to even Haven in general in the last map, and that's kind of surprising because this is not their map pick, this is the map pick of Enigma Gaming. But talking about changing tendencies, Enigma themselves, so far every round has been about a default or even a 1-4 approach. This time grouping up entirely, perhaps looking to leverage Hika's Seekers to try and get into sight. I mean, it's kind of sort of going to be interesting as to what Enigma are going to be putting on board, because if you can take a look at them, this sort of stacked up around the B side. Now, we've not seen them hitting towards B a lot. Now, this gives enough room for the Sova to be playing around the A. You've got option to be playing around mid, get a lot of information out, from at least a shot or maybe through the gardeners, right? So they've not really pushed True Rippers to their maximum potential yet. True Rippers are comfortable in defending the territory that they've got to hold, but these are the moments where, Raze can cause a lot of havoc. And here we are on with the 7th rounder. Really fast Hunter's Fury being deployed, and Paradox gets the opening pick and is followed up by Crosshair, who manages to find Hika. So the Duelist and the Initiator have been taken off board. And RVK, that was a cheeky one. He can completely dodge through the Outrun over there. Yeah. Just sneaking his way through, just as he is hoping his team does towards this B-main side, because he's created a lot of chaos towards A, pulled the attention of at least 2 more players to himself.
And that does mean now in this B site, it is a 2v2. Now, Antidote, you can see him in the astral plane just setting up his utility. And I believe he's done so towards A. So again, trying to sell the fake that they're all towards A. And it works. Relic caught off guard, taken down, and B side now open for Enigma. But they get more than that. It's kill after kill from 3v5. They made it 3v2 fixes. Oh, this is exactly what they needed, right? Spike Just planted. when when the moment came, they know they had their backs against the wall. They could not have avoided this one. But look at Rexy. He's trying to take his chances against Paradox, who seems to be in good form. But Antidote just being the better one with the triggers. Now it's all down to that KJ. And well, Master, he's making his move, but a perfect crosshair set up. And Crossfire being there, and RVK, he's got a deal with no trouble at all. Sealing the one in the books for Enigma Gaming. RVK, I have to say, has been absolutely phenomenal. Like the lurking power that he has on his Cypher picks, usually he's somehow brought into his Killjoy, right? Right here, you can see it. I really wish he'd knifed him, Yeah, that certainly could have been a moment. But again, you're talking about True Rippers getting a good control and just giving it all away. Exactly, and it's such a familiar situation for us because despite the fact that they were 5v3, they give the round away basically in a matter of seconds, trying to push their lead too much. In 5v3, especially on the defense, you can try to take a step back. Right now though, both of the teams aggressively contesting A main. Hey, look at this Killjoy setup for Master. Just a double Nano Swarm at Garden, and their entire plan is to try and hold A main. All it will take is a single Seeker push from Enigma to break that down, and rightfully so, True Ripper's back up. That was getting scary. Oh, that certainly was. And, the men have, personnel have arrived. And look at the Jet, especially Paradox, the position that he is in. Now, if they're going to be treading through this mid-open area, they might be in for a treat as Paradox gets one, but Antidote trades it right after as Relic will follow it up with a kill of his own. And now they're all caught out in the open, and now every little inch of information being imparted to True Rippers. They've got to expect this push coming in as Relic, he is trying to do a really decent job at defending this one, but Rexy just the better one on the triggers as one tap gets those trades, and back and forth this game goes up until the point every single player out of True Rippers shows their true colors and they grab a team ace. Yeah, 4-4 and a team ace to boot for True Rippers. A great round, and once again coming on the back of those initial movements, this proactiveness that they've been showing in some rounds. Paradox, while all of that action was happening towards A main, sneaking up from B main, getting himself into mid. Even though he gets traded 1-for-1, he reveals the entire positioning of Enigma Gaming to be around that mid area and forces them to invest the Seekers, which did not even get them around. Still True Rippers with 4 ultimates and able to secure that round. I wonder if this will start playing in, especially because now Enigma Gaming, they're in a position where they're almost lacking that creativity. Yeah, exactly. And this is exactly what True Rippers needed in terms of their executions, right? When you're heading in against a match with True Rippers here, this is where, you've got to rely heavily on your aim tools, right? You've got one call from your coach, be strong with your aim. That's it. Now, True Rippers are actually putting Enigma to a test. Now, they're starting to play with their minds a little bit. They are making those really proactive plays. They're going a little aggressive for information, but they're not overextending, something that we did see in the last round. And it paid off heavily for them. And they were right in reading out all those rotations from Enigma, and they were so well prepared. Now, the question lies here, what do Enigma have to do to start outplaying them? But disregarding everything, I still feel Enigma have been doing a really good job at going neck to neck against True Rippers, having a 4 each, especially when you're playing Ascent and you're on the attacking side. Yeah, exactly. And when you consider the compositions too, right? The Jet Race, as strong as it is on the defensive side, is that much weaker on the attacking side. So for Enigma, the second half is really where they look to push their strength. And in this first half, they understand there's not much you can do. The only advantage they have is on post plants.
plants. But getting to post plants itself is much harder when the team is being that aggressive the way True Rippers are. And that's why True Rippers, they need a lead from this half. This round especially going to be crucial because throughout the first map, throughout this map also, we've seen True Rippers gain advantages but never push them to the limit. Yeah, and you know, this is where the players have to sort of step up. And Enigma, they've opted for a rather upgraded Pistols Eco as one tap god. He might just get a little aggressive, and Paradox, his operator, has been given away as Hika will have to punish one tap god, and that was needed. That was much needed. Paradox rotating in through the market. He's gonna gaze in, but RVK, he's been making such a difference, and I think right from round one, he's been such an important aspect to how Team Enigma Gaming have been trying to execute their strats. Yeah, absolutely. Look at this, the way Enigma is structured, very beautiful with the way they've taken control of almost every part of the map. Denying Paradox, taking him down is especially crucial to this because now they can force the pressure onto just one Killjoy. The alarm bot is gone and so are the nanoswarms. The anti just get a little stuck. I'm kind of surprised Master didn't go for the peak there. Scared, I guess, of the rest of Anti's teammates. Yeah, he thought it's going to be a whole horde pushing at him, but well, now at least one player's position had been compromised, just showing his legs a little bit. Alright, Master, he's definitely going to come in. Oh no. They're going to push in random with Crosshair as Hikka deals with one. Tries to go greedy, then trying to break the lockdown over there, but had to be punished for that. As Enigma is just going to let this moment pass. Just wait for the ultimate to get wasted. And there you go. Now they're going to go dashing onto the side. They're going to go in. But look at Rocky. He's so well positioned, but Relic still keeping them in contention. Now in a 1v2, can he do it? He's somehow surviving for the better, but for how long? As there you have it, Raw Fuel doing the needful, and Team Enigma get a much needed breather. There's this small thing, right? Whenever I play Killjoy on Ascent, I have a small rule for myself that I try to tell everyone, but it's when you have your lockdown on defense, save one nanoswarm. There's that tiny part in Binary which you have a lineup to from a very safe spot that if you are using the lockdown, you can see both Raw Fuel and I think another player from Enigma stuck in that Binary spot. That one nanoswarm can change the entire look of the round, especially because if you're playing with the lockdown on retake, you're not really using your nanoswarms to deny them entry. You're willing to give up sight in the first place. It is these small things that can really help True Rippers take it to the next level because you can see the grounds itself are extremely close. Yeah, they're all learning, aren't they? As Paradox just pushes right through mid, gets the better out of RVK. Now the Danger Man has fallen as Paradox. Oh, he gets spotted out, caught in the open, but does not still hesitate in going for that right click. Gets a better out of Rocky, sort of evening out the situation. Now, Team Enigma, they're on the back foot, but look at this. Relic getting greedy, some information, and now the Seekers have been deployed. Now they have an idea as to where they can find Crosshair, and having no trouble in closing things out. And Enigma Gaming, on the attacking side, they're having a lead, and Antidote has a smile that he cannot hide. Yeah, I feel for Paradox. The right click, he's forced into it, and with the recent changes to Jet, it does mean that it no longer refreshes those knives, so did not have anything else on him and just a nice straight picked up, but he's starting to look a little scary. It's almost like he's starting to realize, hey, this first half is important for us, we need to pick it up, but whoa! Antidote on the operator fixes. Wow. Okay, so now this sort of changes a lot of things. This sort of changes the way Team Enigma want to approach the game. So they've been sort of a little bit defensive, waiting for someone maybe to peek through the short area. But some contestations happening around that A main, where you've had Hikka constantly trying to pressure them out. But look at Paradox. He is still as rock. He's not moving. He knows if there's going to be even a small little movement, he has to get the pick. But, alright. Ultimate's being committed from Enigma's side. Is able to spot Relic out. This should be an easy kill picked up as soon as they smoke off Market, but rather instead just going to back up now with the information that Relic and the Raze is here. There you go.
That was really well coordinated, wasn't it? And Team Enigma, they're starting to look good up until the point they had to commit the showstopper, and the Rays finally, making it felt. The presence, but Paradox, like I said, still as a rock. And when it came, he delivered. And it all comes down, falling to the good old man Rexy, who's got that spike, but still has Paradox to deal with. Right on his head. Yeah, easy enough for Paradox. And a crucial round for True Rippers. Now 6-5, an opportunity to at least even things up in this first half, because I promise you, every issue that they are exploiting, that Enigma are facing, for example, the fact that it's getting hard to deal with Paradox's operator, it's going to get twofold, because Enigma at least have some flashes to try and deny, and Enigma at least have some form of aggressive utility like the Seekers they can use. For True Rippers attack, it's just going to be double peek and hope he doesn't dash away. Yeah, and like you said, I completely agree with you, because this is again those semblances that we're going to expect out of Raw Fuel, what Paradox is doing, and at a much larger scale, right? Because we've seen the lad playing really well every single time he comes out with his jet and his operator skills, and he's certainly, not the best in the country, but definitely one of the best jets, arguably. But now heading in, so we are at sort of a place or position where True Rippers, they've had a really good start. Again, having 5 rounds when they were trying to force Enigma into thinking. But Enigma, they're right back in. And if they can have a lead heading into the swap, so this is going to be an absolute nightmare, because, again, we've got to say and give it out to our viewers that this is a little bit, defensive favored. Now, if they can have at least 7 rounds in trade to the 5 that we've got from True Rippers, then they're going to have such a daunting task ahead for them in the second half. They have to be really perfect in terms of their executes, because this is, again, Enigma. I feel they sort of had their 50-60%, if not 100. Yeah, exactly. And that's the part where I feel like it's going to get, as you mentioned, daunting for the side of True Rippers going into the next half. But if they are able to find some sort of, a brilliant round right here, maybe a flawless, maybe a team ace, just to get some sort of confidence flowing in the team, just to get a bit of that self-doubt that might have creeped in, just get rid of that entirely. And then we know for a fact they have the talent. It's just that mental factor that inhibits them once in a while. And this is where, again, we do have some time to talk about Relic, right? He's been, he had been really crafty in the first game of Heaven. He'd been really proactive, but certainly not the case this time. Do you really feel he's comfortable with that Astra? Because you've seen him more than I have, and the statistics speaks otherwise. 4 to 10. Do you think a better agent could have been something that he needed? I mean, I think Astra is good for him, like, objectively. It's just right now, I feel like he's taking too much on himself. Like, I feel like he feels this need to be the team's savior. But, that shot almost landed. But again, back to Relic, right? It's not like the way he was playing Cypher, the freedom with which he had, not seen just yet, but is able to pick up a double. But again, the trades for Enigma are so worth it, because that 2 for 2 gets them the side. Yeah, and this swing should never have happened. They could have stayed in, waited a little bit longer, but look at them just whiffing out the sprays. Master, he's gonna kick himself. Yeah. And now this is the sort of a situation that True Rippers would not want it to have been in at this point. Of course, Crossy can get the better out of Victor. Oh no! Oh no! No! Now this is mentally devastating. Yeah, that's gonna hurt a lot. And you can see the cheeky smiles on Adrenal's face as well. It's just so sly. But as you said, like over there, even for Master, right? He landed the first shot, the headshot on Hika, and then missed everything else. And he's going to be looking at the damage sheet after round. Yeah, and he's going to be like, I am never buying a Phantom in my life ever again. I mean, that has happened to the best of the souls out there, right? Yeah. Everyone must have had that -140 horror.
But again, every weapon does come with its perks and, of course, the fallacies out there. So we've just got to deal with it. It's just like life. But now talking about the situation right now, Enigma Gaming do have a really good command over this game. 7-5, and this pistol round is really important. That's where True Rippers have always showed their true colors. And again, starting off with a bang, it's Paradox getting the first blood. They really need to try and deny these peaks and not give these two True Rippers, because you can see it's their strength and the core of their composition really to press W with every single agent and hope you get some trades. They have got them so far, but Rafiel putting a spanner in the works, gets some kills back and makes it a 2v2. Fake dashes to try to deny the plant, and he's worked so far. Rafiel buying a ton of time, but oh no, the nade. Oh, Rafiel, he just exposed his head. And Master has him pinned down against the wall. As Enigma, they're going to try to come out, but Master this time showing his skills and does find the head. And oh, Rexy with that trade. Now it's a 1v1. Sova. Oh. Ton of damage taken over, just 36 HP on Crosshair, and Rexy knows exactly where he is, strafing along the Transformer, but Crosshair gets that first pick, and I have to wonder, like, at that point, as a Sova, if you're 100% confident and you believe your shock dart has landed, don't you just charge through and like it's small things, but overall, once again, the theme of the round becomes the same thing, Fixes. You give duels to True Rippers, you're most likely going to get into a dicey situation. Yeah, and this is the point where, you've got to start pondering. Why are we playing in their grounds, right? This is your field. You've got to dictate the rules. You've got to command the flow of the game, and Enigma Gaming, they certainly, they do have a lead, but again, there's still rounds. They started off really well. Of course, Paradox did draw the blood, but it was Rafiel trading it off with 2 there. So, definitely questions are supposed to be raised as RVK and Hikka just go charging through the long, and at least one has been taken down. Trying to just bait out someone here. Relic spots out Hikka, and that'll be a free kill picked up for him. A side completely open, but even at 3 HP, Paradox making sure that he does not get taken down. Looks like a comfortable anti-eco for True Rippers right here. Let's see if Paradox dies or not. That's what I want to know at 3 HP. I mean, at this point, Team Enigma Gaming, again, they're trying something out of the box, right? They're trying something out of the box. Having some players just pushed in. They did not have a lot to lose over there. And this is, again, one of those rounds that they can definitely let go. Definitely have it slip. But Rafiel still finding one-time catch. Every single pick is so important. And Relic, he's just practicing his aim. And has been looking sharp, at least for the first game. If not, over here at Ascent. Yeah, even right here, you can see in the second half, these moments where he's looking much better is when he has the freedom to really play his own game. Find the lurks, find the information for his team, and I think that's the most important factor. I'm not sure if it's the team inhibiting him, or more likely it's him inhibiting himself, thinking, I can't make hero plays, I can't really try these things because I am the Astra, I have to be alive. And that can, it's the right mentality, but it can hold a player like Relic back. Oh, look at this, True Rippers, they just don't care. They're pushing in through, they've taken control over the market area. Now this is going to be really crucial. Crossfire that has been set up and spotting out RBK. That was so necessary. That was so crucial in, in terms of how TR really want to play this one out. As, they're still yet to plant the spike though. As Enigma Gaming, where do they go from here? Having the buys and still, losing out. Yeah, opting for the save, I presume, yeah. And a huge round for True Rippers, getting that bonus through, able to secure a couple weapons as well, and it will mean that the eco is going to boom, and more importantly, the impact of raw fuel that we were talking about, that we expected, going to be denied for another round. He's not going to be able to get the operator soon enough. Yeah, that's a cause of concern, and for the players of True Rippers, and rather for Enigma, how could they let that mid area so open? As if no one's just checking it, no one cares, no one bothers. And this is where our True Rippers, they did capitalize, they did find a small opening, and they made sure that they, digged in deep. And here we have them
winning yet another round and gaining an advantage. An 8-7 scoreline, and they've managed to win their bonus. Yeah. True Rippers looking extremely strong right here. They don't even have to invest the money in this round. They're expecting Enigma to be on an eco, but Enigma actually potentially going for a bit of a force buy here. It's not exactly a force buy because if with the money they have, they will still be able to afford Vandals in the next round. But like it is in this round, it will be with Light Shield. So a bit of a gamble here from Enigma trying to go for the hero rifle round. And if they don't get it, it'll give a huge lead to True Rippers. Yeah, and you know, the coveted operator that we've been talking about does not seem to be coming anytime soon for the boys from Enigma, as Antidote just goes out for the swing over there and gets traded. But look at Raw Fuel go in a 1v2 situation. Certainly doable, but the spike, it's dropped right out in the open. Now, unless and until, you know, the players of True Rippers, they have an idea of where he is, you know, they're not going to be taking it. Now, they've gained control over the B side. Now, the call has been given. Now, Raw Fuel, I believe, he's opted to save himself and the weapon. I'll have to see if maybe goes for the hero play after hearing the plant, but quite unlikely given their eco situation, especially coming back. given all of the utility this Killjoy has. Both of the lanes now just shored up. It's going to be very hard for Rafiel to move in, but try he is going to. Has all of his utility, so that at least is some sense of hope right here, but immediately going to get spotted out, damaged and taken down. A team ace for True Rippers as the eco for Enigma is broken. At this point, if they try to go for another eco, they'll be mixed and matched because a couple of their players will be able to afford the buy. So throughout here, you can see Enigma in a very bad position, and rightfully so, their coach being like, okay, we need a pause. Oh, we need a break. I mean, we've just been cutting a lot of slack, and we've been punished for that. And this is the right time, actually, because Enigma, I really felt they were getting really greedy with their buys, right? They had all the chance. You know, they could have gone for a hard save and then gone for an operator pick right off in the next round. But considering the economical situations, this sort of has put me into thinking, when are we going to see that operator come online? And True Rippers, look at that. They've got an Astral Divide. They've got that Hunter's Fury that they've been playing it really proactively in every sort of situations that we have. But Enigma Gaming, they've got that Blade Storm on the Jet, on Raw Fuel. But apart from that, nothing much to play around with. Now, what do you think would be the calls for here? How do Team Enigma get back on board? You have to just go for the eco right here, rely on Raw Fuel's Blade Storm to maybe pull off a miracle. But other than that, you need that eco so you can get the op. But yeah, like you said, another buy. So it will be no op unless they just win back-to-back rounds. And I can understand the call. Be like, guys, stabilize yourself, play it smart. Let's get back-to-back rounds and then stabilize our economy. But it's such a risky call against a team like True Rippers. They feed off of momentum. And that's what they have right now in their hands, that momentum. You know, all they've got to do is, all Enigma needs to do is surprise True Rippers. You know, just break them off from their groove. You know, once they take their mojo away, that is where True Rippers have been the most vulnerable. And that is supposed to be capitalized, something which Team Enigma clearly haven't been doing so far, right? And Hikka is going to let his dogs out as Antidote is holding that held position. It's going to be so crucial for him to, you know, ensure that he gets his men online. And now he's going to pull a few players in. They have that crossfire, but has he been spotted? No, instead he is going for the swing, manages to find one, but Rexy follows him up right after. Another Cosmic Device set up. It's like a house of mirrors right here, except they're not mirrors, they're walls and small spots created, but Raw Fuel finding the perfect timing when both of the Cosmic Device went down to find a pick, which will mean it's 4v2 now, and the healing is well ready, so an easy round for Enigma Gaming. They're going to poke the diffuse and let the peaks come on out, and now pick up the round for themselves. So
you can see this relief in Antidote's face. They knew how crucial that round was, and they get it with the loss of just one weapon. Yeah, and this was so clean, right? And you know, at this point, being True Rippers, you're sort of supposed to anticipate such a kind of a ballsy play out there by Antidote. And the best part is, you know, they were in a good setup position, especially Anti and Rexy. Being in perfect crossfires, if one fails, the other definitely shines. And you know, having that man advantage right off there, this is exactly what they needed to come back right inside the game. Now, again, the big question, the golden question is when we gonna see that operator coming out of raw fuel. But as long as they can get the job done with the ARs that they have, we do not have a lot to complain. But raw fuel, we've got to see if he's going to play a little defensive or he's going to get a little more eager as he gets picked off. But Antidote getting that opening pick. Well, the Astra Dev definitely coming into play as they push in through the garden. But now they've got a lot to defend with. Oh, Paradox denying that support from Hika to isolate Anti and pick up that first kill and open up the side. Now they have to know that there is one player towards A main, but they don't cover appropriately. Crosshair taken down gives Hika those seekers, and he's able to buy a ton of time with that. But look at this, Master trying to rotate through, gonna get caught out by RVK, and now the discipline of Enigma gonna pay off on this 4v2. They're gonna be able to get the flank through, support Hika, and retake the side. Oh yeah, in a 3v2 situation, well, the spike just about to get planted. Look at the positioning from Team Enigma. They're absolutely everywhere, but Crosshair with nasty shots like this just did not look at the right direction after that beautiful pick off. Now, well, Paradox all by his lonesome, his position completely compromised, and Rexy does not even have to sweat in getting that final pick. And well, Enigma finally finding things in tune, and they're going to be leveling up the scores. Yeah, 9-9 on the scoreboard. The eco for True Ripper is likely broken as well after this round. So Enigma in a prime position to secure the lead. And look at this. Silver lining, cherry on the cake. Back-to-back rounds, you've broken your opponent's economy. You know what? Let's get the operator through, finish this game right here. Yes, and this is exactly the little sliver of opening that they were looking for. Yeah. And once they did get it, we know that True Rippers are infamous for crashing down under after it. So, of course, you know, this is where we're going to hope that they stage a comeback, because this is the lower bracket finals we're talking about. There's no tomorrow after this. If you lose, you're out of this tournament. And after fighting through the best in the lot out of 3,700 plus teams, it's gonna feel bad when you've made it to the top 4 and you are gonna be exiting from around here. But Rexy, Paradox, does get the opening pick. But the Rexy games is definitely on as he gets to having the tides turn into their favor as Rockville gets one more in a 3v2 situation. Relic and Master, they are changing it, but Rexy somehow, he is holding himself along with Raw Fuel. And this was a narrow one, but they somehow did see through the end. That was absolutely beautiful by Rexy. One Hunter's Fury broke the lockdown, got a kill with his weapon, and then got a kill with his shock dart. That's like the perfect hat trick in football, you know? It's like everything works out and it's just done very, very well. And this is so crucial because, again, in a similar theme, in a similar situation where late in the map things are tied up and rounds are being very, very close, Rexy finds these clutches. And he hasn't even been pushed yet. We have seen him going for those Odin plays, hasn't really opted for one. But now, Raw Fuel, this is where he starts looking really devastating and scary as he again draws first blood inside this round. As you can take a look at True Rippers trying to press in through the mid area. Hika does have a slight idea as to what's going on, does pour out the barrels, does call out his teammate for help. This though, trying to push their mid advantage further. They are stuck. The crossfire ready for Enigma Gaming and the dash through to create some space. It does exactly that, but it's just a 1-for-1 trade. And now Tap God gonna feel the brunt of that. The mid pressure was cool, but committing so full onto it, I'm not sure if that was necessary. I mean, every single time we are given so much false hopes, right? Just when we start thinking that, yes,
maybe True Rippers can actually steal one out. It's gonna feel bad to be in their shoes right now. You know, they were certainly testing Enigma Gaming in their own map of choice. And now Enigma seems to have, you know, clinched it away. Now, they're not going to stop at anything at all. And look at the confidence again from Raw Fuel heading in. He dodged that turret and instantly takes a shot. And this is the thing with Jet, right? It's still so broken with that dash still in play. Take flight. Yeah. And you can see Enigma, as you mentioned, once True Rippers seem to have dropped the ball, it's just like they cannot pick it up, and every time they try, they fumble it. But hold on, Paradox finding some value on his Blade Storm, getting a lot of pressure towards that defender side spawn, opening up this B side. But does he know his mirror, his namesake, the Jet, on the other side with the operator just waiting in the boathouse? It's all about raw fuel in this round here. Yeah, his arch nemesis is yet to make those movements, but Hika seems to have gotten him off guard as he's gonna get one more. Can he follow it up? Yes, he does. Gets a 3K. That's preposterous. That's nasty. As he's gonna send each player out from the lobby. The last one remains, and Hika, ever so tall, ever so proud, ever so gallant, as Relic still keeps himself in contention, and so his team. But in this 1v2, so much information being departed, and they're going to come in from the two highways. But which way is he going to find the success? And there you go, getting the quad, sealing the deal. And I think this is it. Yeah, right. Those shots by Hika, I want to say Reaver OP, but it's not like the other team does not have Reavers, you know. And it's just nasty. I'm so glad we get a replay, because this second shot especially just tapped like just perfection. On. Yeah. you know, you might be talking about the placebo effect, but I'm telling you, there's something with that Reaver. Yeah, I mean, well. Sometimes, you know, just sponders. Is it P2W? Is it? Is it? The devs say no. Yeah. The math says no, to be fair, but, you know, the mind is greater than math sometimes, but talking about mind, not a great mental situation for True Rippers, because they're about to lose back-to-back matches. Yeah, just the last player surviving, Paradox. You know, they might have pushed Enigma Gaming a little bit, but again, a few more for this round, but I think that's just about it. Rexy getting the final nail in the coffin, and here goes Enigma Gaming surviving the lower bracket finals, and they move in, and RVK, he's got a teddy bear that he's got to show, and certainly ponders me to think who is cuter, the teddy or me. You. The production loves me. The Lucky Bear. The Lucky Bear definitely working out for the dude, and it is going to be the team that will push on fourth. Even though it was very close, I thought kahin na kahin ye probably ja sakta tha TR ki taraf, but that is what the game had in store for Enigma. And of course, we do know who will be jumping into the grand final tomorrow, the BO5 jo kal hone wala, of course, against EXO, and that's going to be Enigma. And kafi classy gameplay raha, I would say. Yeah, it was a good gameplay from the side of both of the teams, no doubt. Definitely better from True Rippers than what we saw in the first half, but there is still a way to go, because as Fixer said, we kept hoping. We just kept hoping when it never came. Yeah, I mean, the dreams were there, definitely. Yes, and everyone, you know, even the viewers might have, you know, thought that this is going down to why. Maybe at some point, yahan pe chori kar sakte the. They could have got it from, you know, Team Enigma. But being again pushed to the limits, and Paradox, you've got to feel bad. You know, I've been seeing him from the Counter-Strike days when he was in Too Easy. He'd been having some really nasty shots. But, you know, again, with Valorant trying out new teammates, you do not have SK WoW or Spawn with him, and he's got new players to work around with. And Relic, he's shown signs of promises. Crosshair, he definitely has had his moments of glory. But I think just a bit too much. They were tested, of course. They did, you know, try to get the most out of Team Enigma. But again, you know, just that one timeout is all it took for them to come back and win it all out. Absolutely. But again, I mean, usi ke saath mein, the one thing that the team is going to be walking away with is experience.
राइट, जो आने वाले टूर्नामेंट्स रहेंगे, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इस टीम के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जो इन्होंने यहाँ पे बिल्डअप किया है, प्लेइंग अगेंस्ट एनिग्मा, अगेंस्ट एक्सो एंड ऑल द अदर टीम्स दैट दे अगेन played against to be a part of this will help them as they progress on along. But उसी के साथ of course when it comes to the grand champion, well we shall find out कौन सी टीम होने वाली है. It is going to be quite an interesting game tomorrow because BO5 रहेगा and वहाँ पे again best of the best teams and players जो आज हमें देखने को मिले हैं of course वो एक दूसरे के against जाने वाले हैं. So it's going to be an exhilarating one. उसी के साथ of course as we're talking about the grand finals, let's have a look at the updated bracket. As I said, it is going to be Team EXO going up against the side of Enigma Gaming, a BO5 for 2 lakh rupees on the line between those two. Oh, it's gonna get so exciting, right? Oh yes. You're talking about two big guns, the big giants going up against each other. Now that we have our two juggernauts over here, so EXO and Enigma Gaming. I mean, CA, talk me through this because we did have Enigma Gaming in their past roster defeat Team EXO, get in there in the official tournaments where it all mattered. But this Team EXO has been looking up. They've been showing signs of promises. Yeah. But so have the new roster of Enigma. Yeah, absolutely. I think there's one clear-cut advantage for both of the teams, respectively. Of course, for the side of Enigma, it's what we've talked about, the discipline and the stability they have. Of course, with the coach as well coming in, you could see how much of a difference one timeout itself made. But what they've lacked is creativity. And that EXO does not lack at all. They are a very proactive team. They're continuously playing the game on their own terms. And that gives them an ability to outread the opponent. You could see how confident Sai was with his IGLing. Yep. So it's going to come down to Sai versus Antidote. I'm excited to see that. I mean, we saw that glimpse of that creativity that you're talking about today as well, right? I mean, Sai ne khud hi bataya tha that when it came down to the game, the second game that they were playing against CR, there was few moments where the rounds were not favoring EXO. And that is the moment where, again, the IGL heard to his teammates and did creatively move the game all across. And uske saath, of course, we did see the final result jahan pe EXO, of course, did get that win for themselves. But boy, oh boy, kal ka jo game rahega, wo utna hi zyada exciting rahega. BO5 zarur hai, aaj ke jo BO3s rahe, dono ke dono games, of course, 2-0 ke andar khatam ho gaye. Lekin kal, I believe we'll reach all the way to the 5th game, maybe. Of course, CA did strike the right chords over there, right? Just sparkling that little old rivalry. Sai going up against Antidote. Now it's again those Counter-Strike old days back together. They played with each other. They've played against each other. Now we're in a different game. It has been a long time. Both the IGLs. Now they were not in that position, right? True. But they've definitely taken up that leadership role. And we were starting to ponder as to when it's supposed to happen because they were the veterans of their game back in the days in the Indian competitive scenario. Now, of course, heading into a different game altogether, tomorrow is definitely going to be a cracker of a finale. Oh yes, indeed. Along with that, again, fans, do not forget to spam the team that you are rooting for, and usi ke saath, of course, unko bhi wahan pe momentum boost milega, and they'll be able to, of course, look on to the chat, and they'll feel that much more blessed that, all right, we've got the fans, we have to deliver for them. And again, the BO5, anything can happen. Again, both teams are very well known, very aggressive, and as well as Painfixes did just mention, दोनों के पास में वो काबिलियत है, लेकिन वो अगेन गेम के एंड में ही हमें पता चल पाएगा कि कौन निकल के आएगा विजेता. लेकिन आज के लिए ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स डाउन टू द गेम्स दे हैव डेफिनेटली बीन वंडरफुल एंड आई हैव टू एडमिट दैट वेल टीआर की तरफ से दोनों गेम्स के अंदर द फर्स्ट BO3 एंड द सेकंड BO3 देयर वर दोस साइंस दैट दिस टीम इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर. Every single time we spoke about points जहां पे वो थोड़े से लैक कर रहे थे, next game we would see them try and pick that pace up. Yeah, and hopefully we get to see them in future iterations, but I believe we have someone special ready for us. Oh yes, we do. We do have an interview right now, so let's move on along and get busy with Hika right now. Congratulations, बहुत ही बेहतरीन performance रहा आपकी टीम की तरफ से. अब कल के लिए आपकी क्या expectations रहेंगी against EXO? So basically, very proud of my teammates for stepping up. All of them, did really well. Especially Anti with the calls. I think the timeout worked really well for us. Preparations for tomorrow. अभी देखते हैं. अभी जाएंगे. We'll see watch the VOD or prepare for them. Like we have a coach also YB on board, so get some tips from him and let's see what we do tomorrow. It will be
a surprise for you guys. Oh, I'm sure. I'm sure. I mean, are we talking about the chamber over here? I mean, C has been looking. Maybe not. Maybe not. But no, I don't know. But let's see. But we'll for sure make it a good game for you guys and also for the fans. Thank you so much. But I've got to ask this through, right? After VCC, you guys really pushed yourself to the limits. Then you had a lot of roster changes. And tell me about how you've been coping up with it, because you're the one of those players that has, still remained a part of Enigma. So how has the journey been so far? So far, I mean, journey has been pretty hectic, not gonna lie. So many roster changes we've had in the past also. But I feel really confident with this roster at the moment because we have an amazing IGL anti. He puts in a lot of work. He gives us all the insights of the matches. Like, he watches a lot of VODs, He just proves us to be a better team. And then the individual players like RVK, very, very good player, young talent. Rafael, obviously, Cole deta hai. And Rexy, of course, with the support and with the experience. So I think it's a pretty good team with a lot of mixed players like young talent, the IGL, a lot of support players. I think this is the best team I've played in so far, and I'm very happy to play with these guys. So yeah, I think coping up with it, I would say it's tough because every time you make a new team, you build new strategies. You have to go through the same defaults. You have to, get to know your teammates better in-game and outside game. So it's a little tough, but I mean, as an esports player, you have to cope up with things, right? You're not going to remain with the same players until you all build that synergy. So yeah, I think it's a task, but it's going good. Well, Fixes talked about the players. I want to ask about the coach, actually. So, YB, a very well-known name. True. I want to know how, we expect him to do many, many things. But in this first week, what real impact have you felt from just having a coach and then having a coach the caliber of YB? So YB, man, holy shit, I've heard so much good stuff about him from Anti and everyone in the past. So it was great to have him on board, and thank you to Enigma for making it happen also. I mean, in a week, you see, he has started with the basics, and we're already, learning a few basics, which I can't obviously say it. So yeah, I mean, he's improved us a lot in a week, so I'm waiting for a month, for 2 months, for 6 months. I think we are going to be a good team. We're definitely gonna come for that number 1 spot. Well, that is true for sure, and there is only one team that is probably going to be stopping you tomorrow, and we shall see uska result kya rahega against EXO. But once again, congratulations, and of course, best of luck with that. Hika. Thank you guys, and thanks for the amazing casting. I'll go to the matches again, and hear the casters. Also, thank you to Nodwin Gaming for making this happen, and let's see. Yeah, y'all will be surprised tomorrow or not? I don't know. We'll see. Well, only time will tell. But once again, thank you for the interview. And usi ke saath mein, of course, the way the game has been played today. Well, it definitely does say that, yep, it is going to be a game that could very well favor Enigma, or it could very well go the other way around. We shall find out. Thank you so much. We shall definitely find out. All right, guys. Peace. See you. Thank you for having me. Yeah. Wow. Okay. So, यहाँ पे quarterfinals खत्म होते हुए Valorant के start हुआ था then, though it was a different kind of an energy that was being spoken about. Now it is going to be an aggressive energy that we shall maybe see tomorrow, और कहीं पे maybe जैसा आज ने भी बताया वो X Factor type लेके आएंगे. Maybe so we shall see क्या रहेगा उसका result. But what are you anticipating? What was that about? Could it be YB की तरफ से some different changes maybe anticipated? A lot on line, a lot of speculations, right? Considering YB has been coming in, and suddenly you have got to start to ponder if he is the final missing jigsaw in the puzzle over here. If he's been the answer that Enigma need to propel themselves up to the first spot, because in the Indian territory that we do have, it's again global esports velocity being the two upper ones, and you've got to relate that with the F1 that we have. Exactly. The sort of the McLaren, the Mercedes and the Ferrari, right? Or the Red Bull. Now these are Ferraris, so we're just somewhere on the mid lanes. Now this is a war cry that EXO and Team Enigma have been showcasing, and for tomorrow we're all riled up as to what is going to happen. So I'm getting excited already. Well, definitely with that, we kind of do reach the end of our Valorant segment. But of course, do stay tuned, because after this is going to be the Cordem matches jo aane wale hain. But right now, as we are part of TEGC 2021, we have to talk about these wonderful brands that are, of course, supporting us right here, right now. We, of course, are going to move on along with Transcend.
अब Transcend, of course, हर किसी ने नाम सुना है. Have been listening to it since the first time that we've been walking about it. जो अभी पीछे आया था, पर उससे पहले let's talk about Thermaltake as well. Now again, Thermaltake जब आप वो heatsink की बात करें, that thing is always going to be the top priority. जब आप अपना PC बना रहे हैं, Thermaltake is going to be the name जो हर कोई आपको बताएगा. लेकिन उसी के साथ-साथ, well, you have this beautiful case, जो silent case and also dust proof जो बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर. I mean, we need to have cases जो आपके PC को clean and clear रखें, and यहीं पे आता है Thermaltake का ये beautiful looking beauty. And after that is where we move on to Transcend. We move into the PC जहाँ पे वो components जो hardware है वो बहुत ज़्यादा critical हो जाते हैं, and Transcend का ये PC का ये SSD, which is going to definitely boost up the gameplay altogether, because again the speed at which the memory is being read in the game is so very critical. And यहाँ पे 3500 ms का ये writing speed देते हैं, and of course this is, I mean, these are jargons, right? But in the end it is the brand that you trust, and Transcend is one of those brands that we all definitely trust the most when it comes to our SSDs. And from that, as we move on forth, again, this is TEGC का 8th edition 2021 के अंदर. So brands, they just keep on going on along, and उसके साथ हम move on करेंगे towards ZAC जो यहाँ पे हमें screen पे देखे को मिलेगा. And this is going to be a water cooler PC case. Oh yes, you heard that right. Every single time you talk about these brands, they are just trying to move up, push up the boundaries. And यहीं पे आप ये जब केस की बात करें, so इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको system नहीं मिल सकता, because this is going to keep your system running cool, and of course it is going to give you that much more of a synced gameplay approach through all the wonderful hardwares that are available right here at TEGC की brands. Along with that, as I said, हमारा Valorant का यहाँ पे journey खत्म होता हुआ. Tomorrow we'll jump into the grand finals for Valorant, but right now we are going to go on a short little break, after which it is going to be Core M का segment.
Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too.
We're Zycel, and we're your networking ally. Immerse your audience with clearer, richer, and warmer recorded sound. The AM310 is a plug-and-play USB microphone that lets you record high-quality sound for podcasting, streaming, gaming, and more. It's perfect for music performers and live streamers who long for studio-quality sound. Sounds are picked up directly in front of the microphone, delivering detail, full body, and clarity. Welcome to Mike's World Podcast. Today we'll be talking about summer travel. The AM310 has a driver-free plug-and-play design. Simply plug it into a USB port on your Mac or PC, and you're ready to record. You got a charm that's unlike any other. Better yet, the AM310 comes equipped with a mini headphone jack that allows you to either listen to what you're recording in real time or what's playing on your computer, all at the toggle of a switch. It's also great to bundle with AverMedia's video capture devices for streaming, making you a professional content creator. I'm going to show you this natural makeup look. Stream yourself into the spotlight.
planted. One enemy remaining.
and welcome back to Taiwan Excellence Gaming Cup 2021 8th edition, 8th edition. 8 साल से ये जर्नी कंटिन्यू हो रही है and every single year सारी की सारी ब्रांड्स फिर से आती हैं to give us these wonderful teams and अलग-अलग गेम प्लेज. Of course उसके साथ आज हमारा Valorant का दिन खत्म हो गया था, लेकिन अब जर्नी कंटिन्यू होती है towards CODM and उसके लिए we are being joined by two amazing dudes. It is going to be of course Mac Piper and Major Beast. क्या हालचाल? How are you guys doing? हालचाल एकदम बढ़िया है. आई थिंक अब जो हिसाब से एक्शन देखने वाला है उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ. बहुत ज्यादा पम्प्ड अप माहौल हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है. Oh yes, अंकित. बिल्कुल मैन, जैसा कि आपने बताया हर साल ये एक लेगेसी जो पिछले 7 साल 8 साल से कंटिन्यू हो चुका है, ये आगे बढ़ने वाला है. कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया ये कॉडम का गेम हमें आज के इस पूरे सफर में एक खात्मा होते हुए देखने को मिलेगा. एब्सोल्युटली काफी मनोरंजक यहाँ पे परफॉर्मेंस इन टीम्स के थ्रू हमें देखने को मिलेगी. ऑफ कोर्स क्वार्टर फाइनल्स है यहाँ पे, जहाँ पे 3 गेम्स विल बी प्लेड फ्रॉम ईच टीम एंड उसके साथ जब हम मूव ऑन करते हैं टू व्हाट इज एट स्टेक पे है प्राइस पूल, मैसिव प्राइस पूल ऑफ 4 लाख रुपीस. 4 लाख रुपए का प्राइस पूल है यहाँ पे. जो फर्स्ट टीम होगी वो ऑफ कोर्स 2 लाख रुपए लेके जाएगी, सेकंड को 1 लाख मिलेगा एंड थर्ड एंड फोर्थ को 50,000 ईच. अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया क्वार्टर फाइनल्स है, तो मतलब हम यहाँ पे गेम देखने वाले हैं 4 टीमों का, जिनमें से 2 आगे बढ़ेंगी हमारे फाइनल्स के लिए, ग्रैंड फाइनल्स के लिए कल. ओह माय गुडनेस, लाइक यहाँ पे हमें फाइनल्स में देखने को मिल जाएगी बहुत ज्यादा इंटेंस एक्शन दिखाई देगी जो भी टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी. एंड वो दिखाई भी क्यों ना दे, आई मीन हम देख पाने की प्राइस पूल इतना ज्यादा बढ़िया दिखाई देने वाला है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि आखिरकार कौन सी वो टीम होने वाली है जो सबसे ज्यादा शिखर में हमें दिखाई देगी. एब्सोल्युटली. अब टीम की बातें करें तो ऑफ कोर्स लेट्स गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दोस टीम्स एज वेल. यहाँ पे हमारे सामने आने वाला है द स्क्वाड्स एंड द टीम्स आर राइट हियर. अंकित. Exactly, we have Team Axis, Godlike Esports, कितने बड़े हैं इनके नाम एंड जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में एक लेगेसी बनाया है, कहीं ना कहीं उस शिखर पे खुद को रखा है, एक चोटी पे रखा है. बट वी हैव मोर फॉर यू, रेवेनेंट Esports एंड टीम वाइटैलिटी मेजर बीस्ट. जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टॉप 4 टीम्स हमारे पास आ चुकी है और यहाँ से 2 टीम्स आगे जाने वाली है. बिकॉज हम वही देखने वाले कि सबसे ज्यादा बेहतरीन टीम्स वही होगी जो इसमें आगे जाती हुई हमें दिखाई देगी. एब्सोल्युटली. एंड हम ग्रीन रूम में भी बात कर रहे थे जो टीम यहाँ पे खेलने वाली है वो किस मोड पे खेलने वाली है. सो लेट्स टॉक a little bit कि वो मोड क्या रहेगा एंड एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा टीम्स का. आई मीन मोड बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है. यहाँ पे हार्ड पॉइंट का मोड रहने वाला है और हार्ड पॉइंट के मोड में आपको एक ही चीज होती है, ठीक है, 150 पॉइंट का आपको टारगेट वहां पे अचीव करना पड़ता है. जिस टीम ने 150 पॉइंट का जो टारगेट है वो सबसे पहले यहाँ पे अपने मुकाम पे रख लिया, अपने नाम पे रख दिया, वो टीम वहां पे जीती हुई नजर आती है. एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं टीम आगे जाते हुए नजर आएंगे. जैसा कि आपने बताया हार्ड पॉइंट का वो मैप स्पेशली जैसे कि 150 वो अंक होता है, इतना आसान नहीं होता है. जिस हिसाब से टीम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ काफी देखने को मिलता है. अब एक बात होता है, जो टीम अच्छी खेली वो आगे जाएगी. बिल्कुल सही बात है. उसी के साथ में हम ब्रैकेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने ब्रैकेट्स आने वाले हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो टीम्स हैं वो किस तरीके से आगे मूव ऑन करने वाली हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे अपर ब्रैकेट के यहाँ पे BO3 जहाँ पे हम बात करें एंड उसके साथ ही साथ वी शैल सी कौन सी टीम्स हैं जो बढ़ के यहाँ पे आगे निकल जाएंगी. एग्जैक्टली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं BO3 का मुकाबला रहने वाला है और यहाँ पे टीम वाइटैलिटी वर्सेस टीम एक्सिस हमें सबसे पहले दिखाई देने वाला है. मैं बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मैच को देखने के लिए. लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद कौन से मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो होने वाले हैं गॉडलाइक Esports वर्सेस रेवेनेंट Esports. इन दोनों टीम में से, इन दोनों मुकाबलों में से जो टीम जीतेगी वो अपर ब्रैकेट फिनाले में जाने वाली है, जो कि हमें देखा जाएगा BO3 के अंदर. एग्जैक्टली. एंड वी हैव मोर फॉर यू. अब जो पहला मैच हारेंगे ऑब्वियसली दोनों में से ऑब्वियसली 2 विजेता होंगी, 2 लूजिंग स्ट्रीक पे रहेंगी, वो जाएंगे कहीं ना कहीं लोअर ब्रैकेट में. बट फिर अगर वहां से हारती है तो कहीं ना कहीं सीधा बाहर का रास्ता नजर आएंगे. बट वहां से जो टीम जीतेंगी वो सीधा जाएंगी हमारी लोअर ब्रैकेट फाइनल फिनाले BO3 के अंदर, जहां पे वो फिर खेलते हुए नजर आएंगी अपर ब्रैकेट से जो टीम जो हारेंगी उनके साथ. एंड फिर उसके बाद वो सारी टीम्स वो हमारी बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले होगा. बट एक चीज नोट करने वाली ब्लॉटर, वी हैव BO5 इन द फाइनल्स, बट उसके पहले सारे मुकाबले BO3 पे रहने वाले. तो कहीं ना कहीं देख परख के खेलना होगा टीम को. डेफिनेटली. उसी के साथ इतने बड़े-बड़े आपके नाम है. ऑफ कोर्स आप लोग कास्ट कर भी रहे हो इतने टाइम से कॉर्डन, तो आपको भी पता है कि जो ये नेम्स हैं ये काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले भी लेके आने वाले हैं, सिर्फ हमारे लिए दर्शकों के लिए भी. तो लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? हमारे पास यहाँ पे गॉड लाइक वाइटैलिटी जैसी टीम्स हैं, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? आई मीन मैं अपने दर्शकों को वाकिफ करवाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आज ही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का WCA वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें देखने को मिल रहा है. कहीं ना कहीं यही टीम वो टीम है जो वहां पे शिरकत करते हुए नजर आने वाली है. टीम एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज वो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ बाकी सारी टीम्स रहने वाली है वही. तो हाँ टॉप नॉच गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने वाले मिलने वाला है. बिल्कुल. अब गॉडलाइक का एक विनिंग स्ट्रीक पिछले जो 1-1.5 साल में जो उन्होंने नाम गेन किया, जो रेपुटेशन गेम किया उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स के द्वारा, वो काफी जबरदस्त हमें देखने को मिला. वाइटैलिटी की भी बात करें, उसके अलावा जो टीम एक्सिस की आप बात करते हैं मेजर बीट, स्पेशली उनके बारे में अब ये कुछ नए नाम है, तो ये देखने वाली चीज रहेंगे. एंड थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, जो हम बार-बार बोलते हैं, इन बड़े और के सामने जो ऑलरेडी एक सेटअप है, जिनका एक नाम बन चुका है, उसके सामने ये टीम्स कैसे खेलेंगी वो मैं देखना चाहूंगा ब्लॉडर. वेल कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा थोड़ा बहुत.
बहुत, लेकिन उसके साथ वो प्रेशर के साथ हमें ये भी पता है इतने बड़े नाम है, तो ऑफ कोर्स ये जानते हैं कि वो प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। अब लेकिन उसी के साथ अगर हम ये बात करें कि जो ये मोड है ये कितना ज्यादा पेचीदा होएगा इन टीम्स के लिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा? आई मीन हार्ड पॉइंट है, और मैं बताना चाहूंगा हार्ड पॉइंट सबसे ज्यादा केओटिक मोड रहने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेडियस मिलता है आपको, एक हार्ड पॉइंट मिलता है, और उस रेडियस के अंदर जाना पड़ता है आपको, और किसी भी प्लेयर को, एनिमी प्लेयर को वहां पे अंदर नहीं आने देगा, वरना वो हार्ड पॉइंट कंटेस्ट हो जाता है। और उसको निकालने के लिए, एनिमी को हटाने के लिए वहां से बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है। ये हार्ड पॉइंट बिल्कुल भी इजी नहीं है ब्लॉटर, मैं आपको बताना चाहूंगा। वेल अगेन कैट एंड माउस रेस तो यहाँ पे गारंटेड हमें टीम्स की तरफ से देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारे फर्स्ट मैच है उसके अंदर टीम्स के अंदर व्हाट टीम विल यू प्रेडिक्ट जो शायद ऊपर निकल के आ सकती है? ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर गॉडलाइक खेलती है अपने पूरे फुल पावर में, तो कहीं ना कहीं गॉडलाइक मुझे दिखाई दे सकती है कि इस पूरे मैदान में सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई देगी। मे बी सिंस गॉडलाइक नाम लिया जा चुका है, सो रेवेनेंट, वाइटैलिटी, यू पिक एनी अदर टीम, आई मीन इनका नाम जिस हिसाब से आगे ले गया, बट टू बी मोर प्रिसाइज वी विल गो फॉर वाइटैलिटी। वेल स्टोरी तो आपने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो स्टोरी कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं, बिकॉज अगेन यस ये टीम्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बट ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही विजेता निकल के आता है गेम्स के अंदर से, एंड जो दूसरा वाला रहेगा वो ऑफ कोर्स विल मूव ऑन टुवर्ड्स द लोअर ब्रैकेट। वो भी ऑफ कोर्स एक ऑप्शन रहेगी, बिकॉज वहां पे भी उनके पास में वो क्लियर रास्ता रहेगा कि वो मूव ऑन कर पाए गेम के अंदर। एंड उसके साथ साथ इट सीम्स लाइक द गेम इज अबाउट टू गो लाइव, एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑफ कोर्स वाइटलिटी के प्लेयर्स जो वेल काफी ज्यादा रेडी तो हैं, काफी सीरियस मोड में है। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे आर्गन, वाइटैलिटी, मून, डेथ, सैम एंड जोकोस खेलते हुए नजर आने वाले हैं। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा इनका एक खिलाड़ी आईजीएल जो है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जो मॉन्क है इनके खिलाड़ी वो हमें यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक्सिस की, तो यहाँ पे टीम एक्सिस मौजूद हो चुकी है। वॉटेक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, रैंडम, अबीजादा, टीआर के प्रिज्म और दिलजरा। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इनका गेम प्ले हमें कैसे देखने को मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एग्जैक्टली अब वो वही बात बन जाती है। अब कुछ टीम जैसे कि आप बता रहे थे, वी हैव सीन द गेम प्ले ऑफ विटालिटी के प्लेयर्स के द्वारा, जैसे कि आप बता रहे थे मॉन्क नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आईजीएल कमी, उस चीज़ की हम बारंबार बात करते रहेंगे थ्रू दिस कोर्स ऑफ दिस गेम। बट एक्सेस किस तरीके से आगे जाती है, एक देखने वाला सवाल। आई मीन वी हैव लेज़रा, वी हैव प्रिज्म, वी हैव लॉट ऑफ प्लेयर जॉइनिंग इन, बट देखते हैं पहला मुकाबला कैसा जाता है मेजर बीस्ट। जी हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ की यहाँ पे दाद देना चाहूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा। वो तारीफ ये है कि अबीजादा जो है ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी रहने वाला जिस पे मेरी नजर रहने वाली है, बिकॉज ये एकमात्र इस टीम से ऐसा खिलाड़ी है जो कि एकदम बढ़िया तरीके से स्नाइपर चलाते हुए हमें दिखाई देने वाला है। आई मीन अब तक हमने काफ़ी सारे वो क्विक स्कोप्स भी देखे, एंड स्पेशली आपकी भी बात कीजिए, आप जिस हिसाब से वो इंस्टेंट फ्लिक शॉट्स, वो 1 सेकंड के अंदर स्कोप खोलना, स्कोप कनेक्ट करना। अब जैसा कि आपने बताया पूरी तरीके से मैं पम्प्ड अप रहूंगा, एंड बास की निगाहें रहेंगी मेरी इनके ऊपर। बट लेट्स जस्ट सी कि वी हैव गॉट टू टॉक अबाउट ये मोड के ऊपर भी कहीं ना कहीं टीम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। ये पहला मुकाबला रहने वाला है, BO3 में भी खेला जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ से अगर जो भी टीम जीतती हैं उनका मोरल बहुत ही ज़्यादा हाई नोट पे रहेगा। आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए प्लेयर्स काफ़ी चिल माहौल में, काफ़ी कहीं ना कहीं अपने डिफरेंट पोस्चर्स, कुछ प्लेयर्स यूज टू यूज दोज पिलो अराउंड देयर एल्बो, कुछ प्लेयर चेयर पे खेलने की कोशिश करते हैं। सो कहीं ना कहीं अब वो बात बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे आप कौन से मोड में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एंड देयर वी हैव इट, द हार्ड पॉइंट इज ऑन टीम वाइटैलिटी। ऑलरेडी लीड बना चुकी है 4 पॉइंट का टीम एक्सिस के ऊपर। जी हाँ, टीम वाइटैलिटी कहीं ना कहीं तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेट करती हुई नजर आई है। 17 सेकंड बच रहे हैं, 16 सेकंड, 15 सेकंड, और सेकंड्स कम होते जाएंगे और स्कोर लाइन जो है वो बढ़ती जाएगी टीम वाइटैलिटी के लिए। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे स्कोर लाइन की, तो 27 रेशियो 13 करता हुआ दिखाई दिया, और मेरे को लग रहा है कि टीम एक्सिस की कहानी जो है वो यहीं पे थम चुकी है। अब हर गेम में हर अपडेट के बाद एक ऐसा ब्रोकन गन बनता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो टाइप 25 जिस प्रचंड तरीके से हर एक प्लेयर यूज करना चाह रहा है, दैट इज जस्ट लुकिंग गुड। इसके साथ भी कहीं ना कहीं वो थम पर एक कॉम्बिनेशन बन जरूर जाता है, बट इंस्टेंटली अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ट्रू के प्लेयर्स पूरी तरीके से, टीम वाइटैलिटी के प्लेयर्स पूरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं क्रॉस फायर के ऊपर। ये कहीं ना कहीं सेटअप बनता हुआ अगला 50 सेकंड देखना होगा किस हिसाब से सारी टीम्स आगे भी लेके जाती हैं। बट लेकिन नहीं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सिस ने, टीम एक्सिस ने अपने नाम पे ले लिया, और लीड जो है अब उनके खातों में दिखाई दे रही है। हमें 40 सेकंड बचे हैं। अगर ये 40 सेकंड को एक सेकंड को निचोड़ दिया गया तो जो स्कोर आने वाला है वो सीधा इनकी झोली में जाने वाला है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेम प्ले में एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा अपर हैंड जो है वो इनके नाम पे हो जाएगा।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी को अब तक काफी ज्यादा यहाँ पर रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला। लगातार यूटिलिटीज एंड थ्रोएबल्स का इस्तेमाल हो जरूर रहा है, बट स्टिल गेटिंग नो सक्सेस। अब अगला हार्ड पॉइंट अगर आप देखिए उस मिनी मैप की तरफ, वो हार्ड पॉइंट पे सिर्फ एक प्लेयर इंडिविजुअल टीम्स अभी कंटेस्टेड है, एंड ऑलरेडी प्लेयर्स दूसरे हैंड साइड पे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज हर मैप पे वो 3 से 4 कहीं ना कहीं हार्ड पॉइंट हमें देखने को मिलता है, तो प्लेयर जैसे ही प्रीएम्प्ट करते हैं एंड आपके मैप के भी ऊपर आ जाता है कहां पर हार्ड पॉइंट बनने वाला है, एंड जैसे ही वो हार्ड पॉइंट बनेगा अगले 3 सेकंड के बाद वो लॉक इन होगा, एंड टीम्स ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हम देख सकते हैं वहां पे कैसे किस प्रकार से वहां पे ऑलरेडी एडीएस खोल के रखे हुए हैं। 50 मीटर यहाँ पे हम देख सकते हैं वहां पे एक ऑलरेडी हार्ड पॉइंट बनता हुआ। जी हाँ, 46 मीटर दूरी से जरूर था, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे टीम एक्सिस जो है कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें स्कोर लाइन की तो 45:57 चल रहा है। अगर बात करते हैं टीम वाइटैलिटी की, WC की टीम है, बहुत अच्छी टीम खेलती है, ये क्वालिफाइड हो चुकी थी, लेकिन हाँ उनको भी टक्कर देती हुई टीम एक्सिस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वाला हार्ड पॉइंट भी अपने नाम पे लेते हुए टीम एक्सिस अब स्कोर जो है वो अपने खाते में बटोर रही है। एग्जैक्टली, और मैं देखना चाहूंगा अगर कुछ स्पैरो के भी जिस तरीके से आप बारंबार बात करते हो वो स्कोर स्ट्रीक्स के भी बीच में, बट उसी बीच यहाँ पे टीम एक्सिस वो लीड बारंबार बढ़ा चुकी है, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखिए टीम वाइटैलिटी के पास वो आ चुका है जो वो लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये स्पैरो का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से सैम्स हमें करते हुए नजर आ रहा है, बट इंस्टेंटली हैज बीन शट डाउन। जी हाँ, उनको शट डाउन कर दिया गया। 74 यहाँ पे स्कोर हो चुका है टीम एक्सिस का। 55 स्कोर पे हमें वाइटैलिटी दिखाई दे रही है। अब कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके एक नई स्ट्रैटेजी जो है वाइटैलिटी को यहाँ पे लानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ आर्गन को जो कि इस मैच के आईजीएल रहने वाले हैं इस सदी के लिए, बिकॉज इस गेम के लिए, बिकॉज वही बात है इनके जो प्राइमरी आईजीएल है वो कहीं ना कहीं हमें उनकी जो कमी है वो खलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली अब वही बात हो जाती है, आप वो जगह को उस रिक्त स्थान को कहीं भी नहीं भर पाओगे, बट उसको भरने के लिए अभी वाइटैलिटी के जोकोस हमें उस एनालाइटर का इस्तेमाल करते हुए, एंड वो XS1 गोल आया दैट इज जस्ट कमिंग इन। जी हाँ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जोकोस एंड मून दोनों के द्वारा एनालिटर का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि कमबैक करने की पूरी ठान ली है वाइटैलिटी ने और कमबैक होकर रह सकता है। आप देख लीजिए 40 सेकंड बचे, अगर ये 40 सेकंड किसी भी तरीके से वाइटैलिटी अपने खाते में रख देती है तो हाँ जीत बिल्कुल इनकी कदम चूमती हुई दिखाई देगी हमें। और हेविली डिप्लॉय किया गया वहां पे, अगर आप देखिए वो एक पूरा क्लस्टर एक गुत्थी सी बन गई, एक जमघट सी बन गई है वाइटैलिटी के प्लेयर्स के द्वारा, ताकि वो जो लीड का जो डेफिसिट था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 3rd नंबर का जो खिलाड़ी है सैम्स का गोलायत आ गया था, लेकिन गोलायत को भी पनिश कर दिया जा चुका है और मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि गोलायत खत्म जरूर हो गया है और एक के बाद एक करके जो लीड है वो गोरिल्ला स्क्वाड जो कि हमारे रहने वाली है टीम एक्सिस उनके खाते में जाती है। ये मैच बहुत एक कड़ा रूप ले रहा है, ये बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस उसके बीच हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला। एक समय पे ऐसा लगा था टीम वाइटैलिटी शायद उस डिफरेंस को क्रॉस कर बैठे, बट जैसे ही एक नया शिफ्ट हमें देखने को मिला, शायद अगर वो XS1 गोला थोड़ी देर और टिक सकता था तो कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी के पास एक गेम बनते हुआ था, बट अभी भी देर नहीं हुआ है। वो 150 में अभी भी कहीं ना कहीं वो 40 का आंकड़ा रहेगा नजर, बट क्या यहां से प्रिज्म अलाउ करेंगी, बिकॉज ये टीम एक्सिस के प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। हंटर के लिए ड्रोन का भी डिप्लॉय किया गया है एंड वो स्कोर स्ट्रीक बारंबार प्लेयर्स यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी दादा ने इतनी दूर से आपको हिपफायर मारते हुए दिखे भी, क्योंकि मेरे को हिपफायर मारते हुए दिखे थे। लेकिन अगर हम बात करें रैंडम की, एनालिटर यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोकोस को शट डाउन कर दिया गया। अगर हम बात करें स्कोर लाइन की तो यहाँ पे हमें 90 रेशियो 134 का स्कोर लाइन दिख रहा है और अभी भी टीम वाइटैलिटी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए पाई जा रही है। जी हाँ, एक 100 पॉइंट को भी अपने नाम पे उन्होंने यहाँ पे टारगेटेड नहीं करा है, कैपिटलाइज नहीं करा है अभी तक। 134-101 बढ़ता हुआ पॉइंट हमें नजर आ जरूर रहा है। 20 सेकंड का हार्ड पॉइंट अगर टीम वाइटैलिटी लेके जाती है कहीं ना कहीं वो पॉइंट डिफरेंस भी हमें कम देखने को मिलेगा, बट इंस्टेंटली जोकोस आर्गन आएंगे, इंस्टेंटली शट डाउन करने की कोशिश, टीम एक्सिस को रोकने का भरपूर पुरजोर प्रयास सक्सेसफुल काफी ज्यादा नजर हमें आ रहा है, बट बैक एंड साइड से रोटेट करने की कोशिश, जो आगे की एंगल थी वहां से हम नहीं जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बैक एंड साइड से वो येलो हाउसेस के अराउंड से रोटेट करने की कोशिश, बट क्या इस चीज को टीम वाइटैलिटी ने भापा है या नहीं, ये एक देखने वाली चीज। जी हाँ, उस चीज को भापा गया है या नहीं गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता हमें दिखाई जरूर दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं अभी भी ये हार्ड पॉइंट जो आया है वो आया है टीम एक्सिस के पास। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टीम बट एक्सिस खेलती हुई नजर आ रही है। 144, 145, 146 और 4-3-2 सेकंड के अंदर ये टीम अपने नाम पे कर देगी ये पूरा गेम। There we have it. There we have it. पहला मुकाबला ये BO3 जा चुका है टीम एक्सिस के पास। Oh my goodness, that was something really great. Exactly. Well, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी गेम निकल सकता है। वहां पे हम वाइटैलिटी की बात कर रहे थे, बट अगेन गेम उनके पैरों तले छिना गया। लेकिन ये BO3 है, तो शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, BO3 है, अभी किसी भी टीम को हमें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एंड बीस्ट आपने बोला था अभी ज्यादा के बारे में, जी इस बिल्कुल। मैच के टॉप फ्रैगर हमें नजर आ रहे हैं। वाओ। जी हाँ, और कहीं ना कहीं खुशी इनके चेहरे पे झलक रही है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से खुश है अभी, जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म करा है, ये खुशी बिल्कुल जायज है। एंड क्यों ना हो, टीम वाइटैलिटी जितने बड़े नाम को अगर आप पनिश करिए इस BO3 के पहले मुकाबले में, जी। जो ऑलरेडी पूरा फतेह करके आई है, पूरे विश्व भर में इनका डंका है, टीम एक्सिस के द्वारा पहले BO3 में परास्त हुए, बट आई मीन वी स्टिल हैव 2 मैचेस लेफ्ट इन दिस BO3 का मुकाबला। एग्जैक्टली और मैं आपकी नजर जो है वो डालना चाहूंगा रैंडम के ऊपर। काफी अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गन फाइट दिखाते हैं। इनकी गन स्किल्स अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है। एग्जैक्टली एंड कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ साथ अभी ज़्यादा के साथ साथ वॉटेक्स भी हमें बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आए ज़रूर थे, बट वो साफ झलक जाता है प्रेशर जो आप देख रहे हो। बट सीम्स लाइक कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा का ये एक ऐसा परफॉर्मेंस जो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही इस मैच में वो टॉप फ्रैगर हमें बनते हुए नजर आए, वी गॉट टू सी हिम एंड वो साफ झलकते हुए नजर आए जब हमने उस स्क्वायर लिटिल वेब कैम के अंदर उनको देखा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी खुश। जी हाँ, लेकिन निराशाजनक परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है वाइटैलिटी की तरफ से। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो उनके चेहरे पे झलक रही है। काफी ज्यादा मैं बोलूंगा टेंशन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है हमें। हो क्यों ना, आई मीन टीम एक्सिस अगर यहाँ परफॉर्म करके जाते हैं, अब जितना नाम वाइटैलिटी का इतने दिन में गेन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेंट लगा सकते हैं। या फिर अगर इसके दूसरे पर्सपेक्टिव पे देखिए, हमेशा एक कॉइन का 2 फेसेट होता है, तो कहीं ना कहीं टीम एक्सिस यहाँ से ऊपर उठ सकती है, बट कहीं ना कहीं मून को बाहर संभालना होगा। बैकलाइंस में हमने काफी बात की है, मून की वो जो स्नाइपर स्किल्स है दैट इज समथिंग दैट इज रियली टॉप नॉच, अगर उसमें खुद को ऊपर रखे। बट फिर वही बात बन जाती है ना, आप हार्ड पॉइंट पे स्नाइपर का किस प्रकार यूज करिए। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे स्नाइपर आप यूज क्यों ही करोगे, मतलब ये हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट में आप अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप यूज करते हैं एक SMG तो वो चलता है, वो ठीक है, वो लाजमी है बिल्कुल। लेकिन अगर आप हार्ड पॉइंट में स्नाइपर लेके आए हो तो या तो आपकी स्नाइपर बहुत अच्छी है या तो आपका गेम सेंस बहुत बेकार है। बिल्कुल, और उसमें कहीं ना कहीं गेम सेंस फिलहाल के लिए दिखाते हुए नजर आए। द प्लेयर्स आर जस्ट वेटिंग। अब इस दूसरे मुकाबले में हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। एंड यस, देयर वी हैव इट। एक बार फिर से स्पेशल फोर्सेस के साइड से यहाँ पे हमें एक्सेस स्पॉन होते हुए एंड कहीं ना कहीं गुरिल्ला स्क्वाड की तरफ से वहाँ पे हमें टीम वाइटैलिटी जाते हुए आर्गन हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर। अब देखते हैं किस प्रकार से टीमें आगे जाती हैं। जी हाँ, ये चीज बिल्कुल देखने वाली यहाँ पे रहने वाली है। मैं बात करना चाहूंगा वाइटैलिटी वर्सेस यहाँ पे जो टीम एक्सेस चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर सबसे बड़ी बात, ये समिट का मैप रहने वाला है, काफी ठंड का माहौल रहने वाला है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पहला जो हार्ड पॉइंट है वो अपने नाम पे ग्रैब करना पड़ेगा। अगर आपने पहला ही हार्ड पॉइंट अपने नाम पे ग्रैब कर लिया है, और जो कि बहुत आसान भी है बिकॉज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से खुला जरूर है, लेकिन हाँ आपको छुपने के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स यहाँ पे छोटे से बहुत मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से गेम प्ले जा रहा है, अब ये लग रहा है कि हाँ टीम वाइटैलिटी जो है वो यहाँ से वापसी चाहती है, यहाँ से कमबैक करना चाहती है। बिल्कुल, टीम वाइटैलिटी को किसी भी तरीके से कमबैक करना होगा। पहला BO3 जा चुका है, अगर यहाँ से जाती है तो फिर दैट विल बी कंप्लीटली सीलिंग द डील। फिर इनको लोअर ब्रैकेट में मौका मिलेगा जरूर, बट क्यों उतना दूर मैच को थ्रो करना जब आपके पास ऑलरेडी मौका है। बट क्या अलाउ किया जाएगा टीम एक्सेस के द्वारा, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं लेजरा जस्ट मूविंग इन फॉरवर्ड इस कंप्यूटर के अराउंड एरियाज पे कमांड लेने की कोशिश, कमांड सेंटर का इलाका केज के पास काफी अच्छी तरीके से वहां खुद को पोजीशन किए जरूर थे, बट BRE की तरफ से कुछ प्लेयर्स आगे जाने की कोशिश, कुछ वो ट्रॉफी सिस्टम भी डिप्लॉय किया जा रहा है एंड अपने ही यहाँ स्पॉन फ्लिप हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे जो गुरिल्ला स्क्वाड की जो टीम थी ऑलरेडी वहां पे स्पेशल फोर्सेस के अराउंड हमें नजर आ रही हैं, बट काफी अच्छी तरीके से अभी ज्यादा फिलहाल के लिए हमें नजर आ रहा है। 4 पिक्स ऑलरेडी यहाँ पे वोर्टेक्स निकाल चुके हैं, बट हार्ड पॉइंट में पिक से फर्क नहीं पड़ता है तब तक जब तक आपके प्लेयर्स वहां पे ऑलरेडी हार्ड पॉइंट्स को कॉन्कर करके रखे हैं एंड एक के बाद एक यहाँ पे टीम एक्सेस अपनी लीड बढ़ाते हुए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा गुरिल्ला स्क्वाड जो अभी आपने बात करी थी वो वाइटैलिटी टीम रहने वाली है, और वाइटैलिटी इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है बिकॉज हम देख पा रहे हैं उनका जो स्कोर है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ अब कहीं ना कहीं में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटेस्टेशन कर दिया गया है, यहाँ पे हार्ड पॉइंट को निकालना पड़ेगा, अपने नाम पे करना पड़ेगा वाइटैलिटी को, और हम देख पा रहे हैं वाइटैलिटी वो चीज करके दिखा भी रही है। और एक शानदार नेड आता हुआ गोल्डन नेड वॉर्टेक्स का नेड गया और मूनस्कोप को वहां पे थोड़ा सा उन पे वो जो चांद है उस पे ग्रहण आ चुका है। बिल्कुल, थोड़ा अंकुश लगाया गया। ये ब्रिज का जब भी इलाका, जब भी इसके अराउंड हमें वो हार्ड पॉइंट बनते हुए देखने को मिला, कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किलात का सिचुएशन बनते हुए, बट स्टिल टीम वाइटैलिटी ने एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे फाइट बैक दिया। बात करिए इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इट, लेजरा जस्ट कमिंग इन, कहीं ना कहीं शटडाउन करते हुए एंड सारे प्लेयर्स को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। बट अगर देखिए उस मिनी मैप की तरफ तो ऑलरेडी प्लेयर्स वहां से रोटेट करने की शुरुआत कर चुके हैं एंड कहीं ना कहीं ये स्पेशल फोर्सेस के अराउंड
अराउंड जो उनका बेस है वहीं पे अगला शायद ये हमें देखने को मिल सकता है, अगला जो हार्ड पॉइंट फॉर्म होगा। बट लेट्स जस्ट सी, बी एली के पास है काफी करीब से रोटेट करने की कोशिश गोरिल्ला स्क्वाड के रूप में जो हमें वाइटलिटी के प्लेयर्स रहेंगे, क्या उनको अलाउ किया जाएगा? बिकॉज प्रिज्म जो काफी ज्यादा स्टार प्लेयर है इस पूरे इकोसिस्टम में, काफी ज्यादा मशहूर खिलाड़ी, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट कहीं ना कहीं मिड से रोटेट करने की कोशिश, एक 1-1 ट्रेड लिया जरूर गया, बट इंस्टेंटली वहां पे प्रिज्म को वाइटलिटी के आर्गन के द्वारा शट डाउन किया। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत होता है, बस हाँ वो फेमस नहीं है, वो उनका इतना नाम नहीं है। ये वही टीम है, टीम एक्सिस बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है। इनका एक एक प्लेयर, चाहे मैं बात करूं रैंडम, वॉर्टेक्स, अबीज दादा, लेजरा, प्रिज्म, एक एक खिलाड़ी 100 खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकता है अगर हम बात करें, और शानदार तरीके से उस चीज को ये अमल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अबीज दादा का शानदार प्रदर्शन, और अब जाके हम देख पा रहे हैं ये हार्ड पॉइंट भी इनके नाम पे आ चुका है। एक अच्छी लीड, 14 सेकंड भी बचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि 14 सेकंड को भी निचोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली, एंड अगर आप देखिए तो वो लीड एक बार फिर से टीम एक्सिस के पास आ चुका है। एक हार्ड पॉइंट में बार बार हमें ये सेम प्रथा देखने को मिला, सेम चीज देखने को मिला है। स्टार्टिंग तो टीम एक्सिस से होती जरूर है, बट जब एंड की वो हार्ड पॉइंट आती है, कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी उसको छिन के लेके जाती है। बट इस बार कमांड सेंटर के अराउंड एक बार फिर से हमें ये हार्ड पॉइंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे ऑलरेडी और एक बार फिर से टीम एक्सिस पहुंच चुकी है। तो गोरिल्ला स्क्वाड के रूप में जो वाइटैलिटी की टीम है वो आने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट उससे पहले कहीं ना कहीं उनको ट्रेड में ले लिया जा रहा है, एंड उस रास्ते के बीच थोड़े बहुत फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बट हार्ड पॉइंट एक बार फिर से कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए टीम वाइटैलिटी अपने पॉइंट्स को और ऊपर करते हुए नजर आ रही है मिच बीस्ट। जी हाँ, बिल्कुल वो चीज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मुश्किलें जो है टीम वाइटैलिटी के लिए बढ़ती जा रही है, बिकॉज अभी भी लीड उनके हाथ में नहीं आई है। मैं क्या देख रहा हूँ, WC क्वालिफाइड टीम है, हम बात करेंगे स्टेज 4 इन्होंने क्वालिफाइड करता, उसके बावजूद भी स्ट्रगल करती हुई पाई जा रही है टीम एक्सिस को हराने में। लेकिन हाँ, अब जाके कहीं मैं देख पा रहा हूँ उनके नाम पे हार्ड पॉइंट आ चुका है। जी हाँ, हार्ड पॉइंट आज जरूर गया, बट टीम एक्सिस वो जो लीड जो डेफिसिट है उसको पीछे करने में टीम वाइटैलिटी पूरी तरीके से असफल है, एंड उसी कारण कहीं ना कहीं टीमों को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर यहाँ से हारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोअर ब्रैकेट में इन्हें किसी भी तरीके से जाना होगा। कुछ ट्रेबल्स का इस्तेमाल हो जरूर रहा है, बट डेथ एंड मून यहाँ से किसी भी तरीके से पीछे हटने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए, एंड जाते जाते कुछ ऑल इंपॉर्टेंट पिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी गेन किए टीम एक्सिस ने। बट अगले 7 सेकंड बाद एक और हार्ड पॉइंट हमें सेंटर में देखने को मिलेगा, जहां पे इस बार टीम वाइटैलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आप देखिए तो जिसको आप लक्ष्मण झूला बोलते हो राइट हैंड साइड पे, वहां पे कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। कमांड सेंटर के जितने भी ओपनिंग्स पे प्लेयर्स को डिप्लॉय किया गया, दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैट। अगर टीम वाइटैलिटी की बात कीजिए, जाते जाते शायद अगर इस पूरे हार्ड पॉइंट को अपने नाम कर जाते हैं, अगला 50 सेकंड में से 40 भी अगर लेके गए ना, तो टीम वाइटैलिटी इस मैच में अपना नाम ऊपर रख सकती है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है अब टीम वाइटैलिटी ऐसे कमबैक करने वाली है। हम देख सकते हैं जिस हिसाब से इनका प्रकोप रह रहा है इस पूरे रणभूमि में, जो इन्होंने ललकार लगा दी है वो काफी अच्छी है। अब ये 33 सेकंड इनके नाम पे हो चुके हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक सेकंड को यहाँ पे निचोड़ा जाएगा और उससे पॉइंट निकाल के अपनी झोली में डाला जाएगा। आप देख सकते हैं वाइटैलिटी के पूरे प्लेयर सारे की सारी लाइनअप उसी हार्ड पॉइंट में आपको दिखाई देंगी, और अब बहुत बेहतरीन तरीके से होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है पूरी टीम। मैं यहाँ पे नजर लगाना चाहूंगा आप लोगों की वाइटैलिटी के अब स्कोर लाइन पे। जी हाँ, 87 रेशियो 120 यहाँ पे 120 यहाँ पे चल रहा है, और अब बेहतरीन तरीके से पूरी जो टीम है खेलती हुई नजर आ रही है। अगर कमबैक करना है, लेट्स जाओ, किसी भी तरीके से यहाँ पे शट डाउन करना होगा। इंस्टेंटली 2 प्लेयर्स को पिक निकालेंगे, डेथ गोइंग डाउन, ऑर्गन गोइंग डाउन। एक बार फिर से इस हार्ड पॉइंट कंट्रोल लेने के लिए कंटेस्टेशन इज रियली ऑन बिटवीन बोथ दिस टीम्स। एक अगला हार्ड पॉइंट जो बनने वाला है उसका फायदा कहीं ना कहीं टीम एक्सिस उठा सकती है। तो ये जो बारंबार बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिल रहा है, इस बार जा चुका है टीम एक्सिस के पाले में मिच बीस्ट। जी हाँ, बिल्कुल उनके पाले में जा जरूर चुका है, लेकिन कितनी देर तक? सबसे बड़ी बात ये आती है कितनी देर तक, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि जो टीम वाइटैलिटी है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ से कमबैक करना चाहती है, वो करके रहेगी भी, बिकॉज आप देख सकते हैं एक मैच ऑलरेडी वो हार चुकी हैं। अब वो दोबारा से ये जो हार का स्वाद है वो बिल्कुल नहीं चखना चाहेंगी। बट फिलहाल अगर आप देखिए तो कोई भी प्लेयर कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक्सिस के साइड से। दिस इज नॉट लुकिंग गुड, एंड कहीं ना कहीं वो जो 5 नंबर के खिलाड़ी हैं जोकोस, उनके पास कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके का एग्जैक्टली दैट इज गुलायत। अगर यहाँ पे वाइटैलिटी के पास गुलायत आ जाता है तो फिर मैच छीनना पूरा मुश्किल है। यस XS1 गुलायत की यहाँ पे स्वागत हो चुकी है, एंड प्रचंड तरीके से मुझे लगता है टीम वाइटैलिटी को रोकना ऐसे पूरी तरीके से नामुमकिन वाला। अगर होता है आई विल बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड। जी हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से सरप्राइज होने का वक्त आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड बचे हैं, 13 सेकंड चाहिए वाइटैलिटी के पास, और अगर ये हार्ड पॉइंट आ जाता है वाइटैलिटी के पास तो उनको सिर्फ 13 सेकंड में ये पूरा का पूरा गेम जो है अपने नाम पे कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये राउंड अपने नाम पे निकाल के ले जाएंगे। सेंट्री गन को भी डिप्लॉय कर दिया गया इसी एरिया में। अगला हार्ड पॉइंट बनने वाला है। एक अच्छा कमांड टीम एक्सिस ऑलरेडी मुझे सरप्राइज कर चुके, बिकॉज़ गुलायत को टर्न डाउन किया गया। लगातार एनालिटर का भी यूज किया जा रहा है प्लेयर्स के द्वारा। प्रिज्म के साथ यहाँ पे एक स्पैरो, एंड इंस्टेंटली 3
3 प्लेयर का पिक। प्रिज्म का ये मूव कहीं ना कहीं जीत की तरफ एक कदम है शायद। 129, 130, 131, यहाँ पे 36 सेकंड आपको देखने को मिल रहा है और शानदार तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। 132 ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं 132 रेशियो 144, 144, 144 पे रुक गया है। जी हाँ, 144 पे रुक गया। 136, 137, अब ये जाने वाले हैं टीम एक्सिस के हाथ में। टीम एक्सिस यहां से कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता हुआ। 143 ऑलरेडी हो चुका है, कंटेस्ट करा गया तो 2 सेकंड के लिए 144 कर दिया। यहां पे टाई ब्रेकर आ चुका है और टीम वाइटैलिटी ने अपने नाम पे लिया था सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया, उनको हटा दिया गया। 148, 149, 150, ओह माय गुडनेस, शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आई है पूरी टीम। स्ट्रेट सेट में यहाँ पे टीम वाइटैलिटी को हार का स्वाद चखाते हुए टीम एक्सिस, देयर वी गो, अब तारीफ कर ही रहे थे, पुल बांधी जा रही थी यहाँ पे प्लेयर्स की, एंड जिस तरीके से बखूबी यहाँ पे भुनाया है, जस्टिफाई किया। जितने भी यहाँ पे एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल कर लीजिए, जितने भी आप विशेषण लगा लीजिए, वो कम रहेगा। टीम वाइटैलिटी जैसे बड़े नाम को इस स्टेज पे कहीं ना कहीं मात देना खुद में एक जीत रहेगी टीम एक्सिस के लिए। आज खुश तो बहुत होंगे अभी ज्यादा, ये बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा। शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं ये प्लेयर, और एक प्लेयर, मैं बोलूंगा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, इनके सारे के सारे प्लेयर जो है शानदार तरीके से साझेदारी करते हुए नजर आए हमें। जी बिल्कुल, एंड अगेन यही इसी टाइप का गेम प्ले हमें चाहिए था, जहां पे इतना क्लोज PO3 ऑफ कोर्स था, लेकिन वो फाइनल गेम इतना ज्यादा क्लोज हो चुका था। वाइटैलिटी ऑलमोस्ट ले चुकी थी वो गेम, लेकिन टीम एक्सिस ने हार नहीं मानी एंड तक। एंड ऑफ कोर्स उस वजह से दिस इज द टीम जो हमारे ये फर्स्ट क्वालिफायर की अगर बात करें तो दैट इज द टीम जो आगे बढ़ते हुए हमें देखेंगे। लेकिन अगेन वाइटैलिटी के पास अभी भी चांस है, उनके पास ऑफ कोर्स स्किल है, वो इतने टाइम से पूरे दिन भर आज वो गेम में बिजी रहे हैं, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो भी वी हैव टू टॉक अबाउट दैट आल्सो, उससे थोड़ा सा तो स्ट्रगल होता है। बट द कमबैक स्टोरी इज ऑन बिकॉज़ टीम एक्सिस वाइटैलिटी को हराते हुए किसी ने नहीं सोचा होगा ये जब गेम स्टार्ट हुआ था। आई मीन मेरे को ठीक है, उन प्लेयर में बहुत ज्यादा भरोसा है, उन प्लेयर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक WC क्वालिफाइड टीम जो आ जाती है, टीम वाइटैलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनको हराना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओह यस एग्जैक्टली, एंड ऑलरेडी मोरल पम्प्ड अप। याद होगा ब्लॉटर आपको एंड आप मिजबीस्ट आपको भी, मैच के मिड स्टेज में जब वहां पे एक्सेस 1 गुलायत की एंट्री हुई थी, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, अगर यहाँ से टीम एक्सिस गेम छीन के लेके जाती, बिकॉज वो पॉइंट ऐसा आ गया था, हार्ड पॉइंट उनके पास था, 136 था, 136 एंड 150 में कितना का अंतर होता है, सिर्फ 14 का अंतर होता है। 14 सेकंड भी वहां पे टीम वाइटैलिटी मेकिंग श्योर कि उनके पास गोलायत था, वहां पे होल्ड नहीं कर पाई, एंड ये इतना क्लोज मुकाबला टीम एक्सिस ने जो कड़ी टक्कर दी है, काफी टाइम तक याद रहेगा वाइटैलिटी। डेफिनेटली याद रहेगा, बिकॉज इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो एक्स फैक्टर टीम्स होती हैं, जैसे एक तो हो गई नोन टीम्स जो हमें पता है, जैसे हो गई वाइटैलिटी, और फिर आती है टीम एक्सिस जिसके बारे में लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता था, लेकिन आज के बाद गारंटेड सारे के सारे कॉलम कम्युनिटी को पता होगा कि ये भी एक टीम है जिसके अगेंस्ट जाना आसान नहीं है। बिल्कुल आई मीन हमें इन प्लेयर्स के बारे में बिल्कुल पता, कॉलम कम्युनिटी में ये प्लेयर एक इंडिविजुअल प्लेयर जो है बहुत ज्यादा फेमस है। एब्सोल्युटली, उसी के साथ ऑफ कोर्स लेट्स मूव ऑन टू द ब्रैकेट्स, जहां पे हमें देखने को मिलेगा द फर्स्ट BO3 कमिंग टू एन एंड, एंड इट इज गोइंग टू बी टीम एक्सिस जो अपर ब्रैकेट के अंदर ऑफ कोर्स फाइनल्स की तरफ बढ़ते हुए धीरे-धीरे, लेकिन अभी भी जर्नी कंटिन्यू ऑन रहेगी उनके लिए एंड ऑफ कोर्स टीम वाइटैलिटी के लिए भी, because the options are still available। उसी के साथ अगर हम लोअर ब्रैकेट की तरफ देखें तो टीम वाइटैलिटी वहां पहुंच चुकी है, लेकिन उनके अगेंस्ट कौन जाया है वो हमें देखने को पता चलेगा आफ्टर गॉडलाइक esports going up against Revenant esports। तो इस अपकमिंग गेम के आप क्या गॉड एक्सपेक्टेशन? गॉडलाइक बिफोर मेजर यहाँ पे एक टीम को चूज करे, मैं गॉडलाइक के लिए ऑलरेडी यहाँ पे रूट कर चुका हूँ, सो आई गेस यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन ओके रेवेनेंट। मेरा यहाँ पे दावा रहेगा रेवेनेंट के साथ, बिकॉज़ यहाँ पे गॉडलाइक को मैक वाइपर के द्वारा ले लिया गया, लेकिन ठीक है, रेवेनेंट इज आल्सो अ गुड टीम। रेवेनेंट बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन दिखा सकती है, किसी भी टीम को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ हर टीम में वो पोटेंशियल है, अगर वो यहाँ तक आए हैं तो हाँ, उनमें कुछ ना कुछ तो बात है। ओह यस, अगेन अगर उसके बारे में बात करें तो 3000 प्लस टीम्स का हमने यहाँ पे देखा था जो पार्टिसिपेट करी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ ये 4 टीमें निकल के आई हैं जो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची हैं। सो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज अंडरटेकिंग, लेकिन ऑफ कोर्स वो स्किल जो है उसके साथ साथ आपको हर एक गेम के अंदर अपना गेम प्ले और ज्यादा बेहतरीन बनाना है, जो आसान काम नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे इतने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं एंड इतने टाइम से लगे हुए हैं, सो ऑफ कोर्स दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन बेस्ट। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला जो गेम है ये किस तरफ जाएगा। BO3 रहेगा फिर से, बट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनदर डिफरेंट गॉड लाइक प्ले, गॉड लाइक के अगेंस्ट जाता हुआ? ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। That's just the word play coming out from Lord। Okay, all right.
भाई मैंने रेवेनेंट पिक करा है तो मैं तो रेवेनेंट के साथ जाने वाला हूँ. मेरे को लग रहा है कि ठीक है अच्छी तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखाने वाले हैं. हर एक Godlike will be get the better half of Revenant this time. ओके तो यहाँ पे गॉडलाइक मौका मिलेगा अगर ऐसा होता है. यहाँ पे गॉडलाइक वर्सेस रेवेनेंट तो चल रहा है, बट यहाँ पे मेजर बीस्ट वर्सेस मैकवाइपर भी हो गया. देखो अगर वैसी स्टोरी लाइन है तो यहाँ पे डेस्क में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम जब पिक करने के लिए मैंने बोला था तो मैकवाइपर ने चूज किया एंड टीम वन जी. सेकंड टाइम मैंने पिक करने के लिए चूज किया है एंड ही इज चूजिंग गॉडलाइक. So, हो सकता है यस एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल मेजर बीस्ट. सॉरी लेकिन कोई बात नहीं है. अभी 15 वो खेल अभी बाकी है. We still have the matches. एक पॉइंट मैं और लाना चाहूंगा जैसे कि आपने बताया स्किल सेट. अब ये जो चेंज इन डायनामिक्स होता है जो बारंबार हर अपडेट होता है उसके बीच जिस हिसाब से ये प्लेयर्स खुद को ढालते हुए नजर आ रहे हैं, दैट्स वन पॉइंट. एंड सेकंड बीइंग जैसा अब ये सारी टीम्स को तो हमने देखा है. वी हैव सीन रेवेनेंट, वी हैव सीन वाइटैलिटी, गॉडलाइक, इन सारी टीम्स को हमने देखा है. बट टीम एक्सिस अब ये यहां से अगर अच्छा प्रदर्शन करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस बड़े मंच पे इस टीम का भी गुणगान एंड वो नाम वो शंखनाद कहीं ना कहीं इन टीम का भी हमें देखने को मिल सकता है. गारंटेड उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज सारी की सारी अवेलेबल है. ऑफ कोर्स इतना बड़ा उन्होंने विन लिया तो उसके थ्रू उनका जो मोमेंटम है, जो मोराल है और ज्यादा बूस्ट हो गया होगा. एंड दे आर गोइंग टू बी पंप्ड अप थ्रू आउट. अपना जर्नी ब्रैकेट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे एंड ट्राई करेंगे ऑफ कोर्स टू द चैंपियनशिप पहुंचे बिकॉज वहां पे 4 लाख रुपए का प्राइस पूल है. TGC का 8वां एडिशन इट इज जस्ट फिनोमिनल. हमने वैलोरेंट के गेम्स देखे थे स्टार्ट ऑफ द डे के अंदर, वो भी काफी ज्यादा फिनोमिनल रहे थे. एंड यहाँ पे जैसे ही हम कॉरम की तरफ बढ़ते हैं तो अगेन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. बट अभी भी वो चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी बिकॉज अब आने वाला है गॉडलाइक का गेम प्ले अगेंस्ट रेवेनेंट. बट इट कुड गो ईदर वेज बिकॉज ये जो हार्ड पॉइंट मोड है ये हमने देख लिया, इतना ज्यादा chaotic हो सकता है, बहुत ज्यादा chaotic हो जाता है. और अगर सामने ऐसी टीम्स हो, वाइटैलिटी जैसी टीम, एक्सिस जैसी, अब तो मैं एक्सिस का नाम भी लेना चाहूंगा. ओके टीम एक्सिस बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दिखाई दिए. लेकिन हाँ अब रहने वाला रेवेनेंट वर्सेस गॉडलाइक. एंड ठीक है दोनों टीम्स जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेलती हैं और ऐसी टीम आपस में compete करे वो भी हार्ड पॉइंट जैसे मैच में तो एक टॉमन जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी. Exactly. वो देखने में बहुत मजा आने वाला है. Absolutely. लेकिन उस BO3 के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, just a little bit. But before we do so, यहाँ पे of course हम TGC 8th edition 2021 पे पहुंचे हुए हैं, wherein there are so many brands who have been supporting us for such a long time. उसी के साथ अगर हम बात करें and point out करें a few of these names, well we've got Zixel right here, which is going to be phenomenal. अगर आप उनका well again the router that they have along with the quad core processor, उसके अंदर the amount of power that this thing will provide आपके इंटरनेट स्पीड के लिए will be phenomenal. लेकिन this is not it because एक के बाद एक यहाँ पे TGC के अंदर known brands in the gaming industry are there. और उसी के साथ में move on करेंगे towards Evermedia and ये brand लेके आ रही है आपके लिए एक plug and play microphone. Yes, a plug and play. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लैपटॉप में लगाइए and you are all set and good to go. उसके ऊपर बटन भी रहेगा, आप उसको ऑन ऑफ करिए, म्यूट करिए and it will give you the perfect वॉइस दैट यू वांट एंड उसके साथ में जीरो लेटेंसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आप गेमिंग कर रहे हो आपको पता है कि वो वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है बिकॉज जो ऐसे एक्शन पैक्ड गेम्स होती हैं अगर उसके अंदर वो थोड़ा सा भी डिले हो जाए आपकी वॉइस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर टीम के बीच में, तो वहीं पे आप गेम हार जाते हो. तो यहाँ पे एवरमीडिया का ये वाला जो माइक है आपके लिए गारंटेड बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है. बट दैट्स नॉट इट. एज द ब्रांड्स कीप ऑन कमिंग इन राइट हियर एट TGC, वी मूव ऑन टुवर्ड्स सिलिकॉन पावर जहां पे उनका ये आर्मर A60. नाउ दिस इज समथिंग आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय. ये एक ऐसी चीज है जिसको इन्होंने सुपर डेटा ट्रांसफर तो रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसी के साथ ही साथ दिस इज वाटरप्रूफ. इन्होंने इसको 30 मीटर की ऊंचाई से भी नीचे गिराया है, डस्ट प्रूफ है, सो एब्सोल्यूट शॉक रेजिस्टेंट है एंड इज द बेस्ट कंपेनियन दैट यू कैन हैव. एंड उसके साथ में ऑफ कोर्स आप सिलिकॉन पावर की बात करें तो वो पावर तो आपको इसके साथ प्रोडक्ट के साथ में मिलेगी ही मिलेगी. सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर राइट नाउ. बट उसके साथ साथ वी डू हैव BO3 जो नेक्स्ट होने वाला है. बट फॉर दैट वी हैव टू वेट जस्ट अ लिटिल बाइट बिकॉज वी गोना गो ऑन अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक. स्टिक अराउंड.
We're Zysel, and we're your networking ally. Immerse your audience with clearer, richer, and warmer recorded sound. The AM310 is a plug-and-play USB microphone that lets you record high-quality sound for podcasting, streaming, gaming, and more. It's perfect for music performers and live streamers who long for studio-quality sound. Sounds are picked up directly in front of the microphone, delivering detail, full body, and clarity. Welcome to Mike's World Podcast. Today we'll be talking about summer travel. The AM310 has a driver-free plug-and-play design. Simply plug it into a USB port on your Mac or PC, and you're ready to record. You got a charm that's unlike any other. Better yet, the AM310 comes equipped with a mini headphone jack that allows you to either listen to what you're recording in real time or what's playing on your computer, all at the toggle of a switch. It's also great to bundle with AverMedia's video capture devices for streaming, making you a professional content creator. I'm going to show you this natural makeup look. Stream yourself into the spotlight.
हेलो एंड स्वागत है आपका फिर से ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप 2021 8th एडिशन में यहाँ पे जहाँ पे हम ऑफ कोर्स कॉड एम की सेगमेंट के अंदर घुस चुके हैं ऑफ कोर्स वी गॉट वन गेम डन अब दूसरे गेम की तरफ हम बढ़ेंगे जहाँ पे ऑफ कोर्स वी डू नीड टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस द एनालिस्ट्स एंड कास्टर्स वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी नन अदर दैन मैक वाइपर एंड इट इज वेल मेजर बीस्ट यप थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड मैं बहुत ज्यादा पंप अप हो चुका हूँ मेरे को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं हम देखने वाले हैं अब कुछ ऐसे गेम प्ले कुछ ऐसी टीम्स को जिन्होंने अपने नाम का डंका जो है वो पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजा चुका है एब्सोल्युटली एंड वही नेम्स की तरफ अगर हम बात करें तो लेट्स मूव ऑन टू द ब्रैकेट्स जहां पे ऑफ कोर्स हम व्यूअर्स को रिकैप करवाएंगे कि अभी तक जो हमारा पहला BO3 था वहां पे टीम एक्सेस वाइटैलिटी के अगेंस्ट 2-0 आगे बढ़ती हुई और अब हमें देखने को मिलेगा गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स गोइंग अगेंस्ट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जहां पे पहले मैंने प्रेडिक्शन मांगी थी हमारे एनालिस्ट कास्टर्स से तो वहां पे मैक वाइपर ने चूज करी थी गॉडलाइक एंड रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स वाज लेफ्ट फॉर मेजर बीस्ट लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रेडिक्शन सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं बट गेम प्ले गारंटेड एग्रेसिव रहेगा लेट्स जस्ट सी एग्जैक्टली गेम बिल्कुल एग्रेसिव रहने वाला है इस बात में कोई वो तो गारंटी दे सकते हैं हम एग्जैक्टली वो गारंटी है लेकिन हाँ यहाँ पे जो चल रहा है गॉडलाइक वर्सेस रेवेनेंट उनमें से कौन सी टीम आगे जाने वाली है ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली एंड गॉडलाइक की बात कर ही रहे थे तो कहीं ना कहीं ध्यान में मेरे आते हैं न्यूट्रिनो लर्न जिस हिसाब से इनका आज के दिन में एक डंका रहा है उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कहीं ना कहीं सेम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमें लेके नजर आएंगे एंड नाम ले ही रहते प्लेयर्स आ चुके वी हैव न्यूट्रिनो ऑन द बॉटम राइट स्क्रीन बॉटम डाउन स्क्रीन पे हमें नजर आएंगे मिडिल सेंटर में वहां पे ब्रोज एंड कहीं ना कहीं लर्न बर्न्स एंड ट्रंक्स कहीं ना कहीं बातें चल रही काफी खुश मिजाज हमें नजर आ रही है ये जरूरी होता मैच से पहले स्पेशली हार्ड पॉइंट मैप जहां पे आपको सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता है पूरे मैच के दरमियान उसके पहले ये थोड़ा चिल माहौल थोड़ा शांत करने के लिए जस्ट टू लेट योर नर्व सेटल डाउन एंड वहीं पे रेवेनेंट के प्लेयर्स भी हमारे बट लेट्स जस्ट सी इस मैच में एक बार फिर से क्रॉसफायर के ऊपर शुरुआत इस हार्ड पॉइंट का जी हाँ हार्ड पॉइंट यहाँ पे मोड रहने वाले हैं मैप की बात करें तो क्रॉस फायर रहने वाला है जैसे कि आपने बताया है यहाँ पे और यहाँ पे शंख बच चुका है यहाँ पे जो हमारी रणभूमि है सब के सब प्लेयर जो है खिलाड़ी जो है तैयार हो गए हैं और पहला हार्ड पॉइंट बन के तैयार है 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप इससे स्कोर ले सकते हो अपने नाम पे और 2 प्लेयर को देखते ही देखते डाउन करना चाह जरूर रहे थे यहाँ पे ब्रोस एक प्लेयर को पिक ऑफ भी करते थे लेकिन हाँ दूसरे प्लेयर से यहाँ पे डाउन होते नजर आए गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स अपने नाम पे हार्ड पॉइंट को सिक्योर कर चुके हैं और ये मेरे को लगा कि बहुत देर तक जाने वाला है अब ये अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ जाएंगे होल्ड कर लेंगे एंड जी हाँ गॉडलाइक को यहाँ से निकालना खदेड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आरएनटी के लिए नजरे रहेंगे मेरी आरएनटी जैसे आपने बात किया ज़ायरो एंड बोन्स के ऊपर आज दिन की शुरुआती में काफी करीबी से हम दोनों देख रहे थे इन प्लेयर्स को एंड उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से खुद को ऊपर रखा था बट फिलहाल की बात कीजिए तो गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स 26 एंड 0 पे अभी भी रेवेनेंट सवार है जी हाँ लेकिन आपके बोलते ही 4 अंक इन्होंने कर लिए तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा आप इनके लिए लकी साबित हो रहे हो हालांकि मैंने ये प्रेडिक्ट करा था ये साबित होना है लकी मेरे को गॉडलाइक के लिए ओके फाइन ऑलराइट यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम बात करें ब्रॉस की यहाँ पे फिनिक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी प्राइस फाइटर्स ने अपना नाम ले रही और मैं बोलना चाहता हूँ ये ग्लव्स मुझे भी चाहिए मैं इसके बाद तो मैं जरूर लाऊंगा लेकिन शानदार तरीके से मैं बोलूंगा ये आपको एक मूवमेंट स्पीड दे देते हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि ब्रोस आपको पहुंचा रहे हैं वो मूवमेंट स्पीड लेके अंदर पहुंच चुके हैं हार्ड पॉइंट को अपने नाम पे करना चाहेंगे एक सामने ग्रेनेड इन्होंने अच्छा टॉस जरूर करा लेकिन उससे कोई वैल्यू जो है वो जनरेट नहीं हुई हार्ड पॉइंट इन्होंने अपने नाम पे सिक्योर कर लिया और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गॉडल के हाथ में हार्ड पॉइंट रहने वाला है 55 के प्लेयर्स वो एक लंबा रोटेशन ले रहे हैं आप देखिए जरा मिनी मैप की तरफ तो आपको अब जाते हुए कहीं 3 नंबर का जो खिलाड़ी है जिसका नाम है एबिस जो कि आईजीएल है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के वो रहने वाले हैं काफी टाइम से ये इकलौता प्लेयर ब्रोस पिछले 15-20 सेकंड से यहाँ पे हार्ड पॉइंट बनने के पहले से ही वो जब लॉक आपको नजर आता है इस तरीके से तो कहीं ना कहीं फिर बहुत जल्दी निकल जाएंगे 58-4 का ये स्कोर लाइन एंड वो काफी मंत्र मुग्ध करने वाला किल एनिमेशन हमें देखने को मिला देखो यार मैं आपको एक सच बात बताता हूँ आज मैकवाइपर अब बताइए तो आज इंडिया में जी हाँ भारत में गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को इस लाइनअप को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाता है लेकिन आरएनटी की तरफ से वो कोशिश जरूर करी जा रही है अभी भी 14 सेकंड का हार्ड पॉइंट जो है वो आरएनटी के पास आ रखा है और ये अपने आप को इस चीज से कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं एंड मैं देख पा रहा हूँ जी हाँ एक शानदार तरीके से होल्ड बना रखा है इस हार्ड पॉइंट में देखते देखते 4 सेकंड बचेंगे 3 सेकंड बचेंगे 2-1 और अब हार्ड पॉइंट को निचोड़ा जा चुका है अब अगले हार्ड पॉइंट में इनको शिरकत मारनी पड़ेगी अगर आप देखो तो वो ब्लू कलर की टीम कोई और नहीं वो हमारे रेवेनेंट के प्लेयर्स है मैप पे पूरे स्प्रेड आउट है एंड वहीं एक गुच्छों में चल रही है पूरी एक दल दस्तावेज के साथ एक टोली बना के चल रही है हमारी गुरिल्ला स्क्वाड के अंदर गॉडलाइक के प्लेयर्स एंड पूरी तरीके से फिलहाल के लिए तो एकदम थाम दिया गया है अंकुश लगाने में पूरी तरीके से सक्षम एक के बाद एक ब्रॉस यहाँ पे किल निकालते हुए इंस्टेंटली
3 फिनिश निकाला, बट उनको शांत करने में थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल रेवेनेंट के प्लेयर्स। 32-80 का स्कोर लाइन, ये हार्ड पॉइंट अभी भी गॉड लाइक के खाते में जाता हुआ, अगर अगला 30 पॉइंट गॉड लाइक के खाते में चला जाएगा तो फिर जो डिफरेंस है जो अभी 50 का है वो बढ़ के हो जाएगा 90 का लगभग। जी हाँ, बिल्कुल रहने वाला। लेकिन गॉडल के प्लेयर्स शानदार तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 सेकंड रहेंगे उनके पास, अगर 24 सेकंड को उन्होंने अपने नाम पर रख दिया तो एक शानदार लीड जो है वो जनरेट करते हुए नजर आएंगे। और आरएनटी का गेम अभी तक तो मुझे कुछ खास देखने को दिखा नहीं है। अगर आप देखिए, अब बोला जैसे ही आपने वैसे ही वहां पे ये हार्ड पॉइंट छीन लिया गया। इंडिया की इकलौता प्लेयर जायरो यहाँ पे कंट्रोल में नजर आ रहा है, पूरी तरीके से हार्ड पॉइंट को अपने नाम करते हुए, बट इंस्टेंटली शटिंग डाउन। गॉड लाइक के ट्रंक्स आएंगे जरूर एंड काफी करीब। यहाँ पे शॉर्टी का इस्तेमाल करने की कोशिश थी जरूर गॉड लाइक के प्लेयर्स के द्वारा, बट फिर से एक बार हार्ड पॉइंट लॉक होने वाला है। एंड वहां पे ऑलरेडी प्लेयर्स प्रेजेंट है गॉड लाइक के साइड से, बारंबार हमें देखने को मिल रहा है जहां पे अलग अलग प्लेयर मूव इन कर रहे हैं। रेवेनेंट के साइड से एक गुच्छे में एक टोली बना के यहाँ पे गॉड लाइक के प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश, इंस्टेंटली पिस्टल से एक शॉट निकाला जरूर। रेवेनेंट थोड़ा सा कमबैक के मूड में शायद आ चुके हैं। जी हाँ, रेवेनेंट बिल्कुल कमबैक करना चाहिए। मीनो बोन्स है, इसकी साझेदारी दिखाई दे रही है। मास्टर भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्टर थोड़े से गायब जरूर थे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स से, लेकिन हाँ इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दिया। और मास्टर मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छे प्लेयर है, कम्युनिटी के बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर है और दिखाई देते हैं एक शानदार गेम प्ले के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन चलिए दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं रणभूमि की तरफ। यहाँ पे देखते हैं जो स्कोर लाइन है वो आपको देखने को मिल रही है 72-98। शानदार तरीके से अब एक के बाद एक जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं आरएनटी अपने खाते में लेके जा रही है। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है, आप देखिए कितना ज्यादा क्लोज हो गई है। मेरे को लग रहा है ठीक है गॉड लाइक कहीं ना कहीं चाह रही है कि यार थोड़ा सा इंटेंस बना लेते हैं इस मैच को। ऐसा लग जरूर रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे प्लेयर्स को रोका जा रहा है। अगर आप देखो तो पूरा स्पॉन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे गॉड लाइक का स्पॉन है, वो ब्लू मार्कर्स में कोई और नहीं, वो रेवेनेंट के प्लेयर्स हैं, उनको पूरी तरीके से रोका जा रहा है। एंड हार्ड पॉइंट के अराउंड सिर्फ 2 प्लेयर कॉन्स्ट्रिक्टेड हमें नजर आ रहा है रेवेनेंट के साइड से। एंड जिस चीज की आप बात कर रहे थे, पूरे मूड में आ चुके हैं रेवेनेंट के प्लेयर्स, रोकने की पूरी कोशिश है। ये हार्ड पॉइंट भी अगर भुना के लेके चले जाते हैं जो थोड़ी देर पहले रेवेनेंट के पास था, अब कहीं ना कहीं गॉड लाइक के पास जा चुका है 100-101। एंड यहां से रुकनी नहीं चाहिए पॉइंट टेबल। अगर यहां से 48 सेकंड में से अगर 40 भी लेके जाते हैं फिर 150 में का आंकड़ा काफी करीब आ जाएगा एंड जीत इनके काफी करीब आ जाएगी। 41 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड बचे हैं, 39 बचे हैं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से अभी तक हार्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं गॉड लाइक के हाथ में ही है। और ये जो लीड है, ये जो अंक है, ये सारे के सारे किसकी झोली में जाने वाले? गॉड लाइक के। अभी न्यूट्रिनो की एक शानदार आरपीडी चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं बोलना चाहूंगा रैंक में ना, जब आप रैंक मैचेस खेलते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, तो इंडियन सर्वर में आपको दिखाई देगा ये जो गॉडल न्यूट्रिनो एक तरह से इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं ना आरपीडी की, ये बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे रैंक वॉरियर्स में दिखाई देंगे कि रैंक वॉरियर कहीं ना कहीं ये चीज खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लर्न बीइंग लर्न, यहाँ पे मास्टर को थोड़ी सी पनिशमेंट देते हुए, और यहाँ पे आरएनटी आपको सिर्फ एकदम थोड़ा सा रिसेसिव में दिखेगी। और चंद मिनटों का ये मिनट में नहीं, 5 सेकंड, अगली 5 सेकंड उल्टी घड़ी गिन लीजिए, बिकॉज गॉड लाइक के पास ये आने वाला है। मात्र 2 सेकंड चाहिए गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स को, और ये हार्ड पॉइंट चेंज हो गया। सो ओके, ऑलराइट ऑलराइट। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पे गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स अपने नाम पे कर पाएगी, जो कि एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब मेरे का इसका आंसर सबको पता है कि गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स को सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को और वो हट जाएंगे, और कहीं ना कहीं मैं देख पाऊंगा कि 2 सेकंड तो आराम से ले लेगी गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं 2 सेकंड नहीं लेने दिए गए हैं। एग्जैक्टली। बट अब आई गेस कॉन्टेस्ट होते हुए यहाँ पे पूरा एब्सेंस मिला देखने को, रेवेनेंट के कोई प्लेयर्स नहीं थे, उनको फिनिश ऑफ किया गया। एंड गॉड लाइक अपना पहला मुकाबला इस BO3 का अपने नाम करते हुए, एंड रेवेनेंट को एक कमबैक की आवश्यकता रहेगी अगले मैच के अंदर। अगर आप प्लेयर फेस कैम की बात कर लीजिए, पहले खुश थे बट कहीं ना कहीं मैच के बीच में वो जो इंटेंस एक्शन बनता है तो लाजमी बनता है प्लेयर्स उस मोड में चले जाएं। अभी भी अब अगला बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला आएगा जरूर मेजर बीस्ट। जी हाँ, लेकिन मैं ब्रोस को देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा गुस्से में जरूर दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन प्लेयर्स की, मैं गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की भी बिल्कुल बात करना चाहूंगा। मैसिव रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द टीम। इतने ज्यादा तरीके से आज बिजी शेड्यूल था सब टीम्स का, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ इतना बढ़िया गेम प्ले दिखाया है तरफ से, तो कहीं ना कहीं आई हैव सम मैड रिस्पेक्ट फॉर देम। एग्जैक्टली, आई मीन हैट्स ऑफ टू दीस गाइस। जिस हिसाब से ये सुबह से अपने इस फेवरेट गेम की तरफ लगातार अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, एंड देन एक बार फिर से ये ताइवान एक्सीलेंस कप में फिर एक बार शिरकत करते हुए नजर आए। उसको बखूबी सिर्फ आई ही नहीं है वो प्रेजेंस, वो अपना अटेंडेंस सिर्फ नहीं, वो हाजिरी नहीं लगाए हैं अपना खेल का भी प्रचंड तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़े रिलैक्स मूड में फिलहाल के लिए हमारे रेवेनेंट के प्लेयर्स
जायरो, अब इनकी बात कर रहे थे, जायरो की बात करते हैं। जिस तरीके से इस मैच में लगभग 15 से 17 टोटल फिनिश निकाले थे। हाँ, हार्ड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फिनिश निकालना, अनटिल अनलेस अगर आपके प्लेयर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो हार्ड पॉइंट का लगातार कॉन्टेस्टेशन जारी रखे। बट लेट्स जस्ट सी मीनो का भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा इस मैच के अंदर। जी हाँ, वो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा जरूर था मीनो का, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जायरो के ऊपर। जायरो एक शानदार स्नाइपर है, शानदार गेम यहाँ पे दिखाते हैं अपना गेम, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अभी मैं देख पा रहा हूँ गॉडल की टीम को, और गॉडल की टीम लर्न थोड़े से शर्मीले से यहाँ पे साबित जरूर हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनकी शक्ल हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, गुस्सा में अपना कैमरा ऑफ कर आई गेस उनको गुस्सा, आई मीन ये इस टीम के अंदर ना पॉजिटिविटी बहुत है। मैं एक बात तो इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी टू कट यू ऑफ, इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। काफी ज्यादा एक अब वो माइंडसेट जो था, वो जो मानसिकता होता, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आई गेस अब शायद खुश हो गए होंगे क्योंकि हमने इनकी नाम ली तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि यस द कास्टर्स आर टॉकिंग अबाउट इट एंड यस वी हैव योर फेवरेट प्लेयर लर्न सबसे टीवीसी के ऊपर। बट मेजर भी साहब कुछ कह रहे थे। जी मैं यही कह रहा था कि इन टीम्स का, इस टीम का, स्पेशली इस टीम का मैं माइंडसेट जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कितने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से खेलते हैं। इनको पता है कि ठीक है, एक टूर्नामेंट में जो हुआ वो उस टूर्नामेंट की बात है, ये नया टूर्नामेंट है, ये नया दिन है, ये नया मौका है, अपने आप को दोबारा से इंप्रूव कर सकते हैं, और वो चीज ये टीम जो है वो करके दिखाती है हमेशा। एग्जैक्टली एंड वो BO3 में अभी बस कुछ और सेकंड के देरी रहेगी, उसके बाद सीधा हम उस BO3 के दूसरे मुकाबले में जाएंगे। हार्ड पॉइंट का मैच रहने वाला। पिछले बार वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेट सेट में टीम एक्सिस ने हराया था वाइटैलिटी को, एंड आप बात कर ही रहे थे मॉन्क कितना मिस आउट किए वहाँ पे मॉन्क, बिकॉज ये तो गेम चलते रहेगा। बट पिछले गेम के अगर थोड़ी सी रिकैप करे एंड दर्शक को भी वाकिफ करा दे तो पिछला मुकाबला जो BO3 का था तो उसमें कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी हारते हुए नजर आई थी, एंड टीम एक्सिस जिनको अब तक उस हिसाब से नहीं जाना जाता था, मैं उस चीज से बिल्कुल भी अग्री करूंगा, मैं पूरी तरीके से अग्री करूंगा। 3000 टीम जैसा कि ब्लॉटर ने बताया था हैज बीन कंप्लीटली टर्न डाउन, एंड अब फाइनल स्टेज पे यहाँ पे मौका मिला है जहाँ पे टीम एक्सिस ने खुद का बोलबाला रखा। बट दैट वाज द प्रीवियस मैच। इस मैच की बात करें तो 1-0 का लीड ऑलरेडी गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के पास है, एंड एक बार फिर से इस मैप के ऊपर ये हार्ड पॉइंट का मोड रहने जरूर वाला, एंड वो आपका जो पंचिंग बैग है जिससे आपको एजिलिटी बहुत तेजी से मिलता है। आई मीन पंचिंग बैग नहीं, हमें थोड़े से ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं, पंचिंग ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अगर बात करें मैप कौन सा है, मैप रहने वाला है समिट का। थोड़ा बर्फीला मैप है, थोड़ा बर्फ वाला माहौल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गॉडलाइक का बोलबाला नहीं हो पाया। यहाँ पे शुरुआत जो करी गई है वो करी गई है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के द्वारा, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम देख सकते हैं कि गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स आई तो जरूर थी, न्यूट्रिनो पनिशमेंट जो है मास्टर को देना चालू भी कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है खाता मैं बोलूंगा खुला नहीं है गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स का। एग्जैक्टली अब जैसे ही आपने बोला एक पॉइंट उन्होंने खुद का नाम किया, बट ये पूरा हार्ड पॉइंट, स्टार्टिंग वाला हार्ड पॉइंट कहने की रेवेनेंट अपने नाम करने में सक्षम रहने वाली है जिस हिसाब से यहाँ पे गेम प्ले जा रहा है। बिकॉज अब तक तो रेवेनेंट का उस हिसाब से रेवेनेंट का जाने वाला, बिकॉज अब तक तो गॉडलाइक का उस हिसाब से हमें रेसिस्टेंस नहीं ऑफर हुआ है। ट्रंक्स काफी तेजी से कोशिश कर जरूर रहे हैं। फेनिक एंड टाइप 25 लगातार इस मेटा में, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालिए। मैच दर मैच, मोड दर मोड चेंजेस होते जरूर हैं, बट हार्ड पॉइंट में थंपर, फेनिक एंड टाइप 25 आई गेस इसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप 25 का जो मेटा है इससे मैं भी खुश हूं, तो मैं कुछ विपरीत नहीं बोलना चाहता इसके लिए, क्योंकि टाइप 25 एक ओजी वेपन है। ओके मीनो को काफी अच्छा डैमेज मिला था, बट मीनो ने एक शानदार प्रकोप यहाँ पे दिखा दिया, अपनी सेंट्री गन भी वहां पे लगा दिया। सेंट्री गन से मुझे लग रहा है एक दो पिक तो जरूर निकलेंगे। एग्जैक्टली एंड ऑलरेडी एक पिक निकालते हुए हंटर के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी स्कोर स्ट्रीक्स एंड यूजर्स है वो हमें देखने को मिल जरूर रहा है। ऑपरेटर स्किल्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे प्लेयर्स अपने साइड से करते हुए हमें नजर आ रहा है। फेनिक के साथ एक के बाद एक यहाँ पे लर्न आगे बढ़ने की कोशिश, जिस एरिया को जो आप बहुत पसंद करते हो इसको लक्ष्मण झूला बोलने का, ये हमेशा से एक ओपन एरिया बनता है, एंड यहाँ का जो केओस होता है ये सबसे मजेदार होता है। आई गेस तीसरे ऑल्टरनेटिव में हमेशा यहाँ पे बनता है जब सेंट्रल लाइंस पे वहाँ कंप्यूटर के अराउंड जब वो हार्ड पॉइंट बनता है, उसके जब नेक्स्ट हैंड साइड पे जैसे ये हार्ड पॉइंट बनता है इसी लक्ष्मण झूला के अराउंड बनता है। जी हाँ, वो चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन M13 का प्रकोप भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। एक बार स्कोर लाइन पे नजर मारते हैं, बिकॉज स्कोर लाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं रेवेनेंट जो है वो कहीं ना कहीं अब लीड पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड, और ये एक पॉइंट, एक सेकंड जो है वो निचोड़ के अपने नाम पे रख चुके हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, और अब एक बहुत अच्छी लीड पे कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स अपना ए गेम नहीं दिखा रहे इस पूरे मैच में। मे बी चाह रहे होंगे वो तीसरे मैच ताकि दर्शक और देर तक इंगेज रहें, बट अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं फिर वो बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे।
ए गेम की बात कर रहे थे यहाँ पे मास्टर एंड मीनो, जिनकी काफी हम तारीफ कर रहे थे, वो काफी जबरदस्त तरीके से आ रहे थे बिकॉज अनाइलेटर का खेल यहाँ देखने को मिल रहा है, बट मीनो को फाइनली सीम्स लाइक शटडाउन करने की कोशिश की जरूर गई थी, बट असक्षम। एक हंटर क्लियर ड्रोन का यूज किए मीनो, बट उसमें उनको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। जी हाँ, लेकिन मीनो को डाउन कर दिया था प्रेडेटर मिसाइल से, वो भी न्यूट्रिनो के। मैं बोलना चाहूंगा न्यूट्रिनो एक बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी सारी ऑपरेटर को सारी स्कोर स्ट्रिक्स को यूज करते हुए नजर आते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे यूटिलिटीज का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, और यहाँ पे ट्रॉफी सिस्टम नहीं लगती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। एक ग्रेनेड न्यूट्रिनो का 2 पिक लेता हुआ जा रहा है, मास्टर ने यहाँ पे 2 पिक ले लिए, और हम देख पा रहे हैं कि अब हार्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं गॉडलाइक के हाथ में जा चुका है गॉडलाइक के हाथों में, एंड कहीं ना कहीं छीनना बहुत ही मुश्किल। इंस्टेंटली लर्न ने यहाँ पे 3 पिक निकाला एंड रेवेनेंट को बोला ठहर जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, बिकॉज अभी भी हमारा उसी तरीके से प्रचंड बहुमत है इस मैच के अंदर। थोड़ा डिफरेंस पॉइंट में देखने को मिल रहा है 42 एंड 100। रेवेनेंट को रोकना होगा किसी भी तरीके से, अगर नहीं तो गॉडलाइक से थोड़ा सा दूर जा चुका है मैच। ये इसी प्रकार का मैच हमने पिछली बार देखा था, एंड इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं रेवेनेंट कमबैक करना स्टार्ट की थी सेम स्कोर लाइन पे। क्या गॉडलाइक कर पाएंगे, इन्हें एक बहुत बड़ा सवाल। 50 सेकेंड का ये पूरा हार्ड पॉइंट रेवेनेंट के पास अगर रह जाता है, एन इजी पीजी विन हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वो होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हमारे पास यहाँ पे आ चुके 37 सेकंड 35 सेकंड 34 33, और यहाँ पे अब दोबारा से रेवेनेंट स्पोर्ट्स ने ये हार्ड पॉइंट अपने नाम पे ले लिया है। एक बहुत बेहतरीन तरीके से साझेदारी कर रही है, एक टीम वर्क दिखाई दे रही है, सिनर्जी कहीं ना कहीं रेवेनेंट स्पोर्ट्स की इस मैप में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जिसके जो मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज का जरूर यहाँ पे बोलबाला करना चाहूंगा, वो ये है कि 127 कर चुके हैं ये पूरी टीम, और यहाँ पे गॉडलाइक के सिर्फ और सिर्फ 51 हुए हैं। एग्जैक्टली एंड कहीं ना कहीं इस समिट के मैप के ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से टीम अपना बोलबाला करते हुए इस बीएलई की तरफ से पुश करने की कोशिश है। एबिस इंस्टेंटली एक ट्रेड निकालते हुए, बट रेवेनेंट के प्लेयर्स न्यूट्रिनो एंड लर्न रुकने का नाम नहीं ले। वो कटाना की जो बात करते हैं, वो जो आपको एजिलिटी देती है, उससे 2 पिक निकाला, एंड ये 56-138 का स्कोर लाइन अब शीघ्र ही अगर ये क्लोज इन नहीं हुआ, बिकॉज फिर से एक बार कंप्यूटर्स एंड केज के अराउंड ये हार्ड पॉइंट बनता हुआ। पहला हार्ड पॉइंट है, यहाँ पे सब प्लेयर्स को पता कि यार कहाँ से क्या पिक निकालना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये जायरो को क्या हो गया, ये प्लेयर से बाकी और किसी से मरना नहीं चाह रही, कह रहे मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। लेकिन चलिए मजाक छोड़ के हम यहाँ पे आते हैं रणभूमि की तरफ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मास्टर और इसी के साथ रेवेनेंट स्पोर्ट्स ने ये वाला राउंड अपने नाम पे निकाल दिया है। और हाँ, अब थम्स अप करते हुए बॉन्स दिखाई दे रहे हैं, यार देख लो हम जीत गए, ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। मीनो बोल रहे हैं अरे थकान दिख रही है एबिस के शक्ल पे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, बट गेम प्ले में ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे बीस्ट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रेवेनेंट को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स इज अ वेरी 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 मैं बोलूंगा घातक टीम है, बिकॉज इनके जो जलवे हैं ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड ही दिखते हैं। बिल्कुल, हमने लीथल देखा भी है गेम के अंदर, एंड लीथल है भी है। तारीफ करना चाहूंगा मैं जायरो, बोन्स एंड स्पेशली मीनो की, जिस तरीके से इस खेल में एक चमत्कारी खेल का प्रदर्शन दिखाया। अब ये बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला अगले गेम पे टिक जरूर जाएगा, जहां पे एक बार फिर से गॉडलाइक एंड रेवेनेंट तैयार रहेंगे। न्यूट्रिनो, लर्न, ब्रोज एंड बर्न्स एक बार फिर से गॉडल के साइड से इस बार मैं देखना चाहूंगा कौन से मैप के ऊपर आएगा, जरूर देखना चाहूंगा मैं। ये मास्टर का थोड़ा सा नाच देखने को मिला था, और मीनो पंप्ड अप हो चुके थे। आप देख सकते हैं वो कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से एड्रेनलिन जो रश है वो हमें उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे फेस कैम जो टीम ने दिखा रखा है यहाँ पे, तो जी हाँ उसी फेस कैम की बात करूँ। बोन्स मुझे लग रहा है जैसे कोई मैच का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर नजर आ रहे हैं। ओह यस, मैं भी बस वो कैलकुलेशन चल रहा होगा किस मोमेंट पे कहाँ थोड़ी सी हमारी भूल चूक हुई, उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश। बट लेट्स जस्ट सी इस मैच के अंदर जो BO3 का तीसरा मुकाबला रहने वाला, पहला गया गॉडलाइक खाते में, दूसरा रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। एक कमबैक जिसकी आप बात करते हो, हार्ड पॉइंट में उतना आसान होता नहीं है गॉडलाइक जैसी टीम के सामने। आप समझिए ये गॉडलाइक है, दिस इज नॉट गॉडलाइक, दिस इज गॉडलाइक। ये इनका खेल एक अलग हिसाब किताब से चलता है, वो चोटी पे हमें नजर आता है, बट कहीं ना कहीं अगले मैच में हमें देखने को जरूर से मिलेगा। थोड़ा सा प्लेयर ने अपना कैमरा ऑफ जरूर किया था, मे बी वो अपने एक्सप्रेशन दिखाने में थोड़े से असहज, बट लेट्स जस्ट सी। अभी भी अगर आप देखें तो मास्टर्स वो लगातार ओके ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भले ही बोन्स बिल्कुल क्लास में बैठ के अपनी जो सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे होंगे, बट मास्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी बिहेवियर से, तो मैं बोलना चाहूंगा ये थोड़े से बैक बेंचर्स लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शरारती वाले यहाँ पे प्लेयर है, और ये चाहते हैं कि भाई मेरा गेम प्ले जो है उसमें भी आप मेरे को देखो कि मैं बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा हूँ, और इन रियल लाइफ में भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लर्न को
बर्न्स को, न्यूट्रिनो को एंड ट्रंक्स को। सबसे बड़ी बात, ट्रंक्स को किसी की कुछ नहीं पड़ी, ट्रंक्स सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में देख रहे हैं, वो गेम में देख रहे हैं। यार ठीक है तुम लोग बातें कर रहे हो, बट उनका सारा ध्यान जो है वो अपनी गेम पर ही है। जी, सबसे अलग आई मीन बाकी सारे प्लेयर जहाँ थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ट्रंक्स पूरी तरीके से एकाग्रचित, वो जो आप योगा की बात करते हो कहीं ना कहीं उसमें खुद को शांत रखने की कोशिश, ताकि अगले मैच में जाने से पहले वो खुद को होल्ड ऑफ करते हुए नजर आए जरूर। महज कुछ ही मिनट में अभी से वो अगला मैच स्टार्ट होगा जरूर, जहाँ पे हमने देखा। बट वापस से मैं उस वार्तालाप पे आना चाहूंगा, पहला मैच जी जहाँ पे टीम एक्सिस ने एक बहुत अच्छी तरीके से चखाया एंड टीम एक्सिस आगे गए एंड टीम वाइटैलिटी को मुंह की खानी पड़ी। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका मेन प्लेयर मॉन्क जैसा प्लेयर, जिस पे पूरी की पूरी टीम, अब ये मॉन्क वो खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है, ये वो धुरी हैं, उनका ना होना टीम वाइटैलिटी को थोड़ा बहुत बैक स्टैप कर गया। I mean, मैं इस बात से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा because I mean, yes, मेरे को free to you're free to लेकिन मैं आपको इसका एक लॉजिक भी बताना चाहूंगा। जी। ठीक है, मैं मानता हूं कि मॉन्क इज अ स्टार प्लेयर, बट हम ये नहीं बोल सकते कि उनके बिना उनकी जो टीम है वो बिल्कुल ही ऐसे हमें बोलने को दिखेगी कि उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रहने वाली। हमने देखा मूनस्कोप, आर्गन अपना बेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, सैम्स जोकोस भी बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन ओजी मैप नजर डालते हैं ओजी मैप के ऊपर। जी हाँ, BO3 का एक डिसाइडिंग मैप जरूर रहने वाला है। स्पेशल फोर्सेस गोरिल्ला स्क्वाड आ चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस में रहेंगे, RNT की टीम गोरिल्ला स्क्वाड में रहने वाली है, गॉर्डन की टीम। और देखिए जी हाँ, बारिश हो जाती है यहाँ पे, अगर सबसे पहले हार्ट पॉइंट में जाते ही पूरा मिड ब्लॉक हो चुका है। हार ना पार कोई नहीं देख सकता है। ट्रेलर के अराउंड ऑलरेडी गॉड लाइक का एक जबरदस्त पकड़ इस मैच के अंदर, वुडन के काफी करीब से, ये नेस्ट के अराउंड पहला हार्ड पॉइंट बना जो हम बारंबार देखते हैं जरूर इस फायरिंग रेंज के अंदर। बट कहीं ना कहीं कम बैक करने की कोशिश रहेगी गॉड लाइक के द्वारा। ये जो भी मैच जीतेगा ऑब्वियसली वो BO3 का श्रृंखला जीतेगा एंड आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे इन द अपर ब्रैकेट फिनाले। देखिए, अब गॉडल एक भले ही हार गई हो बीच का मैच, लेकिन अब वो बिल्कुल भी हार को अफोर्ड नहीं कर सकती है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि गॉडल ट्रंक्स जो अभी हम देख पा रहे थे बहुत ज्यादा सीरियस थे इस पूरी गेम को लेकर, अब वो सीरियस दिखाई भी दे रहे हैं अपने गेम प्ले के अंदर। हालांकि डेथ उनकी हो गई है, वो थोड़ा सा एलिमिनेट हो गए, लेकिन दोबारा रिस्पॉन हो जाएंगे। M13 लेते हुए बर्न्स आए जरूर है, और अभी भी आप देख सकते हैं अब जाके कहीं ना कहीं खाता जो है वो रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का खुला है, और अब वो चाहेंगे कि इस पूरे हार्ड पॉइंट को अपने नाम पे रखना और होल्ड करके बैठना। एग्जैक्टली एंड अगर आप देखिए तो जब ये खिसकेगा या हार्ड पॉइंट कभी ना कभी ट्रेलर की तरफ खिसकेगा या कमांड सेंटर की तरफ आएगा, जो प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल रहेगा गॉड लाइक के पास से। खींचना मैच बहुत ही मुश्किल रहेगा एंड कहीं ना कहीं इस स्पॉन के अराउंड जहां से हमें स्पेशल फोर्सेस निकलते हुए नजर आते हैं, वहीं पे ये हार्ड पॉइंट टिक के बैठ चुका है, जहां पे ऑलरेडी कंट्रोल है रेवेनेंट का। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिए तो सारे एंगल को होल्ड किया जा रहा है। अगर ट्रेलर से कोई प्लेयर आता है तो मीनू वहां प्रेजेंट है, मास्टर मिड को कंट्रोल कर रहे हैं कि उस नेस्ट की तरफ से अगर कोई प्लेयर आए, काफी जबरदस्त। एंड मास्टर का सारा स्कोर स्ट्रिक ऑलरेडी ऑन है। किसी मौके पे यहाँ पे अब ये तब यूज करेंगे ना जब वो हार्ड पॉइंट का कुछ लास्ट स्टेज होगा, उनको लगे कोई प्लेयर छिलने जा रहे हैं, या स्टार्टिंग ऑफ द हार्ड पॉइंट, जो हार्ड पॉइंट जब लॉक होता है, जैसे ही वहां पे 5 सेकंड बाद वो हार्ड पॉइंट की शुरुआत होने वाली थी, बट उसी बीच यहाँ पे हंटर किलर ड्रोन की यूज से ज़ायरो ने कुछ पिक्स निकाला जरूर। अभी भी रेवेनेंट यहाँ पे लीड करते हुए गॉड लाइक खाते में, जो लीड था गॉड लाइक के पास वो छीन लिया गया, पूरी तरीके से छिन विद छिन गॉड लाइक जी। बहुत ही ज्यादा विभिन्न तरीके से आपने यहाँ पे वार्तालाप करने चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा दाद देता हूँ इस बात की। लेकिन अगर मैं नजर मारना चाहूंगा यहाँ पे गोरिल्ला स्क्वाड, जिसमें गॉडल आ चुकी है, अभी भी एक नेल बाइटिंग परफॉर्मेंस में दिखाई जा रही है। 49 रेशियो 45 का स्कोर मेंटेन कर दिया गया है, और गॉडल ये क्या कर रही है, आई मीन गॉडल क्या कर रही है, अब जाके कहीं ना कहीं 1 पॉइंट की लीड हमें देखने को मिली है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने बीते कुछ दिनों में अपना गेम प्ले बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव करा है, ये चीज हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रेलर के पास से बंद जरूर से गया है, जहां एक बार फिर से रेवेनेंट के पास कंट्रोल रहने वाला है एंड मास्टर बोन्स बाहर लर्क कर रहे हैं। अगर वो वुडन से कोई प्लेयर्स निकलते हैं, इस चीज से अनजान है गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स। एक एंड पे कहीं ना कहीं एबिस को शट डाउन फाइनली किया गया है एंड ये ओपनिंग रह सकता है गॉड लाइक के लिए। बिल्कुल यहाँ पे एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पे खुद को अंदर ले जाते हुए उस हार्ड पॉइंट के अराउंड एंड दोनों एंट्री को ब्लॉक किया जाएगा। बट एबिस यहाँ पे अगर फिनिश निकाल लेते हैं तो काफी अच्छा रहता, बट गॉड लाइक इस पूरे ट्रेलर के हार्ड पॉइंट को अपने नाम करते हुए। जी हाँ, लेकिन मैं देखना चाहूंगा 61 रेशियो 65 चल रहा है, और अभी जाके हमें कंटेस्टेशन देखने को मिल रहा है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे चाहिए कि अपने नाम पे रख ले, लेकिन गॉड लाइक वो होने नहीं देगी, बिकॉज ये एक डिसाइडिंग मैच रहने वाला है। बात करेंगे 2 बेहतरीन टीम, बात करेंगे 2 ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सिलेक्ट हो गई थी, स्टेज 5 खेल चुकी हैं, और हम
देख रहे हैं उन्हीं टीम्स को आपस में भिड़ते हुए, आपस में कंपीट करते हुए, और यहां पे दिखाई दे रहा है गॉड लाइक का जलवा। जी हां, 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड, 3 सेकंड, और इस सेकंड्स को निचोड़ दिया जाएगा, अपने नाम पे कर दिया जाएगा। हम देख चुके हैं यहाँ पे 62 रेशियो, 90 का स्कोर, और 90 हो चुके हैं गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के हाथ में। और अब आप देख सकते हैं कि वुडन पे कहीं ना कहीं आपको हार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, और ये वुडन वाला हार्ड पॉइंट एक तरह से बोल सकते हो, अगर पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अपने नाम पे कर दिया जाएगा। शानदार तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक और पिकअप करते हुए, लेकिन रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ये बिल्कुल नहीं होने देगी। 73, 74, 75, और ये लीड आगे लेके जा रही है। लेकिन हाँ, गॉडलाइक अब आ चुकी है, और गॉडलाइक कुछ ना कुछ कमाल दिखाने वाली है। अंकित, एग्जैक्टली, एंड गॉडलाइक क्यों ना दिखाए इतना बड़ा नाम, एंड उसी हिसाब के काम भी हमें देखने को मिल रहा है। वुडन के अराउंड बना जरूर है, बट मैं देखना चाहूंगा कौन से वो प्लेयर्स आते हैं जो अपने एक्सेस 1 गोलायत का पूरी तरीके से नेस्ताना बूथ किया जाएगा। फिलहाल के लिए तो स्मोक डिप्लॉय किया गया इस वुडन के अराउंड, जहां पे चारों प्लेयर्स भंवरों की तरह मंडरा रहे हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स के द्वारा। किसी भी रेवेनेंट को प्लेयर्स को यहां पे मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये बैंगेबल एरिया होता जरूर है जहां पे बुलेट पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है, बट अगला 14 सेकंड ये पूरी तरीके से गॉडलाइक के पास जाएगा। बट उसके बाद पेचीदा चीज ये बन जाता है कि क्या गॉडलाइक अगले हार्ड पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट कर पाएंगे या नहीं। सेंट्री गन्स डिप्लॉय किया जाने की कोशिश शायद रह सकती है स्नाइपर नेस्ट के अराउंड बाय द प्लेयर्स ऑफ रेवेनेंट। आप देखिए थर्ड नंबर का प्लेयर गॉडलाइक की तरफ से बर्न्स जो है वो जा चुके हैं। जी हाँ, एक रोटेशन लेना स्टार्ट कर लिया है। 4 नंबर के प्लेयर ने भी कर दिया, लेकिन 4 नंबर के प्लेयर को रोक दिया गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। 80 पॉइंट, जी हाँ 80 पॉइंट अपने नाम पे कर दिया, और इसके साथ काउंटिंग है वो पॉइंट रुक गए, लेकिन हार्ड पॉइंट किसी के नाम नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब आ चुका है, रेवेनेंट ने अपने नाम पे कर लिया, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 89 का स्कोर, 90, 91 का स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के हाथ में है। लेकिन जीत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है गरिल्ला स्क्वाड के, जो कि है गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली, गॉडलाइक की स्पोर्ट्स के पास एक बहुत अच्छा मौका रहने जरूर वाला है। बॉन्ड्स पूरे मैच में 15 फिनिश पॉइंट अपने नाम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए, और ट्रेलर के अराउंड प्लेयर प्रेजेंट है, जहां पे हार्ड पॉइंट सेंटर लाइंस पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्लैंक थी रेवेनेंट के साइड से निकालने के लिए, उसको भी पूरी तरीके से वहां पे रोकथाम एंड अंकुश लगाने में पूरी तरीके से सक्सेस एंड सफल। अगला 15 सेकंड में अगर 14 भी गॉडलाइक के खाते में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इनसे जीत कोई भी नहीं छीन सकता। आई मीन गॉडलाइक से जीत छीनी एक बहुत बड़ी बात है। आप शेर के मुंह में अपना हाथ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो आ सकती है। लेकिन 141 पे रोक दिया गया है, और ये स्कोर अब देखते हैं ये वाला हार्ड पॉइंट किसके नाम पे। पिछली बार 3 पॉइंट पे गॉडलाइक को रोका गया था, इस बार 9 पे। लेट्स जस्ट सी इस बार क्या होता है। ओवर टू मेजर बीस्ट। बिल्कुल। लेकिन न्यूट्रिनो इस बार गुस्से में है। न्यूट्रिनो बोल रहे हैं कि यार आरपीटी का जलवा देख लिया, अब मेरी यहाँ पे होलगर का जलवा देख लो। एक के बाद जो सामने प्लेयर आ रहा है उसको डाउन कर रहे हैं। लेकिन ओके, कंटेस्टेशन हो गया, और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स से अपने नाम पे रख दिया। 122, 123, 124 का स्कोर लाइन अपने नाम पे करते हुए 40 सेकंड है। अगर इस 40 सेकंड को निचोड़ लिया गया और अपने पॉइंट्स जो है अपने खाते में डाल दिए गए, तो कहीं ना कहीं देख पाएंगे एक शानदार गेम प्ले जो है वो भर के आता हुआ रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स की साइड से। रेवेनेंट के स्पॉन के पास जब भी ये हार्ड पॉइंट बना है, कहीं ना कहीं रेवेनेंट भुनाते हुए नजर आए, एंड इंस्टेंटली यहाँ पे शट डाउन किया गया है। बस यहाँ पे आएंगे, इंस्टेंटली 2 पिक निकाला गया, बट अब बढ़ चढ़ के खेला जा रहा है। ट्रंक्स का ये स्पैरो अगर बढ़ चढ़ के खेला, तो रेवेनेंट के पास जो जीत थोड़ी देर पहले जाते हुए नजर आ रही थी, ये मुश्किल लगेगी, एंड पूरी तरीके से नेस्ताना बूथ कर दिया गया इस मैच के अंदर। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स, देयर वी हैव इट। ओह माय गॉड यार, ये है गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स, ये है हम सब के लिए, भारत के लिए गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स, जो बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। चाहे कुछ हो जाए, ये हार बिल्कुल नहीं मानेगी। एब्सोल्युटली, और उसके साथ में ऑफ कोर्स बिग कांग्रेचुलेशन यहाँ पे गॉडलाइक की टीम को, बिकॉज ये है टीम जो आगे बढ़ती हुई। लेकिन वहीं पे रेवेनेंट ने भी काफी क्लोज टक्कर दी, एंड अब उनका मुकाबला होगा अगेन लोअर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमें देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स कुछ टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये गेम प्ले काफी क्लोज जाता हुआ BO3 के अंदर, ऑल द वे इनटू द फाइनल फ्यू सेकंड्स। बस वहां पे थोड़ा सा टाइम रह गया, अगर वहां पे वो मिल जाता टाइम रेवेनेंट को, शायद उनका गेम हो सकता था। आई मीन जी हाँ, बिल्कुल, आज कहानी कुछ और होती, मैं क्वाइट करूं। एग्जैक्टली, एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से गॉडलाइक भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एब्सोल्युटली, उसी के साथ अगर हम ब्रैकेट्स की तरफ बढ़े, तो वहीं पे हमें देखने को मिलेगा कि ऑफ कोर्स गॉडलाइक ये BO3 अपने नाम करते हुए आगे मूव ऑन करेंगे टू गो अगेंस्ट टीम एक्सेस। लेकिन आज के लिए जो हमारा अभी का अपकमिंग गेम होगा, वो होगा लोअर ब्रैकेट के अंदर BO3 का, जहां पे टीम वाइटैलिटी विल गो अगेंस्ट रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। अब रेवेनेंट ने काफी क्लोज टक्कर दी गॉडलाइक को, क्या वही सेम गेम प्ले वो दिखा पाएंगे वाइटैलिटी के अगेंस्ट, वो हमें देखना पड़ेगा। आई मीन दोनों के दोनों WC टीम है, दोनों की दोनों ऐसी टीम है जो कि स्टेज 5 खेलती हुई नजर आने वाली है, तो हाँ, एक और इंटेंस एक्शन हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर देना चाहिए।
बट टीम एक्सिस एंड गॉड लाइक अब ये जब अपर ब्रैकेट फिनाले के अंदर खेलेंगे तो वो तो कोई एक टीम होगी जो हार के नीचे जाएगी कहीं ना कहीं। अब जो जीतेंगे वो सीधा फाइनल्स के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट उससे पहले वो वाइटैलिटी एंड ऑब्वियसली जिस टीम ने इस मैच के अंदर रेवेनेंट ने वो जो लूज फेस किया उस लूज से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चोट जरूर लगा। ऑब्वियसली आई मीन यू जस्ट गो डाउन ऑन योर मोरल, बट देयर वाज ऑलवेज अ रूम टू मेक अ कमबैक एंड जो भी टीम्स कमबैक करती है कहीं ना कहीं अब ये स्पोर्ट्स का खेल है, हमेशा से वो कमबैक ये सारे प्लेयर्स का एक माइंडसेट होता है। अगर हर प्रोफेशन से आप मिला दिए स्पोर्ट्स जितने भी प्लेयर्स होते हैं ये एक ऐसे माइंडसेट से आते हैं जहां पे कमबैक करना पूरी तरीके से पॉसिबल होता है। वही हमें देखने को मिला पूरे मैच के अंदर, बैक एंड फोर्थ रेवेनेंट जाते जाते भी वो हार नहीं मान रही थी। एंड मुझे याद आ रहा था इस बेस्ट ऑफ 5 के पहले मुकाबले में गॉडलाइक को 3 सेकंड पे रोक दिया गया था जब वो 147 पॉइंट्स के लिए थे। एंड एक चीज इस मैच में जो स्पेशली मुझे अच्छी लगी, जब वहां पे रेवेनेंट के पास वो हार्ड पॉइंट आ रहा था उसको जाने देने नहीं में सक्षम नहीं हो रहे सामने वाली टीम्स, बट फाइनली अब ट्रंक्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ गॉड इस तरीके से अगर खेले तो फिर बहुत मुश्किल बन जाता है सामने वाली टीम के लिए। डेफिनेटली अगेन आई मीन एक गेम जो यहाँ पे हम देख रहे हैं टीम की तरफ से, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, पूरी तरीके से अपना 100% दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या वो तो काफी होगा वो 100% भी, बिकॉज यहाँ पे टीम्स 150% टाइप गेम प्ले भी दिखाते हुए देखी हमें। जो फर्स्ट हमारा था वहाँ पे वाइटैलिटी के अगेंस्ट जो एक्स आगे लेके गई अपने आप को। सो वंस अगेन जब ये टीमों की बात करें काफी मनोरंजक एक्सपीरियंस गारंटेड रहा है, लेकिन अभी भी इट इज स्टिल पॉसिबल कोई भी टीम इन द फाइनल्स जा सकती है, बिकॉज चारों की चारों टीम अभी भी यहाँ पे हैं। लेकिन अब यहाँ से जो जर्नी है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अगर आप यहाँ से अब हारना शुरू किए तो आप सीधा बाहर जाएंगे। यस ओह माय गुडनेस, लाइक कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हो चुका है, हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज अब अगर अब एक सिचुएशन आ चुकी है करो या मरो वाली, बिल्कुल, और वो चीज एग्जैक्टली डू और डाई सिचुएशन, और मेरे ख्याल से अब प्रेशर जो है वो सबके सब टीम्स के ऊपर आ चुका होगा। मैं एग्जैक्टली एंड डू एंड डाई में सबसे ज्यादा जो वो जो तलवार की पगडंडी आपके जो गर्दन पे लटकती है उसमें कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी रहेगी। पिछले बार एक्सिस से हारे जरूर थे, बट इस बार अब दोनों टीम हारी गई हैं। एम एक ही होने वाला है कि इस बार तो जीत, अब उसमें कौन सी टीम्स आगे आती है देखने वाली बात रहेगी। बट स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा ज़ाइरो, बोन्स एंड मीनो जो रेवेनेंट के साइड से इस खेल में काफी अच्छी तरीके से ऊपर उठते हुए नजर आए, एंड वहीं पे गॉडलेक के साइड से जो वो एनाइलेटर का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। बिकॉज एनाइलेटर 1 शॉट 1 किल मौका ही नहीं आपको मिलता, आप कितना ज्यादा वहां पे पीक कर लीजिए, अप्रोन हो जाइए, वहां स्लाइड मार के आपके पास मौका नहीं मिलता है। एनाइलेटर का भी हमने काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल देखा हमें जब उसी के साथ में अगर हम गॉडलेक की एक और चीज के बारे में बात करें तो जो फाइनल गेम था उसके अंदर उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी अपना किया प्लेयर, एंड उससे भी काफी बड़ा उनको मोमेंटम बूस्ट मिला था, एक नए माइंडसेट आया आपके साथ खेलने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो जो ग्राइंड थी अब वो दूसरी तरीके से खेली गई थी, एंड उसका काफी परफेक्ट गेम प्ले हमें ऑफ कोर्स उनकी तरफ जाता हुआ देखा। आई मीन उनका जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स है, लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, उनका सब्स्टिट्यूट प्लेयर सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर था। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो प्लेयर सामने जो खिलाड़ी थे, सामने जो एनिमी खिलाड़ी थे, उनके लिए मैं बोलूंगा एक तरीके से सबसे ज्यादा मेजर थ्रेट था, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उन्होंने टारगेट करने की कोशिश भी करी थी। लेकिन हाँ, एक शानदार गेम प्ले जो है गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे दिखाया है। एब्सोल्युटली एंड वही सेम होपफुली वो कंटिन्यू ऑन रखेंगे, बिकॉज ये जो उनका मोमेंटम शुरू हुआ है यही मोमेंटम से चाहते हैं कि वो चैंपियनशिप के अंदर भी पहुंचे, बिकॉज वहां पे 4 लाख का प्राइस पूल है, 2 लाख रुपए वेट कर रहे हैं जो भी विनिंग टीम होगी, जो हमें ऑफ कोर्स रिजल्ट कल मिलेगा। बट अभी के लिए जो ये गेम्स दिखा रहे हैं, वेल ऑल द टीम्स सुपर स्टोक्ड अप, लेकिन अभी किसी भी तरफ ये पलड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली आई मीन जैसे कि आपने बताया पलड़ा जा सकता है, मौका अभी भी रहेगा बाकी टीम्स जो ऑलरेडी हार चुकी हैं, जैसे वाइटैलिटी एंड आल्सो रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। अब यहाँ से जो जाएंगी फिर बढ़ेंगे वो लोअर ब्रैकेट फाइनल्स, अपर ब्रैकेट फाइनल्स में हमने देखा किस हिसाब से वो ब्रैकेट्स हमें नजर आए। ऑलरेडी गॉडलाइक आगे जा चुकी है, पहले मैच के विनर जैसे ही हमें कॉडम ये पूरे ताइवान एक्सीलेंस कप में देखने को मिला, तो पहले मैच के विनर और ऑब्वियसली सेकंड मैच के विनर वो अपर ब्रैकेट फाइनल में नजर आएंगी जरूर। बट एनी प्रेडिक्शंस और मे बी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप करना चाहोगे, या स्पेशली अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमने काफी करीबी से इनको देखा, जो भी रिसेंट टाइम्स में आज की चल रही है उसमें, एंड यहाँ पे ये दोनों टीम, इन टीमों के बीच का डिफरेंस एक चीज में देखने को मिले, वो थकावट थोड़ी बहुत वो फेस कैम से हमें प्लेयर से नजर आ रही थी। आई मीन बिल्कुल वो थकावट बिल्कुल बनती भी है, बिकॉज आपने बहुत सारे मैचेस जो वो एक दिन के अंदर खेल लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ताइवान एक्सीलेंस का जो टैग आ रखा है कहीं ना कहीं इसके लिए, ये प्राइड के लिए, इस डिग्निटी के लिए वो प्लेयर्स जो है वो खेलना चाह रहे हैं, बिकॉज वही बात है, वो टाइटल बहुत ज्यादा मायने रखता है। एब्सोल्युटली, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे गॉरल का बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला है। एंड अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स एन इंटरव्यू फ्रॉम द टीम ऑफ गॉडलाइक, एंड यहाँ पे गॉडलाइक के लर्न हमें यहाँ पे मिलते हुए। सो लर्न, मेरे को आपसे सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, काफी हेक्टिक दिन चल रहा है आपका आज? हाँ जी। बिल्कुल। मेजर बीस्ट, आपका क्या प्रश्न रहेगा? यप, मेरा लर्न आपसे एक ही क्वेश्चन रहेगा कि आज इतना सारा का सारा आपने गेम प्ले जो दिखाया, इतना ज्यादा दबदबा जो है आपने कहीं ना कहीं पूरी रणभूमि में फैला रखा है, आप किस हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल रख पा रहे हो?
मतलब हम लोग इतना स्क्रिम्स खेलते हैं कि ये सब की आदत है पहले से। ओह वाओ। ऑलराइट, तो आई गेस आई मीन यस, अब लगातार आज पूरा एक दिन हेक्टिक शेड्यूल रहा, सो उसी इर्द गिर्द भी मेरा सवाल है, जैसा कि आपने बताया, अब तो कहीं ना कहीं ये पूरे दिन के अराउंड किस हिसाब से आप शेड्यूल सेट इन करते हो, जो जितने भी हमारे बूस्टिंग ग्रास रूट के प्लेयर्स हैं वो भी देख रहे हो, वो भी सुन रहे होंगे, तो कुछ मैसेज आपके साइड से उनके लिए? देखो, हम लोग खाना पीना सब छोड़ के जब भी मैच होता है हम खेलते हैं। शेड्यूल कुछ नहीं है, जितने मैचेस खेलेंगे और भी खेलेंगे, सोएंगे नहीं, चलेगा। वही होती है डेडिकेशन, वही डेडिकेशन की जरूरत होती है, तो ही आप गॉड लाइक लेवल पे पहुंच पाते हो। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही है आपकी, एंड आशा करता हूं कि वही सेम जर्नी आपकी कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे भी, एज वेल एज द अदर टूर्नामेंट्स जहाँ पे आप हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच लोन अपना टाइम निकालने के लिए एंड जॉइनिंग अस फॉर द इंटरव्यू, अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम द डेस्क। एग्जैक्टली, थैंक यू। वेल अगेन esports not an easy ride, not an easy ride। जैसे उन्होंने बताया, हम अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जाके एंड ऑफ द डे आपका वो मन मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे हम देखने रहे कि वो स्क्रिम्स के अंदर ही अपने आप को इस तरीके से उन्होंने अपने को सेटअप करके रखा हुआ है। रोज का ये तो एग्जैक्टली सो जस्ट अनदर डे इन अनदर esports प्लेयर्स जर्नी। बट उसी के साथ ऐसे मूव ऑन करेंगे बिकॉज यहाँ पे वी हैव सम ऑसम न्यूज टू शेयर विद यू गाइज, because well right off the bat ये है TEGC जहाँ पे हम 8th edition पे पहुंचे हुए हैं, and for that there are these wonderful brands who are of course joining us and showcasing some परफेक्ट हार्डवेयर सिर्फ आपके लिए। उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रेडेटर की तरफ से, जहाँ पे प्रेडेटर का ये परफेक्ट ऑसम लुकिंग लैपटॉप होएगा जो हीलियस है, विच इज राइट देयर ऑन योर स्क्रीन्स, एंड ये है प्रॉपर i7 10th gen विद 144 हर्ट्ज नॉन ग्लेयर स्क्रीन के साथ में, एंड जो आपको ये पावर पैक परफॉर्मेंस देके आने वाला है, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू हैव। RTX 2070 होएगा इसके साथ में अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स Windows 10, एंड दिस इज द बीस्ट दैट यू नीड टू हैव इन योर हैंड्स। उसके साथ में मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स वेल यस, आपका लैपटॉप आ गया, आपके पास पावर आ गया, लेकिन अब आपको कीबोर्ड चाहिए, वो कीबोर्ड जो आपको कंफर्टेबली घोस्टिंग करवा पाए, एंड ऑफ कोर्स यहीं पे आता है XPG का ये समनर कीबोर्ड। नाउ दिस इज अ कीबोर्ड जहां पे आप देख पा रहे हैं अब प्रॉपर कंफर्टेबल वहाँ पे मैट के साथ में आता है। आप वहाँ पे अपना रेस्ट करिए एंड गेम ऑन करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक आप वहाँ पे गेमिंग करते हैं, तो थोड़ा सा वो रिस्क के अंदर प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस कीबोर्ड, द समनर कीबोर्ड फ्रॉम XPG विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज ट्रबल्स एज वेल। उसी के साथ अगर हम मूव ऑन करें टुवर्ड्स दिस ऑसम वन another लैपटॉप जो होने वाला है ROG का Flow X13। अब ये एक अलग मिसाल लेके आता है, ये वाला लैपटॉप बहुत ज़्यादा बेहतरीन है बिकॉज इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, प्लस पूरा का पूरा मोल्ड हो जाता है, तो आप एक तरह से इसको टैबलेट बना सकते हो, ये टैबलेट की तरह भी काम आएगा आपके हाथ में। एंड उसके साथ में आपको जो पावर लेके आता है ये विद RTX 30 सीरीज के वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ में आपको मिलने वाले हैं, तो ऑफकोर्स पावर तो बीस्ट है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बीस्ट है ये, तो आपको गारंटेड इसके बारे में और जरूर देखना चाहिए। उसी के साथ साथ जैसा हमने अभी बोला, लो ब्रैकेट का गेम बचा हुआ है हमारा यहाँ पे कॉलम के अंदर, लेकिन उसके अंदर घुसने से पहले हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। स्टिक अराउंड, विल बी राइट बैक।
हेलो एंड स्वागत है आपका फिर से ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप के अंदर 2021 8th एडिशन। यहाँ पे ऑफ कोर्स जहाँ पे हम कॉडेम के अंदर हैं बिजी, जहाँ पे अब हम मूव ऑन करेंगे टू द लोअर ब्रैकेट मैच। उसी के साथ ऑफ कोर्स ऑन द डेस्क वी आर जॉइंड विद मैक 1 वाइपर एंड मेजर बीस्ट। सो अब टीम वाइटैलिटी का स्टार्ट थोड़ा सा डगमगाता हुआ रहा जी। लेकिन अब उनका कंपटीशन जाएगा रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। सो इसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? ओके ऑलराइट, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा पहले पिक करना चाहूंगा बिकॉज मैं कोई पर हमेशा सबसे पहले पिक कर लेता है, मेरे को बाद में बोलना पड़ता है। लेकिन ठीक है, अभी वाइटैलिटी वर्सेस हमें देखने को मिल रहा है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एंड उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ मैं पिक करना चाहूंगा रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को। ऑलराइट सो आई गेस आई एम नॉट लेफ्ट इट, मैं चूज ही करता यहाँ पे टीम वाइटैलिटी को, दैट इज ऑल आई हैव। ओह यार, ये तो मैं टॉस जीत के भी वो चीज दे दिया जो चीज सामने वाली टीम को चाहिए थी। रिवर्स टॉस पहले यहाँ पे सेट हो चुका है। आई मीन द फर्स्ट चॉइस अब हो गई भूल चूक पहले मैच के अंदर, बट कहीं ना कहीं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के ऊपर एक पलड़ा जो होता वो के पास दोनों के ऊपर काफी, बिकॉज अगेन ये वाले गेम के अंदर से अगर ये BO3 के अंदर से टीम आगे नहीं जा पाई तो ये टीम वहां पे एलिमिनेट होने के कगार पे है, राइट? बिकॉज वी आर लुकिंग एट वन ऑफ देम मूविंग फोर्थ एंड उसके बाद हमारा अपर ब्रैकेट का जो गेम है वहां से एक टीम इनके अगेंस्ट खेलेगी। सो विद दैट वी विल गेट बिजी विद द BO3। ओवर टू यू मैक वाइपर एंड मैजो। ऑलराइट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वाइटैलिटी के बॉयज को, और ठीक है मेरे बोलते यहाँ पे आ चुके हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के बॉयज एंड ठीक है, सबसे बड़ी बात ये रहने सब के सब गियर अप हो चुके हैं, सबके सब ने यहाँ पे ताइवान एक्सीलेंस की वो जर्सी पहन ली है एंड आई एम वेरी जेलस ऑफ। मेरे को भी जर्सी चाहिए था, लेकिन चलिए बात करते हैं दोबारा से रणभूमि के ऊपर, बात करते हैं मैप के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, गेम स्टार्ट हो चुका है, शंख बज चुका है, शानदार तरीके से हर एक प्लेयर अपना बेस्ट देने की कोशिश करने वाला है यहाँ पे अंकित। एग्जैक्टली एंड शुरुआत एक बार फिर से वो हार्ड पॉइंट लॉक हो चुका है एंड काफी करीब दोनों प्लेयर्स। अब देखना होगा कौन से वो टीम होती है जो हार्ड पॉइंट की शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए हार्ड पॉइंट का 5 सेकंड हो चुका है, दोनों टीमें फूक के कदम रख रही है, अभी भी शुरुआत ही नहीं हुई है। फाइनली वाइटैलिटी ने वहां पे जो 0 पे वो सवार थे अब उसको 5 में कन्वर्ट कर लिया गया, बट बोथ एंड साइड से यहाँ पे ट्रेड्स लिया जा रहा है। डेथ स्टार्टिंग से ही इस मैच में जो वो थोड़ी बहुत गलती रही थी उस पहले मैच के अंदर अगेंस्ट एक्सिस, उसको पीछे करने के कारण वाइटैलिटी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड 12-0 13-0 एंड एक सेकंड के बाद ये हर एक पॉइंट अहम होने वाला है, ना ही सिर्फ टीम वाइटैलिटी के लिए बट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के लिए। जी हाँ, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, लेकिन रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स अपना खाता कब खोलेंगे? आप देख सकते हैं उनके 0 यहाँ पे स्कोर दिखाई दे रहे हैं वाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स को, टीम वाइटैलिटी को सॉरी, बट यहाँ पे उनको गुस्सा आ चुका है। वो चाहते हैं कि यार मैं जो है ये मैच को जीत के जाऊंगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके में मैं देख पा रहा हूँ इस चीज के ऊपर सारे का सारे कैपिटलाइज करते हुए दिखाई भी दे रही है टीम वाइटैलिटी। एक भी पॉइंट जो है वो अभी तक रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को लेने नहीं दिया गया। बात करूंगा एक सेकंड को निचोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, मूनस्कोप आए थे लेकिन हाँ अब उनको एक और नए हार्ड पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन डेथ जो है वो यहाँ पे अपनी स्कोर स्ट्रीक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं ओके यहाँ पे थोड़ा केओटिक माहौल हमें दिखाई दे रहा है अंकित। एग्जैक्टली पूरी तरीके से हड़कंप सा मच चुका है यहाँ पे वाइटैलिटी इस बार एक बार फिर से लीड के अंदर। अब इसी प्रकार का लीड उन्होंने एक्सिस के अगेंस्ट भी लिया था बट फिर इनके हाथों से छीन लिया गया था, तो इनको ध्यान देना होगा जब मिड स्टेज में पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज आउट करते हैं। बट फिलहाल के लिए ज़ायरो को रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। रेवेनेंट एक के बाद एक अगले 34 सेकंड को पूरी तरीके से भुनाने के लिए, अगर ये 34 सेकंड आ जाता है कहीं ना कहीं इनके पास एक मौका रहेगा। हंटर के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जस्ट ताकि सामने से वाइटैलिटी के जितने भी प्लेयर्स आए उनको चारों खाने चित किया जाए। एंड ज़ायरो ने वीजी यूज किया, ना ही सिर्फ वो बल्कि अपने गन का भी कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अबिस एंड मीनो की बात कीजिए, वाइटैलिटी के किसी भी प्लेयर को आगे आने का मौका नहीं मिला, बट फाइनली रेवेनेंट के अंदर वो हार्ड पॉइंट कंट्रोल। जी हाँ, वो कंट्रोल जो है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स अपने नाम पे ले लिया। 48 49 50 स्कोर अपने नाम पे करते हुए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रहे हैं। बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे, 3 सेकंड बचे और 3 सेकंड को भी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लिया गया है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। 36:58 का जो स्कोर लाइन है वो हमें देखने को मिल जरूर रही है, लेकिन हाँ सब कुछ डिपेंड करेगा इस वाले हार्ड पॉइंट में, बिकॉज ये हार्ड पॉइंट जिसके नाम पे चला गया उसके पास एक भारी लीड आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमें दिखाई देंगे वो एक अपर हैंड में दिखाई देने के मतलब ये है कि उनके पास एक अच्छा लीड रहेगा, एक अच्छा बैकअप रहेगा, और यहाँ पे हार्ड पॉइंट ऑन हो चुका है, वो भी टीम वाइटैलिटी के हाथ से। एग्जैक्टली वाइटैलिटी एक बार फिर से जैसा कि आपने बताया उसी मोमेंट में वाइटैलिटी के पास ये एक बार फिर से आता हुआ मून हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर होल्गर 26 का इस्तेमाल बहुत कम प्लेयर्स के द्वारा, ना ही सिर्फ इस पूरे श्रृंखला के अंदर जो हम ताइवान एक्सीलेंस कप देख रहे हैं, बट इसके अलावा हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में होल्गर का बहुत कम इस्तेमाल देखा है, बिकॉज जैसा कि आप बताए थे मिटा में ऑब्वियसली वो टाइप 25
फेनेक एसएमजी की हम जो बात कर रहे थे वो है, एंड ऑल्सो वो थंपर, वो जो शॉटी जिसकी आप बारंबार बात करते हैं, वो हमें देखने को मिलता जरूर है, बट हार्ड पॉइंट एक बार फिर से आ चुका है नन अदर देन टीम वाइटैलिटी के पास। जी हाँ, टीम वाइटैलिटी के पास वो आ जरूर चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे करेंगे एग्जैक्टली मैं वही देख रहा था, मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था। लेकिन आप देखिए 85 रेशियो, 86 रेशियो, 87, और ये कम से कम मैं देख रहा हूँ 90 तक चल सकता जरूर था, और जी हाँ 90 पे जाते जाते रुक गया है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टीम वाइटैलिटी एक अच्छा कंपटीशन दे रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को, या मैं वाइस वर्सा बोलना चाहूंगा, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एक अच्छा कंपटीशन दे रही है टीम वाइटैलिटी को। लेकिन ये वाला हार्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से अच्छे तरीके से एबेस ने अपने नाम पे होल्ड कर रखा है। और एबेस मैं आपको बताना चाहूंगा टीम आरएनटी के यहाँ पे आईजीएल जरूर है, और आईजीएल का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल जो है वो प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कॉल आउट सबके सब यहाँ पे वो देख रहे हैं। जायरो बोन्स ने एक अच्छा एंगल ले रखा था, बट मेरे ख्याल से मूनस्कोप को ये बात रास नहीं आई है। तीसरा चौथा पिक भी निकाल सकते हैं, चौथा पिक भी चौथा। There we have it. What do we call it? Quadruplet? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मूनस्कोप को ना जब कुछ हो जाता है ना, जब उनको एक स्वाद लग जाता है, उस खून का मजा आ जाता है, तो उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो चीज हम यहाँ पे देख पाया है। मूनस्कोप को रोकना सच में अनस्टॉपेबल हो जरूर चुका था, लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा वाइटैलिटी के आर्गन को, बिकॉज आर्गन भी एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है अपनी टीम के। एग्जैक्टली, एंड ये पूरा हार्ड पॉइंट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने अर्न किया। हालांकि मून ने 4 फिनिश पॉइंट वहां अपने एनालिटर से निकाला, बट स्टिल रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को वहां रोकने में पूरी तरीके से असक्षम। एंड आप मैप की तरफ देखिए, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे, कोई भी इंटेंशन पूरी तरीके से साफ कि हम इस हार्ड पॉइंट के ऊपर नहीं जाएंगे। अगला जो हार्ड पॉइंट बनने वाला है वो हमारी घर में आने वाला है, वो हमारी गोद में आने वाला है। सो टीम वाइटैलिटी अगला 50 सेकंड अगर आप भुना के लेके चले गए, तो जिस लीड पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स पूरी तरीके से नाज कर रही थी, उनको थोड़ा बहुत बैकस्टैब मिलेगा जरूर, बट मीन हो को यह चीज राज नहीं आ रहा था, एंड उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कमबैक करने का स्टार्ट कर दिया है। सो टीम वाइटैलिटी एक हार्ड पॉइंट छोड़ दिया था इंटेंशनली, जस्ट इन केस ताकि वो रोटेट करके दूसरे हार्ड पॉइंट पे चले जाए, बट ये हार्ड पॉइंट भी सीम्स लाइक उनसे पूरी तरीके से छीन लिया गया मेजर बीस्ट। एंड ये मैच कहीं ना कहीं ये BO3 का पहला मुकाबला रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के नाम पे ऑलमोस्ट जाता हुआ। जी मैंने पिक करा था रेवेनेंट को, कैसे नहीं जाएगा। BO3 है, 2 और अभी रुको तो सही, देखते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, उस चीज को भी देखा जाएगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टीम वाइटैलिटी वर्सेस रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 137, 138, 139, 140 का स्कोर जो है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे टच कर लिया, और वाइटैलिटी कुछ कर नहीं पा रही है, पूरी तरीके से असक्षम, अपाहिज कर दिया गया। चारों तरफ से यहाँ पे घेर के रखने की कोशिश, हालांकि मून ने यहाँ पे 18 फिनिश पॉइंट निकाला है। सीम्स लाइक एक इकलौता योद्धा अपने टीम वाइटैलिटी की साइड से इस मैच के अंदर पूरी तरीके से वर्चस्व बनाने की कोशिश, बाकी टीम से उस हिसाब से यहाँ पे उनको असिस्टेंस नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, सहायता नहीं मिला, जिसके कारण कहीं ना कहीं टीम थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए, थोड़ा बहुत क्या स्ट्रगल मैच ही यहाँ पे दे बैठे हैं। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के हाथ में पहला मैच जा चुका है रेवेनेंट के पास, बट स्टिल मास्टर संतुष्ट नहीं है। शायद कहीं ना कहीं इनके कॉलआउट्स को नहीं सुना जा रहा है। अरे आप मास्टर को जानते नहीं हो, अभी मास्टर अपनी फॉर्म में आ गए ना, तो यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स और बढ़िया खेलती हुई गेम के अंदर है जबान से। वो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी बैठ के, लेकिन चलिए अगर नजर मारे टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की, तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वाइटैलिटी टीम वाइटैलिटी को यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने ना अब स्ट्रैटेजी यहाँ पे सारी की सारी भाप ली है वाइटैलिटी की, टीम वाइटैलिटी की। एग्जैक्टली, एंड कहीं ना कहीं ये क्रॉस फायर पिछले बार भी जब रेवेनेंट खेले थे तो कहीं ना कहीं से छीना गया था, बट आई गेस वाइटैलिटी 2 जगह गलती कर बैठी। अब उसको गलती बोलिए या वो एक तैयारी थी अगली जीत के तरफ जाने की, बिकॉज एक पूरा हार्ड पॉइंट पूरी तरीके से रेवेनेंट को दे बैठे, एक इसी आस में, एक इसी होप में कि प्लेयर्स आगे जाते हुए हमें नजर आएंगे जरूर, बट काफी मौन मुद्रा में हमें बाकी प्लेयर्स जहां नजर आ रहे हैं, वहीं पे मास्टर काफी गतिविधियां, काफी चहलकदमी कर रहे हैं, बट दिस वी हैव दिस वाइटैलिटी का खेमा काफी ज्यादा टेंस। अगर आप देखिए, मून ये इकलौता प्लेयर था जो पूरी तरीके से सबको रोकने में सक्षम था, बट बाकी प्लेयर्स के द्वारा इनको वो सहायता नहीं मिला। कहीं ना कहीं आर्गन, डेथ, सैम्स एंड जोकोस को आगे बढ़ चढ़ खेलना होगा। साफ देख सकते हैं उस मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एंड वो शक्ल, वो चेहरे पे दर्शाया जाता है, जहाँ पे पूरी तरीके से रेवेनेंट की खेमे खुश। एक BO3 का पहला मुकाबला हारने के बाद वाइटैलिटी थोड़े से अंडर प्रेशर। जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर में दिखाई दे रही है, लेकिन मूनस्कोप की द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया। मैं एक चीज तो यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मूनस्कोप ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, अपनी स्किल्स को शोकेस करा गया था उनके द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक लोता प्लेयर था, आपको
जीत नहीं दिला सकता। वो एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है जरूर, लेकिन वो जीत नहीं दिला सकता। यहाँ पे टीम साझेदारी की जरूरत थी, आपको टीम वर्क करने की जरूरत थी, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा लैग कर रही है। लेकिन हाँ, टीम वाइटैलिटी ना, इनको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज टीम वाइटैलिटी कहीं ना कहीं आप देखोगे, अगर बैक इन द डेज आप नजर मारो तो आपको पता लगेगा कि काफी अच्छा गेम प्ले जो है, काफी अच्छे टूर्नामेंट्स में जो है ये सबसे अव्वल दर्जे में दिखाई दिए थे। लेकिन चलिए उन सब बातों को हम बाद में कर लेंगे। लेकिन रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम वाइटैलिटी, दूसरा मैप आ चुका है समिट में। एक ठंड का माहौल भी आ चुका है, बिकॉज अब ठंड यहाँ पे भी चालू हो चुकी है। दिल्ली की ठंड आपको भी पता ही होगी। लेकिन चलिए अभी समिट के ठंड की बात करते हैं। Exactly, and there we have it. Team Vitality इस बार शुरुआत उनके साइड से हुआ है, बट कहीं ना कहीं रोकने में फिलहाल के लिए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स सक्षम थोड़ी देर के लिए। दो जहां पे पॉइंट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने अर्जित किया, बैक स्टैप दे दिया गया मास्टर के द्वारा, एंड कहीं ना कहीं मास्टर मीनो मल्टीपल पिक्स निकाला गया है। तो शुरुआत हुई थी टीम वाइटैलिटी की। ये मिड कंट्रोल पिछली बार हमने देखा था, कुछ टीम पूरी तरीके से जाने दे रही थी, ये पूरी तरीके से दोनों साइड से कंटेस्टेड होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों स्पॉन से इक्वल डिस्टेंस कैरी होता है, एंड हर प्लेयर वो इक्वल दौड़ के साथ, वो इक्वल स्पीड के साथ मूव इन करता है, एंड मौका रहता है। सो कहीं ना कहीं ये हार्ड पॉइंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब जब हम नजर डालेंगे उस लक्ष्मण झूला की तरफ, वो जो ब्रिज, वो हैंगिंग ब्रिज जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इस स्पॉन एरिया के अराउंड, स्पेशल फोर्सेस के ठीक सामने से, तब देखना होगा कौन सी टीम डोमिनेट करती है। बट सीम्स लाइक यहाँ पूरी तरीके से क्लियर ऑफ करने में वाइटैलिटी के प्लेयर सक्सेसफुल थे, जो हमारे इस गुरिल्ला स्क्वाड की हिस्सेदारी में है। बट कहीं ना कहीं रेवेनेंट का ये 32 पॉइंट कांटों की तरह चुभने वाला है टीम वाइटैलिटी को। डेथ को एक ये कैसी डेथ मिली है, मतलब आप देख सकते हैं जिस हिसाब से गेम प्ले था, डेथ ने एक पूरा का पूरा स्प्रे दे दिया था, लेकिन डेथ का स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि डैमेज जरूर मिला, लेकिन स्प्रे कुछ वैल्यू नहीं निकल पाया, और डेथ को एक शानदार तरीके से हंटर किलर ड्रोन से एलिमिनेट होना पड़ा। लेकिन नजर मारेंगे स्कोर रेशियो के ऊपर तो मैकवाइपर, जरा आप नजर मारना चाहेंगे स्कोर रेशियो पे? बिल्कुल, जिस टीम को मैंने पिक किया था थोड़ी पीछे नजर आ जरूर रही, इसलिए शायद कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा खुश। वही मैं मौन मुद्रा में जाना चाहूंगा, सो ओवर टू यू। मैं जब इस कैरी करी आप। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप मैं बताना चाहूंगा 57:9 चलता हुआ टीम वाइटैलिटी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहां से वापसी करनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं वो जो 2 लाख का प्राइस पूल अपने नाम पे ले, तो कहीं ना कहीं उनको कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसके काउंटर जो है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के पास ना हो, या मैं बोलूं एबिस के पास ना हो, क्योंकि एबिस की ही आपको यहाँ पे बिग ब्रेन्स देखने को मिलेगा, उनकी ही आपको आइजलिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज एबिस इज अ नाइस आईजीएल। हम देख रहे हैं कि रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स से अपना जो गेम प्ले है वो कुछ दिनों में काफी अच्छा इंप्रूव जरूर करा है, और उसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे आ चुका है। 83, 84, 85, 86, 87, यहाँ पे मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे जो स्कोर है वही बता रहा हूँ। जी हाँ, 87:9 पे आ चुका है एक स्कोर रेशियो, और टीम वाइटैलिटी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। आरएनटी मीनो को एक बैक स्टेप कर दिया गया सैम्स के द्वारा, टाइप 25 का उपयोग करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एबिस एक नए हार्ड पॉइंट में आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आए और एबिस को एक बहुत ज्यादा करारा झटका मिला टाइप 25 का ही जोकोस के द्वारा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर उनके भाई को मारोगे तो वो पंचमेंट देने जरूर आने वाले। सेंट्री गन्स भी यहाँ पे रेवेनेंट के प्लेयर्स के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, एंड क्या ये 9 और 104 का मैच पूरी तरीके से वन साइडेड बनने वाला। टीम वाइटैलिटी सीम्स लाइक गिव अप कर चुके हैं। मून बैकस्टैप की कोशिश है जरूर इस कमांड सेंटर के अराउंड, बट ये बहुत मुश्किल हो चुका है। बारंबार बैक टू बैक अगर यहां से हार्ड पॉइंट लेके गए तब ही मुझे टीम वाइटैलिटी किसी भी प्रकार से कमबैक करते हुए नजर आती है, अन्यथा ये गेम दिस इज जस्ट डन एंड डस्टेड। हम वेट करेंगे उस पूरे क्लॉक को टिक होने का। हाँ, 9 से 23 आ जरूर गया, बट वहीं पे वापस से वो घड़ी की सुई एक बार फिर से, वो जो नंबर जिसकी आप बात करते हो 111, 112, वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। एनालिटर का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, आर्गन कुछ फिनिशेस निकाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रेवेनेंट दे आर जस्ट मूविंग इन फॉरवर्ड। ओके, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी भी टीम वाइटैलिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आईफोन 13 से ही खेलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अभी तक शिफ्ट नहीं करा, क्योंकि गेम प्ले से मुझे पता लग रहा है, हम देख पा रहे हैं वो चीज। और हम अगर बात करना चाहें यहाँ पे टीम वाइटैलिटी की, तो हाँ 29 अभी भी उनका स्कोर हमें देखने को मिल रखा है, और अब कहीं ना कहीं जाके दोबारा से हार्ड पॉइंट जो है वो उनके नाम पे आ गया। जी हाँ, किसके नाम पे आ गया? रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के नाम पे आ गया, उनको खदेड़ दिए गए, और मेरे ख्याल से अब कहीं ना कहीं तरीके से आगे बढ़ेंगी जरूर वाइटैलिटी, और ये हार्ड पॉइंट को अपने नाम पे करना चाहिए, और थोड़ा सा होल्ड कर लो। 39 सेकंड, 38 सेकंड भी अगर ये होल्ड कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी उम्मीद जो है वो जाग जाएगी वापसी करने की। एग्जैक्टली, एंड कहीं ना कहीं ये जो ऑप्टिमिज्म है, रियली लाइक इट फ्रॉम योर मेजर बीस, बट प्रैक्टिकली लुकिंग लाइक कहीं ना कहीं यहाँ से अगर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स मैच दे बैठती है, फिर वो वाइटैलिटी का एक चमत्कारी खेल का प्रदर्शन होगा। बट सीम्स लाइक वाइटैलिटी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, बट वापस से वो घड़ी की सुई उल्टी गिनती हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे रेवेनेंट एक के बाद एक पॉइंट्स अपने नाम पे गेन करते हुए, एंड टाइप 25 का कमाल रेवेनेंट के मीनो बोन्स के द्वारा टाइप 25 दोनों प्लेयर्स बस स्किन का डिफरेंस है।
जी हाँ, स्किन का जरूर डिफरेंस है जरूर, लेकिन मास्टर को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। टैप 25 एक AR गन है और जिसका मेटा भी चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा, उसको यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 144 और सिर्फ 44 यहाँ पे स्कोर देखने को मिल रहा है और रेवेनेंट स्पोर्ट्स जीतती हुई दिखाई दे रही है। Oh well, Revenant back to back वो बस औपचारिकता बच चुकी है। मिज बीस्ट वो जब जैसे ही वो 5 पॉइंट उनके खाते में आएगा, दैट इज जस्ट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट जहाँ पे हम देखेंगे Revenant Esports इस बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में बारंबार एंड कहीं ना कहीं जीतते हुए टीम वाइटैलिटी कोई भी चैलेंज इस मैच में नहीं दे पाए। 44 पॉइंट एंड मीनो ओके अपने ओके सो वो उंगली से वो फाइन, that's just good. Just esports thing, आप देख रहे हैं कि उंगलियों की भी कसरतें की जाती है। जी really for the first time. जी हाँ बिल्कुल, वो चीज हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे रही है और इसी के साथ ए बेस मास्टर बोन सब के सब जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज्यादा वेल अगेन गेम प्ले भी उनकी तरफ था एंड काफी डोमिनेटिंग गेम देखने को मिली हमारी रेवेनेंट की तरफ से। ऑन द अदर फ्रंट वेल डेस्क पे यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, लग रहा है कि मैक वाइपर की जो प्रेडिक्शंस है वो इज नॉट फेवरिंग हिम एंड मेजर की तरफ यहाँ पे ज्यादा ऑफ कोर्स स्टार्स का दोष दूंगा थोड़ा बट ऑफ कोर्स इसी के साथ हमें ये जरूर पता चल गया है कि टीम वाइटैलिटी विल नॉट बी मूविंग फोर्थ, बट उसके अलावा ऑफ कोर्स रेवेनेंट का ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये उनको आगे जरूर लेके जाएगा। अब वहां पे हम देखते हैं ब्रैकेट्स की तरफ बढ़ते हैं ऑफ कोर्स एंड वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि यस दिस इज द टीम रेवेनेंट esports की जो टीम है ये आगे बढ़ती हुई। ऑन द अदर फ्रंट टीम एक्सेस एंड गॉडलाइक esports का जो अभी अपर ब्रैकेट फाइनल होगा उसके अंदर से जो भी टीम हारेगी उनको अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी टू गो अगेंस्ट रेवेनेंट esports एंड उन दोनों में से फिर ऑफ कोर्स जो कल गेम हमें देखने को मिलेगी तब पता चलेगा कि चैंपियनशिप के अंदर वो BO5 के लिए कौन जाने वाला है। लेकिन अभी के लिए अपकमिंग गेम हमारी ऑफ कोर्स टीम एक्सेस अगेंस्ट गॉडलाइक esports की रहेगी इन द अपर ब्रैकेट फिनाले। ओह माय गुडनेस, टीम एक्सेस जो कि थोड़ी सी मैं बोलूंगा टीम बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल प्लेयर बहुत बड़ी है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट हां लड़ किससे रहे हैं, फाइट किससे कर रहे हैं, टीम गॉडलाइक से, गॉडलाइक esports बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिलने वाले में। ओह यस, पहले वाइटैलिटी के अगेंस्ट गए थे एंड अब गॉडलाइक के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बड़े बड़े नाम। आई मीन टीम एक्सेस को ये एक तरह से प्रॉपर सिल्वर प्लैटर मिला है पूरी की पूरी यहाँ पे कॉडम कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि वी आर हियर एंड वी आर हियर टू प्रूव आवरसेल्व्स। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ से एक और जीत एक्सिस अपना नाम करती है। एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन। मैं अनबिलीवेबल, मैं इमेजिन कर चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा पोटेंशियल इस टीम के अंदर है, लेकिन क्या ये मुमकिन होने देगी गॉडलाइक esports या नहीं होने देगी? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा सवाल आता हुआ। एब्सोल्युटली, अगेन आप गॉडलाइक की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपना मोमेंटम बेसिस पे चल रहे हैं और उनकी तरफ मोमेंटम ऑफ कोर्स बढ़ भी रहा है, सो इट इज फेवरिंग देम। नाम इतना बड़ा है ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास में। बट वंस अगेन अब BO3 का जो ये सीरीज रहेगा किसी भी तरफ जा सकता है। आई मीन इवन दो बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, बड़े बड़े नाम को भी हमने ऊपर नीचे डगमगाते हुए देखा है। अब एक बात तो तय, अगर जो भी टीम्स यहाँ से हारेंगे कहीं ना कहीं एक मौका उनको और मिलने वाला है, जो ऑब्वियसली दे विल फाइटिंग अगेंस्ट रेवेनेंट esports, तो कहीं ना कहीं वो अगर थोड़े बहुत प्रेशर जो जाते हैं, जो जेन्युइनली प्लेयर या स्पेशली टीम एक्सिस की मैं बात करूं, जब गॉडलाइक जितने बड़े नाम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो बहुत बार हमने देखा है प्रेशर के अंदर प्लेयर्स कम्बर डाउन कर जाते हैं। बिल्कुल, उसी को पीछे करने के लिए हमने देखा वहाँ पे कुछ प्लेयर्स अपने फिंगर के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं अगर इन चीजों पे गॉडलाइक थोड़ी बहुत ध्यान दे दी, फन जोक्स अपार्ट आगे जाते हुए नजर आ सकती है। वेल अगेन जोक्स अपार्ट, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पे 4 लाख इज ऑन द दाव। ओह यस, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स आपको फिनाले तक जाना है। अभी के लिए ऑफ कोर्स अगर हम टीम 3rd एंड 4th की बात करें तो उनको 50,000 जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अब आप 3,000 प्लस टीम्स में से यहाँ तक पहुंचे हो तो यहाँ पे आप वापस नहीं जाना चाहोगे। यहाँ पे फिर यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पे अगेन वो मनी यस इज द फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे गुडविल की भी बात आ जाती है कि हमने इतना करके दिखाया तो अब तो हार नहीं मान सकते यार। मतलब अगर इतने पास आ गए, वो आपका मुकाम आपके सामने दिख रहा है, आप जहाँ जाना चाहते हो वो जगह आपके सामने है, और गेट से आके कुंडी खटखटा के चले जाओगे तो वो मजे वाली बात नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली, एंड अगर यहाँ से टीम एक्सिस एक और मैच जीत जाती है, ये एक गोल्डन रन होगा। वो सीधा एक मैच वहां पे ऑलरेडी सबसे पहला मैच जीते जो हमारा ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप का स्टार्टिंग में एक बड़ी टीम के अगेंस्ट वाइटैलिटी, जो अब फिलहाल कहीं ना कहीं वो हमें उस रंग रूप से बाहर दिखते हुए नजर आ चुकी है। अगर यहाँ से टीम एक्सिस एक बार फिर से रेवेनेंट के गॉडलाइक के अगेंस्ट मैच लेके चले जाएं
तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही बड़ा एक हरक्यूलियन एफर्ट लेके आना होगा, बिकॉज जब न्यूट्रिनो, लर्न, ब्रोस, बॉर्न जैसे हमें खिलाड़ी नजर आएंगे, एंड आज के दिन में काफी करीबी से हमने देखा जरूर था इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, ये प्लेयर्स इन फॉर्म है। बिल्कुल फिटनेस एक चीज हो सकती है जहां पे गॉडलेग स्पोर्ट्स थोड़े बहुत उस रंग रूप में नजर ना आए, अदरवाइज आई डोंट सी एनी अदर रीजन। कहीं ना कहीं वो टीम एक्सेस जाएंगी शायद मे बी, बिकॉज गॉडलेग इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली है। डेफिनेटली इन दोनों में से जो भी टीम आगे फाइनल की तरफ जा रही है उनके लिए 1 लाख रुपए तो पक्का है। सेकंड पोजीशन के लिए वो 1 लाख है, उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, कि वो 2 लाख भी कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो गेम प्ले दर्शाएगा कि क्या वो 2 लाख उनके रहेंगे कि नहीं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे अभी हमारे पास में एक इंटरव्यू सेटअप है, सो लेट्स मूव ऑन अलोंग एंड गेट बिजी विद एन इंटरव्यू विद आरएनटी के अबिस। एंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रेवेनेंट अबिस, बट एक बात बताइए, आप इतने बड़े नाम के अगेंस्ट खेल रहे थे वहां पे, क्या वहां पे थोड़ा सा भी प्रेशर था टीम के अंदर? No, considering that we've been playing for so long, there was not much of a pressure. It was just like we were just exhausted because we've had a long day, but that we didn't feel much pressure. Well, that's a good thing. That's definitely a good thing because now you guys are definitely pushing on through to get that much more closer to that prize pool. इसके साथ Major Beast, what will you? Exactly. मेरा सवाल एबिस आपसे ये रहने वाला है कि इतनी बड़ी टीम को हराने के बाद आपके एक मैं हमेशा से जानना चाहता कैसा फील होता है? I mean, whenever we beat like a big team, it's always, very exciting. We're like, yes, we just did it. And especially when it's in such a big tournament, it's a great feeling. All right. Over to you, Mecca. Abis, so मेरा भी आपसे एक छोटा सवाल रहने वाला, ये जो हार्ड पॉइंट अभी जो रिसेंटली फिनिश हुआ, कहीं ना कहीं वाइटलिटी देवर नोवर इन दिस गेम, आपने बहुत बड़ा एक लीड से आगे गए, तो जिस हिसाब से आपका आज का पूरा का शेड्यूल रहा है, किस तरीके से आप मैनेज करके लेके नंबर 1 एंड ऑल्सो सेकंड वन इज बीइंग, इस तरीके के लीड से आप कैसे जीत लेते हो इतने बड़ी टीम्स के अराउंड? It just comes down to like whose day it is, honestly, like every team knows what they have to do. They all know you have to rotate first and whatever, but then things just go in the favor of one team, there certain mistakes happen like by both sides. It just comes down to which team makes lesser mistakes. And I guess we just made lesser mistakes today, and that's what made us maintain a lead as well. Well, again, I mean, so perfectly said by Mac as well as you that, yes, maintaining that lead is all right, but maintaining such a humongous lead, I mean, that is definitely just obliterating your competition, and that's exactly what your team has done, and certainly do hope that that same continues on for you in this TEGC 2021. Best of luck, and thank you so much for tuning in for this interview. Thank you so much. Well, वो थे of course Abyss Revenant की तरफ से काफी proud and chill and वही वाला वातावरण of course वहाँ पे देखने को भी मिलेगा, लेकिन अभी जर्नी कंटिन्यू ऑन होती रहेगी, काफी खुश मिजाज भी नजर yes काफी ज्यादा, बट उसके साथ ही साथ अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, we will move on through, but before we move on to that BO3 जो upper bracket का रहेगा, right now it is time to talk about TEGC 2021 की brands जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको भी पता है कि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है, तो उसी के बाद मैं थोड़े बहुत नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे Xiaomi की बात करते हैं, जो बिकॉज उनके पास में इतने परफेक्ट सेटअप मॉनिटर्स हैं विद 240 हर्ट्ज डायनामिक ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स, 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स, ब्लैक इक्वलाइजर आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, एंड उसके साथ में आपके साथ में विंडो शेडर्स भी हैं, सो दैट कोई भी आपके साइड में से डिस्ट्रैक्शन ना आए आपकी तरफ। एंड दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका भी ज़रूर हिस्सा बनिए, बिकॉज वेल व्हेन यू हैव द बेस्ट हार्डवेयर दैट्स व्हेन यू गेट द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड इसके साथ ही साथ जब आप गेम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बात करना चाहेंगे इंटरनेट की, इंटरनेट स्पीड की, इंटरनेट ड्यूरेबिलिटी की, वेयर इन आता है D-Link का R15. Now this thing is a major beast. This thing is definitely a major beast because ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका इंटरनेट बूस्ट अप करता है, एंड वो कंसिस्टेंट प्ले दिखाता है, which is so very important आजकल की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम मूव ऑन करें towards the final thing, which is going to be well another gaming monitor. Yes, you heard that right, another gaming monitor right here, जहाँ पे आपको once again बहुत ही perfect response time मिलता है। उसी के साथ साथ when it comes to the price, they're all nominal, they're all very nominal right here at TEGC 2021। उसके साथ ही साथ हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, after which of course we'll continue on with the COD mobile के matches. Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is
how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal, too. हेलो एंड स्वागत है आपका फिर से TEGC 2021 के अंदर, जहां पे हम कॉड एम सेगमेंट के अंदर बिजी हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इन टीम्स के थ्रू. बट अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द अपर ब्रैकेट फाइनल और वहां पे ऑफ कोर्स देयर विल बी अ BO3, बट उससे पहले ऑफ कोर्स लेट्स इंट्रोड्यूस द कास्टर्स एंड द एनालिस्ट. इज गोना बी वंस अगेन मेजर बीस्ट एंड मैक वाइपर. सो अब थोड़ी सी जो जर्नी है यहाँ पे अब काफी क्रिटिकल हो जाती है. इनफैक्ट थोड़ी सी भी क्या काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है टीम्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे ये जो मौका है उसके थ्रू हम ग्रैंड फाइनल्स की बात करें जो कल देखने को मिलेंगे हमें, लेकिन वहाँ पे ऑफ कोर्स जर्नी टाइट तो है. जी हाँ, बहुत टाइट रहने वाली जर्नी. बिकॉज मैं बात करना चाहूंगा टीम्स के ऊपर. जी हाँ, अगर बात करूँ जोन सी टीम यहाँ पे आपस में कम्पीट करने वाली है तो वो हमारी स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रही है, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है कि हाँ, टीम एक्सिस वर्सेस गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स होने वाला है और ये दोनों के दोनों टीम शानदार तरीके से खेलती नजर आने वाली. मैं क्वाइट करूँ एग्जैक्टली. एंड कहीं ना कहीं अब तक हम बात कर रहे थे अपर ब्रैकेट एंड वो राउंड वो फॉर्मेट के बारे में जहाँ पे टीम्स आर जस्ट गोइंग अप फॉरवर्ड टू इट. बट अब यहाँ से फाइनल्स की तरफ एक ताक हो जाती है, बिकॉज जिन टीमों को बाहर जाना था वो ऑलरेडी इस पूरे श्रृंखला से बाहर छूट चुके हैं. जिनका टीम वाइटैलिटी
वाइटैलिटी नाम है, बट अगली कौन सी टीम आएगी? बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेस एंड गॉडलाइक के बीच एक मैच होगा। अब यहाँ से जो हारेंगी वो लोअर ब्रैकेट में जाएंगे, जहाँ पे एक बार फिर से उनका सामना होगा रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। वो कहीं ना कहीं बाद में मुकाबला रहेगा, बट फिलहाल के लिए जो मुकाबला रहने वाला वो टीम एक्सेस एंड बिटवीन गॉडलाइक। तो यहाँ से अब वे टू रोड टू फाइनल्स। कोई बहुत लंबा श्रृंखला नहीं, कोई बहुत लंबा टूर्नामेंट नहीं है, बट स्टिल लॉट ऑफ मैचेस टू टॉक अबाउट एंड ऑल्सो द BO3। एब्सोल्युटली। अब वो BO3 की अगर बात करें तो नॉर्मली मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात करता हूँ एनालिस्ट के थ्रू, बट आज मैं वो नहीं करूंगा। आज मैं बल्कि ये पूछना चाहूंगा कि जो BO3 है ये 2 मैचेस के अंदर खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, एक तरह से प्रेडिक्शन ही बताने वाली बात है, लेकिन कौन खत्म करेगा, सवाल ये है। नहीं, उन्होंने पूछा क्या हो सकता है, अब ये नहीं पूछा कि कौन सा टीम यहाँ पे खत्म कर सकती है। ओके, ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है कि हमें एक 2-0 होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टीम एक्सिस अपने पूरे जोशो आवाज के साथ तैयार मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि उनके चेहरों से दिख नहीं रहा कि वो उनके अंदर थोड़ा सा जोश है, लेकिन मेरा यकीन मानिए जब वो रणभूमि में जाएंगे तो जरूर दिखने वाला है। इस बार अभिसादा का क्या परफॉर्मेंस रहता है मैं देखना चाहूंगा, बिकॉज पिछले बार जब आपने इनका नाम लिया था तो काफी अच्छी तरीके से नजर आए जरूर थे। एंड इस बार अगर बात करें तो लर्न हमें नजर आ रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर एंड काफी खुश मिजाज। सीम्स लाइक दे आर जस्ट मूविंग इनटू गो इनटू द फाइनल। अगर यहाँ से ये टीम जीतती है तो कहीं ना कहीं अपना सीधा एक फाइनल का रास्ता तय करेंगी। वहीं पे न्यूट्रिनो ही इज जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर एंड कहीं ना कहीं काफी खुश मिजाज ये सारी टीम। बर्न्स थोड़े यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्न आउट मुझे शायद नजर आ रहे हैं, इसीलिए कारण कहीं ना कहीं वो अपने वेबकैम को मे बी ऑफ कर चुके हैं। बट लेट्स जस्ट सी कि गॉडलाइक की टीम इस मैच के अंदर कितना जल्दी रैप अप करती है। एंड ऑल्सो ब्लॉटर ने जो सवाल छोड़ा था 2-0, क्या यहाँ पे गॉडलाइक करती हैं या टीम एक्सेस करती हैं? क्या 2-1 जाएगा, किसी खाते में जाएगा, किसके पाले में जाएगा? सारे सवालों पे लगेगा एक लगाम, बिकॉज ये दोनों मैच विल बी डिसाइडिंग द फेट ऑफ बोथ दीस टीम्स। कौन जाएगा, कौन सी वो पहली टीम होगी जो फाइनल्स के अंदर अपना कदम रखेंगी। फिलहाल के लिए दावेदारी से पुश करते हुए गॉडलाइक के प्लेयर्स लर्न आवर टीवी स्क्रीन्स। ओवर टू यू मेज बीस्ट। जी हाँ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शंख जो है वो बच चुका है और यहाँ पे पहला हार्ड पॉइंट बन के तैयार है इस मैप के अंदर। लेकिन हाँ, गॉडलाइक के प्लेयर्स ने अभी से ही अपने नाम पे जो है ये पूरा का पूरा हार्ड पॉइंट कर दिया। और यहाँ पे मैं फेनिक का ओके प्रकोप देख पा रहा हूँ, जिस हिसाब से गेम प्ले ओके वॉटेक्स को पता भी नहीं लगा कहाँ पे एनिमी था कहाँ पे नहीं था। गॉडलाइक के लर्न ने वहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी थी। उनको पता कि यार अगर सामने से प्लेयर आएगा और रैंडम आए, रैंडम जा सकते थे, लेकिन रैंडम बीइंग रैंडम उनको आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी यार रैंडम थोड़े से ना बहुत एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनको आपको पता नहीं लगेगा कि रैंडम कब आएंगे, क्या कौन सी गन चलाने वाले, क्या करने वाले, कौन सा रोल प्ले करने वाले। एक ऐसे वर्सेटाइल प्लेयर हमें यहाँ पे दिखने वाले हैं रैंडम। लेकिन मैं यहाँ पे जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ गेम, अभी स्कोर रेशियो पे आप लोगों की नजर लगाना चाहूंगा, वहां पे चल रहा है एक 21 रेशियो 11 एग्जैक्टली ने वो हार्ड पॉइंट छीन लिया जो गॉडलाइक के पास काफी टाइम से था। एक इकलौता प्लेयर अगर इस तरीके का कहीं ना कहीं अगर छाप छोड़ के गया गॉडलाइक को मुश्किलें होनी होगी। बट अगर आप टीम एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखिए, उनके हिसाब से देखिए, तो सिर्फ अभी ज्यादा को आगे नहीं जाना होगा, बाकी प्लेयर्स को भी आगे जाना होगा। प्रेडेटर का मिसाइल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही इकलौता प्लेयर वॉर्टेक्स को साथ देना होगा यहाँ पे प्रिज्म को, बिकॉज इनको भी हमने कुछ बड़े और के साथ खेलते हुए देखा है एंड वो एक्सपीरियंस यहाँ पे गॉडलाइक के अगेंस्ट काफी ज्यादा काम आएगा। जी हाँ, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आ सकता है, लेकिन हालांकि अभी मुझे कोई काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया है गॉडलाइक के द्वारा टीम एक्सिस को कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाए। आप अगर स्कोर लाइन पे एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ 37-22 है, एक ज्यादा अच्छी लीड उनके पास भी नहीं है, गॉडलाइक के पास भी नहीं है। बट हाँ, गॉडलाइक मुझे दिखाई दे रहे हैं एक किलिंग स्प्री की तरह जा रही है, एक चाहती है कि यार इसमें हम किल्स ज्यादा करके दिखाए। एग्जैक्टली एंड कहीं ना कहीं किल्स इंपॉर्टेंट हो जरूर जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लेयर्स को ही रोकना है किसी भी तरीके से उस हार्ड पॉइंट की तरफ आगे जाने की कोशिश। बट 53 एंड 22 का स्कोर रेशियो में देखने को मिल रहा है, जहां पे गॉडलाइक इस बार एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए BO3 का मुकाबला रहेगा जरूर एक बार फिर से, जहां पे खेल की शुरुआत उसी क्रॉस फायर के ऊपर एंड कटाना के साथ न्यूट्रिनो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट वन अगर कुछ पिक्स निकालते, बट वोल्टेक्स ने इंस्टेंटली यहाँ पे न्यूट्रिनो एंट्रेंस को शट डाउन किया। अभी ज्यादा गोइंग डाउन वोर्टेक्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात भरा सिचुएशन। 23-59 का स्कोर एंड वोर्टेक्स शनिंग डाउन वन मोर। ये BO3 का पहला मुकाबला है एंड लगभग हाफ पॉइंट डिफरेंस पे यहाँ पे गॉडलाइक अपनी पॉइंट्स आगे बढ़ाते हुए, बट रेड साइड पे गुरिल्ला स्क्वाड पे कहीं ना कहीं टीम एक्सेस उसी तरीके से
दे आर जस्ट नॉट गोइंग डाउन मेजर बीस्ट। जी हाँ, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा न्यूट्रिनो ने निकाल दिया अपना फेवरेट वेपन, जो कि है आरपीडी। वो भी आप देख सकते हो जो स्किन है वो डायमंड स्किन है, जो ये कैमो लगा हुआ है डायमंड कैमो है, और ये ऐसी किसी को नहीं मिलता, ये अर्न करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए ग्राइंड करना पड़ता है। लाखों तो नहीं, चलिए कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन जी हाँ आपको कुछ मैचेस जो है वो खेलने पड़ेंगे, गलती से इधर उधर कुछ ज्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं, रैंक मैचेस खेलने पड़ते हैं, पब्लिक मैचेस खेलने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये जो स्किन है वो अनलॉक होती है। एग्जैक्टली एंड उसी को पूरी तरीके से फ्लॉन्ट करते हुए खेल का भी प्रदर्शन की अगर बात कीजिए, ऑल ऑफ सडन डबल पॉइंट डिफरेंस पे यहाँ पे टीम एक्सेस किसी भी तरीके से स्ट्रगल करते हुए प्रेडेटर मिसाइल का यूज न्यूट्रिनो के द्वारा इंस्टेंटली यहाँ पे वोर्टेक्स को शट डाउन करेंगे। वोर्टेक्स एंड अभिज़ादा इनके अराउंड ही पूरी ये टीम एक्सिस की टीम भी तब खेलते हुए नजर आई थी जब ये वाइटैलिटी के अगेंस्ट खेल रही है। कहीं ना कहीं इनका दूसरा मैच है, दिस लुकिंग टू गुड फॉर द साइड। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बात करेंगे 85 रेशियो 52 पे यहाँ पे लगा दिया गया है एक अंकुश। अब अंकुश लग चुका है गॉडल के पॉइंट्स के ऊपर, ये वाला हार्ड पॉइंट जा चुका है पूरा का पूरा टीम एक्सिस के हाथ में, और टीम एक्सिस को कैसे ना कैसे करके इस हार्ड पॉइंट को होल्ड करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं आगे बढ़ना इस पूरी गेम में। लेकिन गॉड लाइक स्पोर्ट्स कोई भी तरीके से मैं बोलूंगा उनको मौका नहीं दे रही है। अब इस ज्यादा को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। लर्न आ चुके हैं, लर्न आ तो चुके हैं मेरे ख्याल से, अपने नाम का डंका जो है वो इस हार्ड पॉइंट में बचा देंगे। और यहाँ पे थंब पर कभी इस्तेमाल करा जा चुका था, लेकिन न्यूट्रिनो की जो आरपीडी है वो कहर मचाती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली एंड कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है जरूर, बट मैच छिन के ले जाते हुए यहाँ पे गॉड लाइक स्पोर्ट्स। अगर आप देखिए रोटेशन की बात कीजिए तो वो लाल जो मार्कर देख रहे हैं उसमें और कोई नहीं, वो टीम एक्सेस के प्लेयर लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ड पॉइंट जा चुका है पूरी तरीके से यहाँ पे गॉड लाइक खाते में। एक प्लेयर थे जरूर जिनके नाम के आगे अब क्रॉस नजर आ रहा है, एंड रैंडम वो प्लेयर थे जिनको गिराया गया इंस्टेंटली। यहाँ पे एक पिक निकालता हुआ, शायद अगर रैंडम वहाँ पे कुछ देर तक जीवित रहते तो एक बैक स्टैब हमें देखने को मिल सकता था गॉड लाइक के प्लेयर्स के द्वारा, तब कहीं ना कहीं ये कहानी में हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता था। बट यहाँ से ये वही उसी तरीके का गेम प्ले है जो हमने पिछली बार टीम वाइटैलिटी एंड रेवेनेंट का देखा था, वन साइडेड बना के रख दिया यहाँ पे गॉड लाइक ने। बट क्या यहाँ पे कोई कमबैक होगा या नहीं, अभी भी देखने वाली बात रहेगी। हार्ड पॉइंट अभी ऑन है जरूर, बट किसी साइड ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। अब गॉडलाइक के प्लेयर्स आ चुके हैं, गॉडलाइक के प्लेयर्स आ गए और अपने नाम का डंका बजा सकते हैं क्योंकि 40 सेकंड इनको मिलेंगे और 40 सेकंड को होल्ड करना पड़ेगा। अगर 40 सेकंड होल्ड कर लेते हैं तो एक बहुत भारी लीड जो है वो इनके नाम पे आ जाएगी। और मैं अगर आपको टू बी प्रिसाइज बताऊं तो ये जीतते हुए नजर आएंगे इस पूरे राउंड को, और ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे टीम एक्सिस के प्लेयर की हो। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ टीम एक्सिस की सारी काउंटर स्ट्रैटेजीज जो है वो थोड़ी सी फेल होती नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड से ये 6 4 3 2 1 और इसी के साथ जीत गॉड लाइक स्पोर्ट्स जीतती हुई नजर आई इस राउंड को। एग्जैक्टली एंड गॉड लाइक एक तरफा मुकाबला बना दिया। लगभग 40 पे थे पिछले बार, वहां पे कुछ प्लेयर्स जो नॉट लुकिंग गुड एंड लर्न जीत जरूर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं ये BO3 का श्रृंखला रहता है तो बैक टू बैक यहाँ पे विन उनको अपने खाते में करना होगा जरूर। बर्न्स का अभी भी कैंप फील्ड में नहीं नजर आया, विल वेट एंड सी किस हिसाब से बर्न्स खेलते हुए नजर आएंगे। बट इस मैच में आपका क्या न्यूट्रिनो को देखिए वाइप कर रहे हैं, उनको पता है ठीक है यार मेरे को अपनी आरपीडी निकालनी है और सबको चकाचौंध कर देना है मेरे शानदार बॉल बैंक्स के थ्रू। कहीं ना कहीं तरीके से आपको आरपीडी में ना एक बहुत बेहतरीन मैग मिल जाती है, आपको 100 गोलियां मिल, एक्सटेंडेड लगा दो तो उससे ज्यादा मिल जाती है, लेकिन उसी का फायदा उठाते हैं न्यूट्रिनो और वॉल बैंक्स पे वॉल बैंक्स यहाँ पे अपने एनिमीज को धाराशायी करते हुए नजर आता है। देखिए ये जो इविल स्माइल हमें दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं उसी चीज को दर्शा रही है। लेकिन ठीक है अगर हम बात करेंगे गॉड लाइक के लर्न की तो हाँ गॉड लाइक के लर्न एक शानदार आईजीएल तो यहाँ पे साबित हो रहे हैं और अभी इंडिया में इस टीम से ऊपर कोई टीम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये टीम एक्सिस के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी हो सकती है बिकॉज उनका मुकाबला इन्हीं से है। एंड ऑलरेडी लोहा मनवाते हुए गॉड लाइक के प्लेयर्स, बट टीम एक्सिस की बात कर लेते हैं बिकॉज वो हम आ चुके हैं हमारे टीवी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लेजरा ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले खेला जरूर, अभी ज़्यादा भी थोड़े टेंस्ड माहौल में हमें नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस मैच के अंदर, बिकॉज अगर यहाँ से ये भी मैच गॉड लाइक अगर लेके गई तो फिर टीम एक्सिस को फिर फेस करना होगा वो लोअर ब्रैकेट फिनाले के अंदर अगेंस्ट रेवेनेंट स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं उसमें जाने से पहले एक अच्छा मौका कि यही से अपना रास्ता आगे बढ़ाए, बट अभी भी इंतजार रहेगी वो कौन सी पहली टीम है जो इस पूरे ताइवान एक्सलेंस गेमिंग कप 2021 के फाइनल में सीधा जाएंगी। जैसा कि ब्लॉटर लाइक टू से ये पूरा एक 8 सीजन का एक त्योहार जैसा ही होता है जहाँ पे हर साल के एंड में कहीं ना कहीं हमें ये टूर्नामेंट देखने को मिलता है, एंड उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार टीम एक्सिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव, अगर यहाँ से जीत जाता है बैक टू बैक 2 तो सोचिए क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा गॉड लाइक के ऊपर। जी हाँ दबाव बन तो जरूर सकता था, लेकिन गॉड लाइक स्पोर्ट्स को टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एक
बारीकी सी बारीक चीज जो है इस गेम के बारे में पता है। उनको पता है कि उनको कौन सी गन यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं यूज करनी है। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटी छोटी जो आपको मैं बोलूंगा बारीकियां होती है ना, ये टीम को एक बहुत ज्यादा बढ़िया अपर हैंड देके जाती है। बात कर लेते हैं, अगर हम बात यहाँ पे लाते हैं न्यूट्रिनो की आरपीडी की, ठीक है, उनको ये पता है कि आरपीडी जो है थोड़ी सी नर्फ जरूर हुई है, तो वो कौन से टूर्नामेंट में यूज नहीं करनी, और हाँ इस टूर्नामेंट में वो यूज क्यों कर रहे हैं, ये वेपन यूज क्यों कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सवाल आता हुआ यहाँ पे दिखाई जरूर दे रहा है। बिकॉज आरपीडी का जो प्रकोप है इस पूरी रणभूमि में देखने को मिला था, लेकिन हाँ आरपीडी इस टूर्नामेंट में इसलिए यूज करी जा रही है क्योंकि ये टूर्नामेंट में मैं देख पा रहा हूँ गॉड लाइक कोई ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली एंड अब हम इस BO3 के दूसरे मुकाबले के अंदर एक बार फिर से स्पॉन साइड से गुरिल्ला के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड वही सेंटर लाइंस के अराउंड, वो कंप्यूटर केजेस के अराउंड वो हमें हार्ड पॉइंट बनते हुए देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कौन सी टीम कैपिटलाइज करती है। मल्टीपल थ्रोएबल्स फिनिश ऑफ किया जरूर जा रहा, बट पहला पिक यहाँ पे वोर्टेक्स का निकाला गया। कुछ प्लेयर्स हमें कनेक्शन इश्यूज भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बट 7 टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी गॉडलैक ने निकाला। एंड वो एंट्री जहां से स्पेशल फोर्सेस हमारी टीम एक्सिस की एंट्री कर सकती थी, उसको भी ब्लॉक कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप देखिए तो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गुरिल्ला स्क्वाड जो कि गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स रहने वाली है, उनके नाम पे ये हार्ड पॉइंट जाता हुआ हमें दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही रहने वाली है कि कितनी देर तक, बिकॉज यहाँ पे टीम एक्सिस जो है आ चुकी है, 28 सेकंड उनके पास है, और अगर ये हार्ड पॉइंट उन्होंने अपने नाम पे होल्ड कर दिया तो काफी अच्छी लीड उनके पास आ सकती है। जी हाँ, बट क्या ऐसा हो पाएगा नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल, बिकॉज न्यूट्रिनो यहाँ पे रोकने में पूरी तरीके से सक्षम अब तक 2 फिनिश अपने नाम करते हुए। अगर आप वो देखिए स्पैरो, वो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी देर में एक्टिवेट होगा जो उनका स्कोर स्ट्रीक है, एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक के बाद एक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिनो ने इंस्टेंटली 2 पिक निकाला लेजरा के नाम का, एंड प्रिज्म को भी डाउन कर दिया। प्रिज्म का जो गेम प्ले था हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी ज्यादा उभरते हुए देखा था, बट फिलहाल के लिए इस पूरे ताइवान एक्सेलेंस गेमिंग कप 2021 के अंदर पूरे इस मैच के अंदर अब तक के लिए शांत रहा है। हाँ उन्होंने मैच जीता जरूर था, बट उसमें भी कहीं ना कहीं मैं प्रिज्म से और अच्छा और ऊपर करना चाहूंगा, बिकॉज जिस हिसाब का उन्होंने एक थ्रेशोल्ड, एक रडार सेट कर दिया है, विल ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। जी हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं लेवल जो है ना वो सेट कर देती है टीम, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ लेवल दूसरा भी सेट होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज टीम एक्सिस जो है वो आ चुकी है, अब डोमिनेट करने के लिए वो आ चुकी है, अब इस हार्ड पॉइंट को होल्ड करने के लिए कुछ ज्यादा देर के लिए बात करेंगे। 37 सेकंड इनके पास है, 37 सेकंड तक अगर ये होल्ड कर लेते हैं तो काफी अच्छी लीड जो है इनके नाम पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गॉड लाइक प्लेयर आ चुके हैं टीम, मुझे हार्ड पॉइंट जो है थोड़ा सा कंटेस्टेड हुआ दिखाई दे रहा है, और लीजिए इसी के साथ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीम एक्सिस के प्लेयर्स को खदेड़ दिया गया, हटा दिया गया इस हार्ड पॉइंट से, और ये हार्ड पॉइंट अपने नाम पे करते हुए गुरिल्ला स्क्वाड जो कि गॉड लाइक की टीम है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ 16 सेकंड बचे, 15 सेकंड बचे, 14 सेकंड बचे, और अभी तक गॉड लाइक को वहां से हटाया नहीं गया है। लेकिन हाँ उसी के साथ प्रिज्म जरूर आया, लेकिन प्रिज्म चले भी गए, बिकॉज आए गया और आए और चले गए। वो एग्जैक्टली मेरे मुंह पे यही वर्ड था, लेकिन ठीक है यहाँ पे हमने बात करना चाहेंगे 36:51 हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहां से जो टीम जीत के जाएगी ना, वो टीम एक बहुत 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 अपर हैंड में हो जाएगी, और जो हारेगी वो कहीं ना कहीं लोअर ब्रैकेट में देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली, बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि कहीं ना कहीं ये जो नया हार्ड पॉइंट बना, ये बना जरूर है कहीं ना कहीं वो एक्सिस के स्पॉन के अराउंड ही, बट स्टिल अभी के लिए तो पॉइंट एकत्रित करना यहाँ पे बहुत ही वो लोहे तले चने चबाना वाली जो हम बात बोलते हैं, वो जो फ्रेज यूज करते हैं, वो देखने को मिला। बट इंस्टेंटली अभिजादा ने यहाँ पे 3 पिक निकाला अपने हंटर किलर ड्रोन के द्वारा, एंड अब जब आगे बढ़ेंगे तो प्रिज्म को रोकना होगा, बट रोकने में असक्षम प्रिज्म को गिराया गया है, बिकॉज यहाँ पे ट्रंक्स की लगातार तूती बोलते हुए ग्रेनेड आया जरूर वॉर्टेक्स के द्वारा, एंड दे आर जस्ट मूविंग इन। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 59:61 ओ प्रिज्म शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रैंडम यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्रिज्म के किल्स के ऊपर मैंने प्रिज्म का इतना हाइप जरूर करा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म की किल देखिए 14। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। एग्जैक्टली, प्रिज्म काफी ज्यादा बढ़िया खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे 76, 77, 78 गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को मात मिल सकती है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है मुझे। जी हाँ, वो बहुत अच्छा खेल जरूर रही थी, लेकिन अब रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को टीम एक्सिस को मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं गुस्सा जरूर आ चुका है, और यहाँ पे अब 56 सेकंड बचे हैं, और ये 56 सेकंड बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं टीम एक्सिस के लिए। कमबैक करने की कोशिश है जरूर गॉड लाइक के द्वारा, बट क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा, बिकॉज ये हार्ड पॉइंट भी कहीं ना कहीं टीम एक्सिस के पास है। अभिजादा एंड वॉर्टेक्स ने जिस तरीके से एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं, दोनों टीम से हमें इधर से अभिजादा एंड उधर से वीगर्स हमें उस एनालिटर का इस्तेमाल थोड़ी देर करते हुए नजर आए जरूर थे, बट न्यूट्रिनो को यहाँ पे कहीं ना कहीं रोकने में असक्षम है। अभिजादा को गिरा दिया गया है।
ये हार्ड पॉइंट एक बार वापस से कंट्रोल में आ चुका है गॉड लाइक का, रहेगा अगला 29 सेकंड। बट एक चीज मैं देखना चाह रहा हूं, बहुत अग्रेसिव पुश हमें नजर आ रहा है प्रिज्म के द्वारा, अभी भी बैकस्टैप करने की कोशिश। ये एक चीज कर सकते थे, मैं बात कर रहा हूं टीम एक्सिस का, ये हार्ड पॉइंट छोड़ सकते थे बिकॉज यहां पे इनके एक भी प्लेयर नहीं थे, मात्र 15 सेकंड। बट स्टिल अगर आप कंटेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला का पॉइंट नहीं बढ़ता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब अगला कहां हार्ड पॉइंट बनेगा ये देखने वाली बात रहेगी। क्या लगता है मुझे? आई मीन अगला हार्ड पॉइंट, एक हार्ड पॉइंट यहाँ पे रटा हुआ है सब प्लेयर्स को, सबको पता है अगला हार्ड पॉइंट कहां बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ये ये अराइज होता है कि आखिरकार अगला हार्ड पॉइंट किसके हाथ में जाने वाला है। बिकॉज हम यहाँ पे देख चुके हैं सबसे पहला हार्ड पॉइंट आ चुका है, जहां पे ये ही वो हार्ड पॉइंट है जो सबसे पहले बनता है, और ये हार्ड पॉइंट जा चुका है टीम एक्सिस के हाथ में। और देखिए 98 अभी भी टीम एक्सिस मुझे यहाँ पे लीड में दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार तरीके से टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रही है टीम एक्सिस। मुश्किल हो चुका है यहाँ पे गॉड लाइक स्पोर्ट्स को निकलना, न्यूट्रिनो को यहाँ पे डाउन कर देंगे, लर्न को डाउन कर देंगे, वेगस को भी डाउन कर देंगे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अब कहीं ना कहीं जाके ट्रंक्स आए जरूर है, और ट्रंक्स ने वॉटेक्स को यहाँ पे पनिश करा, रैंडम को पनिश करा, और अभी भी इसी के साथ 118 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं टीम एक्सिस के। कम बैक कर चुकी है यहाँ पे टीम एक्सिस, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को तितर बितर कर दिया गया टीम एक्सिस के द्वारा। अब ना वहां पे हमें न्यूट्रिनो ना लर्न्स ब्रॉन्ड वो सारे को रोक दिया गया, बट इंस्टेंटली प्रिज्म का ये स्पैरो रोकने में असक्षम मेजर बीस्ट। ओ माय गुडनेस 107, 108, 109, और ये आगे चलती रहेगी श्रृंखला। लेकिन इसी के साथ लर्न को यहाँ पे उन्होंने दोबारा रिस्पॉन एरिया में भेज दिया है, और मैं देख पा रहा हूँ 4 सेकंड बचे हैं, लेकिन हाँ 4 सेकंड भी नहीं बचे, अब 2 सेकंड 1 सेकंड, और इसी के साथ हमें देखने को मिल रहा है स्कोर रेशियो जो है वो खत्म होता हुआ 118, 113 के स्कोर रेशियो में। लेकिन हाँ अभी भी एक और हार्ड पॉइंट आने वाला है, और ये हार्ड पॉइंट कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा एक डिसाइडिंग हार्ड पॉइंट बन सकता है टीम एक्सिस के लिए। अगर ये हार्ड पॉइंट इन्होंने अच्छी तरह से होल्ड कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जीतते हुए नजर आ सकते हैं इस पूरे के पूरे मैच को, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पाऊं, और जो पॉसिबल भी है ये गेम बदल देगा पूरी तरीके से ये खेल बदल दिया जाएगा। आप देखिए वो रेडियस के अंदर कोई भी प्लेयर आएंगे गॉड लाइक के लिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ये रेडियस अगले टाइम तक रहेगा। हालांकि वो हट चुका है, बट दैट इज गोना बी इनफ, बिकॉज यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया गया टीम एक्सिस के द्वारा। 145, 146, 147, 148, और इसी के साथ टीम एक्सिस, ओ ये भी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है आज। इतिहास पे इतिहास क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जरूरी बिल्कुल था, क्योंकि ये मैं बोलना चाहूंगा एक ऐसी टीम है, एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ये उभरते हुए सितारे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया के लिए, और हम देख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से गेम प्ले दिखा रहे हैं ये लाजवाब है, काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और हमने अब तक काफी बात किया जरूर बाकी प्लेयर्स एंड बाकी टीम्स के बारे में, एंड अब कहीं ना कहीं टीम एक्सिस अब कुछ काफी बड़े नाम, गॉडल में भी आप प्लेयर्स उठा लीजिए, रेवरेंट में आप उठा लीजिए, वाइटैलिटी में उठा लीजिए, कहीं ना कहीं कल का अगर फ्यूचर बताइए तो वो हॉरोस्कोप अलाइन हो चुका है, एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट किया सकता है टीम एक्सिस कैन जस्ट बी द वन। गॉडलाइक को इस तरीके से परास्त करना समिट मैप के ऊपर हार्ड पॉइंट के अंदर, अब ये सारा दारोमदार टिक जाएगा अगला गेम फायरिंग रेंज के अंदर, जहां पे पिछली बार गॉडल ने रेवरेंट को मात दिया था, एंड वो बहुत ही जबरदस्त मैच था। देखिए प्रेशर का माहौल जो है वो आ चुके गॉडलाइक के ऊपर, उनको बिल्कुल भी मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये टीम एक्सिस जो है वो इतना कड़ा मुकाबला उनको देने वाली है। जी हाँ, अगर मैं बात करूंगा टीम एक्सिस की, शानदार तरीके से इन सारे सब के सब प्लेयर्स ने अपने टीम वर्क दिखाया है और बताया है कि यार हम अंडररेटेड है, बट हाँ हमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली भी है इनके गेम प्ले के द्वारा। एग्जैक्टली, एंड अब जब ये BO3 का मुकाबला अगले मैच के अंदर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाले स्ट्रेट ऑफ द बैट? क्या लगता है आपको, वो टीम जो एक कमबैक करना स्टार्ट कर चुकी है, वो जो एक मोमेंटम में है वो जीतेंगी, या वो फैन फेवरेट, वो क्राउड फेवरेट जिसको हर एक टीम जानती है, वो जो है हर बार बोलते हो हैशटैग दिल से गॉड लाइक, वो हार्ट स्पैम होता है, वो टीम आगे जाएंगे? बिकॉज जो भी टीम यहाँ आगे जीतेगी मेजर बीस्ट, दे विल बी स्टेपिंग इनटू दिस फाइनल ऑफ ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं आपको सच बताऊं तो गॉडलाइक मेरे को लग रहा है कि गॉडलाइक यहाँ पे बाजी मारने वाली है, लेकिन दिल से के विपरीत मैं दिल से ये बोलना चाहूंगा कि हाँ दूसरी टीम जो है वो भी अपना पूरा एक गेम प्ले दिखा रही है, 100% ऋतु नजर आ रही है। मेरे को लग जरूर ये रहा है कि यार वो भी कुछ अच्छा गेम प्ले जो है वो दिखा रही है, और क्या पता कुछ अनोखा ही गेम प्ले में देखने को मिले, कुछ अनोखा ही रिजल्ट हमें देखने को मिले। ओह यस, और वो अनोखा साफ दर्शाया जा रहा है, कहीं ना कहीं टीम एक्सिस अगर आगे लेके जाती है तो एक मौका रहेगा जरूर, उनके पास इंतजार जरूर रहेगी, बट फिलहाल के लिए लेट्स ड्रा हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर वी हैव आल्सो अबुजादा इस मैच के अंदर। बात कर ही रहते हैं, प्रिज्म को बढ़ चढ़ के खेलना होगा, वॉर्टेक्स एंड अबुजादा का काफी अच्छा प्रदर्शन, एंड प्रिज्म एक टाइम पे 17 फिनिश
17 फिनिश अपने नाम किए थे एंड उसके बाद वो आगे बढ़े थे, बट सारे स्पेकुलेशंस पे विराम लग चुकी है बिकॉज हम मैच में बढ़ेंगे इस फायरिंग रेंज के अंदर। जी हाँ, हम बिल्कुल आगे बढ़ना चाहेंगे और बिल्कुल हम वो गेम प्ले को आगे बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। एक एक का स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रहा है। एक जो राउंड है वो निकाल के लेके गई है, एक मैच जो है वो निकाल के लेके गई है गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स, और एक जो राउंड है वो निकाल के लेके गई है टीम एक्सिस। लेकिन हाँ, ये डिसाइडिंग है, यहाँ पे जो बाजी मार गया ना वही मुकद्दर का सिकंदर होने वाला है। एग्जैक्टली एंड उसी के ऊपर अपना रास्ता अग्रसर करते हुए वेगस ने इंस्टेंटली यहाँ पे पिक निकालने की कोशिश थी, बट कैसे बचिएगा वोर्टेक्स के कहर से। हार्ड पॉइंट ऑलरेडी बन चुका है। आप देखिए उस मिनी मैप के अराउंड कहीं ना कहीं वो सेंट्रल लाइंस पे उस वुडन के अराउंड हमें देखने को मिल जरूर से रहा है, जहाँ पे काफी अच्छे तरीके से प्लेयर्स एंड बारंबार वो ईयर कप्स में भी नजर आ रहे हैं। वीगस का वो टाइप 25 एंड आल्सो M13 बढ़ चढ़ के बोल रहा है मेजर बीस्ट। जी हाँ, बिल्कुल वो बोलेगा क्योंकि यही टाइम है वो चीज बुलाने की और अपना सारे का सारा ए गेम प्ले दिखाने की। 6:25 चल रहा है, ये बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा शॉकिंग न्यूज है गॉडल फैन के लिए, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि गॉडल थोड़े से स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गॉडल बर्न्स के द्वारा ये लिया क्यों नहीं गया। ठीक है, ले लिया गया है उनके द्वारा 13:25। अब कहीं ना कहीं में दिखाई दे रहा है गॉडल लर्न जो है वो स्नाइपर नेस्ट पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से एक अच्छा मैं बोलूंगा एंगल जो है उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ पे थंपर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते वेगस, लेकिन वेगस को शट डाउन कर देगा बाय रैंडम एंड रैंडम। शानदार प्लेयर है जी हाँ टीम एक्सिस के द्वारा। यहाँ पे टीआर के सबके सब टीआर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे टीम गॉडलाइक एक्सिस की तरफ से एक प्लेयर जरूर आया है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे लेजरा की, तो जी हाँ लेजरा भी अपना कमाल जो है दिखाते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली एंड लेजरा अगर यहाँ पे नहीं रोका गया तो फिर टीम एक्सिस के मैच भी आ सकता है, बट अभी भी अगर आप देखिए 4 मिनट 43 सेकंड का मैच शुरुआत जरूर हुआ था, लगभग 1 मिनट 20 सेकंड खत्म हो चुका है, अभी भी बारंबार बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिल रहा है। अगला हार्ड पॉइंट कहीं ना कहीं जब बनेगा तो टीम एक्सिस के पास जा सकता है। मैं रियली एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं उनके स्पॉन्स के अराउंड बने, बट लेट्स जस्ट सी। फिलहाल के लिए इस एरिया के अराउंड हमें देखने को मिला जहां पे ऑलरेडी हमारी स्पेशल फोर्सेस के प्लेयर्स स्पॉन होते हैं, बट उन्हीं के साइड से भी हमें डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। एक समय के लिए ऐसा लगा था टीम एक्सिस ये पूरा हार्ड पॉइंट अपने नाम कर लेंगे, बट वेगस के कहर से यहां बचने में पूरी तरीके से असक्षम। न्यूट्रिनो भी यहां पे आ चुके हैं, कुछ ट्रॉफी सिस्टम भी डिप्लॉय किए जा रहा है, आप देख सकते हो वो लगातार टॉस इन किया जा रहा है एंड ना ही सिर्फ उतना ही बाकी प्लेयर्स भी यहां पे गाइड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन नया हार्ड पॉइंट की तरफ वहां पे शिफ्ट कर दिया जा चुका है, लेकिन मैं यहां पे देख पा रहा हूं अब जो नया हार्ड पॉइंट बनेगा वो थोड़ा सा ट्रेलर की साइड बन सकता है। अब देखने वाली बात यही है कि किस हिसाब से गेम प्ले को आगे दिखाया जाएगा। लेकिन देखिए आप ट्रेलर पे आ चुके सारे के सारे प्लेयर और मैं देख पा रहा हूं कि अब इस दादा ने शानदार शॉट लगाया जरूर, बर्न्स डाउन जरूर हो चुके, लेकिन उसके हिसाब से दूसरे को भी रैंडम को एक अच्छा के स्पैरो का प्रदर्शन दिखाते हुए न्यूट्रिनो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वॉर्टेक्स ऑन द अदर एंड एक अच्छा पिक निकालते हुए। स्कोर लाइन की बात करूं 61 रेशियो 44 45 46 चलता हुआ और इसी के साथ मैं बोलूंगा टीम एक्सिस जो है वापसी करते हुए दिखाई दे रही है हमें। ओह यस, एक्सिस का वापसी इंतजार थी जरूर एंड उसमें कहीं ना कहीं रैंडम आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। वी हैव लेजरा आल्सो, बट रैंडम का ट्रेड निकाल देगा न्यूट्रिनो के दौरान। न्यूट्रिनो यहाँ पे होलकर 26 से अपना एक कमाल दिखाने की कोशिश थी, बट उसी बीच उनको रोका जाएगा। बट ट्रंक्स एंड बर्न्स बैक एंड साइड से आएंगे, इंस्टेंटली कुछ ट्रेड लेंगे एंड एक बार फिर से वो हार्ड पॉइंट का जो कंट्रोल था ट्रेलर के अराउंड उनके पास पूरी तरीके से। अगला 19 सेकंड अगर ये गॉड लाइक के पास जाता है वो 100 के काफी करीब आ जाएंगे एंड जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रंक्स अपने स्पैरो को भी यूज कर रहे हैं वो तीर धनुष में फंसते हुए नजर आ सकते हैं सामने वाली टीम। जी हाँ बिल्कुल, 80 रेशियो 60 चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सेकंड है और 6 सेकंड भी अच्छी तरह से यहाँ पे निचोड़े जाएंगे टीम गॉडलाइक के द्वारा। लेकिन बात करने वाली बात यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यही है कि टीम एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वो टीम भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इतनी बड़ी टीम को। वो यहाँ पे बिल्कुल भी चोक करते हुए दिखाई नहीं दे रही। वो कोई ऐसी टीम नहीं हो रही कि यार ठीक है इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने खेल रहे हैं तो हाँ थोड़े बहुत चोक करें या थोड़ा बहुत गलतियां कर दे, सिली मिस्टेक कर दिए। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया गया था टीम गॉडलाइक को उन्होंने। एग्जैक्टली, बट फिलहाल के लिए गुरिल्ला स्क्वाड के रूप में जो रेड कलर मार्कर की टीम है टीम एक्सिस उसके काफी करीब। न्यूट्रिनो कंट्रोल लेने की कोशिश थी जरूर, इंस्टेंट पर को शट डाउन किया एंड जब गॉडल की पूरी टोली आई यहाँ पे एक सुनामी वेव में लेके गए एंड न्यूट्रिनो को रोकना यहाँ से बहुत ही मुश्किल। आई मीन न्यूट्रिनो का दोबारा से स्पैम जो है वो चालू हो गया था। होलकर लेके इस बार आ चुके हैं, ट्रंक्स भी आ चुके हैं, अपनी शानदार मैं बोलूंगा फेनिक का प्रदर्शन करते हुए दिखा जरूर रहे हैं। इसी के साथ मॉर्निंग स्टार लेके, जी हाँ मॉर्निंग स्टार इज स्किन नेम, बट हाँ M13 गन लेके आ चुके हैं यहाँ पे ट्रंक्स। और अब वुडन का पूरा जो एरिया है जो हार्ड पॉइंट है उसको ग्रैब करने के, उसको होल्ड करने की इनकी एक साझेदारी रहने वाली है। जिस तरीके से बखूबी ये प्लेयर्स छिन रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सिस के प्लेयर्स का एक बहुत अच्छा पकड़ था। ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा चारों तरफ से जो प्लेयर है स्पेशली न्यूट्रिनो वो जो हॉलगर का प्रदर्शन था एक बार फिर से कहीं ना कहीं जब अगला हार्ड पॉइंट बनेगा मैं चाहूंगा अगर ये हॉलगर के साथ आए हॉलगर 26 तो दैट विल रियली गुड वन थिंग।
हार्ड पॉइंट अब चेंज हो चुका है, जो हम देखने को मिल रहा है। शायद कहीं ना कहीं एक मौका रहेगा, सेंटर लाइंस के अराउंड बनते हुए नजर आया है। गॉड लाइक यहाँ से मैच कहीं ना कहीं अपने नाम करते हुए, वो स्नाइपर नेस्ट के अराउंड बना जरूर है, जहां पे ऑलरेडी न्यूट्रिनो धाक लगा के बैठे हुए हैं एंड होलगर 26 के साथ बखूबी भी कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रैंडम का एक्सपायर हुआ था, न्यूट्रिनो की कहानी यहीं खत्म, लेकिन हाँ, इसी के साथ वेगस की भी कहानी खत्म करते हुए टीम दिखाई दे रही है। मैं बात करना चाहूंगा टीम एक्सिस की। टीम एक्सिस के पास ये पूरा पूरा हार्ड पॉइंट रहने वाला जरूर है। 29 सेकंड है, 28 सेकंड है, 27 सेकंड्स है, और ये टीम मुझे रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे लग नहीं रहा कि ये टीम यहाँ इस हार्ड पॉइंट को छोड़ देगी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे टीम हमारे पास गॉड लाइक जो है वो कुछ ना कुछ एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आने वाली है, बिकॉज हम देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पे इस हार्ड पॉइंट को अपने नाम पे करने की सोची तो जरूर है, लेकिन आप एक बार नजर मारिए स्कोर रेशियो पे। अगर आप स्कोर रेशियो पे नजर मारोगे तो आपको पता लगेगा काफी ज्यादा करीब जो है यहाँ पे टीम एक्सिस पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली, द कमबैक इज रियल। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 129 रेशियो 111 111 में दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन हाँ, इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड चाहिए गॉड लाइक स्पोर्ट्स को इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। अगर आप देखें तो हार्ड पॉइंट वहीं पे बनने वाला है जहां पे ऑलरेडी ब्लू कलर की टीम बैठी हुई, जो स्पेशल फोर्सेस है, नन अदर देन गॉड लाइक, एंड उनके प्लेयर ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो ट्रेलर के राउंड बैठे हुए, तो मैप के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है 3 प्लेयर के साथ। यहां पे अगर प्लेयर को टेक डाउन नहीं किया गया फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्क्वाड टीम एक्सिस, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में बन जाएगी। सीम्स लाइक उनके पास फिलहाल के लिए तो जवाब आ चुका है, 140 पे रोक के रखा गया है। यहां पे गॉड लाइक को 116 117 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहां पे अब कंटेस्टेड हमें नजर आ रहा है। वो दोनों ब्लू एंड रेड की टीम हमें नजर आ जरूर रही है, एनालिटर निकाला जरूर है बर्न्स ने बलून को शट डाउन करने में कहीं ना कहीं प्रिज्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल अभी इस पूरे मैच के अंदर, इस पूरे राउंड के अंदर। बर्न्स ने काफी अच्छा गेम प्ले खेला जरूर, बट 140 पे भी फिलहाल के रोका गया, 132 133। This is the real comeback that we were all expecting for, and ये BO3 अगर इतना ज्यादा इंटेंस जाएगा कहीं ना कहीं फाइनल्स के लिए ऑलरेडी द स्टेज इज सेट। थंपर स्पैरो सबका यूज कर दिया गया, तब जाके टीम एक्सिस रुकी है, लेकिन हाँ 3 पॉइंट 2 सेकंड 1 सेकंड और लीजिए इसी के साथ गॉड लाइक स्पोर्ट्स आगे जाते हुए नजर आ रही है हमें मैकवाइपर। एग्जैक्टली, गॉड लाइक का एक जबरदस्त शंखनाद, एंड कहीं ना कहीं आई गेस फाइनल्स में भी अपना रास्ता अग्रसर बन चुके हैं एंड ऑलरेडी अपना मुकद्दर लिख चुके हैं। जी हाँ, अपना मुकद्दर लिख चुके हैं, और कहीं ना कहीं मुकद्दर का सिकंदर बनते हुए ये टीम हमें दिखाई दे रही है। शानदार गेम प्ले, शानदार आइजलिंग करते हुए ये टीम हमें दिखाई दी है। एब्सोल्युटली, एंड उसी के साथ ऑफ कोर्स अ बिग कांग्रेचुलेशन यहाँ पे गॉड लाइक को, बिकॉज़ द वे इन्होंने पूरे गेम्स आज खेल के दिखाए, यू गाइस वो कॉर्निंग इट कि ये टीम गारंटेड हमें चैंपियनशिप वहां पे दिखेगी, एंड ये पहुंच के वहां पे। अब हमें ऑफ कोर्स कल देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इनके अगेंस्ट जाने वाली है, उसके लिए ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वेट टिल टुमारो। लेकिन आज के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस, काफी क्लोज टक्कर रही है सारे के सारे मैचेस के अंदर इन टीम्स की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम एक चीज देख सकते हैं कि टीम एक्सिस ने अपना पूरा 100% दिया है। डेफिनेटली नो टू वेज अबाउट इट। उसके साथ में हम अपडेटेड ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं, जहां पे हमें पता चल चुका है कि हमारे ग्रैंड फाइनल्स के लिए यस गॉड लाइक विल मूव ऑन फोर्थ। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स वहां पे वेट करेगी कि कौन सी वो दूसरी टीम है जो इनके अगेंस्ट जाएगी, एंड कल हम ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे कि वेल रेवेनेंट एंड टीम एक्सिस का जो BO3 होगा, उन दोनों में से कोई एक टीम होगी, एंड वेल दोनों काफ़ी ज़्यादा केपेबल हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ परफॉर्मेंस रही है दोनों की आज, बट अगेन एक विजेता निकलेगा और एक नहीं जा पाएगा, सो ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट टिल टुमारो फॉर दैट BO3's आंसर। यप एग्जैक्टली, मतलब लोअर ब्रैकेट का जो फिनाले रहने वाला है, जो BO3 रहने वाला है कल का, वो भी नेल बाइटिंग रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं जो मुकाबला रहेगा वो कड़ा मुकाबला में देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे दोनों टीम्स की, दोनों टीम्स एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल टीम हमें देखने को मिलने वाली है। एग्जैक्टली, एक्सिस एंड रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, अब इस दोनों में जो जीतेगा वो कल की कहानी रहने वाली है, जहां पे जो टीम जो आज जीतेगी उनका सामना होगा एक टीम जो ऑलरेडी वहां पे अपना स्थान गड़ा चुकी है, टगा चुकी है, एंड वो डगमगाने नहीं वाली है। उनका नाम है गॉड लाइक द अनस्टॉपेबल। एब्सोल्युटली, उनके बैंक में अभी 1 लाख तो है ऑलरेडी, एंड अगर वो जीतते हैं कल के मैचेस, द BO5 जो फिनाले ग्रैंड फाइनल हम देखेंगे, तो अगेन ऑफ कोर्स वो 2 लाख भी उनके होंगे। बट व्हाट अ प्ले, व्हाट अ डे, व्हाट अ प्ले। एक गेम इतनी ज्यादा क्लोज गई है। आई मीन एक्सिस इज द डार्क हॉर्स आज के टूर्नामेंट के अंदर, जिस तरीके से हमें आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने आप को दर्शाया है, एंड ऑफ कोर्स गेम प्ले टॉक्स अबाउट इटसेल्फ। एग्जैक्टली, मतलब कहीं ना कहीं तरीके से हम देख पा रहे हैं 3000 टीम्स के अंदर ये टीम उभरते हुए आते हुए दिखाई दी है, और अगर पोटेंशियल आपके अंदर है, अगर वो जज्बा आपके अंदर है, अगर वो विल पावर आपके अंदर है ना, तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक के दिखा दे। एग्जैक्टली, एंड उसमें कहीं ना कहीं मैं दाद देना चाहूंगा स्पेशली प्रिज्म एंड अभिजादा, जिस तरीके से आल्सो नॉट टू फॉरगेट अबाउट वॉर्टेक्स, उनका कंट्रीब्यूशन मैप दर मैप बढ़ते गया, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे। एक समय पे ऐसा लग रहा था जब वो वाइटैलिटी के अगेंस्ट ये टीम्स खेलते हुए हमें नजर आई थी। सो नाउ आई रियली वांट टू ब्रिंग डाउन द कन्वर्सेशन एंड वार्तालाप छेड़ना चाहूंगा, जब ये टीम वाइटैलिटी के अगेंस्ट खेल रही थी एंड ये जब टीम गॉड लाइक के अगेंस्ट खेल रही थी, वाइटैलिटी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो थोड़े
उनका इंडिविजुअल गन गेम प्ले हमें देखने को मिला जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, बट जब जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा काम हमें देखने को मिला। इतना क्लोज मैच लेके गए जहाँ पे हमने देखा सिर्फ 5 पॉइंट के डिफरेंस से ये मैच चिंता में नजर आया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी 3 प्लेयर्स भी कंसिस्टेंटली खेलते हुए नजर आए थे जो हमें वाइटैलिटी के अगेंस्ट नहीं देखने को मिला था। एंड ये कहीं ना कहीं वो प्रिस्टीन फॉर्म है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइन है इस टीम को आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एब्सोल्युटली, लेकिन उनका जो कंपटीशन रहने वाला है वो है कि रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, एंड उनकी प्लेयर्स ने आज ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई है, काफी क्लोज मैचेस उनके भी रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स उनका जो वो सिनर्जिस्टिक प्ले था वो उनकी तरफ डेफिनेटली वर्क करा। सो कल का जो फाइनल होगा, फिर फाइनल से पहले इनफैक्ट जो लो ब्रैकेट फाइनल होगा जी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज बोथ टीम्स आर केपेबल, दोनों के पास में पोटेंशियल है, बट इन द एंड वो जोन किस तरफ जाता है, वो हार्ड पॉइंट कहाँ पे जाके बनता है, वो सबसे बड़ा, एंड वो क्वेश्चन भी नहीं है, वो गेम के ऊपर है। ऑफ कोर्स कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हमने आज देखा। गॉड लाइक इन द एंड वर एबल टू अचीव दैट। आई मीन हमें हार्ड पॉइंट पता लग जाता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हार्ड पॉइंट कहाँ बनने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो ये है कि आखिरकार कौन सी टीम उस हार्ड पॉइंट को होल्ड करने वाली है। और ये सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता हुआ हमें नजर आएगा, और उसका जवाब हमें सिर्फ कल ही मिलने वाला है। एग्जैक्टली अभी के लिए चाहे हम कितनी मर्जी उसके बारे में प्रेडिक्शन कर लें, इन द एंड उसका रिजल्ट तो हमें कल ही मिलेगा। मैक, आप बोल रहे थे कुछ? दिन पहला डे दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए आता है। टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, डिवाइस के ऊपर खेलना, एक पर्टिकुलर पोज में खुद को बैठना, ऐसा नहीं है कि आई मीन फ्रेंडली मैचेस खेले जरूर जाता है बेड पे अराउंड, बट हमने देखा किस हिसाब से सारे प्लेयर्स एकाग्रचित होकर, एंड ऑल इंपॉर्टेंट थिंग वो कंसंट्रेशन। तो आप सोचिए जिस हिसाब से वो अपना अलार्म सेट इन करते हैं, वो शेड्यूल बनाते हैं, एंड लर्न से हमने बात करते हुए देखा जरूर किस हिसाब से बोले खाने पीने का नहीं, सिर्फ खेलने का। इस तरीके से आप अब मगन हो जाइए उस गेम के अंदर, एंड तब जाके सफलता आपके कदम में चूमेगी। एंड कहीं ना कहीं गॉड लाइक ने वो कर दिखाया, जो ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप के फाइनल में पहली वो टीम बन चुकी है जो फाइनल से अंदर वो अपना चरण वो प्रस्थान कर चुके हैं। एब्सोल्युटली, आप ई स्पोर्ट्स में कहीं पे भी कोई भी आप टीम को पकड़ लीजिए, अगर वो अच्छी टीम है तो उनके पीछे ये बहुत जरूरी चीज है कि वो अपने आप को डेली वो ग्राइंड के थ्रू जाएं, और वो ग्राइंड से ही निकल के आते हैं ये सितारे एंड तारे। ऑफ कोर्स विद दैट अभी हमारे पास में एक इंटरव्यू लाइन अप है गॉल के प्लेयर के साथ में, सो लेट्स मूव ऑन अलोंग एंड गेट हिम ऑन आवर स्क्रीन्स। परफेक्ट, कांग्रेचुलेशंस न्यूट्रिनो, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा आपका और आपकी टीम का, एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन, आप लोग फाइनल्स के अंदर तो पहुंच चुके हैं। बट अब आपसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट टीम वुड यू वांट टू गो अगेंस्ट? कल कौन सी टीम देखना चाहेंगे आप जो आपके अगेंस्ट जाए? आई गेस हमारे लिए तो सारी टीम्स एक जैसी ही है, तो कोई भी टीम्स आए हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे उनको। बिल्कुल मेजर। ऑलराइट, हे हाय न्यूट्रिनो, हाउ यू डूइंग मैन? हेलो न्यूट्रिनो, आपने कुछ सुना? यप न्यूट्रिनो, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहना चाहेगा कि न्यूट्रिनो, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा था, इसके हिसाब से आप लोगों ने अपने माइंड में किस हिसाब से एक माइंडसेट सेट कर रखा था कि ये जो टूर्नामेंट है ये आप खेलने वाले हो आगे और बेहतरीन तरीके से डोमिनेट करने वाले हो? जी हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो 2 साल से हम लोग जिसके लिए ग्राइंड कर रहे थे वो आज के दिन था, WC स्टेज 5। पिछले साल नहीं हो पाया था जी, इस साल हो गया, ऑफलाइन हुआ, लैन इवेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन अच्छा है जो भी हुआ। लेकिन मेंटालिटी आई गेस जो हमारी सिचुएशन, इंडियन टीम्स की जो सिचुएशन थी WC में, सबको पता ही रहेगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी आई गेस। लेकिन वो सिचुएशन में मेंटालिटी बहुत एक मेन फैक्टर रहता है आई गेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम जीतने के लिए खेल रहे हो कि बचने के लिए खेल रहे हो। तो आई गेस जो भी आज पूरा लाइक मेरी लाइफ का पूरा जो लाइफ का डे रहता है ना, परफेक्ट डे, वो आज मैं बोलूंगा कि आज का मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिस हिसाब से हमारा सिचुएशन था तो हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं, कहीं ना कहीं सैटिस्फाई अपनी पूरी की पूरी तरीके से हो चुके हैं आज की। डेफिनेटली, और क्या। अभी आज आप सिर्फ आज के दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कल का भी दिन न्यूट्रिनो ऐसा ही जाएगा आपका, एकदम बेहतरीन जाएगा। एंड उसी के साथ में ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ यहाँ पे इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। बट अगेन बेस्ट ऑफ लक, एंड आई सर्टनली डू होप दैट यू गेट द परफेक्ट चैंपियनशिप टुमारो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वेल अगेन काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी उन्होंने। मेंटल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप ये स्पोर्ट्स कंटेंडर के अंदर घुसते हो, बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा बन चुका होता है। बट वहीं पे प्रेशर रिलीव करने के लिए कहीं ना कहीं आती हैं TEGC
TEGC and Oh, उनकी yes. brands, because the brands make this entire thing happen. 2021 8th edition है यहाँ पे, and for that of course जहाँ पे मैं brands की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा of course let's move on along and उनके बारे में थोड़ा सी बात भी कर लेते हैं. We have InWin right here जो यहाँ पे कहीं पे जुड़ने वाला है. Yes, there we go. InWin का ये बेहतरीन looking chassis, it is just a truly mesmerizing thing to have in your room. And of course InWin की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि आपको जो वहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है is going to be the most supreme. उसी के साथ साथ अब हम उसके साथ मूव ऑन करते हैं towards MSI का GE66. अब GE66 जो ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है. RTX 30 सीरीज के इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड रहेगा. Along with that of course you do know कि जब बैटरी पावर की बात करें लैपटॉप के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है. And this little thing packs the punch. But alongside that हम टीम ग्रुप की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे टीम ग्रुप के पास एक बेहतरीन, there you go, look at that RGB DDR4 gaming RAM जो बहुत again critical होती है for any system for you to run it smoothly when you're playing and of course chilling along with whatever that you do in your free time. But the list just goes on and on and on. And वहीं पे of course Taiwan Excellence Gaming Cup के यहाँ पे जो इतनी सारी brands हैं जो अपने आप को every single year they bring themselves together. It is a big thanks to all of them. उसी के साथ हमारा यहाँ पे first day does come to an end. Tomorrow will be the grand championship that will take place right here जहाँ पे of course Valorant के भी हमें final games देखने को मिलेंगे along with well Call of Duty Mobile. But for now we do reach the end of our stream. Thank you so much. I've been your host Bloro. तब तक के लिए bye bye.